Hello aspirants, welcome to Target UPSC. After the huge success of last year's marathon session on current affairs, many students requested us to bring out a similar session for UPSC Prelims 2022. Last year's marathon current affairs session was followed by more than 1 lakh students, including many toppers such as Shubham Kumar rank 1, and you can see in the video here. एक YouTube पे आपको YouTube पे आपको वीडियो आ जाएगा. हर प्रीलिम से पहले 2-3 वीडियो आएंगे कि कवर इंटायर करंट अफेयर्स इन 10 आवर्स, ऐसे करके वीडियो आ जाता है. सुदर्शन लोधा सर का आई थिंक है. सो आई वॉच्ड दोज लेक्चर्स लास्ट ईयर, 10 आवर्स का था, एंड आई मेड शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ दैट, और इट गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि मैं वो कर सकता हूँ. Secondly, we are close to 1 lakh subscriber. I would request everyone to subscribe to the channel, hit the bell icon so that it motivates us to bring more such videos. This 12 hours video would cover most of your important current affairs and also help you eliminate multiple options. And make sure कि you complete this 12 hours video with one revision. And आप ये वीडियो जब भी आप लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर कर रहे हो, आप ये वीडियो आपके सामने लगा के बैठिए and you will definitely feel enriched with this content. Many students request us for the notes of this video. You can see the description box about how to access the notes. Do write in the comment section कि आपको ये वीडियो कैसा लगा so that we bring more such video in the future. Hope you enjoy this 12-hour session and get maximum out of it. Thank you. To start with, one important topic in news with respect to science and technology, which we are going to take, and its linkages to the static syllabus is important. The news was related to radio over internet protocol. So basically, Kolkata major port has launched radio over internet protocol as a way of communicating with ships. So एक important news था. But this news is not sufficient. What you need to know is what is radio over internet protocol. So what do you understand by radio over internet protocol and why we are using internet to pass the radio signals? So basically radio waves have various limitations with respect to, they are not clear, they have distance limitation, and their communication is affected by bad weather. So basically ये इस वजह से क्या है, we were not able to communicate, the ports were not able to communicate with the ships. So now what we are doing is we are sending radio signals over internet. जैसे voice over internet protocol था, voice over internet protocol, you must be knowing what do you understand by voice over internet protocol, where we are sending our voice in the form of data packets over internet. Similarly, radio signals are being sent over internet. इसी को हम क्या बोलेंगे, radio over internet protocol. And the benefit of this sending radio waves through internet is the large distance can be covered, and secondly, in spite of bad weather, these signals can be transferred in a efficient way. तो एक important चीज है with maintaining clarity. तो एक important पता चाहिए radio over internet protocol. Secondly, you should know that why do we use radio communication? Because we can send communication to 2 or more stations simultaneously through radio communications. जो voice over internet protocol में क्या है, there is a one-to-one communication, but radio communication में what we can do is we can send the signals to multiple stations. तो एक important चीज है. And radio communication is in the form of push to talk. What we have is we need to push the button and we need to talk. जैसे normal हम जो मोबाइल कॉलिंग करते हैं, what we need to do is we need to dial, but here what technology we are using is push to talk. We just need to push the button and start talking. तो ये एक important benefit है of radio communication. Next is voice over internet protocol. As I've already told you that here voice is converted into data packets and transferred over internet so that there is clear communication and there is no break in the calls. तो ये आपको पता चाहिए voice over internet protocols. Simultaneously, जब भी हम radio communications की बात करते हैं, you should know basics about radio waves. What do you understand by radio waves? Radio waves are part of electromagnetic spectrum and their frequency, आपको frequency पता चाहिए, it is between 300 gigahertz to 3 kilohertz. तो ये उसका range है. Simultaneously आपको AM and FM रेडियो के बीच में डिफरेंस पता चाहिए, बिकॉज इट्स सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशंस की न्यूज जानना जरूरी नहीं है. व्हाट यू नीड टू नो इज द बेसिक्स ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, व्हाट इज AM and FM, और ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा. सो बेसिकली व्हाट AM and FM इज, दे आर वेज ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन. सो बेसिकली AM में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बाय एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो इसमें क्या है कि जो वेव्स का एम्पलीट्यूड है वो चेंज करके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया जाता है. एंड सेकेंडली FM में क्या है, व्हाट वी डू इज वी ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन थ्रू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किया जाता है. AM में फ्रीक्वेंसी सेम रहता है लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज होता है. FM में क्या है,
एम्पलीट्यूड सेम रहता है लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होता है. तो बेस्ड ऑन दिस चेंजेस वी ट्राई टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन एंड दिस इज थ्रू रेडियो वेव्स. तो ये आपको पता चाहिए. एंड फ्यू अदर डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू एएम एंड एफएम यू शुड नो. एज आई टोल्ड यू, एएम इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से वी ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन एंड थ्रू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम में हम ट्रांसमिट करते हैं. एएम फ्रीक्वेंसीज में व्हाट इज हैपनिंग इज देयर इज पुअर क्वालिटी बट द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस. तो ये आपको पता चाहिए. एएम इज poor quality but long distance, FM is good quality but short distance. You must be knowing that when you travel between two cities, the radio signals is lost after 30-40 kilometers is because the FM has because FM frequency radio waves have low distance capacity. तो ये आपको पता चाहिए. They cannot travel long, but AM frequency radio waves can travel long. तो ये difference आपको पता चाहिए. Frequency क्या है? AM radio frequency is between 500 to 1700 kilohertz, whereas of FM radio waves is 88 to 108 megahertz. तो ये आपको पता चाहिए. AM radio waves or AM radio sets are non-efficient. They are very power consuming. And secondly, the FM radio waves are power efficient. तो ये major simple definitions which are based given in NCERT. तो ये आपको पता चाहिए. So through this initiative, what we are doing is we are not just covering current affairs. But we are linking it to the static syllabus. तो ये एक important चीज है. We're not just covering current affairs, but we are linking it with static syllabus. तो एक important चीज है. हमने रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल देखा, हमने वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल देखा, हमने रेडियो वेव्स देखे, हमने AM एंड FM का डिफरेंस देखा. तो not just studying from a unidirectional perspective, but from होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. इसी तरीके से अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपका करंट अफेयर्स भी कवर होगा एंड स्टैटिक सिलेबस भी कवर होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लेने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू सिटमैक्स एक्सरसाइज व्हिच इज एक्सरसाइज बिटवीन सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड व्हिच इज अ मैरीटाइम एक्सरसाइज. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए. नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड. इट इज कंडक्टेड एनुअली सिंस 2018 एंड इट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग शंग्रीला डायलॉग. तो एक इंपॉर्टेंट है. तो कब अनाउंस हुआ? 2018. एवरी ईयर शंग्रीला डायलॉग में अनाउंस किया गया था. तब से एनुअली होती जा रही है सिटमैक्स एनुअल नेवल एक्सरसाइज. बट यू कैन नॉट स्टॉप हियर एंड डू नॉट नो अबाउट शंग्रीला डायलॉग. तो ये आपको पता चाहिए. व्हाट वी आर कवरिंग इज नॉट जस्ट सिटमैक्स बट वी आर लिंकिंग इट विद बेसिक्स ऑफ international relationships. What do you understand by Shangri-La dialogue? Basically, this is an important intergovernmental security forum. Here, various leaders of Indo-Pacific region come here annually, and this conference is organized by International Institute of Strategic Studies in Singapore. And here countries from Asia Pacific come together and discuss about regional security. तो एक important है, Intergovernmental Regional Security Forum है, where leaders, what do you say, defense ministers, officials from armies, navies, they come together, they discuss security in the Indo-Pacific region, and countries from Indo-Pacific region take part in this important dialogue. तो एक important है. शंग्रीला डायलॉग कौन कंडक्ट करता है? You should know about this. Simultaneously, जब भी आप शंग्रीला डायलॉग के बारे में पढ़ रहे हो तो you should also know about रायसीना डायलॉग. What do you understand by रायसीना डायलॉग? It is conducted by Observer Research Foundation and Ministry of External Affairs. तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है, एनुअली कंडक्ट करता है. कहाँ होता है? It is conducted at New Delhi and it is a multilateral conference to address challenging issues which are faced by the world. तो it is not just looking at the security issues, but what are the challenging issues the world is facing, and उस पर डायलॉग है, उस पर डिस्कशन होता है. मल्टीपल कंट्रीज एंड देयर हेड्स कम हियर एंड डिस्कस. तो एक इंपॉर्टेंट फोरम है, दैट इज रायसीना डायलॉग. तो ये भी आपको पता चाहिए. One more important dialogue which was in news is Sydney dialogue. You must be knowing Prime Minister Modi addressed this Sydney dialogue. And it is an important dialogue which is organized by Australian Strategic Policy Institute. So Australian Strategic Policy Institute have organized this Sydney dialogue, and what it does is it focuses on new technologies. And what this dialogue focuses on new technologies and how these new technologies can be leveraged by countries for growth and development and solving the problems. So basically use of these new technologies for solving problems. So ये एक important चीज you should know about this Sydney dialogue. And Prime Minister Modi attended this important Sydney dialogue. So what we did was सिटमैक्स एक्सरसाइज देखा, लेकिन शंग्रीला, रायसीना एंड सिडनी डायलॉग भी साइमल्टेनियसली we covered. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए.
Moving forward, you must be knowing that government is proposed to set up an important body, that is National Interlinking of River Authority. This authority is an important authority which would replace अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी. सो प्रेजेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग आफ्टर इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर इज नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी. बट व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेटिंग अप अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन which would look into planning of interlinkages of river, execution हो गया, with respect to state coordination हो गया, with respect to international coordination हो गया. So we are setting up a national body, that is National Interlinkage of River Authority. तो ये एक important body हम set up कर रहे हैं. And it would replace which organization? National Water Development Agency. And जो National Interlinking of River Authority बनेगा, that would look into planning, investigation, financing and implementation of interlinkages of river. Secondly, it would be an autonomous independent body होगा, would focus on coordination with state and countries होगा, and a secretary level officer would be the head of this नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी. तो ये आपको पता चाहिए. साइमल्टेनियसली जब ये वाटर रिलेटेड बॉडी है तो आपको अदर वाटर रिलेटेड बॉडीज भी पता चाहिए विच आर इन न्यूज एंड विच आर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी. तो एक इंपॉर्टेंट बॉडी है विच वाज सेटअप अंडर सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटअप अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. सो बेसिकली इफ समवन एक्सट्रैक्ट टू मच ग्राउंड वाटर और if someone is illegally extracting water for industrial use, the authority to check this is Central Groundwater Authority to regulate and control development and management of groundwater resources in the country. So basically it's an execution authority which gives permission also with respect to extracting groundwaters, which has power to impose fines also. तो ये आपको पता चाहिए, Central Groundwater Authority, it's an executive body. तो जो भी permission लगेगा वो Central Groundwater Authority का लगेगा. Authority is important. So similarly there is one other body which is confusing, that is Central Groundwater Board. तो बोर्ड इज, ये आपको डिफरेंस पता चाहिए. अथॉरिटी इज एन एग्जीक्यूटिंग बॉडी जिससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, जो फाइन इंपोज कर सकती है एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुए. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये आपको पता चाहिए. एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इज टू डेवलप एंड डिसेमिनेट टेक्नोलॉजीज एंड मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज for scientific and sustainable development and management of groundwater. तो basically ये क्या करता है? It makes policies towards sustainable use for sustainable management of groundwater. तो basically ये क्या करता है? It monitors various policies, what new technologies can be implemented for sustainable use and management of groundwater. तो basically what it does, it makes policies पर काम करता है. तो जो बोर्ड है वो policies पर काम करता है, अथॉरिटी है वो execution पर काम करता है. तो इस पर्सपेक्टिव से आपको ये पता चाहिए. To start with, there was one important news with respect to cheetah reintroduction. ये एक important news था where we are transferring 12 cheetahs from African countries to India. And India में कहाँ कर रहे हैं? Kuno National Park में कर रहे हैं. तो ये आपको पता था. And from which countries we are transferring these cheetahs? That is Namibia and South Africa. तो you should know this. India में cheetah is extinct. We are trying to reintroduce this. There are two species of cheetah. That is, first is Asiatic cheetah. Presently they are majorly found in Iran. तो ये आपको पता चाहिए. इसका IUCN status critically endangered है. तो ये भी एक important news है which you should know. And they are smaller and paler compared to African cheetahs. तो ये common difference UPSC might ask you. So Asiatic cheetah are what? They are smaller, paler, IUCN status critically endangered and found in Iran. Compared to African cheetah, उसका IUCN status क्या है? African cheetah का IUCN status vulnerable है. तो you should know कि African cheetah का IUCN status vulnerable है. They are majorly found in African continent and they are bigger and darker compared to Asiatic cheetah. तो ये difference आपको पता चाहिए. So whenever we are talking about any national park, you should know certain basic things about that national park. UPSC might ask question related to it. So now we have studied about Kuno National Park. So certain basic things about Kuno National Park you should also know. First thing is it is based in MP. तो ये आपको पता चाहिए. MP राजस्थान border पर based है. तो on the northern side of Madhya Pradesh this national park is based. Saharia tribes is present in this national park. तो ये एक important चीज है. And also it is a site for Asiatic lion reintroduction project. तो Asiatic lion reintroduction project में भी this is an important site. So after we introduce cheetahs, the next thing is we are going to introduce Asiatic lion. तो ये भी आपको पता चाहिए. Along with this, you should also know that certain animals are found in this national park. These are nilgai, cheetal, sambar and chinkara.
तो ये आपको पता चाहिए। एंड मेजरली फॉरेस्ट किस टाइप का है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस एंड थॉर्नी फॉरेस्ट इस नेशनल पार्क में मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज विद रिस्पेक्ट टू कूनो नेशनल पार्क आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, वी शुड नॉट जस्ट स्टॉप एट कूनो नेशनल पार्क, बट वी शुड गो इनटू द बेसिक एंड स्टैटिक पार्ट, दैट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल पार्क एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल पार्क। So basically national park is one form of protected areas where human activities is not allowed. You are not allowed to graze your animals inside. तो एक important चीज आपको पता चाहिए। Along with it, it follows the strategy of core area and buffer area for the protection of the biodiversity. It follows the principle of core area and buffer area. तो ये strategy follow करती है। It demarcates areas of national park as core area and buffer area for better protection. Side by side, if you want to establish national park, this can be done by central government and state government. But if you want to change the boundaries of any national park, you have to take permission from National Board of Wildlife. National Board of Wildlife का permission लगेगा, and this is headed by Prime Minister. तो ये आपको पता चाहिए। One more information, that is National Board for Wildlife, and this body is headed by Prime Minister. So if you want to change the boundaries, you have to take the permission of National Board of Wildlife. Side by side, once they give permission, the resolution has to be passed by state legislature. तो ये process आपको बारे में पता चाहिए। And the boundaries of national park is fixed and defined compared to wildlife sanctuaries where the boundaries are not fixed and well defined. And you cannot degrade national park to wildlife sanctuary. तो ये एक important चीज है, you cannot downgrade national park to wildlife sanctuary. तो wildlife sanctuary is also a type of protected area. It's also a type of protected area, and it is species specific to where we protect certain type of species. तो ये आपको पता चाहिए। And here also, if you want to change the boundaries, you have to take permission of National Board of Wildlife. There is no defined boundaries, and this can be declared by both central government and state government, as we have seen in national park. And it can be upgraded to national park. It can be upgraded to national park, but national park cannot be downgraded to wildlife sanctuary. तो ये नहीं हो सकता। ये एक important MCQ आ सकता है, and you should know this basic knowledge. Moving forward, there was one important wildlife sanctuary which was recently converted to national park, which was in news. So ये आपको पता चाहिए, that is Dihang Patkai Wildlife Sanctuary. Dihang Patkai Wildlife Sanctuary, where it is based in Assam, and recently it became the 5th national park of Assam. तो ये आपको पता चाहिए। Which are the other four कौन सा है? फर्स्ट इज दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये 4 है। 5वां कौन सा था? दिहांग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। सो दिहांग पतकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज कन्वर्टेड टू नेशनल पार्क। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। रायमोना नेशनल पार्क के बारे में आपको पता चाहिए, इट इज द 6th नेशनल पार्क ऑफ आसाम। Here you find elephants, golden langur, Bengal tiger, clouded leopard मिलता है एंड चीतल भी मिलता है। सो बेसिकली इंडिया में वेरियस टाइप ऑफ डियर मिलते हैं। वन ऑफ देम इज चीतल, उसका IUCN स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, एंड इट इज आल्सो स्टेट एनिमल ऑफ तेलंगाना। Along with this, there are various deers which are found in India which you should know. One of them is बारासिंगा। इसका IUCN स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, मेजरली फाउंड इन MP एंड UP। Then there is सांबर, उसका भी IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। It is a state animal of Odisha. Hog deer, it is endangered. They are found majorly in grasslands और तराई, तो जो भी तराई grasslands है in UP बिहार, उस एरिया में hog deer मिलते हैं। हंगुल के बारे में पता चाहिए आपको, हंगुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जम्मू कश्मीर में मिलता है। एंड डाइचिगम नेशनल पार्क इज वन प्लेस वेयर वी कंजर्व हंगुल डियर। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज संगाई और ब्राउन एंटलर डियर, उसका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। It is only found in Manipur. It is a state animal of Manipur. Kibul Lamjau नेशनल पार्क में ये मिलता है। इसको डांसिंग डियर भी बोलते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ डियर भी आपको पता चाहिए। सो बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कवर्ड करंट एस्पेक्ट एंड लिंक्ड इट टू स्टैटिक एस्पेक्ट। वी स्टार्टेड विद चीता हमने देखा, हमने कूनो नेशनल पार्क देखा। कूनो नेशनल पार्क के बाद हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा। हमने आसाम के 2 नए नेशनल पार्क देख लिए। हमने रायमोना नेशनल पार्क देख लिया, हमने उसमें देखा कि उसमें चीतल मिलता है। एंड साइड बाय साइड हमने सारे डियर्स देख लिए। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव नॉट कवर्ड वन एस्पेक्ट बट वी हैव लिंक्ड इट टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिक सिलेबस आल्सो। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Moving forward, we are not just stopping here. As I told you, Kuno National Park में what we are introducing is we are not just introducing cheetah, but we are also going to introduce what? Lions. तो lions के बारे में जानना जरूरी है। So Asiatic lions are not just introduced in Kuno, but at 6 places under Project Lion. तो ये आपको पता चाहिए। And during 15th August 2020, Prime Minister Modi launched Project Lion, and he said 6 places where we are going to transfer lion from Gir area.
तो ये आपको पता चाहिए विच आर दिस 6 एरियाज जहां हम लायन रीइंट्रोडक्शन करने वाले हैं. दिस 6 एरियाज विच यू शुड नो अंडर प्रोजेक्ट लायन इज माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, जसोर बलराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द गुजरात रीजन. तो ये 6 एरियाज में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मूव लायंस फ्रॉम गिर एरिया टू दिस 6 areas apart from पूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पूनो पालपुर नेशनल पार्क है, उधर तो करने वाले हैं लेकिन उसके अलावा ये 6 एरियाज में कवर करने वाले हैं. तो बेसिकली प्रेजेंटली एशियाटिक लायंस आर बेस्ड ओनली इन गिर एरिया एंड इफ देयर इज सर्टेन डिसीज और एपिडेमिक द होल पॉपुलेशन माइट वाइप अवे. सो उसको ही हम अवॉइड करने के लिए वी आर ट्रांसफरिंग दिस लायंस एट मल्टीपल प्लेसेस. तो ये आपको पता चाहिए. अंडर प्रोजेक्ट लायन यू शुड नो अबाउट प्रोजेक्ट लायन. Project Lion, the main aim of the Project Lion is habitat development, use of technologies for conservation of lions, side by side address issues of diseases which the lions are facing. One of the diseases canine distemper virus जो lions face कर रहे हैं तो उसको address करना, and address human wildlife conflict which is happening because of increased interaction between humans and wildlife. तो ये सारा aim किसका है, Project Lion का है. तो ये आपको पता चाहिए. Project Lion के बारे में जब भी हम देखते हैं तो lion का IUCN status आपको पता चाहिए, that is endangered. तो ये आपको पता चाहिए. These are slightly smaller compared to the African lions. तो ये आपको पता चाहिए. And majorly they are based in गिर protected area. तो गिर protected area में कौन से एरियाज आते हैं? First is गिर नेशनल पार्क, नेक्स्ट इज गिर सेंचुरी, पनिया सेंचुरी एंड मैथिलिया सेंचुरी. तो ये 4 एरिया मिलकर गिर प्रोटेक्टेड एरिया होता है. तो मेजरली प्रेजेंटली एशियाटिक लायंस आर बेस्ड हियर एंड एशियाटिक लायंस आर पार्ट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स. तो ये आपको पता चाहिए. As I said कि recently there was a census which was done in 2020, lion का census हुआ and उसमें what we found is there was 28% increase in the population of lions and this was seen in the numbers 523 थे 2015 में, अब 673 है. तो every 5 years what we have is lion census. तो ये भी एक important information आपको पता चाहिए. तो स्टार्ट विद आज एक हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन. सो मेक श्योर आप एंड तक देखिए, हम उसको स्टैटिक के साथ भी कवर करने वाले हैं. एक इंपॉर्टेंट न्यूज था विद रिस्पेक्ट टू यमुना रिवर में फ्रॉथ फॉर्मेशन. देयर वाज फ्रॉथ फॉर्मेशन इन यमुना रिवर रिसेंटली एंड दिस फ्रॉथ फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. एंड पोल्यूशन में भी कौन से न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये फ्रॉथ फॉर्मेशन हो रहा है ये आपको पता चाहिए. दैट इज फॉस्फेट्स एंड सर्फेक्टेंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि ये फ्रॉथ फॉर्मेशन हो रहा है. अलोंग विद दिस इज आल्सो पुश्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर की वजह से विद ये फ्रॉथ फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है. साइमल्टेनियसली पोल्यूशन फ्रॉम पेपर एंड शुगर इंडस्ट्रीज इन यूपी, दिस इज आल्सो पुशिंग दिस फ्रॉथ फॉर्मेशन. तो एक इंपॉर्टेंट रीजन है. अलोंग विद दिस देयर इज वन अदर इंपॉर्टेंट रीजन, दैट इज टर्बुलेंस क्रिएटेड एट बराज near Okla region is also pushing this froth formation. So basically the froth formation is because of phosphates and surfactants. So ये आपको पता चाहिए which is released directly into the river. Simultaneously pollution from paper industry, sugar industry, decomposition of organic waste and turbulence created by at the branch is the leading cause of foam formation. Another important news with respect to Yamuna river which was few months back लेकिन it's important is there was rise of ammonia in Yamuna river. तो ये आपको पता चाहिए अमोनिया का लेवल यमुना रिवर में बढ़ गया था. The sources for ammonia is ये आपको पता चाहिए फार्मिंग एक्टिविटीज हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, बायोमास बर्निंग हो गया. These were the reasons for rise of ammonia. Secondly, the maximum limit is 0.5 parts per million and यमुना में उसका लेवल उससे ज्यादा हो गया था. तो ये आपको पता चाहिए. And the effect of rising ammonia is eutrophication. So basically eutrophication के बारे में पता चाहिए. Basically eutrophication is what? Enrichment of water by nutrients and salt which causes structural change in the ecosystem. So basically when you deposit nutrients into any water body, it leads to structural change in ecosystem which leads to increased production of algae and aquatic plants, leading to depletion of fish species and general deterioration of water quality. तो ये आपको पता चाहिए. तो बेसिकली यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है, अल्गल ब्लूम होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम होता है, पानी का बीओडी लेवल बढ़ जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ इट द एंटायर एक्वेटिक इकोसिस्टम इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस यूट्रोफिकेशन. तो ये आपको पता चाहिए. तो यूट्रोफिकेशन से क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है. सो बेसिकली अमोनिया से यूट्रोफिकेशन होता है, फॉस्फेट से यूट्रोफिकेशन होता है. देयर इज वन अनदर टर्म व्हिच इज बेसिक एंड इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, दैट इज कल्चरल यूट्रोफिकेशन. कल्चरल यूट्रोफिकेशन, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कल्चरल यूट्रोफिकेशन? दैट इज
कि जो भी यूट्रोफिकेशन ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है दैट इज नोन एज कल्चरल यूट्रोफिकेशन. तो कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज यूट्रोफिकेशन व्हिच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. अदर रीजंस फॉर यूट्रोफिकेशन यू शुड नो, दैट इज excessive use of fertilizer, discharge of wastewater, discharge of industrial waste are few of the important reasons for eutrophication. And as I said, eutrophication से algae and plant level बढ़ जाते हैं, aquatic ecosystem deteriorate होते हैं. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज जब भी हम यमुना रिवर की बात करते हैं, यू शुड नो सर्टेन बेसिक थिंग्स अबाउट यमुना रिवर. दैट इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ यमुना रिवर. As you know, Yamuna River is the major tributary of Ganga, and the origin of Yamuna River is in Yamunotri Glacier near Bandarpooch Peak in Mussoorie Range, which lies in Uttarakhand region. तो ये आपको पता चाहिए. उत्तराखंड में it is based Yamunotri Glacier, वहां से उसका origin होता है, and it passes through various states. कौन से states? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, and finally it merges with Ganga at प्रयागराज in उत्तर प्रदेश. तो ये states भी आपको पता चाहिए. Important dams भी आपको पता चाहिए. लखपत व्यास डैम इन उत्तराखंड एंड तेजावाला बराज डैम इन हरियाणा. तो ये दो इंपॉर्टेंट डैम है. अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना इज आल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, हिंदन एंड गिरी. ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है ऑफ यमुना रिवर. तो ये आपको पता चाहिए. इसमें से सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है यमुना रिवर की? यू हैव टू टेल मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. नेक्स्ट इज व्हाट आर द सिटीज व्हिच आर बेस्ड ऑन यमुना रिवर. दैट इज दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा. तो ये फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज है. और भी सिटीज है लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज, प्रयागराज भी हो गया. तो ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज आपको पता चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, जब भी हम यमुना का पोल्यूशन देख लिया, एयर पोल्यूशन वाज आल्सो इन न्यूज. डेफिनेटली जो न्यूज में होता है उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट यूपीएससी पूछता है. तो न्यूज में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था विद रिस्पेक्ट टू राइजिंग पोल्यूशन ड्यूरिंग दिवाली इन मेजर सिटीज. तो कौन से सिटीज में मेजर पोल्यूशन हुआ ड्यूरिंग दिवाली? दैट वाज दिल्ली, अहमदाबाद एंड मुंबई. तो ये आपको पता चाहिए कि 3 सिटीज में देयर वाज ह्यूज पोल्यूशन ड्यूरिंग दिवाली एंड दिस वाज स्टडीड बाय सफर इनिशिएटिव. तो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सफर इनिशिएटिव? तो ये आपको पता चाहिए. ये न्यूज तो सबको पता है लेकिन आपको सफर के बारे में पता चाहिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सफर? बेसिकली सफर इज व्हाट अ सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च. तो बेसिकली व्हाट सफर डज इज इट फोरकास्ट व्हाट वुड बी द पोल्यूशन इन मेजर सिटीज लुकिंग एट द weather condition. तो ये आपको पता चाहिए. And this initiative is an important initiative of IITM, that is Indian Institute of Tropical Meteorology Pune, and IMD, that is Indian Meteorological Department. And as this both organizations are part of Ministry of Earth Science, this is an important initiative of Ministry of Earth Science. And this forecasting is done based on temperature, rainfall, wind, humidity, UV radiation. तो इनको सबको understand करके what we do is we forecast air pollution in future in major cities through this SAFAR initiative, IITM and IMD. Next is, as I already told you, the objective is to forecast pollution and increase our mitigation efforts toward reducing our pollution levels. If you know कि future में pollution हो रहा है तो आज से हम efforts लेंगे. Second is increase awareness among public with respect to rising pollution levels and what steps they can take. तो एक important चीज आपको पता चाहिए. तो SAFAR is what about forecasting. Moving forward, you should know other terms which are in news with respect to air pollution in Delhi. One of the important terms which was in news in past few months was with respect to Enfuser. This Enfuser is an important initiative of IMD. IMD का initiative है. That full form क्या है Enfuser का? Environment Information Fusion Service. Basically through Enfuser हम क्या कर रहे हैं? High resolution map of cities बना रहे हैं. And through this high resolution maps, what we identify is pollution hotspots. तो कौन से एरिया में सबसे ज्यादा pollution है? Through this mapping हम identify कर रहे हैं. तो दिल्ली में हम ये Enfuser service के through we are able to identify which are the hotspots for air pollution so that we can act on it. Moving forward, one more important initiative जो आपको पता चाहिए, that is Advanced Air Pollution Warning System, which was recently in news में था. तो हमने सिर्फ एयर पोल्यूशन तक नहीं रुके, विच वॉज इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू सफर. हमने सफर भी कवर किया, हमने एन्फ्यूजर कवर किया, हमने एडवांस एयर पोल्यूशन वार्निंग सिस्टम कवर किया, हमने समीर कवर किया, हमने नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कवर किया. तो वी आर नॉट जस्ट स्टॉपिंग एट वन न्यूज बट वी आर लिंकिंग इट टू द स्टैटिक सिलेबस. तो एडवांस एयर पोल्यूशन वार्निंग सिस्टम क्या है? इट इज बीन डेवलप्ड बाय IITM पुणे एंड इट यूजेस डेटा ऑफ लास्ट 15 years ऑफ स्टबल बर्निंग एंड प्रेडिक्ट्स डेटा एंड प्लेस ऑफ नेक्स्ट बर्निंग. तो बेस्ड ऑन डेटा ऑफ लास्ट 15 years we are able to predict कि स्टबल बर्निंग कहां होने वाला है नेक्स्ट टाइम. तो ये आपको पता चाहिए एडवांस एयर क्वालिटी वार्निंग सिस्टम. तो बेस्ड ऑन स्टबल बर्निंग डेटा ऑफ 15 years we are able to predict air pollution and we are able to predict कि कहां एयर पोल्यूशन होने वाला है. And this prediction of
stubble burning is based on two levels, that is PM 2.5 and carbon monoxide. तो ये आपको पता चाहिए. साइमल्टेनियसली जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो आपको नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पता चाहिए. बेसिकली इट इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विच मेजर्स 8 पोल्यूटेंट्स. कौन से PM10, PM 2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया एंड लेड. तो इन सब का हम क्या कर रहे हैं, लेवल्स मॉनिटर कर रहे हैं. एंड बेस्ड ऑन द लेवल्स ऑफ 8 pollutants we classify the pollution level in any city in 6 categories. तो बेसिकली ये pollutant के बेसिस पर हम कोई भी cities में किस टाइप का pollution है 6 categories गवर्नमेंट ने दी है, such as good, satisfactory, moderate, poor, very poor, worst. तो ये 6 categories गवर्नमेंट ने दिए हैं. एंड बेस्ड ऑन दिस 8 pollutants उनके लेवल पर हम क्या करते हैं, cities का जो pollution level है हम कैटेगराइज करते हैं इन सब कैटेगरीज में. साइड बाय साइड हर एक कैटेगरी को एक कलर दिया है. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ensuring one number, one color, one description so that there is easy transmission of information to public. तो अगर किसी सिटी में पोल्यूशन लेवल ऑफ दिस 8 पोल्यूटेंट इज वेरी हाई तो उसका क्या होगा, वेरी पुअर. एंड उसका कलर कौन सा होगा, रेड कलर होगा. तो जब भी रेड कलर होगा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में ऑटोमेटिकली सिटीजंस क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत है. इसी को मोबाइल बेस्ड ऐप समीर ऐप गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, वेयर व्हाट वी आर डूइंग इज थ्रू नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स थ्रू ऐप डिस्प्ले कर रहे हैं. उसका नाम समीर है. जब भी हम ये ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं सच एज IITM हो गया, IMD हो गया, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर एक एग्जीक्यूटिव आर्म है. तो एग्जीक्यूटिव आर्म कौन सा है, दैट इज अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन. अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन ये एक एग्जीक्यूटिव आर्म है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. इट्स अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. एंड इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर कौन से सब ऑर्गेनाइजेशन है, सच एज IMD हो गया, इनकॉइस हो गया, IITM हो गया, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग हो गया. तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आर पार्ट ऑफ ESSO, दैट इज अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन. ये एग्जीक्यूटिव आर्म है, इसके अंडर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं. हेडक्वार्टर IMD का न्यू दिल्ली में है, इनकॉइस का हैदराबाद, IITM पुणे, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में है. तो ये आपको पता चाहिए. फ्यू ऑफ द अदर स्कीम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपको पता चाहिए. वन इंपॉर्टेंट स्कीम विच इज इन न्यूज इज अक्रॉस स्कीम. बेसिकली अक्रॉस स्कीम में क्या कर रहे हैं हम, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस. तो बेसिकली हमने क्या कर लिया, 8 स्कीम्स को, सब स्कीम्स को हमने मर्ज कर लिया इन दिस स्कीम. तो एक इंपॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड रिसेंटली इट वाज इन न्यूज बिकॉज इसको हमने क्या कंटिन्यू किया है फ्रॉम 2021 टू 2026 एंड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय IMD, इनकॉइस, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड IITM. एंड इसके अंडर 8 सब स्कीम्स हैं. तो बेसिकली अक्रॉस स्कीम का मेन एम क्या है, इंप्रूव वेदर, क्लाइमेट, ओशन फोरकास्टिंग एंड सर्विसिंग. तो हम क्या कर रहे हैं, ओशन का, क्लाइमेट का अच्छा फोरकास्टिंग करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेरियस मेजर्स ले रहे हैं इन दिस 8 सब स्कीम्स. सच एज हम डॉपलर रडार एस्टैब्लिश कर रहे हैं, हम अच्छे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, better data analytics कर रहे हैं. तो what ultimate aim of across scheme, the main aim of across scheme is to improve weather, climate and ocean forecasting. Side by side it provides warning for cyclones, storm surge, heat wave and thunderstorm. Next is it also provides agrometeorological services which is important for agriculture. जैसे climate या weather changes होने वाले हैं which might affect agriculture. तो ये भी important news है, information है, ये disseminate करता है under across scheme. तो ये आपको पता चाहिए. Next is disaster management and public weather service भी ये स्कीम के अंडर हम प्रोवाइड कर रहे हैं अक्रॉस स्कीम के अंडर. तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बेटर फोरकास्टिंग एंड प्रोविजन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्विस. तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. नेक्स्ट इज डीप ओशन मिशन. आपको पता चाहिए, अगेन एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च इन 2018. The aim is to explore deep ocean and side by side हमें क्या करना है, deep ocean mining करना है because बहुत important resources such as polymetallic nodules which are important for economy ये deep oceans में है. तो हम क्या कर रहे हैं, deep ocean mining करने वाले हैं. Ocean climate change service भी we are going to get through this deep ocean mission. How climate change is affecting oceans, तो ये भी हम understand करेंगे through deep ocean mission. इसके अंदर प्रेजेंटली 2 प्रोजेक्ट्स को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं. फर्स्ट इज डिसैलिनेशन प्लांट बाय टाइडल एनर्जी एंड सबमर्सिबल व्हीकल हमने डेवलप किया है टू स्टडी डीप ओशन. तो 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हम प्रेजेंटली रन कर रहे हैं अंडर डीप ओशन मिशन. अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस. तो यू शुड नो दिस.
नेक्स्ट इज जब भी हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात करते हैं आपको नेशनल मॉनसून मिशन पता चाहिए, एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दिस नेशनल मॉनसून मिशन इज इंप्लीमेंटेड बाय IMD, IITM एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. And the aim of this mission is to develop a state-of-art dynamic prediction system for monsoon rainfall on different time scales. So for better prediction of monsoons हम क्या कर रहे हैं, ये important mission हमने launch किया है for dynamic prediction of monsoons. तो एक important पता चाहिए. नेक्स्ट इज जब भी हम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा न्यूज में होती है आपको पता चाहिए, दैट इज इनक्वाइज, दैट इज इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999. द हेडक्वार्टर इज एट हैदराबाद. इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड एज आई सेड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर एग्जीक्यूटिव आर्म कौन सा है, ESSO, एंड ESSO के अंडर इनक्वाइज आता है. Few of the important initiatives taken by INCOIS in last few years जो आपको पता चाहिए, that is Indian Tsunami Early Warning System is developed by INCOIS, Coral Bleaching Alert System is developed by INCOIS, and Digital Ocean Initiative which was initiative of Ministry of Earth Science is also implemented by INCOIS. तो ये आपको पता चाहिए, ये न्यूज में था. डिजिटल ओशन के बारे में आपको पता चाहिए बिकॉज इट वाज इन न्यूज रिसेंटली. तो INCOIS एज आई सेड इज बीन इंप्लीमेंटेड बाय INCOIS एंड द मेन एम ऑफ दिस डिजिटल ओशन इज ओशन डेटा मैनेजमेंट. तो व्हाट वी हैव इज ह्यूज ओशन डेटा, and to represent this ocean data in a more informative way and to utilize this data, so what we are doing under this ocean data management is we are trying to organize, represent heterogeneous oceanographic data by adopting rapid advancement in geospatial technology. So through this geospatial technology what we are trying to do is we are trying to represent this oceanographic data. जो भी हमारे पास oceanographic data है हम उसको क्या करेंगे, geospatial technology के थ्रू represent करेंगे, so to get a more accurate information about oceans. तो हम इसके अंदर 3D मॉड्यूल्स बनाएंगे, मैप्स बनाएंगे, सरफेस के मॉडल्स बनाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे so that जब भी हम डीप ओशन मिशन लेके जाएंगे we have proper data. तो ये डिजिटल ओशन एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. To start with, there was one news with respect to Punjab, which is going to begin dolphin census. बहुत important है. And Punjab में which type of dolphin you find is Indus River dolphin. Indus River dolphin. And these Indus River dolphin are also found in Pakistan. बट इंडिया में कहाँ मिलते हैं, पंजाब में मिलते हैं. एंड दीज आर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स एंड आर IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है. देयर आर टू रिवर्स वेयर यू कैन फाइंड इंडस वाटर डॉल्फिन. फर्स्ट इज इंडस रिवर एंड नेक्स्ट इज बियास रिवर. एंड वेयर बियास रिवर मीट्स सतलज, दैट इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलज एंड बियास रिवर, व्हाट यू फाइंड इज हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वी आल्सो हैव हरिके व्हिच इज एन वेटलैंड इन पंजाब एंड दिस इज अ मैन मेड वेटलैंड. तो ये आपको पता चाहिए. तो हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में what you find is Indus water dolphin and हरिके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी and हरिके wetland is at the confluence of Bias and Satluj river. तो ये आपको पता चाहिए. Moving forward, going back to the basics, you should not only know about Indus water dolphin, but आपको Gangetic dolphins को पता चाहिए. Gangetic dolphins are national aquatic animal of India. उनका IUCN status endangered है. They are found in Vikramshila Gangetic sanctuary in Bihar. तो ये भी आपको पता चाहिए. Next, another type of dolphin which is found in India is Irrawaddy dolphins. These are also endangered है, and they are found in Chilka River, Mekong river which is एशियन रीजन में एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वहां भी मिलते हैं. एंड मेजरली इट इज अ ब्रैकिश वाटर में रहती है इरावडी. इंडस वाटर एंड गैंजेटिक डॉल्फिन आर फ्रेश वाटर एंड इरावडी इज अ ब्रैकिश वाटर. तो ये आपको पता चाहिए. As I said कि बियास एंड सतलज मीट टुगेदर एट हरिके, लेकिन आपको बियास का कुछ बेसिक ज्योग्राफी भी पता चाहिए. सो वी आर नॉट लुकिंग एट जस्ट करंट एस्पेक्ट बट वी आर लिंकिंग इट विद द स्टैटिक एस्पेक्ट. जैसे बियास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज यू शुड नो. बियास ओरिजिनेट कहाँ ओरिजिनेट करता है, बियास कुंड नियर रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में इट ओरिजिनेट्स एंड इट मीट्स सतलज एट हरिके. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक इंपॉर्टेंट डैम हमेशा आपको पता चाहिए इन ऑन बियास रिवर, दैट इज पोंग डैम, एंड इट इज कंप्लीटली इन इंडिया. तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि दिस रिवर इज कंप्लीटली इन इंडिया. तो एक इंपॉर्टेंट चीज विद रिस्पेक्ट टू बियास रिवर आपको पता चाहिए. Moving forward, there was another current affairs news with respect to Bias River that Gharial was reintroduced in 2017 in Bias River and they have adopted well in this Bias River. तो ये एक important news recently हिंदू में था. तो वी हैव नॉट कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू जस्ट इंडस वाटर डॉल्फिन, लेकिन हमने बियास का थोड़ा ज्योग्राफी देख लिया, हमने उसका अनदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज देख लिया. लेकिन जब हम घड़ियाल की बात करते हैं, वी कैन नॉट स्टॉप हियर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स व्हिच आर फाउंड इन इंडिया. फर्स्ट यू शुड नो इज अबाउट मगर. मगर इज व्हाट? मगर इज अ इंडियन क्रोकोडाइल और मार्श क्रोकोडाइल बोलते हैं, मेजरली फाउंड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. IUCN स्टेटस वल्नरेबल है एंड मेनली फ्रेश वाटर स्पीशीज है, फाउंड इन लेक्स, रिवर्स एंड मार्शेस. तो ये
ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। नेक्स्ट एज आई सेड कि घड़ियाल एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता चाहिए, and these are fish eating crocodile and native to Indian subcontinent। IUCN स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मगर का वल्नरेबल था। नेक्स्ट इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल वी आर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक सेंचुरीज। उसमें कौन सा है, नेशनल चंबल सेंचुरी है, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोन रिवर सेंचुरी है, रेन फॉरेस्ट बायोम ऑफ महानदी इन साटकोसिया गॉर्ज सेंचुरी इन ओडिशा। तो ये भी हम फोकस कर रहे हैं, तो ये सारी सेंचुरीज पर हम घड़ियाल कंजर्वेशन कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जो थर्ड टाइप ऑफ क्रोकोडाइल इंडिया में मिलता है दैट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लिविंग रेप्टाइल्स एंड इट इज IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न, एंड दे आर फाउंड थ्रू आउट ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ये तीन टाइप ऑफ क्रोकोडाइल आपको पता चाहिए। फर्स्ट इज मगर, दिस इज फ्रेश वाटर, नेक्स्ट इज घड़ियाल एंड थर्ड इज सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर। मगर का IUCN स्टेटस वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड लीस्ट कंसर्न। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, स्टैटिक पार्ट आपको पता चाहिए। तब जब हमने बियास रिवर देखा तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट अदर इंडस वाटर रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इन न्यूज बिकॉज इंडस वाटर ट्रीटी वाज आल्सो इन न्यूज, इंडस परमानेंट कमीशन वाज आल्सो इन न्यूज, जो हम आगे देखने वाले हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आपको सतलज रिवर के भी बारे में पता चाहिए बिकॉज एज आई सेड बियास रिवर मीट सतलज एट हरिके, लेकिन सतलज रिवर का ओरिजिन आपको पता चाहिए, इट इज रकास लेक, तिब्बत में है। तो तिब्बत में इसका ओरिजिन कहाँ है, तिब्बत में है, एंड इट एंटर्स इंडिया। तो इट एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकीला पास, शिपकीला पास। तो ये आपको पता चाहिए। फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलज आपको पता चाहिए, बसपा, स्पीति एंड बियास। एज आई सेड बियास भी एक ट्रिब्यूटरी है, तो ये आपको पता चाहिए। इट एंटर्स हिमाचल थ्रू शिपकीला पास, शिपकीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिपकीला पास। फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑन सतलज आपको पता चाहिए, नाप्ता जकरिया प्रोजेक्ट, नेक्स्ट इज भाखरा नंगल डैम विथ गोविंद सागर रिजर्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है प्रोजेक्ट्स ऑन सतलज। With respect to Satluj River, you should know it forms boundary between India and Pakistan. कौन से एरिया से कौन से एरिया तक it forms boundary? फिरोजपुर टू फाजिल्का। तो ये एरिया में क्या है, it forms boundary between India and Pakistan. Next is it receives Jhelum, Chenab and Ravi river. तो झेलम, चेनाब and Ravi river they deposit their water into Satluj River. तो ये आपको पता चाहिए। To show you through map, as I said, Bias is completely in India. Bias completely India में है, तो ये आपको पता चाहिए। Next is सतलज जो है, इसमें कौन सी रिवर डिपॉजिट कर रही है वाटर, रवि, चेनाब एंड झेलम। एंड फाइनली सतलज, सतलज क्या होता है, सतलज ड्रेन्स इनटू इंडस। तो ये आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू अनदर रिवर दैट इज रवि, इट इज द स्मॉलेस्ट रिवर, इट ओरिजिनेट्स इन कुल्लू हिल, रोहतांग पास, एंड सिउल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रवि। More than enough points to know about Ravi River. Next important river जो हम कवर करने वाले हैं with respect to Chenab, it originates at Baralacha Pass in Himachal Pradesh. Next is Tavi is an important tributary of Chenab. It is also known as Chandrabhaga in Himachal Pradesh and it is the largest tributary of Indus. It is the largest tributary of Indus. तो यहाँ confusion हो सकता है whether Satluj, Jhelum और Chenab is the largest tributary. Chenab is the largest tributary. तो ये आपको पता चाहिए। Few of the important projects on Chenab जो आपको पता चाहिए that is धस्ती हो गया, बगलिहार हो गया, सलाल हो गया एंड रातले रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आर कॉन्स्टेंटली इन न्यूज एंड एज वी मूव फॉरवर्ड जब हम इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे देन यू वुड रियलाइज कि दीज प्रोजेक्ट्स आर आल्सो इन न्यूज एंड यू शुड नो अबाउट वेरियस प्रोजेक्ट्स व्हिच आर इन डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड पाकिस्तान एंड कौन से रिवर पर है। तो रातले एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है विच इज इन न्यूज एंड दिस इज प्रेजेंट ऑन विच रिवर, जो आपको पता चाहिए दैट इज चेनाब रिवर। मूविंग फॉरवर्ड वन अनदर रिवर विच इज कॉन्स्टेंटली न्यूज इज झेलम। ये कहाँ ओरिजिनेट होती है, वर्निक पास इन जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इज फ्यू ऑफ द ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूंछ हो गया, लीडर हो गया, किशन गंगा हो गया, सिंध हो गया, कुनहर हो गया। ये सारे किसके ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम के ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आपको पता चाहिए झेलम के ट्रिब्यूटरीज कौन से हैं, पूंछ हो गया, लाइडर हो गया, किशन गंगा हो गया, सिंध हो गया एंड कुनहर हो गया। वुलर लेक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ झेलम रिवर, तो ये भी आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज इंडस रिवर के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए। बोकारचू ग्लेशियर में ओरिजिनेट होता है नियर मानसरोवर लेक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, झास्कर हो गया, सुरू हो गया, सोन हो गया, झेलम, चेनाब, बियास, रवि, सतलज, लूनी, ये सारे कौन सा है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। झास्कर रिवर मीट्स इंडस एट लेह, तो ये भी आपको पता चाहिए। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आल्सो इन न्यूज। कौन से इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जो आपको पता चाहिए, फर्स्ट इज श्योक, हुंजा, गिलगित, गोमल, झोलो,
खुर्रम एंड कुन्नर। तो ये सारे कौन से हैं? राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंबाइंड ऑल द थिंग्स एट वन प्लेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। टिबेट में इसको क्या बोलते हैं? सिंगकम्बन बोलते हैं। इफ यू फॉलो द कोर्स ऑफ इंडस रिवर इट टेक्स शार्प बेंड साउथवर्ड्स एंड इस बेंड को क्या बोलते हैं? सिंटैक्शियल बेंड बोलते हैं। इफ यू सी इन द इमेज एज इट ओरिजिनेट एट मानसरोवर लेक it moves northward and then it takes southward turn। इसको हम क्या बोलेंगे? इस सिंटैक्शियल बेंड बोलते हैं। तो ये आपको पता चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि बियास इज कंप्लीटली इन इंडिया। सतलज क्या होता है? सतलज इज इट ड्रेन्स रवि, चेनाब, झेलम, उसके अंदर ड्रेन होते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी? चेनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। तो ये आपको पता चाहिए। Moving forward, as India and Pakistan were in constant dispute with respect to use of Indus water and the water of its tributaries, to solve this problem, India and Pakistan signed Indus Water Treaty in 1960 with the help of World Bank. In this treaty, it was decided that 3 eastern rivers, कौन से Satluj, Bias and Ravi, would be given to India and India could completely use its water, and the western rivers Chenab, Jhelum and Indus, they were given to Pakistan. As I told you, this treaty was brokered by World Bank. The India got control over Bias, Satluj and Ravi. Pakistan got control over Indus, Chenab and Jhelum. But there were certain specific rights given to India with respect to western rivers. तो कौन से specific rights Indus Water Treaty में हमें मिले हैं? So we can use this Indus water जो वेस्टर्न रिवर्स है फॉर स्पेसिफिक डोमेस्टिक यूज, फॉर नॉन कंजम्पटिव यूज। नॉन कंजम्पटिव यूज में कौन सा आता है? फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स पर हम कर सकते हैं इसका, इन रिवर्स का यूज हम कर सकते हैं। सेकेंडली फिशिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, हम टूरिज्म के लिए यूज कर सकते हैं ये रिवर्स। सेकेंडली स्पेसिफिक एग्रीकल्चर यूज फॉर लिमिटेड इरिगेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नॉन कंजम्पटिव होना चाहिए। वी कैन नॉट कंज्यूम दिस वाटर कंप्लीटली इरिगेशन के लिए एंड कंप्लीट स्टोरेज नहीं कर सकते। तो ये आपको पता चाहिए। एंड इस वजह से which type of projects we have on this western rivers, run of the river projects where we do not store water। जो भी river flow के through hydroelectricity तैयार हो रही है, we are only having those projects। तो ये आपको पता चाहिए। Moving forward, आपको परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में पता चाहिए। इट इज अ bilateral commission comprising commissioners of India and Pakistan to implement and to achieve the goal of this Indus Water Treaty। तो ये परमानेंट इंडस कमीशन हमने सेटअप किया। This commission meets annually. Recently in 2021, 116th meeting happened after a gap of two and a half years. India did not attend or did not conduct the previous meeting, which has to be conducted annually because of the Pathankot attack and various terrorist attacks. India said it would not conduct meeting and it would not attend meeting of परमानेंट इंडस कमीशन। तो रिसेंटली 2.5 years के बाद ये मीटिंग हुआ था। एंड द मेन एम ऑफ दिस कमीशन इज टू इंप्लीमेंट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑन इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आपको पता चाहिए। ईस्टर्न रिवर्स जो इंडिया के अंडर है, उसमें भाखरा डैम ऑन सतलज रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोंग एंड पैंडोर डैम ऑन बियास रिवर एंड थीन डैम ऑन रवि रिवर आर इन न्यूज एंड आर इंपॉर्टेंट। जो वेस्टर्न रिवर्स पर हमारे प्रोजेक्ट्स हैं विच आर इन कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान एंड पाकिस्तान हैव रेज्ड कंसर्न। कौन से झेलम रिवर पर कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, नेक्स्ट इज उरी डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, ये दोनों झेलम रिवर पर है। चेनाब रिवर पर जो प्रोजेक्ट्स है विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट एंड वेयर पाकिस्तान हैव रेज्ड कंसर्न, कौन सा है? सलाल डैम हो गया, पकुल डैम हो गया एंड लोअर कलानी डैम हो गया। ये सारे प्रोजेक्ट्स आर कांस्टेंट इन न्यूज। एंड जो पकुल डैम है इट इज ऑन मुरुसुदर रिवर, तो विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। तो ये आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर वेस्टर्न रिवर्स पर वी कैन हैव प्रोजेक्ट्स फॉर नॉन कंजम्पटिव यूज। तो झेलम रिवर पर हमारा प्रोजेक्ट कौन सा है विच यू शुड नो इज किशनगंगा प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, उरी डैम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स। Both of the projects are in news with respect to Pakistan raising concern। चेनाब रिवर पर जो प्रोजेक्ट्स है जो आपको पता चाहिए, दैट इज सलाल प्रोजेक्ट, रतले प्रोजेक्ट, पकुल डैम एंड लोअर कलानी प्रोजेक्ट। ये सारे किस पर है? चेनाब रिवर पर है एंड कॉन्स्टेंटली न्यूज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड जो पकुल डैम है विच इज इन रिसेंटली न्यूज, मुरसुदर रिवर है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब रिवर। इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड दिस डैम ऑन दिस रिवर, तो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सॉरी टू पॉज यू इन बिटवीन, बट मेक श्योर यू पॉज दिस वीडियो एंड subscribe to the channel because 80% of you are not subscribing. I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers. Thank you. To start with, one important news was with respect to at the global level what we have done is we have eradicated use of lead in the petrols. So basically lead was added to the petrol to increase its anti-knocking properties and also to increase its octane boosting.
तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए. एंड एट द ग्लोबल लेवल व्हाट वी हैव डन इज वी हैव इरेडिकेटेड एडिंग लिड टू द पेट्रोल एंड दिस वाज रिपोर्टेड बाय UNEP. तो ये आपको पता चाहिए. एंड अल्जीरिया इज द लास्ट कंट्री टू बैन यूज ऑफ लिड इन द पेट्रोल. सो बेसिकली tetraethyl lid was used in petrol as for anti-knocking and for octane boosting, and India had already banned use of lead in petrol in 2000, but recently what has happened at the global level, we have eradicated. So what is the issue with leaded petrol? So what happens is once you use leaded petrol, so the lead is released in the environment and it causes damage to the environment, simultaneously affects multiple body systems and body organs. It is very harmful to the young children. Side by side, it attacks brain and central nervous system. So basically what it causes damage to various organs and specifically affecting the nervous system and brain. So basically जो हम lead petrol में use करते थे, it is released in the environment and it is absorbed by the body and it affects environment and her human body also. Apart from its use in petrol as an anti-knocking and octane boosting, there are other sources of lead which you should know, such as common जो आपको पता चाहिए, जैसे ज्वेलरी हो गया, टॉयज हो गया, कॉस्मेटिक्स में होता है, पेंट्स में होता है, सोल्डर्स, पिगमेंट्स, ग्लासवेयर में you find what you find is lead. ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी यू फाइंड लेड, देन एम्यूनिशन में भी व्हाट यू फाइंड इज लेड. तो ये बहुत सारे सोर्सेस ऑफ लेड है विच यू शुड नो. गोइंग टू द बेसिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉकिंग? तो नॉकिंग क्या होता है? इट इज अ शार्प मेटल पिंगिंग नॉइज बिकॉज ऑफ अनइवन कंबशन. तो अनइवन कंबशन की वजह से क्या है, इंजन में शार्प मेटल नॉइज होता है. एंड टू रिड्यूस दिस अनइवन कंबशन व्हाट वी ऐड इज टेट्राइथिल लिड and this leads to anti knocking. तो बेसिकली नॉकिंग क्या होता है कि जो इंजन में खराश जैसी नॉइज आती है बिकॉज ऑफ अनइवन कंबशन, दैट इज बीन रिमूव्ड बाय एडिंग लेड. तो ये एंटी नॉकिंग हो गया. सेकेंडली, लेड ऑल्सो इंक्रीजेस ऑक्टेन नंबर. ऑक्टेन नंबर मतलब क्या? द इंजन कैन विथस्टैंड कंप्रेशन विदाउट डिटोनेशन. द फ्यूल कैन विथस्टैंड हाई compression without detonation. ये property is been supported by adding lead. तो ये आपको पता चाहिए. High octane number means the fuel burns in a better way. तो basically to increase the octane number, what we add is fuel. So octane number means what? The fuel can withstand high compression without detonation. इसको हम क्या बोलते हैं? Octane number बोलते हैं. तो knocking, anti-knocking and octane number आपको पता चाहिए. Along with this, as I said कि lead is very harmful. There was a report which was published by UNICEF. बहुत important report था which was in news, जो आपको पता चाहिए. 1 in every 3 child is poisoned by lead. You should also know that WHO has joined with UNEP to form a global alliance to eliminate lead paint. तो lead paint को भी eliminate करने के लिए there has been an alliance between WHO and UNEP. Apart from sources which I have already told you, recycling of lead acid batteries is also one of the reasons for lead release in the environment and its poisoning. Next is open air furnaces and smelting are the other factors contributing to the lead poisoning. तो ये भी आपको पता चाहिए. Moving forward, as we have seen that UNICEF report has said 1/3 of the children are poisoned by lead paint. We need to go into the depth and we need to understand basic about UNICEF के बारे में जानना बहुत जरूरी है. Basically, UNICEF means what? United Nations Children's Fund. It was established in 1946. Secondly, it advocates for protection of children's rights and help meet basic needs and expand their opportunities. Its headquarters is in New York City in US. Few of the important reports which is published by UNICEF आपको पता चाहिए. A Future of World Child, ये आपको report पता चाहिए. It is published by UNICEF and Lancet Journal. Apart from this, State of World Children report is also published by UNICEF. And this State of World Children report said 1 in 7 children in India between 15 to 24 are feeling depressed and around 46,000 adolescents die by suicide every year. तो ये एक important data था with respect to mental health which was published in State of World Children report which is published by UNICEF. Moving forward, as I already told you that lead leads to neural damage, brain damage and affects various organs. Few of the other metals which causes damage to our body, तो जो आपको पता चाहिए, that is cadmium causes itai disease, lead as I told you causes anemia and neural diseases, mercury causes Minamata disease, nitrate causes blue baby syndrome, arsenic causes blackfoot disease, asbestos causes asbestosis, and the fine particle of sands, if they go into lungs it causes silicosis. So these two diseases are related to lungs. तो ये अभी आपको पता चाहिए. Yokachi asthma is important because burning of petrol and crude oil releases SO2 and it leads to chronic lung disease or chronic pulmonary disease which is been named as Yokachi asthma. तो ये आपको पता चाहिए.
Moving forward, you should also know about dental fluorosis, which is caused by continuous exposure of high concentration of fluoride during teeth development. Secondly, skeletal fluorosis is developed by disturbance of calcium metabolism in the formation of bones of the body. So basically, these two diseases are caused by excessive exposure to फ्लोराइड्स के वजह से होता है, and it leads to softening and weakening of bones resulting in deformities leading to crippling. तो ये आपको पता चाहिए. Recently, Central Mechanical Research Institute developed a technique to remove excess fluoride from the water, and it used three techniques. First is oxidation, gravity settling, and chemoabsorption to reduce excess of fluorides from the water. तो ये 3 techniques आपको पता चाहिए. As we have already seen that UNEP had said that the leaded petrol had been completely eradicated, you should know certain basic things about UNEP also. That is a static part. So UNEP is what? United Nations Environment Program, and it was established in 1972. So 1972 में क्या हुआ था? Stockholm Conference हुआ था, and at the end of the Stockholm Conference, what we decided is we decided to form an important organization, that is UNEP. Its headquarters is in Nairobi, Kenya, and UNEP's stated mission is to offer leadership and promote partnership in caring for the environment through informing, inspiring, and enabling countries and people to enhance their quality of life without compromising future generation. So basically, to improve our environment, to improve our quality of life, and ensuring sustainable development without compromising what? Future generation. तो एक important organization है, which is already in news. The date on which UNEP was formed is celebrated as what? World Environment Day. In future lectures, we'll be looking at that topic in a more comprehensive way. Moving forward, what are the functions of UNEP? So basically, it sets global environment agenda, promotes sustainable development within United Nations system, and serve as an authoritative advocate for global environment protection. Few of the important reports which has been published by UNEP always in news is Emission Gap Report, Global Environment Outlook, Frontier Report, Invest into Healthy Planet, Global Climate Litigation Report, Rise in Environmental Crime. This report is published in association with Interpol. Next is Food Waste Index Report, Adaptation Gap Report, Inclusive Wealth Report, Indian Ocean Experiment, Ocean Deoxygenation Report. Yes, few of the important reports which are being published by UNEP. Major campaign is World Environment Day. As I already told you, it's been celebrated in association with UNEP, and one country is the host country for every year, and celebrated on the day of occasion of establishment of UNEP. Wild for Life is also an important campaign by UNEP. Recently, there was one report which was published by WWF and UNEP, that was Human Animal Wildlife Coexistence. एक important report था, and it said almost 75% of cat population has been affected by human wildlife conflict. Secondly, 500 elephants died between 2014 and 2015 because of human animal conflict. तो ये आपको पता चाहिए. One important award which is given by UNEP, that is Champion of Earth Award, which has been given by UNEP since 2005. It recognizes outstanding individuals and organizations for the public and private sector who are working towards for conservation of our earth. It awards every year to individuals and organizations who are working towards sustainable development. Today we are going to take important topic which is in news and important from prelims perspective. That is with respect to Armed Force Special Power Act. So under this act, armed forces have been given special rights to kill someone who is in countervention with respect to law, can arrest and search someone without warrant. तो ये special powers दिए हैं, and these powers are restricted to disturbed area. So basically, governor या central government can declare any area as disturbed area, and in this disturbed area, the armed forces would have special rights. तो ये आपको पता चाहिए. And the main aim of declaring any area as disturbed area is to maintain public order. तो बहुत important है. And the area is declared disturbed by notification under Section 3 of Armed Force Special Protection Act. तो ये आपको पता चाहिए. As I already told you, central government and governor and administrator of union territory can declare whole or a part of the state as a disturbed area. सारा state या part of it can be declared as disturbed state. तो ये आपको पता चाहिए. And I already told you the armed forces have special rights, and if there is to be any inquiry, it has to be through permission of central government. तो ये आपको पता चाहिए. They have special power. They can arrest, they can search without warrant. तो ये आपको पता चाहिए. And in any area, if the central government or state government has applied
AFSPA Act and have declared it as a disturbed area, it has to be reviewed every 6 months. तो ये part MCQ में आ सकता है. It has to be reviewed every 6 months. तो recently Nagaland में the Armed Force Special Protection Act was extended for 6 more months and ये आपको पता चाहिए MCQ might come from this area. Secondly, कौन से एरिया में presently AFSPA है आपको पता चाहिए. नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वेराज आसाम एंड मणिपुर में किसने लगाया है, स्टेट गवर्नर ने लगाया है, गवर्नर ने लगाया है. तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए. अर्लियर त्रिपुरा आसाम में भी we had ASPA but it was revoked, तो ये आपको पता चाहिए. And who all are protected, ये भी MCQ आ सकता है कि who all are protected under Armed Force Special Protection Act, तो ये आपको पता चाहिए. 3 armed forces, that is Army, Navy, Air Force and CRPF and BSF, तो ये protected है under ASPA. पुलिस इज नॉट प्रोटेक्टेड, पुलिस इज नॉट प्रोटेक्टेड, तो ये आपको पता चाहिए. MCQ यहां से आएगा एंड यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. अनदर इंपॉर्टेंट चीज, 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज आपको पता चाहिए हु हैड सेड कि द आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी रिपील्ड. दैट वाज जीवन रेड्डी कमिटी. MCQ आ सकता है. दे हैड सेड कि द नेसेसरी प्रोविजन शुड बी पुट अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967. सेकंड ARC हैज सजेस्टेड दैट Armed Force Special Protection Act should be repealed because it gives excessive power to the armed forces and it is leading to human rights violation. तो ये आपको पता चाहिए. And it is against the principle of natural justice. तो ये आपको पता चाहिए. Moving forward, there was one recent change with respect to coal stocking norms by Central Electricity Authority. The new norm says the pithead thermal stations which are close to the coal mine, they have to keep a reserve of 17 days, whereas those who are non-pithead thermal stations which are more than 1500 kilometers away from the coal field, they have to keep a reserve of 26 days. Recently, you must have also read there was shortage of coal around thermal power plants. To ensure that there is sufficient reserve in thermal power plants, these revised norms have been established. As we have discussed, जो pithead stations है उनको 17 days and जो non-pithead है उनको 26 days का reserve रखना है. But what is one day reserve? So how do we calculate one day reserve? So basically one day reserve is 85% of plant load factor. Plant load factor is if the plant load factor is 100%, that जो उसका capacity, if it is generating 100 megawatts and उसका capacity 100 megawatts का ही है, तो that is 100% plant load factor. If it is generating 60 megawatts and उसका capacity 100 का है, but because of shortage क्या हो रहा है, 60 तैयार कर रहा है, तो the plant load factor is 60. तो previous क्या था कि जो reserve was calculated based on 55% of plant load factor, but now the one day capacity is based on 85% of plant load factor. तो ये आपको पता चाहिए. तो plant load factor is actual production upon maximum production. तो ये आपको पता चाहिए. Next is Central Electricity Authority. आपको पता चाहिए it was established under Electricity Act. इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश हुआ, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंपॉर्टेंट अथॉरिटी इज टू फॉर्मुलेट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान फॉर 5 years. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अथॉरिटी इज टू फॉर्मुलेट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान एवरी 5 years फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स. तो ये आपको पता चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, यू मस्ट बी नोइंग देयर वाज शॉर्टेज ऑफ कोल एंड यू शुड नो द रीजन फॉर शॉर्टेज ऑफ कोल. फर्स्ट वाज एक्सेस ऑफ रेनफॉल व्हिच अफेक्टेड द कोल फील्ड्स एंड कोल मूवमेंट्स. सेकंड इज हाई प्राइस इन द इंटरनेशनल मार्केट वाज वन ऑफ द रीजन. नेक्स्ट इज इंक्रीज पावर डिमांड पोस्ट रिकवरी ऑफ इकोनॉमी पोस्ट कोविड. तो क्या हुआ था, इंक्रीज डिमांड हो गया था, दैट वाज आल्सो रीजन फॉर हाई प्राइस एंड लोअर सप्लाई. एंड लास्ट वाज स्लोअर इंपोर्ट्स वेयर फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर reduced supply or shortage of coal in India. तो ये आपको सारे reasons पता चाहिए from mains perspective. Next is NCERT में कुछ important terms दिए हैं which you should know and which are related to coal. That is, coal is also known as burnt sunshine. पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं. ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं, बैम्बू को बोलते हैं. मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, अहमदाबाद. मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका है. सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया है एंड सिलिकॉन प्लेटू बैंगलोर है. एनसीईआरटी में ये दिया था, बट ये भी सारी चीजें एनसीईआरटी में है विच यू शुड नो. मूविंग फॉरवर्ड, कोल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल. इंडिया में कितना इंपोर्ट होता है, 215 मिलियन मेट्रिक टन्स इंडिया ने इंपोर्ट किया था लास्ट ईयर. एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना था, 718 मिलियन मेट्रिक टन्स. तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, ये आपको पता चाहिए. Moving forward with respect to distribution of coal fields, you should know there are 2 types of coal fields in India. First is Gondwana type of coal fields which are around 98%, and this coal is formed 250 million years ago. And there is tertiary gold fields which is
अराउंड 2% एंड दे हैव फॉर्म 15 to 60 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये आपको पता चाहिए। तो गोंडवाना मेजर टाइप ऑफ कोल फील्ड्स इंडिया में मिलते हैं। एंड सेकंड इज टर्शियरी टाइप। टर्शियरी टाइप कहां मिलता है? तो ये आपको पता चाहिए आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में जो कोल है, कोल फील्ड्स है, दीज आर मेजरली टर्शियरी फील्ड। एंड लिग्नाइट जितने भी फील्ड्स है, लिग्नाइट a type of coal which is also which we are going to discuss. lignite जो भी tertiary type of coal है उसके fields कहाँ है? तमिलनाडु, राजस्थान एंड गुजरात में है। दिस इज ऑल्सो टर्शियरी टाइप। रेस्ट एवरीथिंग छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जितने भी कोल फील्ड्स है, दीज आर गोंडवाना टाइप ऑफ कोल फील्ड्स विच आर ओल्ड कोल फील्ड्स। यहां पर हायर क्वालिटी ऑफ कोल मिलता है कंपेयर टू टर्शियरी फील्ड। तो ये आपको पता चाहिए। एंड लिग्नाइट जो एक टाइप ऑफ कोल है, दैट इज अ लोअर ग्रेड ऑफ कोल, तो आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, कोल हैज बीन क्लासिफाइड अंडर वेरियस कैटेगरीज एंड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ oxygen, carbon and hydrogen. Based on the quantity of all these three important elements, we classify coal into various categories. तो सबसे important क्या है? Anthracite है, which is found only in Jammu Kashmir in India, which is highly efficient and which produces more energy. इसमें क्या है? कार्बन कंटेंट इज अराउंड 80 to 95%. नेक्स्ट इज बिटुमिनस, जो आपको पता चाहिए, विच इज मेजरली फाउंड इन गोंडवाना टाइप। इसमें कार्बन कंटेंट इज बिटवीन 60 to 80%। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मिलता है। सब बिटुमिनस भी जिसमें कार्बन कंटेंट 60 to 40% है। एंड लास्ट इज लिग्नाइट जिसमें 40 to 45% है। इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। इसमें हाई मॉइस्चर होता है, लेस कार्बन होता है। नवेली इन तमिलनाडु, राजस्थान, लखीमपुर इन असम, यहां ये लिग्नाइट मिलता है। तो ये आपको पता चाहिए। तो ये सारी चीजें विद रिस्पेक्ट टू कोल बेसिक चीजें हैं, एनसीईआरटी बेस्ड चीजें हैं विच यू शुड नो विद रिस्पेक्ट टू कोल। मूविंग फॉरवर्ड, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड उससे रिलेटेड कोल फील्ड्स आपको पता चाहिए। झारखंड में अलोंग 24 नॉर्थ लैटिट्यूड सारे कोल फील्ड्स है। बोकारो हो गया, झारिया हो गया, गिरदी हो गया, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स है जो आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोरबा विच इज अलोंग वैली ऑफ हसदो। हसदो एक इंपॉर्टेंट रिवर है विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, आपको पता चाहिए। तो वहां कोरबा है, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कोल फील्ड। चिरमिरी, झोलिया, झिलमिल एंड सोनहट फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट कोल माइंस है। तो स्टेट एंड उससे रिलेटेड कोल माइंस आ सकता है। नेक्स्ट इज उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा है? रामघर, हिमगिर कोल फील्ड हो गया, तालचेर हो गया, इब रिवर कोल फील्ड हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट आपको पता चाहिए, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड। महाराष्ट्र में वर्धा वैली, कामटी एंड वुन फील्ड आपको पता चाहिए। तो इस फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स विद रिस्पेक्ट टू ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट जब भी हम थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं तो यू शुड नो अबाउट फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इट इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट रिमूव्स SO2 फ्रॉम एग्जॉस्ट। जो SO2 पोल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ थर्मल पावर प्लांट, उसको रिमूव करने के लिए व्हाट वी हैव इज फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो ये आपको पता चाहिए। इट इन्वॉल्व्स वेट स्क्रबिंग एंड ड्राई स्क्रबिंग टू रिमूव SO2। तो एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू थर्मल प्लांट्स टू रिड्यूस SO2 पोल्यूशन। तो ये आपको पता चाहिए। Moving forward, एक important topic न्यूज में था which you should know, that is green energy corridor which government of India is setting up in few states. Secondly, through this green energy corridor हम क्या कर रहे हैं? We are trying to establish evacuation infrastructure for renewable energy side by side, ensuring that this evacuated energy, renewable energy is integrated into our main grid. तो हम evacuation and grid integration कर रहे हैं through this green energy corridor, and the aim is to evacuate 20 gigawatts of renewable energy. The project is from 2021 to 25. तो ये आपको पता चाहिए। And it is in line with our target. कितना टारगेट है हमारा renewable energy का? Under revised INDC is 450 gigawatts by 2030. तो ये आपको पता चाहिए। Next is this project is implemented in 7 states. कौन से 7 states है आपको पता चाहिए? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु एंड यूपी। इन स्टेट्स में हम क्या करेंगे? इंट्रा स्टेट इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे एंड ग्रिड इंटीग्रेशन करेंगे। इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? ट्रांसमिशन लाइन सेटअप करेंगे, ट्रांसफार्मर सेटअप करेंगे। जो भी एनर्जी तैयार हो रही है एट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, वी वुड टेक दिस एनर्जी इनटू मेन ग्रिड। इसको हम क्या बोलते हैं? इवैक्यूएशन एंड इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये आपको पता चाहिए। जब भी हम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करते हैं तो आपको ग्रीन कॉरिडोर भी पता चाहिए। What do you understand by green corridor? These are special routes that is cleared for ambulance carrying harvested organs. जो भी हमारे harvested organs है organ transplantation के लिए, if you want to move
from one city to other city, from one hospital to other hospital. तो क्या है, temporarily what we do is we evacuate the whole traffic and a special route is created so that the vehicle can move at a faster speed. इसको भी हम green corridor बोलते हैं. तो green energy corridor and green corridor confuse मत होना, you should know this. Next is one important organization with respect to organ transplantation which is in news, हमेशा news में है, that is National Organ and Tissue Transplantation Organization. बहुत important organization है and it is under Director General of Health Services which is based in New Delhi. तो उसके अंडर है. Secondly, this organization has two subsections. First is National Human Organ Tissue Removal and Storage Network and second is National Biometric Center. तो ये दो important sub unit हैं under National Organ and Tissue Transplantation Organization which is based in New Delhi. The main aim of this organization is to create awareness about organ donation, maintain registry of patients and donors which are eligible for organ transplantation. Next is lay down policy guidelines and protocols with respect to organ transplantation, monitor transplantation activities. तो ये सारा important activities is done by this National Organ and Tissue Transplantation Organization. ये आपको पता चाहिए. Next is difference between organ and tissue आपको पता चाहिए. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, स्टैटिक पर्सपेक्टिव से, बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है. ऑर्गन क्या है? सो व्हाट वी हैव इज वी हैव आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी होती है. ह्यूमन बॉडी में व्हाट वी हैव इज डिफरेंट ऑर्गन्स. डिफरेंट ऑर्गन्स है. हमारे ऑर्गन्स क्या है? लिवर इज एन ऑर्गन, हमारा हार्ट एक ऑर्गन है, हमारे किडनीज एक ऑर्गन्स है. तो ये ऑर्गन्स है. व्हाट दिस ऑर्गन डू इज दे डू अ स्पेसिफिक फंक्शन. ऑर्गन्स में व्हाट वी हैव इज टिश्यू. ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन. तो हार्ट में क्या है? देयर इज वाल्व्स है, मसल है. मसल एक टाइप ऑफ टिश्यू है, हार्ट वाल्व एक टाइप ऑफ टिश्यू है. डिफरेंट टिश्यू मेक्स ऑर्गन. तो ये आपको पता चाहिए. एंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स. तो ये आपको पता चाहिए. तो ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म्स अ स्पेसिफिक ह्यूमन बॉडी. तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए. बेसिकली व्हाट ऑर्गन डज इज इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. जैसे किडनी का फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन. हार्ट का फंक्शन है पंपिंग ऑफ ब्लड. ब्रेन का फंक्शन क्या है? रेगुलेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज. सिमिलरली व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू टिश्यू इज व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन. डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज आपको पता चाहिए. कॉर्निया जो आइस में क्या है? जो अपर लेयर है, जो जिसका हम डोनेशन करते हैं, दैट इज एन टिश्यू. बोन is a tissue, skin is a tissue, heart valves, not heart valves is a tissue, vessels, nerves, tendon, ये सब क्या है? टिश्यू है. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज जब भी हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो रिसेंटली देयर वाज वन स्कीम आपको पता चाहिए, दैट इज ग्रीन टर्म अहेड मार्केट. सो अंडर दिस इनिशिएटिव दैट इज ग्रीन टर्म मार्केट अहेड, वी आर प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेटिव. व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इज एन ऑल्टरनेटिव मॉडल फॉर सेलिंग ऑफ power by renewable developers in the open market without getting into long term agreements. So हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? जो भी renewable energy तैयार हो रहा है, the renewable energy producer can form long term power purchasing agreements or they can sell through short term power agreements. तो क्या है? तो we are giving them alternative model through this important initiative that is green term ahead market. So basically what we are doing is we are giving them an alternate market to sell their energy produced through short contracts, through weekly contracts, through daily contracts and not fall into long term agreements. तो वो long term agreements भी power purchasing agreements भी sign कर सकते हैं, but if they think that price would rise they can go for short term agreements and short term contracts. तो एक important initiative green term ahead market आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज जब भी हम रिन्यूएबल एनर्जी का सेल एंड परचेज बात करते हैं तो यू शुड नो अबाउट रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन. दीज वर इंस्टीट्यूटेड इन 2011. सो बेसिकली इट्स अ मैकेनिज्म by which the obligated entities are obliged to purchase certain percentage of electricity from renewable energy source as a percentage of total consumption of electricity. So basically if DISCOMs are purchasing 100 units of energy, 100 units of energy from various sources, they have an obligation कि वो 100 में से 10 should be from renewable energy. तो ये आपको पता चाहिए. And renewable energy में भी there should be a percentage of solar energy and non-solar energy. तो क्या होगा? So through this purchase obligation, what we are doing is we are promoting renewable energy. So every mass consumer of electricity, जैसे क्या हो गया? DISCOMs हो गया, open access कंज्यूमर्स हो गया, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स हो गया, इनको क्या हो गया? इनको कंपलसरी है कि उनको पार्ट ऑफ इट शुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन इज ऑन डिस्कॉम्स, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स, तो उन पर है. तो ये आपको पता चाहिए. So if he is not able to meet his purchase obligation, so imagine if a DISCOM has a
obligation of 10 units of energy which he has to procure from renewable energy. If he is not able to do that, what he should have is, at least he should have renewable energy certificates. So one renewable energy certificate is 1 megawatt of electricity generated from a renewable energy source. So basically through renewable energy certificates, what we are trying to do is, agar kisi discom ne, if he is not able to fulfill, what he would do is he would go to the electricity exchange and buy these renewable energy certificates and ensure that he meets his obligation. Instead of buying renewable energy from renewable energy producer, he can buy renewable energy certificates. तो ये आपको पता चाहिए. And these renewable energy certificates are traded on two power exchanges, that is India Energy Exchange and Power Exchange of India. तो ये आपको पता चाहिए. So basically आपका obligation fulfill करने के लिए either you buy from renewable energy producers or you buy these certificates, जो भी आपका obligation है उसको complete करने के लिए. And these certificates are traded and इसका maximum and minimum price is decided by Central Electricity Regulatory Commission. तो ये आपको पता चाहिए. And the Central Regulatory Electricity Commission, उसके बारे में पता चाहिए, it's a statutory body, it's a quasi judicial body, आपको पता चाहिए. It is a regulator of power sector, major regulator of power sector, which promotes competition, efficiency and economy in bulk market. It also focuses on improvement of quality of supply and it also promotes investment. तो ये सारे important चीजें with respect to Central Electricity Regulatory Commission आपको पता चाहिए. Next is, as I told you, there are two exchanges on which renewable energy certificates can be traded. One of it is India Energy Exchange. It is the first and largest energy exchange in India, providing nationwide automatic trading platform for physical delivery of electricity, renewable energy certificates and energy saving certificates. So ये आपको पता चाहिए. And India Energy Exchange is regulated by Central Electricity Regulatory Commission, which we have already looked into. तो कुछ important चीजें what we have learned in today's session are very important from prelims perspective, looking at both static and dynamic part. चलेगा. To start with, I want to tell you कि budget as a term is not being explicitly mentioned in our constitution, but एक important statement जो use किया गया है in article 112. तो 112 बहुत important है. It says budget का actual constitutional name क्या है? Annual financial statement. So budget is basically an annual financial statement of all the revenues and expenditure which government is planning to do in next 1 year. So basically it is an annual financial statement. So if you consider budget is not related to just article 112. As we move forward, I would tell you two more articles which are related to budget and which are important. So what usually people are doing is they are just focusing on one article 112, लेकिन इतना article जानना important नहीं है. But there are two articles जो हम आगे देखने वाले हैं which are important from budget perspective. So basically it is a estimate. It is a estimate of revenue and revenue receipts and expenditure. So basically it is a statement कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना रुपया आएगा, rupees which India is going to get with respect to central government, and what is the expenditure it is planning to do in next 1 year. So basically all the revenues and the expenditure which government is planning to take over in next 1 year is mentioned in this important budget. And this budget is prepared by, ये आपको पता चाहिए, MCQ might come from here. It is prepared by budget division of Department of Economic Affairs, and this Department of Economic Affairs is under Ministry of Finance. So it is prepared by budget division of Department of Economic Affairs. Clear till now? तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी, आर्टिकल 112 एंड इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड सेकेंडली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में बजट डिवीजन प्रिपेयर करता है. साइमल्टेनियसली यू शुड नो इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड यू शुड नो थिंग्स रिलेटेड टू इट. तो again economic survey is prepared by Department of Economic Affairs under the guidance of Chief Economic Advisor. Under the guidance किसका? Chief Economic Advisor के guidance के अंदर Department of Economic Affairs क्या करता है? Economic survey बनाता है. तो hopefully things are clear till here. Budget कौन बनाता है? Economic survey कौन बनाता है? Moving forward, is budget just with respect to, is in India budget is not just with respect to statement of receipts and expenditure, इतना नहीं है, but there are certain other things which is also included in India's budget. तो ये आपको पता चाहिए. First is, as I told you, it is an estimate of revenue and capital receipts. तो कितना हमारे पास revenue receipts आने वाला है, capital receipts आने वाला है. Next is ways and means to raise revenues. So budget में we also tell कि how we are going to raise our revenues. Revenues कहाँ से आने वाला है? What is the source of revenue? Secondly, what is
what is the estimated expenditure, that is also said, and economic and financial policies are also discussed. Economic and financial policies are discussed. See, if you see budget previously and this time also, various new initiatives are always been discussed, new policies are new programs are being released in the budget. So in India, budget is not just with respect to receipts and expenditure, but it is also about economic and financial policy. And if you see budget is a tool of what? फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी, इट्स अ टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. हाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू रेज रेवेन्यू, हाउ इट इज गोइंग टू स्पेंड, हाउ इट इज गोइंग टू रेज दीज फाइनेंसेस टू कवर द एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर. तो ये हम इस बजट में देखते हैं. सो इफ यू सी वेयर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग इट्स फंड्स, तो इंपॉर्टेंट है कि वेयर ऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गेटिंग इट्स रिसिप्ट्स फ्रॉम. तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर पता चाहिए. एंड सेकेंडली, ये हम जीएसटी का कलेक्शन भी चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रेंड्स इन जीएसटी कलेक्शन. तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मेजर रेवेन्यू अराइज फ्रॉम बोरोइंग्स मतलब क्या? इफेक्टिवली वी आर बोरोइंग फ्रॉम internal within the country through issue of T-bills and G-secs, and secondly external borrowings भी होता है. तो effectively जो हमारा major source of revenue for government of India क्या है? It's borrowing, and इस पर हमें क्या करना पड़ेगा? interest देना पड़ेगा. Second source important है. If you see, for usually income tax collection was more than GST collection in the previous budget, but this time what we see is 16% of our collection of our revenues is from GST. तो ये important data आपको पता चाहिए. Next is 15% from income tax, 15% from corporate tax, 7% from excise, union excise duty, 5% from customs, 5% from non-tax revenues, and 2% from non-debt capital receipt. तो ये sources of revenue पता चाहिए. Sources of revenue in descending order: GST, income tax, corporate tax, union excise duty, custom duty. We'll be sharing this PDF, and along with this an important PDF भी आने वाला है. तो make sure you are aware of this. Next is, if you see during COVID wave, what had happened is हमारा GST collection went down because our GDP also went down. And if you see, हम जब आगे देखेंगे कि what we saw was V-shaped recovery of our GDP, and similarly V-shaped recovery of our GST collection also. So, and what has happened is consistently our GST collection from August to till now, what we have seen is it has increased to more than 1 lakh crore in every month. So this is an important data which you should know. So slowly the GST collection was increasing before second COVID wave. In around April it was highest, but again because of second COVID wave it went down. तो ये important data आपको पता चाहिए. And where all government of India is spending its money. तो important है, as we told you कि 33% कहाँ से आ रहा है? From borrowings. इसलिए 20% पैसा कहाँ जा रहा है? Interest में जा रहा है. उसके बाद क्या है? State share of taxes and duties, उसमें जा रहा है. Next is सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में the next chunk of money is going. उसके बाद फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, जो फाइनेंस कमीशन ने बोला है उस ट्रांसफर्स में जाता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें पता चाहिए. एंड अराउंड 8% इज सब्सिडी एंड 8% इज डिफेंस स्पेंडिंग. तो इफेक्टिवली इतना आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता चाहिए कि एज मेजर पार्ट इज थ्रू बोरोइंग्स, मेजर पार्ट वुड गो टू इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज स्टेट शेयर ऑफ, जो स्टेट को सबसे ज्यादा पैसा जाता है आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट, एंड देन उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, एंड नेक्स्ट इज फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स टू स्टेट्स. तो ये बेसिक कहां पैसा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यू शुड नो दिस. एज आई टोल्ड यू कि the GST collection and the second COVID wave, we can say what India saw was V-shaped recovery. V-shaped recovery was there was dip in the GDP rate, and again as the economy recovered, the growth rate again went up. So according to economic survey 2021-22 में इंडिया का economic growth rate was 9.2%. Before this 2020 to 2021 में
इंडिया का ग्रोथ रेट वाज इन नेगेटिव 7.5% था, लेकिन 21-22 में 9.2% था एंड द प्रोजेक्टेड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वेज 8 to 8.5%। तो ये आपको पता चाहिए। जीडीपी एंड जीवीए का आपको कोरिलेशन पता चाहिए। डिटेल में तो आप स्टैटिक पार्ट में पढ़ते हो, लेकिन मेजरली जीडीपी इज व्हाट, जीवीए का समेशन, बिकॉज जीवीए इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी सेक्टर। इट इज कैलकुलेटेड, एग्रीकल्चर का जीवीए हम कैलकुलेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस सेक्टर, तो हर एक सेक्टर का जीवीए कैलकुलेट करते हैं, उसका एडिशन करते हैं, उसमें प्रोडक्ट टैक्स एंड माइनस सब्सिडीज करते हैं, प्रोडक्ट सब्सिडीज, एंड व्हाट वी गेट इज जीडीपी। एज आई already told you, India saw was V-shaped recovery. It is characterized by quick and sustained recovery in measures of economic performance after a sharp economic decline. So after a sharp economic decline, what we saw was sudden increase in our GDP and GVA. तो ये correlation आपको पता चाहिए of GST collection also, and with respect to collection with respect to GVA and GDP also. Moving forward, with respect to budget and how budget is annual financial statement, how it is presented and what are the steps, तो ये जानना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें presentation of the budget which happens on 1st of February. Then there is general discussion after the budget, and then the budget session ends and there is scrutiny by departmental committees. हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। So see, once you are studying about budget, every point, every word which is being said has to be covered. Next is, there is, once departmental committees scrutinizes, then there is voting for demand for grants, then there is passage of appropriation bill and passage of finance bill. तो ये important है, and you should know कि there is a provision in the budget, that in the constitution, that the finance bill should be passed within 75 days of presentation of the budget. तो 75 days के अंदर हमें क्या करना है, फाइनेंस बिल पास करवाना है। तो ये एक important information आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएशन। क्या है appropriation bill and finance bill? दो important bill है, and you should know difference between that, both these terms, appropriation bill and finance bill. तो क्या difference है appropriation bill and finance bill? तो both of them are money bill. तो ये भी important question आ सकता है क्या, both of them are money bill. I know everyone must be knowing, पॉलिटी पढ़ा है, मनी बिल एंड कॉमन बिल में डिफरेंस anyone can tell me, लेकिन आपको पता चाहिए कि ये मनी बिल है। सो अप्रोप्रिएशन बिल में क्या है, तो इफ यू वांट टू, जो भी फंड्स आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, वो कहां जाता है, जो भी टैक्सेस आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आता है। एंड इफ यू वांट टू यूज दिस फंड, यू हैव टू हैव एन यू शुड पास अ लॉ टू यूज दिस फंड, एंड इसको ही क्या बोलते हैं हम, अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, इफ यू वांट टू यूज फंड्स फ्रॉम CFI, that is Consolidated Fund of India, you need to have appropriation bill, you need to pass. If you want to tax people, if you want to collect money and deposit into CFI, you also have to pass a bill, that is finance bill. Finance bill में क्या होता है, taxes होते हैं, taxes. So both, as I told you, both are classified as money bill. तो Rajya Sabha can only discuss, cannot vote on it, and appropriation bill specifies quantum and purpose for withdrawing of the bill. तो if you want to withdraw, it quantifies, it gives you permission कि कितना यूज होगा, कहाँ यूज होगा, तो ये आपको पता चाहिए। Next is two important articles, as I told you, 265 and 266 बहुत important है from budget perspective. So first is, what this article says is, Constitution provides that no tax shall be levied or collected except by authority of law. So finance bill क्या बोलता है, that is why we pass this finance bill, कि until there is authority of law, there is a passage of bill, we cannot collect any taxes. तो ये भी पता चाहिए, whenever government is planning to bring in any tax, what it need to do is article 265 के अंदर there has to be a law, and 266 क्या बोलता है, there provides that no expenditure can be incurred except with the authorization of the legislature, अगर आपको expenditure भी करना है तो authority लगेगा, अगर आपको अगर
पैसे भी इफ यू वांट टू कलेक्ट एनी टैक्सेस तभी भी लॉ अथॉरिटी ऑफ लॉ लगेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल अलोंग विद 112 आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल कमिटीज। क्या होता है, as MPs cannot there are so many MPs, 550 almost 545 MPs in Lok Sabha, Rajya Sabha में हैं, they cannot function in a unified format जब when they sit together. So Government of India has, what they have done is, we have established departmental committees. So each departmental committees has 31 members and इसमें क्या है, तो these 31 members in each departmental committee scrutinizes various ministries, their provisions. If they have asked for certain grants, they scrutinize, they ask, and they look into day-to-day functioning of the various ministries. So they look into the performance of various ministries, their demands, and everything is done, looked after by departmental committees. So there are 16 लोकसभा कमिटीज अंडर लोकसभा, 8 कमिटीज अंडर राज्यसभा, तो कितने टोटल 24 कमिटीज है, उसमें से 16 आर अंडर लोकसभा एंड 8 आर अंडर राज्यसभा। एंड ईच कमिटी में कितने मेंबर्स है, 31 मेंबर्स है, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा। तो ये डिपार्टमेंटल कमिटीज क्या करते हैं, इट वेरीफाइज द ग्रांट्स एंड इट स्क्रूटिनाइजेस द ग्रांट्स, सब कुछ करता है, बजट को स्टडी करता है, सजेशंस देता है, एंड इफ देयर इज एनी नीड इन द चेंज इन द बजट इट टेल्स द डिपार्टमेंट और स्पेसिफिक मिनिस्ट्री। तो ये डिपार्टमेंटल कमिटीज आपको पता चाहिए। देन एज यू नो कि एज आई टोल्ड यू कि CFI क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये फंड्स ऑफ इंडिया आई डू नॉट थिंक सो आई हैव टू एक्सप्लेन, लेकिन आपको 266 एंड 267 पता चाहिए। 266 is consolidated fund of India and contingency fund of India, दोनों डिफरेंस आपको पता चाहिए। एंड देयर इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तीनों फंड्स बहुत कॉमन है एंड एवरीवन स्टडीज इन बजट। अगर आप नहीं पता है तो मेक श्योर यू फॉलो दिस PDF और लक्ष्मीकांत जाके पढ़ना, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड जब भी हम बजट की बात करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी 4 में क्या है, उसको भी दो इसमें कैटेगराइज किया है। फर्स्ट इज रेवेन्यू बजट एंड नेक्स्ट इज कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में भी क्या है, देयर इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इसमें भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मेजरली UPSC माइट आस्क कि यार दे वुड गिव यू अ एक्सपेंडिचर, दे वुड आस्क कि अगर they would ask a specific expenditure and ask you कि ये रेवेन्यू इसमें जाता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये जानना जरूरी है कि किसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे, किसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, किसी को कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो UPSC वुड ट्रैप यू हियर। और इस साल के इफ यू सी GS3 का पेपर, दे हैव आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में दे हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन। So what is revenue receipts? तो coming back to what is revenue receipts, बहुत इंपॉर्टेंट है। revenue receipts मतलब क्या, they are receipts मतलब क्या, incoming money which do not have any direct impact on asset and liabilities of the government। तो ऐसे receipts, ऐसे income which does not have any impact on asset or liabilities. So if government of India is going to sell a share of LIC, so would it be counted into revenue receipts or capital receipts? नहीं, it would be counted into capital receipts, क्योंकि revenue receipt में क्या है, it does not have any direct impact on asset and liabilities. And here what is happening is, हमारा जो asset है, हमारा जो share है PSU का, हम उसको दे रहे हैं, we are selling it, so it would come into capital receipts and not into revenue receipts. तो revenue receipts में कौन से हो गया, हमारे जैसे taxes, all the taxes are part of revenue receipts. Then non tax revenue भी आता है revenue receipts में, such as dividends हो गया, incomes हो गया, profit हो गया, interest receipts हो गया। तो ये सारा किस में आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में है। यहां UPSC क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स व्हिच डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन आवर एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट एंड लायबिलिटीज पर अगर किसी का इंपैक्ट नहीं हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। इफ यू टेक अ लोन, द प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसिप्ट, बट इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट और इफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए। इंटरेस्ट रिसिप्ट्स आर revenue receipts, loan is
capital receipts because it is having impact on asset and liabilities. So this is an important thing which you should know, difference between revenue receipts and capital receipts. Simple लगता है लेकिन आपको difference पता चाहिए. Next is revenue expenditure. क्या है? It is expenditure of government of India which does not impact its assets and liabilities. तो revenue expenditure में क्या आएगा? Salaries, interest payment, pension, administrative expense. जो recurring expenditure होता है या recurring, in general what we say is recurring जो होता है, recurring इनकम या रिकरिंग पेमेंट, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, उसको हम मेजरली रेवेन्यू रिसीप्ट्स में जाते हैं. तो ये एक मेजर डिफरेंस आपको पता चाहिए. ऑन द कैपिटल बजट, कैपिटल साइड क्या होता है? कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है? दिस आर रिसीप्ट्स व्हिच लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज. डिक्रीज इन एसेट्स, हमारा एसेट एलआईसी का एसेट्स क्या होगा? इफ वी आईपीओ निकालते हैं, एलआईसी का एसेट क्या होगा? हमारा कम हो जाएगा. रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज अ रिसिप्ट व्हिच लीड्स टू डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. इसमें कौन सा आता है? मनी अर्न बाय सेलिंग एसेट्स, डिसइन्वेस्टमेंट. एज आई टोल्ड यू, शेयर इन पब्लिक एंटरप्राइज. हमने इस बार व्हाट निर्मला सीतारमन finance minister said was what we are doing is we are bringing out of IPO. तो UPSC might ask a question, is it a capital receipt or revenue receipt? तो ये आपको पता चाहिए. कैपिटल रिसिप्ट, डिविडेंड्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स है. बट आईपीओ क्या है? अर्निंग्स थ्रू आईपीओ इज कैपिटल रिसिप्ट्स. तो इट इज what it is impacting our asset or liabilities. Next is money received from borrowings और repayment of loans by state. तो borrowings भी हमारा किस में आएगा? हमारा कैपिटल रिसीप्ट्स में आएगा. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? It consists of long-term investment by the government in creating assets such as road, hospitals, and which creates asset or decreases liabilities. तो इसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर which create asset. अगर हमने स्कूल क्रिएट किया, that would be capital expenditure. To run it, whatever expenditure, recurring expenditure, टीचर का सैलरी, वो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. सिंपल है, तो ये आपको पता चाहिए. और 2022-2023 में हम क्या करने वाले हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या हो रहा है. तो which expenditure is better, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? इफ यू आस्क मी, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज better. Capital expenditure. I'm going to give you a PDF of this on our Telegram channel, so do not worry. And we have covered in a similar way all the important topics. हमारा target 140 plus batch, अगर आप interested हो तो you can join that also. 2022-23 में हम क्या करने वाले हैं? कितना हमारा revenue receipts होने वाला है? 22 लाख करोड़ हमारा revenue receipts है. 17.4 लाख करोड़ हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स है. तो ये दो आपको पता चाहिए. एक्सपेंडिचर साइड में हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है 31.9 लाख करोड़ से, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.6 लाख करोड़ है. इसमें क्या है? जो हमने स्टेट को फंड दिया है एंड स्टेट ने जो फंड्स उसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया है वो भी हमने ऐड किया है. तो इफेक्टिवली हमारा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.6 लाख करोड़ है, 10.6 लाख करोड़ है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग है which does not create asset is 31.9 लाख करोड़. तो कौन सा एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म में ज्यादा चाहिए? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट इट सेड इज इट इज इन्वेस्टिंग हेवीली in infrastructure, PM गति शक्ति, infrastructure में investment. So that is why हमारा capital expenditure has increased and हमारा revenue expenditure over the last 2 years it has decreased. To give you an idea, तो ये सबसे important chart है, and what we have seen is a drastic change. तो what this dotted line shows is हमारा जो capital expenditure है that has been increasing from 2020-21 percentage wise compared to total expenditure. हमारा revenue expenditure कम हो रहा है. So that is a very good sign, and this was the reason why every investor in a long term what we are doing is PM गति शक्ति में हम invest क्यों कर रहे हैं? It focuses on what? It focuses on capital expenditure, creating assets. तो ये important term आपको पता चाहिए. Next is various type of deficit. If you see budget, it has given you an idea about various type of deficit. ठीक है? Deficit. The first is what you understand by revenue deficit. Revenue deficit मतलब क्या? Revenue expenditure minus revenue receipts. तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट बोलेंगे. There is one more term which has been used in the budget is effective revenue deficit. Earlier this term was not used
but now again they have used is revenue deficit minus grants given to state for creation of capital assets. तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इसको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. तो कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जा रहा है, स्टेट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट जा रहा है. तो ग्रांट्स इज व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट दैट ग्रांट इज बीन यूज्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो इट इज नॉट कंसिडर्ड, जो इसमें नहीं आना चाहिए. इसलिए इसको हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज ऑलवेज लेस देन revenue deficit because part of it is given to states for creation of capital assets. ठीक है, तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट. नेक्स्ट इज आता है इंपॉर्टेंट टर्म फिस्कल डेफिसिट. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिस्कल डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, बोथ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, हमारे जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स में कौन सा आएगा? इफ यू कैन टेल मी, अगर इफ वी डिसइन्वेस्ट दैट वुड बी कंसिडर इन दिस पार्ट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट. नॉन डेट अगर लोन्स लेंगे तो वो इसमें नहीं होगा. नॉन डेट मतलब जो लोन के अलावा हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट जनरेट हो रहा है बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉन डेट. अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो इफेक्टिवली फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या, इट इज आर बोरोविंग्स. इफेक्टिवली फिस्कल डेफिसिट इज बोरोविंग्स. तो क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है, बोरोविंग्स नहीं आती है. तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सेप्ट बोरोइंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे. इसमें कंप्लीट करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स. तो जो भी हमारा बोरोइंग होगा, फिस्कल डेफिसिट वुड बी इक्वल टू बोरोइंग्स. तो क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यूज अगर हम करेंगे तो जीरो आएगा. लेकिन यहां हम क्या रिमूव कर रहे हैं, अगर हम यहां बोरोइंग्स ऐड करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा. तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका अगर हम समेशन करेंगे तो हमें फिस्कल डेफिसिट मिलेगा. फिस्कल डेफिसिट इज व्हाट, इट इज द डेफिसिट व्हिच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू फुलफिल थ्रू बोरोइंग्स. तो हमारे पास जितना हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है और जितना हमारा एक्सपेंडिचर है, इसमें जो गैप है that is fiscal deficit. And how do we fill this fiscal deficit is through borrowings. तो ये आपको पता चाहिए. Next is if you see 2020 to 2021 there was COVID period and we launched आत्मनिर्भर भारत initiative. We give so many incentives, subsidies दिया तो हमारा fiscal deficit कितना पहुंच गया था, 9.5% पहुंच गया था. 2021-22 में हमारा estimate कितना था, 6.86% था, लेकिन what we achieved was 6.9% हमारा फिस्कल डेफिसिट था. एंड 2022-23 में हमारा टारगेट कितना है, 6.4% है. एंड एफआरबीएम के अंडर व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू सेट अ टारगेट. तो एफआरबीएम के अंडर हमने टारगेट क्या सेट किया है, 4.5%. हम कब तक अचीव करेंगे, 2025-2026 तक अचीव करेंगे. अचीव करेंगे. तो ये चीज आपको पता चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हमारा टारगेट्स कितना है नेक्स्ट ईयर के लिए, 6.4% एंड हमारा 4.5% हमें 2025-2026 के अंदर हमें अचीव करना है. इस बजट में ये भी बोला गया कि स्टेट कैन रीच अ मैक्सिमम फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4%. तो स्टेट भी दे हैव देयर ओन फिस्कल एफआरबीएम एक्ट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेड कि मैक्सिमम फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स कैन बोरो is up to 4%. तो ये भी 4% ऑफ जीडीपी, तो आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज इफ यू सी ट्रेंड्स, एज आई टोल्ड यू कि ट्रेंड्स हमेशा इंपॉर्टेंट है. तो 9.2 सबसे ज्यादा हमारा क्या गया था, हमारा फिस्कल डेफिसिट गया था 2020-21 में, जब रेवेन्यू डेफिसिट भी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारा क्या था, 6.2% था एंड प्राइमरी डेफिसिट 5.8 था. सो स्लोली इट इज डिक्रीजिंग. तो प्राइमरी डेफिसिट मतलब क्या, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. तो नेट फिस्कल डेफिसिट कितना आता है, उसको ही प्राइमरी डेफिसिट बोलते हैं. प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. एफआरबीएम जानना बहुत जरूरी है. तो एफआरबीएम में व्हाट इज द एम इज टू एंश्योर कि व्हाट गवर्नमेंट शुड डू इज दे शुड नॉट एक्सेसिवली बोरो which can affect our sustainability of our debt. It would increase the burden on our future generation. तो ये चेक करने के लिए what we have done is, इसको चेक करने के लिए हमने क्या कर लिया, FRBM एक्ट एस्टैब्लिश किया गया है
this act states that central government has a responsibility to reduce fiscal deficit, keep fiscal deficit in a specific range. अगर ये नहीं रहा तो क्या होगा, स्टेट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हाट दे वुड डू इज दे वुड एक्सेसिवली बोरो, एंड अगर हम एक्सेसिवली बोरो करेंगे तो हम इंटरेस्ट पे ज्यादा करेंगे, इंटरेस्ट पे ज्यादा करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू फॉर न्यू कैपिटल जनरेशन नहीं रहेगा, हमारा जो क्रेडिट रेटिंग है वो अफेक्ट होगा. तो in order to check our borrowing, in order to check our fiscal deficit, this important act was brought out, and the main objective is to bring transparency system in fiscal management in the country, ensure equitable distribution of debt over the years, and ensure fiscal stability in the long term. तो ये 3 important aim है of FRBM Act के. And under this FRBM Act, 3 important statement are released. तो कौन से 3 important statement है which UPSC usually asks? तो first is macroeconomic framework statement, medium term fiscal policy statement and fiscal policy strategy statement. तो ये 3 important statement है which are important, and UPSC might ask यार इनमें difference क्या है. तो FRBM Act के अंदर these 3 important statements are released. तो what is macroeconomic framework statement? तो macroeconomic framework statement is an important statement which you should know, and it, as I told you, it is released along with the union budget के साथ इसको रिलीज किया जाता है, बजट के साथ रिलीज किया जाता है. and this statement contains an overview of the economy. तो basically how is the economy performing, तो एक overview of the economy is presented in this statement, and it includes assessment regarding GDP growth. तो overview of the economy होगा कि assessment regarding GDP growth कितना हो रहा है. नेक्स्ट इज फिस्कल बैलेंस क्या है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस क्या है. तो ओवरऑल इकोनॉमी का जो असेसमेंट है दैट इज प्रोजेक्टेड इन दिस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट अंडर FRBM एक्ट. तो बेसिकली इट कंटेन्स ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, हाउ इज इकोनॉमी परफॉर्मिंग, व्हाट इज द एस्टिमेट ऑफ आवर GDP ग्रोथ रेट, फिस्कल बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर बैलेंस क्या है. तो हमारा सब कुछ ओवरऑल असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी इज डन इन दिस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी इंपॉर्टेंट है. तो मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर सेटिंग अप 3 years रोलिंग टारगेट्स फॉर 4 स्पेसिफिक फिस्कल इंडिकेटर्स. तो हम इसके अंडर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी में हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 years के लिए रोलिंग टारगेट्स एस्टैब्लिश करेंगे ऑन 4 पैरामीटर्स. कौन से है, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो उसके लिए हम टारगेट सेटअप करेंगे, फिस्कल डेफिसिट के लिए हम टारगेट सेटअप करेंगे, टैक्स टू GDP रेशियो के लिए हम टारगेट सेट करेंगे, एंड टोटल आउटस्टैंडिंग डेट एट द एंड ऑफ द ईयर इसके लिए हम टारगेट सेट करेंगे. 3 years रोलिंग टारगेट हम सेट करेंगे, रोलिंग टारगेट्स हम सेट करेंगे. तो ये आपको पता चाहिए मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी में क्या है, 3 years रोलिंग टारगेट्स फॉर रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, टैक्स टू GDP रेशियो एंड टोटल आउटस्टैंडिंग डेट. नेक्स्ट इज मीडियम टर्म हो गया. देन फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट. तो फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट क्या होता है, इट आउटलाइंस द स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द फिस्कल स्पेस, ensuring financial in the fiscal. So basically it outlines the strategic priorities of the government in the fiscal area for the ensuing financial year relating to taxation, expenditure, lending and investment, and administrating price, borrowing and guarantees. तो basically fiscal strategy statement क्या करता है, it says कि what government is going to do with respect to taxation, how it is going to increase taxation, how it is going to reduce borrowing. तो ये सब strategies इसमें बताई जाती है. Then strategies with respect to lending and investment, how government of India is planning to lend, or the state government how it is going to raise revenues. तो ये सारा information with respect to strategies which government of India is going to use with respect to raising revenue, डिक्रीजिंग एक्सपेंडिचर्स. तो यहां सारे स्ट्रैटेजीज मेंशन की जाती है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. तो तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमने देखे. फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट. तो ये असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी करता है बेस्ड ऑन GDP ग्रोथ रेट, हमारा जितना भी हमारा फिस्कल बैलेंस है. नेक्स्ट इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी विच सेट्स टारगेट, एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजीज इट सेज व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू टू रिड्यूस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैसे टैक्स बढ़ाने वाले हैं, कैसे एक्सपेंडिचर कम करने वाले हैं, लेंडिंग और जो बोरिंग है उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं. तो ये सारी चीजें हम इसके थ्रू करते हैं. So coming back to the first part, what we learned through in this session, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना कि हमने इस सेशन में क्या रिवाइज किया. हमने आर्टिकल 112 देखा,
तो अनयून फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा, कौन बनाता है हमने बजट डिवीजन देख लिया, इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, अगेन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। साइड बाय साइड हमने देखा कि इट इज नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू कि कहां से पैसे आ रहे हैं, कैसे पैसे खर्च हो रहे हैं, बट इट इज ऑल्सो हाउ वी आर गोइंग टू रेज दिस मनी and what are the economic and fiscal policies, new programs which government really announces during budget, that is also part of budget. तो and budget is a part of fiscal policy. Then receipts में हमने देखा कि GST collection is more than income tax, लेकिन ऐसे बोल सकते हैं कि direct is more than indirect नहीं बोल सकते, sorry, indirect tax is more than direct tax नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो 15 and 15% है, दैट इज पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कस्टम्स हमारा जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी इज पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट इज मोर देन इनडायरेक्ट, तो बेसिकली ये पता चाहिए। लेकिन जीएसटी इंडिविजुअल टैक्स देखा तो 16% जीएसटी है। जीएसटी कलेक्शन में हमने देखा कि कैसे इट इज ऑल्सो शोइंग वी शेप्ड रिकवरी अकॉर्डिंग टू हमारा जीडीपी। हमने देखा कि मेजर जैसे बोरोइंग 33% तो इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा जा रहा है, फॉलोड बाय स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो गया, देन फाइनेंस कमीशन ट्रांसफर्स हो गया एंड अदर, ये हम देख सकते हैं। देन वी शेप्ड रिकवरी हमने देख लिया, 9.2 2021-22 में था, आके 8 to 8.5%। प्रीवियस टू दिस ईयर 2020-2021 फर्स्ट ईयर ऑफ कोरोना -7.5 जब लॉकडाउन था। वी शेप रिकवरी हमने 6 स्टेजेस भी देख लिए। हमने अप्रोप्रिएशन बिल एंड फाइनेंस बिल का डिफरेंस देख लिया। फाइनेंस इज फॉर टैक्सेशन, अप्रोप्रिएशन इज फॉर यूज, अप्रोप्रिएशन इज फॉर यूज एंड आर्टिकल 265 एंड 266। 265 क्या बोलता है, नो टैक्सेशन विदाउट authority of law, and second 266 is no expenditure without authorization of legislature। तो ये आपको पता चाहिए। डिपार्टमेंटल कमिटीज स्क्रूटिनाइज करते हैं बजट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी मिनिस्ट्री, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन सी कितने डिपार्टमेंटल कमिटीज है, किसके अंडर है, 16 लोकसभा के अंडर है, 8 राज्यसभा के अंडर से। फंड्स, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ फंड, ये 3 इंपॉर्टेंट फंड है। ये आगे जब हम डेट देखेंगे ना, ये तीनों फंड्स फिर से देखेंगे एंड देयर यू नीड टू नो दिस। हमने रेवेन्यू रिसीप्ट्स किसको बोलते हैं, रिकरिंग विच डज नॉट इफेक्ट आर एसेट एंड लायबिलिटीज, उसको रेवेन्यू रिसीप्ट्स बोलते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स। आईपीओ का रेवेन्यू इज कैपिटल रिसीप्ट्स। हमारा इंटरेस्ट डिविडेंड्स आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिकरिंग इज, तो ये डिफरेंस आ सकता है। कितना एक्सपेंडिचर हम करने वाले हैं, कितना हम ये करने वाले हैं। ये कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है ना, दैट इज नॉट जस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें स्टेट का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड किया गया है, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 7.5 लाख करोड़ है, बट दिस इज इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर डन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन सेंट्रल रेवेन्यू, उसको भी ऐड किया गया है। हमने देखा कि व्हाट वी हैव सीन द ट्रेंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो रहा है कंपेयर टू टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए। लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट पता चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स का डिफरेंस। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, revenue expenditure part of it is done by the grants which are given to states for capital creation is reduced and what we get is exact value of revenue expenditure। fiscal deficit हमने देख लिया and fiscal deficit का targets भी देख लिया हमने कि 6.9 है, उसको हमें 6.4 करना है 2022-23 में, 4.5 करना है 2005-2026 में। हमने फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट का हमने ग्राफ भी देख लिया। व्हाट वी सॉ वाज 2020 एंड 2021 में देयर वाज शार्प इंक्रीज, पोस्ट दैट स्लोली इट हैज बीन स्लोली डिक्रीजिंग, तो ये भी आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज प्राइमरी डेफिसिट हमने देख लिया, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एफआरबीएम हमने देख लिया। एफआरबीएम में मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट व्हिच असेसेस, इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी, असेसमेंट ऑफ द इकोनॉमी होता है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी ग्रोथ रेट, हमारा एक्सटर्नल सेक्टर का बैलेंस हो गया या फिर फिस्कल बैलेंस क्या है, तो असेसमेंट होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट इज मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी में हम टारगेट सेट करते हैं एंड फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट में हम वो टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे, क्या हमारे स्ट्रैटेजीज रहेंगे, वो हम डिस्कस करते हैं। एंड टू स्टार्ट विथ आई वांट टू टेल यू कि फिस्कल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट डेट में या फिर पब्लिक डेट में देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू दैट। एंड जब आपको ये डिफरेंस पता नहीं है, व्हाट इज, इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक डेट
गवर्नमेंट डेट एंड फिस्कल डेफिसिट। तो यू शुड हैव अ क्लैरिटी। जब तक इस क्लैरिटी के साथ नहीं पढ़ोगे करंट अफेयर्स, स्टैटिक का उसमें लिंकेजेस रहेगा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो फिस्कल डेफिसिट इज what we learned in the last lecture is all the borrowings which government of India is doing. Indirectly, it is all the borrowings which government of India is doing to match the revenue expenditure. तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए इट इज बोरोइंग फॉर 1 ईयर, इट इज बोरोइंग फॉर 1 ईयर। लेकिन गवर्नमेंट डेट और पब्लिक डेट क्या होता है, इट इज बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर द ईयर्स। तो जो फिस्कल डेफिसिट हम देखते हैं वो 1 साल का ही होता है। एंड व्हाट वी आर डूइंग विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट डेट इज अब तक का कितना लोन गवर्नमेंट ने लिया है, टोटल लोन कितना है। फिस्कल डेफिसिट ओनली शोज कि गवर्नमेंट का प्रेजेंट उस साल में गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया है टू मैच अप विद एक्सपेंडिचर। तो ये आपको पता चाहिए। सो गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट डेट जब भी टर्म आता है तो इट इन्वॉल्व्स 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आई वुड लाइक टू टेल यू इज इट इन्वॉल्व्स पब्लिक डेट। तो पब्लिक डेट क्या होता है, आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स अदर लाइबिलिटीज एंड थर्ड इट इन्वॉल्व्स इज एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है किसके, गवर्नमेंट डेट के। वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट डेट इज पब्लिक डेट। एनीथिंग विच गवर्नमेंट बोरोज अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर किसी को कोई भी, इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज अ सिक्योरिटी and anything that is borrowed on consolidated fund of India, that is called as public debt. तो ये difference आपको जानना जरूरी है। Government debt is not equal to public debt. Secondly, there are other liabilities such as post office savings हो गया, small saving schemes हो गया, provident fund का जितना भी money है which is deposited with government of India, that is also government debt. Next is extra budgetary borrowing. So ये बहुत important term है and definitely used in budget में यूज किया जाता है। तो गवर्नमेंट डेट में 3 चीजें आती है, पब्लिक डेट, अदर लाइबिलिटीज एंड एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग्स। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पब्लिक डेट इज अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये बेसिक ये डिफरेंस ये जानना यूपीएससी यहां पकड़ेगा आपको। जब तक आपको करंट अफेयर्स इतना कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं पता, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। No need to read anything. So what is extra budgetary borrowing? So if you see all the public sector जो भी institutions होते हैं, PSUs हो गए, they also borrow from market, but they are part of government. वो government का part है। They borrow from the market, so their borrowing is considered in government debt. It is not considered under public debt. तो जो भी extra budgetary borrowings or what, these are financial liabilities that are raised by public sector unions and for which repayment of the entire principal and interest is done by central government. तो वो उसका repayment is on central government, but they are borrowed by public sector unions, PSUs ने borrow किया है। तो ये आपको पता चाहिए। Secondly, I would address all your queries, but let's learn this important topic and उसके बाद I'll address all the queries. So make sure till then you are there. Make sure you are there in this lecture. तो is extra budgetary borrowings calculated in fiscal deficit? Question आ सकता है क्या? MCQ आएगा and here you will make mistake that extra budgetary borrowings is not part of fiscal deficit. It is not part. That is why what government of India is doing is LIC ने borrow कर लिया, though it is a liability of government of India, लेकिन it is not calculated in fiscal deficit. It is not calculated in fiscal deficit. तो ये आपको पता चाहिए। Over the years there has been concerns क्या है, जो हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है, हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो हैज इंक्रीज फ्रॉम 76% था हमारा। ये टोटल डेट है। टोटल डेट मतलब क्या, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके वो 76% था। नाउ इट हैज रीच टू 85%, सम सेज इट इज अराउंड 85 to 95 के बीच में, फिगर्स आर वेरिंग। तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें हमने क्या कर लिया, टोटल डेट में सेंट्रल एंड स्टेट कैलकुलेट कर लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना था, 63.9 था अराउंड 2006, लेकिन ओवर द इयर्स इट डिक्रीज एंड रीच टू अ लेवल ऑफ 47-48%, बट it has slowly increased. So government debt ratio over the years, central government का debt to GDP ratio has increased and now presently it is around 61.7%. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का डेट मिला के कितना है, अराउंड 85 to 90 के बीच में, फिगर्स आर वेरिंग। तो ये आपको पता चाहिए। एंड जो गवर्नमेंट डेट बोलते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड है, पब्लिक डेट इंक्लूडेड है, अदर लाइबिलिटीज एंड एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग। ये 3 आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। नेक्स्ट इज जो हमारा पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, सिर्फ पब्लिक डेट टू
पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो इज अराउंड 90%। तो ये भी आपको पता चाहिए, ये भी आपको एक, ये फिगर बहुत वेरिएबल है, बेसिकली ये फिगर कम चाहिए, लेकिन कहीं जगह 90% दिया है तो न्यूज़पेपर आर आल्सो कंफ्यूजिंग। तो आई वुड से दो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो कहीं 90% दिया है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक, तो ये ठीक है। लेकिन जो एनके सिंह कमिटी है, व्हाट इट सेड वाज हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो कितना चाहिए, 60%। इट डिड नॉट से पब्लिक डेट, इट सेड गवर्नमेंट डेट, टोटल डेट, इट डिड नॉट से पब्लिक डेट। तो क्वेश्चन यहां कंफ्यूजिंग हो सकता है कि इट इज नॉट पब्लिक डेट बट टोटल गवर्नमेंट डेट टू रेशियो कितना हमें मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू एनके सिंह कमिटी जो एफआरबीएम के रिफॉर्म्स पर बनी थी। अकॉर्डिंग टू इट वाज 60%, उसमें से 40% सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट रहेगा एंड 20% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये 60% मेंटेन करना है, बट इट इज नाउ अराउंड 85 to 90% के बीच में है, 85 to 90% के बीच में है। जो हमारा पब्लिक डेट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पब्लिक डेट इज अगेंस्ट हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो हमने लिया है, तो ये आपको पता चाहिए। जो पब्लिक डेट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज इंटरनल, दैट इज वी आर टेकिंग फ्रॉम the revenue is raised from our country, within our country itself, and second is external, and the proportion is 93% is internal and 7% is external. हमारा external debt to GDP ratio is around 20.2% है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चीज यू शुड नो। सेकेंडली, इसमें लॉन्ग टर्म जो हमारा डेट है, इट इज मोर अराउंड 81.3% इज लॉन्ग टर्म एंड 18.7% इज शॉर्ट टर्म। तो हमारा लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल डेट ज्यादा है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल का आपको ये डिफरेंस पता चाहिए। नेक्स्ट इज, जब भी हम टी बिल्स की बात करते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इंटरनल डेट, वी हैव डिस्कस दिस ऑन आवर प्रीवियस टारगेट 140 प्लस जो पेड बैच है, उनमें हमने डिफरेंस, ये एवरीथिंग इज बीन कवर्ड। दैट इज टी बिल्स किसको बोलते हैं, टी बिल्स, देन मार्केट लोन्स, गोल्ड बॉन्ड, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, सिक्योरिटी बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो ये सारा इंटरनल डेट में आता है। एक्सटर्नल डेट में व्हाट एवर मल्टीलैटरल लोन्स, बायलैटरल लोन्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, आईएमएफ का जो भी हमारा बोरोइंग्स है, प्लस एनआरआई डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल डेट, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज इंटरनल डेट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज I would like to tell you, internal debt and external debt, जो भी हमारा टी बिल्स हो गया, जीसेक हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, these are all part of internal debt, and external debt is which we are borrowing from other countries, from multilateral institutes. तो ये आपको पता चाहिए। Next is, as you know कि there is one important graph which was in this year's budget which is important and question can be asked from this side. तो ये एक important चीज जानना जरूरी है। With respect to forex reserve, we have already covered forex reserve, उसके क्या पार्ट है in our target 140 plus previous lectures. तो I would like to tell you, दो हमारा 2021 में हमारा forex reserve बढ़ रहा था, तो ये आपको ये ट्रेंड जानना जरूरी है। दो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा था, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट कवरेज है वो कम हो गया है। इंपोर्ट कवरेज हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस फ्रॉम अराउंड 18 मंथ्स टू 12 मंथ्स। तो इंपोर्ट कवरेज क्या है, हमारे पास अगर हमारा हर महीने का इंपोर्ट इज 10 करोड़ डॉलर्स का हमारा इंपोर्ट है, एंड अगर हमारा 100 करोड़ हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, तो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सॉरी, इंपोर्ट कवरेज रेशियो कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 मंथ्स के लिए वी हैव फॉरेक्स रिजर्व फॉर 10 मंथ्स। तो ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। ये ग्राफ इज एन इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड नो, दैट व्हाट हैज हैपेंड इज, दो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है, हमारा फ्रॉम 2021 हमारा इंपोर्ट कवरेज रेशियो कम हो रहा है। तो इंपोर्ट कवरेज रेशियो क्यों कम हो रहा है, कि हमारा इंपोर्ट्स बढ़ रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ गया होगा बहुत ज्यादा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है। हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो गया लेकिन इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गया, तो दैट इज वन रीजन हमारा इंपोर्ट कवरेज रेशियो इज डिक्रीजिंग। एंड नाउ वी हैव फॉरेक्स रिजर्व ऑफ ओनली 12 मंथ्स व्हिच कैन केटर टू 12 मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स आर ऑल द इंपोर्ट्स। तो यू शुड नो दिस, ठीक है। Moving forward in this budget, and it is also related to current affairs. So this lecture is continuation with respect to the budget session which we have already taken. If you search on YouTube, you will get it. If
if you search on YouTube. Next is another important organization which Government of India is setting up, that is National Asset Reconstruction Company. And this company is being set up as, उसका नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है, National Asset Reconstruction Company Limited. So why we are being setting this National Asset Reconstruction Company Limited? तो ये बात important है. As you know, the major most of the public sector banks are facing NPA issue. NPA का definition already everyone knows. Anyone who defaults for 90 days, any farmers who is not able to pay loan for one crop cycle for long term crop or two crop cycle for short term crops is considered as NPA. तो ये आपको पता चाहिए. ये सब हमने previous lectures में cover कर लिया है. Next is, so this company हमने establish किया है. In the lectures I would also tell you, though we have more than 28 asset reconstruction companies. So why we have set up this National Asset Reconstruction Company Limited? Why Government of India has set up a new company? So that reasoning is more than important. So it is incorporated under Companies Act and it is set up by bank. तो किसने set up किया है? It has been set up by various banks to aggregate and consolidate stress asset for their subsequent resolution. So this organization is being set up by various banks, and public sector banks will maintain minimum 51% of 51% ownership किसकी रहेगी? Public sector bank की होगी. And this National Asset Reconstruction Company Limited, what it would do is it would acquire assets. Assets मतलब क्या? Loans. बैंक का asset क्या होता है? Loans होता है. It would acquire non-performing assets through 15% cash and 85% security receipts और 15% cash देकर ये क्या करेगी? ये National Asset Reconstruction Companies would acquire NPAs or loans which are default from public sector banks. And once this loan is being acquired by National Asset Reconstruction Company Limited, it would be given to whom? Indian Debt Resolution Company. So Indian Debt Resolution Company is a specialized agency which would look how you need to resolve this NPAs, how you need to solve the problems of the companies, and how do you manage this stress asset. तो management के लिए कौन सा company है? Indian Debt Resolution Company Limited. So it is a service company, operational entity which will manage this stress asset. तो ये एक important term आपको पता चाहिए. And public sector bank and public financial institution will hold maximum 49% and the rest will be private sector lending. जो पहला वाला था National Asset Reconstruction Company, उसमें 51% minimum banks maintain करेगी. यहाँ public sector banks and public financial institute would maintain minimum 49%. तो ये आपको पता चाहिए. And how it will work is, जो National Asset Reconstruction Company would acquire asset and जो Indian Debt Resolution Company would manage this stressed asset and ensure that maximum value is brought out from this stressed asset. तो ये दो companies आपको बहुत important है, ये जानना जरूरी है. So the question was why we have so many. Already we had 28 existing ARCs. Already India में बहुत सारे ARCs हैं, but these ARCs are looking after only small value of stress asset. जो छोटे छोटे लोन्स है उस पर ही फोकस कर रहा है, but the bigger loans or which are large stock या legacy NPAs है, जो बड़े loans है where multiple banks have given, these are given to this important bank, that is National Asset Reconstruction Company Limited. So hopefully you have got an idea कि क्या role है ये company का, why it is also called as bad bank भी बोलते हैं, which acquire. ठीक है. Moving forward, one more important term which is in news, also mentioned in budget, was with respect to development financial institutions. Again, important thing. So DFIs are क्या है? Majorly problem का आता है कि whenever we give loan to infrastructure projects, it is a long-term loan. And once the bank gives long-term loan, what happens is its asset balance sheet or bank balance sheet gets affected because the flow of money is affected with respect to banks. So Government of India in 1948 created a special kind of financial institution, that is Development Financial Institution, which would only, the aim of this was only to give long-term loans to infrastructure projects. The first bank was IFCI, Indian Infrastructure Finance
IFCI उसका डेफिनेशन फुल फॉर्म आई कैन नॉट रिमेंबर प्रेजेंटली, इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे ही कुछ उसका नाम था, गो चेक इट आउट। तो ये फर्स्ट 1948 में फर्स्ट बैंक बनी थी। नरसिम्हा कमिटी जो थी, नरसिम्हा कमिटी ने क्या रिकमेंड दिया था, टू मेक ऑल दिस डीएफआईज। उसके बाद बहुत सारे डीएफआईज बने, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि लेट्स कन्वर्ट दिस डीएफआईज इनटू कमर्शियल बैंक्स। तो आईसीआईसीआई जो हमारा बैंक है, that was initially what it was, a DFI, it was a development financial institute, but later on converted into a commercial bank। तो ये आपको पता चाहिए। Another important cheese you should know that DFIs do not accept deposit, and the source of their money is government, whether they would take money from government, RBI or market or multilateral financial institutions या mutual funds। तो यहाँ से वो क्या करेंगे, लोन्स लेंगे। तो hopefully you are able to get this important lecture। अगर आपको पसंद आता है तो hit the like button so that it motivates us also to bring out such lectures। ठीक है, तो one important what do you say DFI which government of India is bringing in, and it has passed the bill in Lok Sabha, Rajya Sabha में भी पास हो चुका है, with respect to setting up of National Bank for Financing Infrastructure and Development। तो एक नया टाइप का DFI हम डेवलप कर रहे हैं, that is National Bank for Financing Infrastructure and Development, and the bill is, as I told you, passed in Lok Sabha and Rajya Sabha also। It is going to be a corporate body, आपको पता चाहिए, with a share capital of 1 lakh crore, and the ownership of this bank would be with central banks, multilateral institutions, sovereign wealth fund, pension fund, insurer, financial institutions, banks and other institutions prescribed by central government। तो who can own the shares of this bank, तो ये यहाँ दिया है। तो who can मतलब the ownership can be by any of these institutions। तो ये आपको पता चाहिए। इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना शेयर होगा, 100%, and slowly it would reduce to 26%। The function of this DFI would be to directly and indirectly lend for infrastructure projects, refinance infrastructure projects। तो ये आपको पता चाहिए, which are located entirely or partly in India। तो ये भी आपको पता चाहिए। And facilitating the development of market for bonds, loans and derivatives for infrastructure financing। That is the major role of this National Bank for Financing Infrastructure and Development। And the sources for the money, यहाँ इनका money कहाँ से आएगा, as I already told you कि they cannot get money from public, so they have to get from central government, RBI, scheduled commercial banks, mutual fund and multilateral institutions। वहाँ से ये आएगा पैसा for this lending। The bank or DFI has to lend money, तो where the source would be this, तो you should know this important। ये next is lending targets क्या है इसके, 5 lakh crore in next 3 years। तो ये आपको पता चाहिए। few of the other DFIs जो आपको पता चाहिए, जैसे National Housing Bank which gives money in the housing sector, IDFC हो गया, NABARD हो गया, IRB हो गया, these are few of the other financial DFIs। we have so many DFIs, तो ये आपको पता चाहिए। Simultaneously, as I told you कि government of India is trying to reduce their stake from public sector जो institutions है उनसे। And one of the important terms which was used is government of India is trying to bring IPO of LIC का। तो it is basically what is IPO, it is offer for sale for an unlisted company to the public for the first time। जो भी फर्स्ट टाइम किसी कंपनी के शेयर्स इसमें आते हैं उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। एफपीओ क्या बोलते हैं, आईपीओ के बाद अगर नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट टाइम उस इंस्टीट्यूट ने, पीएसयू ने या कोई भी प्राइवेट बैंक ने एक बार आईपीओ लॉन्च करने के बाद अगर फिर से शेयर्स पब्लिक के लिए लेके आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फॉलो अप ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स बोलते हैं। एंड लास्ट इज इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम भी होता है, वेयर ओनली सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड टू पार्टिसिपेट एंड द कंपनी स्टेक इज ऑफर्ड ओनली टू सच इंस्टीट्यूट्स। तो लिमिटेड लोगों के लिए ये खोला जाता है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। Moving forward, another important term which was mentioned in this year's budget and also from current aspect, everything which is mentioned in budget also is important from current aspect and important from static aspect. So what we have done is we have integrated both the things. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस ईयर बजट सेट की जो हमारा एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट होने वाला है इज
विथ ट्यून ऑफ 2.37 लाख करोड़ का हम एमएसपी का प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं. विथ रिस्पेक्ट टू एमएसपी, एवरीवन नोज दैट एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय, कौन डिक्लेयर करता है, इज डिक्लेयर्ड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड दिस कमिटी इज हेडेड बाय Prime Minister, and the recommendation is given by Commission for Agriculture Cost and Price. This CACP is the organization which recommends, but it is announced by Cabinet Committee on Economic Affairs headed by Prime Minister. So here you can make a difference. ठीक है. Next is, and this Cabinet Commission for Agriculture Cost and Pricing is under Ministry of Agriculture and Family Welfare, Ministry of Agriculture and Family Welfare, and इसका रोल क्या है, advisory, everyone knows. But how does this CAPC कितने क्रॉप्स के लिए रिकमेंड करता है, यहां कंफ्यूजन है. सो मेक श्योर यू फोकस हियर. जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग है, इट रिकमेंड्स एमएसपी फॉर 23 क्रॉप्स के लिए, बट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स एमएसपी फॉर 25 क्रॉप्स. तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए. ये रिकमेंड कितने क्रॉप्स के लिए कर रहे हैं, 23 क्रॉप्स के लिए, लेकिन गवर्नमेंट कितने लोगों के लिए क्या बोलता है, डिक्लेयर करते हैं 25 क्रॉप्स. तो विच आर दिस 2 क्रॉप्स विच वी आर गोइंग टू सी इन द लेक्चर फर्दर. तो ये आपको पता चाहिए. 23 के लिए रिकमेंड करती है कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस. तो इसमें से कौन से होते हैं, 7 सीरियल्स होते हैं, 5 पल्सेस होते हैं, 7 ऑयल सीड्स होते हैं, 4 कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल्स किसको बोलेंगे और पल्सेस किसको बोलेंगे, ये डिफरेंस भी पता रहना चाहिए. तो सीरियल एंड पल्सेस, इट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस व्हिच वी आर गोइंग टू लुक. रागी और मिलेट, इज इट अ पार्ट ऑफ सीरियल्स. तो ये भी आपको पता चाहिए, किसको सीरियल्स बोलेंगे, किसको पल्सेस बोलेंगे, किसको कमर्शियल ये बोलेंगे. तो दीज आर द 2 क्रॉप्स जहां कमीशन ऑन कॉस्ट एंड प्राइसिंग डू नॉट announce MSP, or they do not recommend, but Government of India announces. That is dehusked coconut and torai seeds. Torai is an oil seed. तो ये भी आपको पता चाहिए. And how does Commission on Agriculture Cost and Price come up with MSP? So it is based on two factors. That is A2 is what, input cost. जो भी उस क्रॉप को तैयार करने के लिए जो भी इनपुट लगे हैं उसका कॉस्ट, प्लस FL, दैट इज फैमिली लेबर जो भी कॉस्ट है विद रिस्पेक्ट टू जो राइट फ्रॉम हार्वेस्टिंग, सोइंग एंड जो भी कॉस्ट लगा है फैमिली लेबर का, वो कैलकुलेट किया जाता है. एंड 50% ऑफ दिस A2 एंड FL जितना भी होगा उसको प्लस 50 कर देते हैं, 50% प्लस 50%, वो उस हिसाब से MSP is decided. But what farmers are demanding, or what Swaminathan committee said, that जो MSP होना चाहिए, it should be based on C2 cost. तो आपको C2 cost पता चाहिए. C2 includes the input cost, family labor, तो ये 2 भी है, प्लस रेंटल एंड इंटरेस्ट. जो भी इनकम लगा है, जो भी लैंड का रेंटल इनकम है वो भी कैलकुलेट करो, प्लस इंटरेस्ट विच द फार्मर्स हैज टेकन, उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करो. तो जो C2 कॉस्ट है वो बड़ा कॉस्ट है. इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, दैट इंक्लूड्स इनपुट ऑल्सो, फैमिली लेबर ऑल्सो, एंड रेंटल एंड इंटरेस्ट पार्ट ऑफ वो भी इंक्लूड किया जाता है. तो होपफुली यू हैव गॉट एन इंपॉर्टेंट आइडिया थ्रू दिस इंपॉर्टेंट सेशन. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. नेक्स्ट इज FRP भी आपको पता चाहिए. FRP भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता चाहिए. MSP for sugarcane is in the form of FRP, that is fair and remunerative prices. So it is a minimum price that sugarcane mills have to pay to sugarcane farmers. So that is the minimum price which the sugarcane mill have to pay to the farmers, and this is decided as it is MSP of sugarcane. तो ये भी आपको पता चाहिए. And it is determined by central government on the basis of recommendation of Commission on Agriculture Cost and Prices. तो ये भी important है. And FRP of sugarcane is determined under sugarcane order and announced by Cabinet Committee of Economic Affairs, similar to MSP. Secondly, I want to tell you कि apart from this MSP, every state gives additional amount, suggest an additional amount in the form of state administered price, SAP बोलते हैं, which is greater than FRP. So every state has different SAP which is more than FRP, and
तो ये आपको पता चाहिए, SAP is decided by state and FRP is by central government. And you should also know that while deciding FRP, which are the factors which are taken into consideration, such as cost of production, domestic and international prices, overall demand and supply situation, intercrop price parity, among others. तो ये सबसे important criteria होते हैं, based on that FRP is decided. FRP is for sugarcane, again based on the recommendation of Commission on Agriculture Cost and Pricing. Moving forward, this is not just with respect to current affairs. There was another news with respect to WTO and complaints made by Australia and Brazil. So going to the basics, what you should know that under agreement on agriculture, which is an important agreement under WTO, the domestic support which every country can give for its farmers in the form of subsidies is, the developing countries can give 5% of the agricultural output and the underdeveloped countries can give 10% of the agricultural output. उतना ही subsidies दे सकते हैं. And this prices की output and जो कौन से बेसिस पर प्राइस डिसाइड होंगे was 1986-88. तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता चाहिए. But what I wanted to tell you that कि जो डोमेस्टिक सपोर्ट है, it is 5% for developed countries and 10% for underdeveloped countries like India. What Australia and Brazil has done is they have complained to WTO that India has not been calculating or has not been adding FRP as a support given to farmers, and it was excluded from the subsidies, and that is why they think that India has given more subsidies to farmers and it is affecting the trade, it is affecting the prices. So ये एक important complaint was placed in WTO by Australia and Brazil, and it said कि जो भी सपोर्ट डोमेस्टिक सपोर्ट देता है, it has to be notified and it has to be notified to WTO, and India did not notify that FRP subsidies given to the farmer to WTO because these subsidy fall under which box? Amber box. तो ये जो सब्सिडी है which are price distorting subsidies are amber box, and every country has to limit this amber box subsidies. There are other box subsidies जो आपको पता चाहिए, that is green box and blue box, which are not part of AMS, agreement on जो AMS होता है, which we said कि जो हम कितना सपोर्ट देंगे, सिर्फ 10% सपोर्ट देंगे. तो ये that is AMS, and what we wanted to tell is कि जो हमारा amber box सब्सिडी में है वो 10% ही अलाउड है, and that जो भी डोमेस्टिक सपोर्ट देते हैं that falls under amber box. तो ये भी आपको पता चाहिए. Next is ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स का डिफरेंस अमॉन्ग सब्सिडीज आपको पता चाहिए. तो ब्लू बॉक्स इज एनी सपोर्ट दैट वुड नॉर्मली fall under amber box is placed in blue box if the support also requires farmers to limit production. तो अगर farmers को production limit करना है तो क्या होता है कि जो सपोर्ट है इट गोज इनटू, जो भी सपोर्ट गवर्नमेंट ने दिया है इट गोज इनटू ब्लू बॉक्स. नॉर्मली जो भी सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है टू फार्मर्स व्हिच अफेक्ट्स द ट्रेड, व्हिच अफेक्ट्स द डिस्टॉर्शन, इट गोज इनटू एम्बर बॉक्स. लेकिन ऐसे कुछ सब्सिडीज है which tells the farmers to limit the production, that goes into blue box, and at present there is no limit to spend on blue box subsidies. तो ये important चीज आपको पता चाहिए. Then there are green box subsidies, these are subsidies which does not cause trade distortion, नहीं करता है, majorly given for R&D, environment protection, and these are also without limitation. The developing countries and developed countries can give unlimited subsidies in blue box and green box, but amber box के जो subsidies है which are directly affecting the trade, directly distorting the trade, has to be limited, and कितना limit दे सकते हैं? 10% for underdeveloped countries and 5% for developed countries. तो ये पता चाहिए. And what Australia and Brazil said कि India did not calculate the FRP or the subsidy which the domestic support which government of India is giving under AMS or under amber box subsidies. तो ये आपको पता चाहिए. Whenever there is any dispute at WTO level, there are three mechanisms. First is there is bilateral consultation. First, WTO wants the countries to settle the disputes among themselves. Next is there is dispute settlement panel, which if the bilateral consultation does not work, it goes to dispute settlement panel, and the order of the dispute settlement panel can be challenged at the highest authority, that is WTO appellate body. This WTO appellate body is the highest
decision making body with respect to disputes. तो ये एक important चीज आपको पता चाहिए. Appellate body is not functioning from many years because US has been blocking appointment of members to this body. Appellate body, WTO appellate body, highest body with respect to taking decisions. So hope you are aware of this. Next, in this budget, what Government of India said कि जो आपको hopefully ये जो FRP का जो concept है वो समझ आ गया. SAP is different for every state and it is above FRP, so you should know this. Next is I want to tell you that this year's budget also focused excessively on millets. So there can be a question on millets. That is one of the important things which you should know, that it says, the budget said there would be support for post-harvest value addition, branding and enhancing domestic production of millets. So basically why Government of India is supporting millets, I would tell you in detail as we go forward. But you should know that this year is International Year of Millets, and basically millets are what? These are small seeded grasses. Majorly कौन से हैं? Sorghum, pearls, pearl millet होता है, then there is finger millet, ragi, few of the important millets, then there is kodu, kutki and chena, few of the domestic or indigenous millets है, तो ये आपको पता चाहिए. And जो millets है, it takes around 3 to 4 months to grow. Most of the millet take 3 to 4 months. They can grow even on fertile ground, on less fertile ground. तो ये आपको पता चाहिए. दे आर क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट है एंड दे हैव लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस दे आर वेरी गुड फॉर डायबिटिक पीपल, क्योंकि द शुगर इज रिलीज स्लोली. सेकेंडली दे हैव हाई फाइबर, हाई कैल्शियम, हाई आयरन कंटेंट. तो ये आपको पता चाहिए. फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट मिलेट्स विच आर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए. दैट इज ज्वार या उसको सोरगम भी बोलते हैं. It is a kharif crop in northern India and rabi crop in southern India. It is originated in Africa. Majorly Maharashtra and Karnataka are the major producers. तो ये basic information आपको पता चाहिए. Next is बाजरा के बारे में पता चाहिए. It is a kharif crop resistant to dry season, so dry region maybe it can be grown. Rajasthan, UP and Gujarat major producer of bajra. Next is ragi. Ragi is an important millet. Because it has huge nutritional value. It is also known as African millet. Kharif region में है. Karnataka major producer है. Iron and calcium major इसमें components है. Antioxidants भी बहुत सारे मिलते हैं. And it is also adaptable to be grown at heights around 2000 feet from the sea level. It can be grown. तो ये एक important चीज पता चाहिए. Moving forward, millets and cereal का difference आपको पता चाहिए. So cereals, there are various cereals which we are producing, and millet is one type of cereals. लेकिन you should know what do you understand by cereals. So cereals is what? Cereals are any grass cultivated for edible component of grains. तो जो भी grasses grow करते हैं and उस grass में से अगर कोई grain तैयार होता है which is used for edible content, and that grain is composed of endosperm, germ and bran, that type of grain is known as cereals. तो various type of cereals आपको पता चाहिए. कौन से हैं सीरियल्स? फर्स्ट इज मेज, राइस, व्हीट, मिलेट्स, बार्ले, सोरगम एंड ओट्स आर ऑल सीरियल्स है. तो ये आपको डिफरेंस आपको पता चाहिए. एंड सीरियल्स मैंने जैसे बोला, एनी ग्रास कल्टिवेटेड फॉर एडिबल कंपोनेंट ऑफ द ग्रेन. जो ग्रेन है वो, एंड दैट ग्रेन शुड हैव एंडोस्पर्म, जर्म एंड ब्रैन. ये आपको पता चाहिए. विद रिस्पेक्ट टू सीरियल्स, यू शुड नो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सीरियल्स, एंड 95% जो एक्सपोर्ट्स हो रहा है इज राइस. जो मेजर सीरियल विच इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम India is rice. 95% of our cereal exports में rice है. Next is this year's budget also said it focused on interlinking of rivers. Interlinking of rivers पर बहुत important focus दिया था इस साल के बजट में. तो major project which is taking place is Ken Betwa interlinking of rivers. तो एक सबसे important project है which has been started and which is going to, and this year's budget has allotted money for this important budget, and what we are doing is cane water is being transported to Betwa river. And through this project what we are going to do is 221 kilometers of canal, and a Dhuadhan dam would be constructed under this project. SPV, special purpose vehicle, has been set up, that is Ken Betwa Link Project Authority. एक important authority establish गया है for implementation of this project. तो Ken Betwa के बारे में पता चाहिए. And both these rivers are tributaries of Yamuna. And Ken River, additional information, it passes through Panna Tiger Reserve. And this Ken Betwa
interlinkage of river is part of national perspective plan. National perspective plan क्या है? एक important plan है at national level where we are planning to interlink what Himalayan. There are two aspects of this plan, that is Himalayan aspect and peninsular aspect. So under this plan what we have is we have various projects, various rivers to be interlinked, and इसमें सबसे पहला project जिसमें उन्होंने बोला था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में, दैट इज केन बेतवा इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर. तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए दैट इज हिमालयन. तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इज अ एट द नेशनल लेवल प्लान है विद रिस्पेक्ट टू इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर. Earlier there was an important with respect to interlinkages of river. Recently we have set up an important organization that is National Interlinking of River Authority. Earlier we had National Water Development Authority, but it has been replaced by an important authority, autonomous independent authority, that is National Interlinking of River Authority. And this authority, Interlinking of River Authority, is aim, इसका major function क्या है? Planning, investigating, financing and implementing interlinkages. जो भी interlinking projects है उनको ये करना, planning करना, investigating करना, उसको implement करना, and as I said, it is an autonomous body, and it would work with coordination with states and countries also, because some of the rivers are interstate rivers and some are international rivers. So coordinating between various states and countries is part of that, and the officer would be of the rank of secretary. Officer of this, the head of this body would be of a rank of secretary. तो ये एक important concept with respect to interlinkages of river पता चाहिए. There are 5 draft plans which are ready with respect to other rivers which are to be interlinked. उसमें कौन सा है? सबसे important है दमन गंगा and पिंजल. Next is दमन गंगा, you should know it flows into Arabian Sea. Another important information, दमन गंगा. And this दमन गंगा, जो भी ये प्रोजेक्ट से कौन से सिटी को फायदा होने वाला है? नवी मुंबई. तो द मेजर बेनिफिट ऑफ दिस दमन गंगा पिंजल प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स वुड गो टू नवी मुंबई. तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. देन देयर इज पार तापी नर्मदा प्रोजेक्ट, कृष्णा पेन्नार प्रोजेक्ट, गोदावरी कृष्णा इंटरलिंकेजेस एंड पेन्नार कावेरी. ये 5 projects are in the phase of draft stage. This year budget also said कि जो भी MSME related portals, we have developed various portals and database web portals हमने develop किए हैं. What we would do is interlink all those portals together. So which are the important portals which government had launched to support MSME sector, and schemes which are given in budget also important from current aspect आपको पता चाहिए. First is उद्यमी initiative पता चाहिए. उद्यमी portal है. It is an initiative of Micro MSME Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, and it is for registration of MSME companies. And what we are doing through is we are streamlining the process of registration of MSME companies. It is online, paperless and based on self-declaration, and registration process is completely free. And the aim of this Udyami initiative is to help ensure ease of doing business. तो उद्यमी पोर्टल या उद्यमी इनिशिएटिव आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज वी हैव ई श्रम पोर्टल. तो अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, इट एम्स एट क्रिएटिंग नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर. एंड जो भी डेटाबेस है ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, एज यू नो कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ हमारा जो वर्क फोर्स works in the informal sector, and majority of them are in unorganized sector. And this e-shram portal, what it would do is it would give a e-shram card to every unorganized worker, which will be a 12-digit unique number, and most of the benefits for unorganized sectors, various schemes for unorganized sectors can be availed through this e-shram portal and e-shram card. तो ये आपको पता चाहिए. And this is an initiative of Ministry of Labour and Employment, and it would be a single window that would help, म्हणजे सिंगल पॉइंट रेफरेंस रहेगा, where all the unorganized worker would be under one portal, and they can get all the benefits which government of India has launched for unorganized sectors, such as various insurance, Pradhan Mantri Jan Suraksha Yojana, Bima Yojana. All the important schemes for unorganized sectors can be availed through this card and through this portal. एक important portal है, national database है, तो ये आपको पता चाहिए. Then there is Asim portal also, which you should know. Asim portal के बारे में पता चाहिए. Basically Asim portal is what it is, आत्मनिर्भर, basically it is आत्मनिर्भर skilled employer mapping portal है. Basically तो जो भी skilled workforce है, they should get right job
उसको इंश्योर करने के लिए इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने डेवलप किया है. एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डेवलपिंग नेशनल स्किल डेवलप, एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन कोलैबोरेशन विद बेंगलुरु बेस्ड बेटर प्लेस. एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, उन्होंने मिलके बनाया है, दैट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड बेटर प्लेस. एंड द एम इज टू फाइंड, and the aim of this portal is to help skilled person find sustainable livelihood opportunities. तो skilled person को right job मिलना एक असीम पोर्टल का important aim है. And it provides real time AI based data analytics about the demand and supply of skilled jobs. तो basically it gives information कि कौन से सेक्टर में jobs ज्यादा है, कौन से सेक्टर में demand है, and tries to match both the things and give a right data so that the students and those who are trying to opt for job can find कि कौन से सेक्टर में ज्यादा जॉब अवेलेबिलिटी है. तो क्या करता है, एक रियल टाइम AI बेस्ड डेटा एनालिटिक्स सिस्टम इसके अंदर बिल्ड इन है. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए. Next is as I told you कि this has been developed by National Skill Development Corporation along with Better Place. National Skill Development Corporation के बारे में पता चाहिए आपको. It is a non-profit public limited company incorporated in 2008. तो ये आपको पता चाहिए. And it was set up by Ministry of Finance as a public-private partnership. Presently, Government of India is running this company on behalf. So basically now it was set up by Ministry of Finance, but now it has been run through Ministry of Skill Development and Enterprise, which holds 49% of the share of NSDC, while the private sector holds 51% of the share. Though set up by Ministry of Finance, presently the major 49% is by Ministry of Skill Development and Enterprise, and it aims to promote skill development by catalyzing creation of large quality non-profitable vocational institutions. So what this organization does is it tries to build, it supports setting up of big organization which gives training, which gives skills to all the required people. So basically it supports creation of large quality non-profitable vocational institutions. Hopefully you are getting important part through this important प्रोग्राम. आपको पता चाहिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन किसने सेटअप किया था, अभी कौन ओनर है एंड क्या रोल है, ये आपको पता चाहिए. दिस बजट आल्सो सेड कि we are supporting an important program that is raising and accelerating MSME performance. RAMP program है which is supported by World Bank. एक important government ने program launch किया है that is raising and accelerating MSME program which is supported by World Bank, and the aim of this program is improvement in the performance of 5.5 lakh MSMEs. उनका performance improve करना एक important aim है इस RAMP program का, and this program will provide better access to finance and working capital for MSME by strengthening the financing market. So side by side, rather it also aims at improving performance and ensuring that MSME get finance at low cost and finance is accessible to MSME. तो ये एक important चीज आपको पता चाहिए, that is raising and accelerating MSME program, RAMP program, you should know. Moving forward, another important term which was used in budget and always in news is emergency credit line guarantee scheme, which was launched during second COVID के वक्त. This program was launched and this program was extended recently till March 2022, and the program was launched as a part of Atmanirbhar Bharat package, and the aim of this program was to mitigate the distress caused by coronavirus induced lockdown by providing credit to different sector, especially MSME sector. So what we are doing is we are providing credit to MSME sector, and this credit is collateral free. Collateral free matlab you do not have to give any security. So bank provide additional loans to existing borrower without asking for any extra collateral. So as most of the MSMEs are facing problem, additional loan would be given to whom? To those who have already taken loan without any extra guarantee or collateral. तो ये आपको पता चाहिए. And the banks, to encourage banks, these loans are fully guaranteed by government against credit loss. So why would bank give additional loan until they get a guarantee? क्या अगर if the MSME defaults, who would pay for them? Government of India said कि we give you a guarantee. If MSME does not pay, we would pay that loan. You just give the loan to MSME sector.
तो as it is a collateral fee, the guarantee in this is not given by MSME but by Government of India, and this is given by an important company, that is National Credit Guarantee Trust Company. It is a private limited company established by Department of Financial Service under Ministry of Finance, who as a wholly owned company of the Government of India to act as a common trustee company for multilateral guarantee fund. तो बेसिकली जितने भी गारंटी, जो भी गवर्नमेंट गारंटी देता है, इट इज गिवन अंडर दिस important company. This company is which is responsible if any loan is not paid by MSME, and if that loan is backed by any government का guarantee, this company pay that loan. तो ये आपको पता चाहिए. And credit guarantee program are designed to share the lending risk of the lender and in turn facilitate access to finance for prospective borrowers. So basically just this National Credit Guarantee Trust Company Limited is an important company which looks into this guarantee aspect of this emergency credit line guarantee scheme. So under this, what government is doing is it is giving guarantee for loans taken by MSME. It is taking guarantee for loans taken by MSME. Hopefully you have got an idea through this important program. What we learned through this 20-minute session was we learned, हमने MSME तो पिछले लेक्चर में देखा था, हमने FRP देखा, हमने SAP देखा, हमने फैक्टर्स देख लिए, हमने FRP कौन डिसाइड करता है, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड करता है, ये देख लिया हमने. साइड बाय साइड व्हाट वी सॉ WTO दैट ब्राजील एंड जर्मनी हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट एंड दे हैड सेड कि जो हमारा AMS जो हमारा है दैट इज 10% मैक्सिमम एम्बर बॉक्स सब्सिडीज हम दे सकते हैं. तो व्हाट ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील हैज सेड कि इंडिया हैज वायलेटेड एंड FRP इज नॉट कैलकुलेटेड अंडर दिस 10% एंड इंडिया हैज वायलेटेड दिस. एंड जो डोमेस्टिक सपोर्ट फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है इन द फॉर्म ऑफ MSP और FRP इज पार्ट ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडीज. Then we saw difference between blue box and green box. Blue box is all the amber box subsidies which are normally all the subsidies would be, जो भी normal amber box subsidies would be considered, जो भी blue box subsidies are basically amber box subsidies, but they focus more on restricting production of agricultural production, restricting the agricultural production पर major focus है. तो blue box is majorly all the subsidies which are limiting production, agriculture production, and green box are which are promoting R&D, protection of environment, which are promoting R&D. तो ये आपको पता चाहिए. and both are limitless, इसको कोई लिमिट नहीं है. इधर मैक्सिमम लिमिट हमारा कितना है, 10% है. तो ये आपको पता चाहिए. then we looked into केन-बेतवा interlinking of project, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी हमने देख लिया, अदर 5 रिवर ड्राफ्ट रिवर्स हमने देख लिया. साइड बाय साइड वी लुक्ड इनटू वेरियस पोर्टल्स, वी लुक्ड इनटू वेरियस पोर्टल्स. जैसे हमने असीम पोर्टल देख लिया विच इज अ इनिशिएटिव ऑफ नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड बेटर लाइफ. AI driven platform है where the skilled person are the aim is to that the skilled person get a right job and he is able to find the job. तो हमने असीम पोर्टल देख लिया, हमने रैम्प स्कीम देख लिया. It is a WTO supported scheme to improve the performance, and side by side we ensure that it also provide better financing to MSMEs. हमने e-shram portal भी देख लिया. e-shram is all the unorganized sectors are together. And लास्ट में उद्यमी इनिशिएटिव भी हमने देख लिया. इफ यू लाइक आवर वे ऑफ टीचिंग एंड इफ यू वांट टू कवर एंटायर करंट अफेयर्स ऑफ 2 years, you can join our target 140 plus current affairs batch where we have covered current affairs of last 2 years in the most comprehensive way, linking current with static. As I already told you कि Government of India released forest report. The exact name of this report जो आपको पता चाहिए, that is Indian State of Forest Report. Indian State of Forest Report is the exact name of this report. The MCQ might be कि forest report, लेकिन आपको basic नाम पता चाहिए. And this is the 17th report जो आपको पता चाहिए. 2019 में रिलीज किया गया था. And this is the 17th report. It is brought out by Forest Survey of India. बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे एंड विल लिंक इट विद द स्टैटिक सिलेबस. देहरादून में बेस्ड है फॉरेस्ट सर्वे. जब भी फॉरेस्ट सर्वे की बात आई तो फॉरेस्ट सर्वे कहाँ बेस्ड है, दैट यू शुड आल्सो नो. एस्टैब्लिश इन 1981. द फर्स्ट फॉरेस्ट सर्वे वाज डन इन 1987. ये आपको पता चाहिए. एवरी 2 years इट इज बीइंग कैरिड आउट. एवरी 2 years बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी 2 years बाइनियल बोलते हैं. सेकेंडली विद सैटेलाइट डेटा इज यूज, रिसोर्स सैट 2. तो ये आपको पता चाहिए, रिसोर्स सैट 2. MCQ might come from this, resource sat 2.
एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, उससे उसका डेटा हम यूज करके वी आर एनालाइजिंग व्हाट द फॉरेस्ट, हाउ मच फॉरेस्ट इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है, साइड बाय साइड व्हाट इज द इंक्रीज. सो इट इज नॉट काउंटेड मैन्युअली बट थ्रू फॉरेस्ट थ्रू डेटा फ्रॉम रिसोर्स साइट टू. तो ये इंपॉर्टेंट है. जब भी हम फॉरेस्ट सर्वे की बात करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ सेंसस वेयर वी नो where we are calculating the number or area में ऑफ फॉरेस्ट. तो इट इज अ टाइप ऑफ सेंसस. तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसस जो आपको पता चाहिए, दैट इज पॉपुलेशन सेंसस इज एवरी 10 years. 2021 में वी स्टार्टेड द 16 सेंसस, तो ये आपको पता चाहिए. लाइफ स्टॉक सेंसस इज एवरी 5 years. एग्रीकल्चर सेंसस इज अगेन एवरी 5 years. फॉरेस्ट सर्वे 2 years. टाइगर सेंसस 4 years. तो एवरी 4 years इज टाइगर सेंसस. नेक्स्ट इज एलिफेंट सेंसस 5 years एंड राइनो सेंसस 3 years. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. राइनो का IUCN स्टेटस है आपको पता चाहिए, वल्नरेबल है. एलिफेंट का क्या है, एंडेंजर्ड है. टाइगर का एंडेंजर्ड है. तो ये साइड बाय साइड चीजें यू शुड नो. तो आपको एक क्यूरियोसिटी आपको जानना जरूरी है. क्यूरियोसिटी जानना, इनकलकेट करना थ्रू दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. थ्रू दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. मूविंग फॉरवर्ड, जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, वी ऑलवेज से कि हमारे पास कितना फॉरेस्ट चाहिए, 33% फॉरेस्ट ऑफ द टोटल लैंड. अगर इंडिया का टोटल एरिया इज, इफ यू कंसिडर रफली, अगर हम सपोज करें कि 100 यूनिट्स है एरिया, उसमें से 33% शुड बी फॉरेस्ट. सो हाउ डिड दिस 33% केम इन. तो ये इंपॉर्टेंट चीज यू शुड नो. हाउ डिड दिस 33% केम इन. 33% was mentioned in National Forest Policy 1988 and it mentioned not just forest cover but it said forest cover plus tree cover should be 33%. 33% अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको पता चाहिए. क्वेश्चन आ सकता है कि द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, फॉरेस्ट पॉलिसी साइड की द फॉरेस्ट कवर शुड बी 33%, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर शुड बी 33%. तो यू शुड नो क्या है, फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर शुड बी 33%. ये इंपॉर्टेंट डेटा वाज गिवन अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज इंडिया में अकॉर्डिंग टू 2021 का जो रिपोर्ट इंडिया ने पब्लिश किया है, विच इज द 17th रिपोर्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट का, which said it says कि 17 states and union territories have achieved this target of 33%, where area is 33% of its area is under forest. बहुत important है. So if you analyze, we are not just looking at one aspect but we are going backwards. We are going horizontally also, vertically also. We are linking current with static also. बहुत important है. Next is the functions of FSI भी आपको पता चाहिए. Normally सिर्फ ये जान के important नहीं है कि it conducts forest survey of India, Indian state of forest नहीं, but there are other roles of forest survey of India जो आपको पता चाहिए. First is it is one of the major national survey organization of India. Other survey organization of India which you should know is Survey of India भी एक important organization है. तो survey organization है. What it does is it surveys forest. तो बहुत important है. It prepares state of Indian forest report. तो ये मैंने जैसे बोला, as we have discussed already, and it assesses latest forest cover in India and the changes associated with it. Next is it conducts inventory in forest and non-forest area. तो कितना forest area है, non-forest area है, and developing database on forestry resource. तो what are the forestry resources में क्या क्या चीज है, वो डेटाबेस को ये क्या करता है, सर्वे करता है, डेवलप करता है. नेक्स्ट इज इट एक्ट एज अ नोडल एजेंसी फॉर कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, स्टोरिंग एंड डिसेमिनेटिंग स्पेशल डेटाबेस ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज. तो जो भी डेटा है उसका कलेक्ट करना, कंपाइल करना, एनालाइज करना, डिसेमिनेट करना विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट रिसोर्स, द रोल इज ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. तो ये आपको पता चाहिए. साइमल्टेनियसली जब भी हम ग्लोबल लेवल की बात करें तो यू शुड नो देयर इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट विच वाज पब्लिश इन 2020. बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, 2020 में पब्लिश किया, एंड इट इज पब्लिश्ड बाय हूम, पब्लिश्ड बाय FAO. बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इट सेज वर्ल्ड रैंकिंग में हाउ मच फॉरेस्ट इज इन इंडिया. अगर इफ यू सी परसेंटेज वाइज इंडिया में फॉरेस्ट कितना है, इट्स ऑलमोस्ट 2%, एंड इंडिया रैंक्स 10th विथ रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट कवर. अगर ग्लोबल लेवल पर हमने कंसिडर किया तो फर्स्ट कौन सा है, रशिया है विद 20%. तो इफ यू से MCQ आता है कि कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट सबसे ज्यादा रहेगा, तो कौन सा टाइप ऑफ बोरियल फॉरेस्ट सबसे ज्यादा रहेगा, कॉनिफरस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा रहेगा, क्यों रशिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है. वर्ल्ड वाइड भी दैट फिगर वुड बी देयर. तो यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फिगर. नेक्स्ट इज व्हाट इज द एनुअल गेन में भी इंडिया इज थर्ड. तो ये आपको पता चाहिए. इफ यू सी कि एवरी ईयर
how much, which country is increasing its forest cover with respect to that? India is third. तो ये भी आपको पता चाहिए. Next is another important report at the global level which you should know is State of World Forest Report. State of World Forest Report. It is published by FAO and UNEP. It says 31% of global land is forest. 31% of global land is forest. Are you trying to get how we are not just covering static aspect but linking it with static syllabus also? तो बहुत important है current plus static. Another important report, हम रिपोर्ट्स कर रहे हैं तो साइड बाय साइड और एक रिपोर्ट पता चाहिए, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी रिलीज बाय WWF. तो ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच यू शुड नो. ठीक है, ठीक है, चलेगा. नेक्स्ट इज व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इट हैज वेरियस टर्म. फर्स्ट टर्म कौन सा होता है? फॉरेस्ट कवर. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेस्ट कवर? फॉरेस्ट कवर बहुत इंपॉर्टेंट है. Forest cover is where canopy density is more than 10%. Canopy density is leaves का density. If a satellite is seeing from above, canopy density is more than 10% and area कितना चाहिए? More than 1 hectare. ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट कवर बोलेंगे. फॉरेस्ट कवर तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको पता चाहिए. फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन क्या है? 10% कैनोपी डेंसिटी एंड मोर देन 1 हेक्टर. Do not go with my spellings, they are very poor. तो more than 1 hectare area, इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेस्ट कवर बोलेंगे. अगर कैनोपी डेंसिटी, if canopy density is more than 10% and area is less than 1 hectare, less than 1 hectare, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम ट्री कवर बोलेंगे. ट्री कवर बोलेंगे. तो क्या है यहाँ? कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 10%, बट व्हाट लेस देन 1 हेक्टर है एरिया, तो इसको हम ट्री कवर बोलेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट डेटा आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज उसके बाद और एक है श्रब्स. श्रब्स किसको बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी? श्रब्स इज वेयर कैनोपी डेंसिटी इज लेस देन 10%, वेयर ट्रीज आर नॉट डेंसली स्प्रेड. तो ये आपको पता चाहिए. कैनोपी डेंसिटी इज लेस देन 10%, उसको हम क्या बोलेंगे? श्रब बोलेंगे. This is how I have told you. Forest cover more than 10%, 1 hectare. Shrubs less than 10% of canopy density. Tree cover is where canopy density is more than 10%, but area is less. Forest Survey of India again classifies forest cover into 3 types of forest. First is very dense forest. Very dense forest मतलब क्या? Very dense forest में you have canopy density more than 70%. इसको हम क्या बोलेंगे? Very dense forest. Then we have moderate dense, जहां 40 to 70% क्या है? Canopy density है. Third is open forest where canopy density is between 10% and 40%. 10% से नीचे गया तो it would be shrubs. तो 10 to 40 is open forest. Moderate is 40 to 70. Very dense is more than 70. You will find the notes of this on our Telegram channel. वहाँ share करने की कोशिश करूँगा. But if you write, it would be very helpful. तो next is, if you see Forest Survey of Report 2021 का रिपोर्ट देखोगे, इट सेज कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी डेंस कितना है? 3.04 है. एंड वेरी डेंस फॉरेस्ट हैज इंक्रीज कंपेयर टू 2019. क्या है? 2019 के कंपैरिजन में वेरी डेंस फॉरेस्ट हैज इंक्रीज. नेक्स्ट इज मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितना है इंडिया में? 9.33%. बट इसका 2019 के कंपैरिजन में ये कम हुआ है. एंड ओपन फॉरेस्ट कितना है? 9.34 एंड इसका परसेंटेज बढ़ा है इसको 2019 के कंपैरिजन में. सो इफ यू रियलाइज, जब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट को कट किया जाता है, इट टर्न्स डाउन इनटू ओपन फॉरेस्ट. तो ये आपको पता चाहिए. तो कौन सा कम हुआ है इंडिया में? Moderately dense forest कम हुआ है, but open forest and very dense forest has increased according to 2021 report. बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. किसको बोलते हैं? नेक्स्ट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कौन सा होता है? द फॉरेस्ट विच इज रजिस्टर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट क्या है? जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कौन से एरिया को हम क्या बोले? कौन से एरिया में गवर्नमेंट, इफ यू सी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स, उसमें जो भी फॉरेस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया. एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. तो ये आपको पता चलेगा. एफएसआई ने क्या कर दिया? एफएसआई ने बोल दिया फॉरेस्ट कवर क्या है? 3 टाइप का है:
वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन। लेकिन हमारा गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस इट इज यूजिंग दिस क्लासिफिकेशन, दैट इज रिजर्व, वेयर which is maximum 53% of our total forest is recorded. Well, all activities are prohibited, all activities are prohibited. Next is protected forest, where all activities are allowed until prohibited, and there is unclassified जो 18% है, where there is no restrictions, where there is no restrictions. Next is national forest inventory, आपको पता चाहिए। So in Forest Survey of India, Indian State of Forest Report जो हम 2021 में है, it also brings out National Forest Inventory. Basically, what is National Forest Inventory? Basically, it's a record of what? A record of growing stock in forest and tree outside forest, bamboo resource and carbon stock. तो जो भी resources forest में मिलता है उसका एक evaluation है, तो उसको क्या है? It maintains record. तो National Forest Inventory में what we do is we maintain record of growing stock in forest, tree outside forest, bamboo resource and carbon stock का हम measure करते हैं. It also assesses dependency of people living in forest range, forest fringe villages for fuel wood, fodder, small timber and bamboo. तो उसका dependency of forest people who are living in the fringe areas, उसका उन लोगों का dependency भी ये measure करता है. तो National Forest Inventory is what it is also released by Forest Survey of India under Indian State of Forest Report में ही ये होता है, and it is a record of growing stock. मैं बताऊंगा what is growing stock. So here whenever we are looking at any point, we go into the definition of it, then only you can remember things for a longer time. तो हमने इसी तरह हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है 1st of February से, we are covering everything in similar way. Next is as I said कि what do you understand by growing stock, बहुत इंपॉर्टेंट है. growing stock मतलब क्या? It is volume of all living trees in a given area of forest. तो volume of all living trees in a given area of forest, उसको हम क्या बोलेंगे? growing stock बोलेंगे. And it is measured in solid cubic meters. solid cubic meters में हम इसको measure करते हैं. And it is important for calculating what? biomass and carbon stock. बायोमास एंड कार्बन स्टॉक को मेजर करने के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज ग्रोइंग स्टॉक. तो एनीवन कैन आस्क यू व्हाट इज ग्रोइंग स्टॉक. तो these terms are being used in Forest Survey of India का report, Forest Survey. So what we are doing is comprehensively cover करें, and National Forest Inventory में which is again released by Forest Survey of India, हम क्या measure करें? growing stock. growing stock मतलब क्या? volume of all living trees in a given area, cubic meters में हम इसको calculate करते हैं, important for calculating biomass and carbon stock. Next is highest कहाँ है growing stock? छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, ये आपको पता चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, एज आई सेड कि जो टोटल हमारा फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर हमें कितना मेंटेन करना है? 33% मेंटेन करना है. अभी इंडिया में कितना है? 24.6% है. 24.6% है. What was realized is total forest area and tree cover में कितना ग्रोथ हुआ है? 2261 square kilometers of forest growth हुआ है. Extra additional compared to 2019 we have able to regenerate forest. तो उसमें से जो forest cover है, as I said, forest cover is canopy density more than 10% and more than 1 hectare. 1540 square kilometers है. Tree cover is where the area is less than 1 hectare. वो कितना है? 761 kilometers से बड़ा है. 761 square kilometers से बड़ा है. With respect to ये total forest cover and tree cover compared to 2019 कितना बड़ा है? 2261 square kilometers बड़ा है. Next is area wise. If you see area wise, Maharashtra has the highest tree cover, followed by Rajasthan and Madhya Pradesh. Percentage wise, Chandigarh, Delhi and Kerala has highest tree cover. तो ये आपको पता चाहिए. area wise सबसे ज्यादा tree cover कहाँ है? is not in Madhya Pradesh but in Maharashtra, Rajasthan and MP. तो ये आपको पता चाहिए. Next is as I said कि open forest बड़ा है, उसके बाद very dense forest बड़ा है, already seen, and moderately dense forest क्या हुआ है? कम हुआ है. तो ये आपको पता चाहिए. Next is कौन से area wise सबसे ज्यादा forest कहाँ है इंडिया में? area wise मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, then छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र. तो ये सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट है. परसेंटेज वाइज मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड. तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में परसेंटेज वाइज दे हैव ह्यूज फॉरेस्ट. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज टॉप इंक्रीज कहां हुआ है कंपेयर टू 2019? सबसे ज्यादा इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट कवर कहां हुआ है? फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश. दिस इज नॉट अरुणाचल प्रदेश बट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा. तो ये आपको पता चाहिए, तेलंगाना एंड उड़ीसा. होप यू आर एबल टू लिंक विद दिस वीडियो. अगर आपको समझ आ रहा है तो हिट द लाइक बटन. कमेंट सेक्शन में भी लिख रहा है. थोड़ा सा बड़ा वीडियो होने वाला है एंड वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग. चलेगा?
Next is this forest survey also said कि first time what we are doing is we are calculating or we are assessing forest cover in what? Forest cover in tiger reserves and lion conservation area में का भी हम forest cover measure करेंगे. तो this was first time said or first time done in this 2021 का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में फर्स्ट टाइम इट वाज डन. चलेगा. नेक्स्ट इज जब भी हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म हमेशा न्यूज में आता है एंड इट वाज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हिच वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग जो हमारा अर्थ समिट हुआ था. सो 1992 के जब समिट हुआ था तो there were 3 legally binding documents and 3 non-legally binding documents. 3 legally binding documents जो आपको पता थे, that is UNFCCC Climate Change Convention, then UNCCD Convention on Combating Desertification and CBD Convention on Biodiversity. ये क्या थे? Legally binding थे, legally binding, and one of the non-legally binding documents was forest principles. So forest principle कहाँ, when did it came into light? Was during Earth Summit. तो ये आपको पता चाहिए. Next is जब भी हम forest principle की बात करते हैं तो you should know what is forest principles. It is a non-legally binding document that makes several recommendations for conservation, management and sustainable development of forests. तो उसके management के लिए recommendations दिए थे, उसको forest principles बोलते हैं. तो लेकिन आपको ये word बहुत important है, 1992 में आया था. You should know about this important document. नेक्स्ट इज जब भी हम एज वी सेड हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म ऊपर देखा था was with respect to इंपॉर्टेंट टर्म क्या था? ग्रोइंग स्टॉक इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ ट्रीज इन अ गिवन एरिया क्यूबिक मीटर्स में. वो इट इज हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग बायोमास एंड कार्बन स्टॉक. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्बन स्टॉक? तो वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है. कार्बन स्टॉक आपको पता चाहिए. कार्बन स्टॉक इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक मैटर. जो भी चीज में कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म, कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्म. जैसे ग्लूकोज हो गया, दैट इज एन ऑर्गेनिक फॉर्म. हमारे टिश्यूज हो गया, जो भी लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन है उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बन स्टॉक बोलते हैं. तो कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट इज फाउंड इन 5 टाइप्स. तो कौन सा है? अबव ग्राउंड. तो जो भी ट्रीज है दैट इज, जो भी ट्री का लीव्स है, ट्रंक है, दैट इज अबव ग्राउंड, दैट इज अबव ग्राउंड कार्बन स्टॉक. नेक्स्ट इज बिलो ग्राउंड. जो भी रूट्स में है दैट इज बिलो ग्राउंड कार्बन स्टॉक. नेक्स्ट सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन. जो भी सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन है दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन. नेक्स्ट इज डेड वुड इज ऑल्सो ऑर्गेनिक दैट डेड वुड इज ऑल्सो कार्बन स्टॉक का पार्ट है. लास्ट इज लिटर. तो लिटर, ये 5 टाइप ऑफ कार्बन स्टॉक है. कार्बन स्टॉक इज वेयर इज व्हाट? इट इज प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक फॉर्म. ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? कार्बन स्टॉक बोलते हैं. मैक्सिमम इंडिया में कहाँ है ये आपको पता चाहिए? अरुणाचल प्रदेश में है. तो अबव ग्राउंड सबसे ज्यादा है, आपको पता चाहिए 32.26%. उसके सॉरी अबव ग्राउंड इज 32.6. सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक किसमें है? सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में है. तो ये आपको पता चाहिए. सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन 55.67. उसके बाद क्या है? अबव ग्राउंड, देन बिलो ग्राउंड एंड नेक्स्ट डेड वुड एंड लिटर. तो ये आपको पता चाहिए, परसेंटेज पता चाहिए. लेकिन सबसे ज्यादा कहां है? सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है. तो यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है. तो वाई सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज इंपॉर्टेंट? अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे इट सेड सी जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है इट हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन, रिड्यूसेस सॉइल इरोजन, हेल्प्स इन टेम्परेचर मॉडरेशन, हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड डिसीज कंट्रोल. तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज इंपॉर्टेंट. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यू शुड नो व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर प्रीलिम्स. एंड जब भी आपको प्रीलिम्स के बारे में पता चाहिए व्हाट इज कार्बन स्टॉक, दैट इज वेयर कार्बन इज फॉर्म प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक फॉर्म. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज जो हमारा कार्बन स्टॉक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट सेज कि कार्बन स्टॉक हैज इंक्रीज बाय 79.4 मिलियन टन्स. तो उतने वॉल्यूम में कार्बन स्टॉक बढ़ा है. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज दिस रिपोर्ट ऑल्सो फोकसेस ऑन मैंग्रोव्स. तो मैंग्रोव्स के बारे में भी यू शुड नो. सो व्हाट इज मैंग्रोव्स मतलब क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंग्रोव्स बेसिकली व्हाट दीज आर ट्रीज व्हिच आर फाउंड इन व्हाट? दे आर फाउंड बिटवीन टेरिटोरियल एरिया एंड एक्वेटिक एरिया के बीच में जो एस्चुरियल पार्ट होता है, वेयर वी फाउंड दिस मैंग्रोव्स एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम. तो बेसिकली व्हेनेवर देयर आर 2 इकोसिस्टम एंड if what do you say,
the area between two ecosystem, where the two ecosystem merge, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन. एंड दिस इकोटोन है एरिया शोज एज इफेक्ट. एज इफेक्ट मतलब क्या, दिस एरिया where there is merger or convergence of two ecosystem, जैसे लैंड एंड वाटर का इकोसिस्टम है, एंड ये एरिया क्या है, इट इज अ कन्वर्जन वेयर बोथ द इकोसिस्टम आर प्रेजेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं. एंड हियर वी व्हाट वी सी इज एज इफेक्ट. व्हाट इज एज इफेक्ट? एज इफेक्ट सेज कि इस एरिया में यू वुड फाइंड हाईएस्ट प्लांट एंड एनिमल बायोडाइवर्सिटी. तो एज इफेक्ट, इस शूरियन एरिया में हाईएस्ट क्या होगा, डाइवर्सिटी होगा. इसको हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं. एंड इस फिनोमिना को वेयर देयर इज हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन दिस एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, एज इफेक्ट बोलते हैं. एज इफेक्ट बोलते हैं. इश्यूर इज व्हाट, वन एरिया वेयर देयर इज मर्जर ऑफ टू इकोसिस्टम. तो ये यहाँ भी सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होता है. इफ यू सी पॉन्ड हो गया या फिर कोई पॉन्ड है, तो लैंड एंड जहां वाटर मीट करता है, जो बैंक होता है, वहां सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है. तो इसको हम एज इफेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज एज स्पीशीज. भी आपको पता चाहिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एज स्पीशीज. एज इफेक्ट देख लिया, एज स्पीशीज आपको पता चाहिए. एज स्पीशीज इज व्हाट, इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. तो ये आपको पता चाहिए. तो बेसिकली दीज स्पीशीज आर विच आर इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड एंडेंजर्ड. तो इनका कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है. जैसे एलिफेंट का यू वोंट फाइंड एनी क्लोज रिलेटिव, सो दे आर इकोलॉजिकली डिस्टिंक्ट एंड बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. जैसे कैट क्या है, cat is related to what, leopard it is also related to the tiger. It is not ecologically distinct, अलग से नहीं है. लेकिन elephant is distinct, panda is distinct. तो elephant and pandas are edge species which are ecologically distinct. They do not have close relative and they are endangered species. तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे edge species. नेक्स्ट इज फ्लैगशिप स्पीशीज. भी पता चाहिए, फ्लैगशिप स्पीशीज मतलब क्या, इट इज अ स्पीशीज सिलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर फॉर डिफाइंड हैबिटेट, इशू, कैंपेन और एनवायरमेंटल कॉज. अगर किसी स्पेसिफिक कॉज को हमको प्रोटेक्ट करना है एंड इफ यू वांट टू मेक एनी एनिमल एन एम्बेसडर फॉर दिस, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैगशिप स्पीशीज बोलेंगे. देन यू शुड नो अबाउट पायोनियर स्पीशीज. पायोनियर स्पीशीज मतलब अगर कोई बैरन लैंड है एंड वहां जो फर्स्ट स्पीशीज आती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पायोनियर स्पीशीज. स्पीशीज that are first to grow on a barren land, mosses and fungi. So does this mosses and fungi require soil? They do not require soil. यही MCQ था. तो it is application of this knowledge. Next is climax species. मतलब जो भी most mature stable species रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, climax species बोलते हैं. And from pioneer to climax species, जो भी various stages होते हैं of development of that area, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरी बोलते हैं. तो फ्रॉम पायनियर स्पीशीज टू क्लाइमेक्स स्पीशीज, जैसे अगर कोई एरिया में पहले क्या होगा, फर्न्स, मॉसेस होंगे, फिर श्रब्स होंगे, फिर ट्रीज होंगे, फिर सवाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट होगा, फिर इक्वेटोरियल टाइप ऑफ फॉरेस्ट या डेंस फॉरेस्ट होगा. तो ये प्रोसेस को वेयर वी फाइंड सेवरल स्टेजेस, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सेरी बोलते हैं. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज इंडिकेटर स्पीशीज पता चाहिए, विच शोज हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कोरल रीफ्स, मॉसेस, डॉल्फिन्स, लाइकन्स. तो ये आपको पता चाहिए. स्पैरोज, दे शो these are known as indicator species. These are known as indicator species. These are known as indicator species. तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने एज इफेक्ट देख लिया, हमने एज स्पीशीज देख लिया, हमने फ्लैगशिप स्पीशीज देख लिया, हमने पायनियर स्पीशीज देख लिया, हमने क्लाइमेक्स स्पीशीज देख लिया, हमने इंडिकेटर स्पीशीज देख लिया. सो व्हाट वी हैव डन इज नॉट जस्ट सिर्फ 30 मिनट्स में. वॉइस इज क्लियर? तो हमने 30 मिनट्स में हमने कितने सारे टॉपिक्स कर लिए. नेक्स्ट इज मैंग्रोव्स की हम बात करते हैं. तो एवरीवन नोज अबाउट स्पीशीज. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मैंग्रोव्स इज अ कॉमन टॉपिक विच यू शुड नो. मैंग्रोव्स मतलब क्या है, दे आर फाउंड, कहाँ फाउंड होते हैं, मेजरली ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया बिटवीन 24 डिग्री नॉर्थ एंड 38 डिग्री साउथ. मेजरली इस एरिया में फाउंड होते हैं. दे हैव व्हाट, न्यूमेटोफोर्स मतलब दे आर फाउंड मेजरली इन व्हाट, ब्रैकिश वाटर. तो न्यूमेटोफोर्स और व्हाट, these are what is air absorbing roots होते हैं. नेक्स्ट इज स्टिल्ट रूट होते हैं, स्टिल्ट रूट विच कम फ्रॉम ट्रंक, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टिल्ट रूट. एंड बटरस रूट जो नीचे से
जो नीचे से ऊपर आते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बट्रेस रूट। दे शो विविपैरिटी, दैट इज जर्मिनेशन टेक्स प्लेस ऑन ब्रांचेस बिकॉज सीड कैनॉट सर्वाइव इन ब्रैकिश वाटर, तो हम इसको विविपैरिटी बोलते हैं। दे हैव सक्यूलेंट लीव्स, तो ये आपको पता चाहिए। मैंग्रोव्स आर नोन एज किडनीज ऑफ इकोसिस्टम बिकॉज दे फिल्टर वाटर, बिकॉज दे एक्ट एज फिल्ट्रेशन प्रोसेस को ये करता है। नेक्स्ट इज दे हेल्प अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग सी वेव्स, तो सुनामी के अगेंस्ट भी दे आर वेरी हेल्पफुल। प्रोवाइड्स लाइवलीहुड हैबिटेट एंड हेल्प्स इन लैंड एक्रिएशन। लैंड एक्रिएशन मतलब सॉइल गेट्स डिपॉजिटेड इन द मैंग्रोव्स एरियाज और स्लोली एंड वी आर एबल टू हैव एन एक्सेस न्यू एरिया, तो ये आपको पता चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है विच आर वेरी कॉमन। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यू शुड नो दिस रिपोर्ट सेज कि इंडिया में कितना टोटल मैंग्रोव्स कितना है, 4992 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसमें भी वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस एंड ओपन मैंग्रोव्स का क्लासिफिकेशन है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार एंड आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव्स है। इंडिया में कंपेयर टू 2019 एंड 2020-2021 17 स्क्वायर किलोमीटर्स का इंक्रीज हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा ओडिशा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, गुजरात में कम हुआ है। तो यू शुड नो अबाउट दिस मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डू नॉट लीव इन बिटवीन, वॉच, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एंड थ्रू दिस सेशन वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो मेक श्योर यू आर देयर लाइव, एक्टिवली टेकिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन। इसी तरीके से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। सिर्फ कोई बुक पढ़ रहे हो एंड उसका नॉलेज ही नहीं है, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन कब होगा, जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। नेक्स्ट इज देयर इज वन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट इज मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम। साउथ एशियन कंट्रीज इन्वॉल्व है इसमें, मेजरली साउथ एशियन कंट्रीज इन्वॉल्व है एंड इट वॉज फॉर्म पोस्ट सुनामी। एज वी सेड कि मैंग्रोव्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ जो हमारे वाटर वेव्स है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट सुनामी, व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट इज पोस्ट सुनामी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी। इंडिया इज पार्ट ऑफ दिस मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ IUCN एंड UNDP एंड इट एम्स टू प्रमोट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर कोस्टल मैनेजमेंट एंड टू बिल्ड रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम and to build coming back to this, it aims to promote what integrated approach for coastal management. Side by side it also aims at building resilience of ecosystem dependent coastal communities. जो भी ecosystem dependent coastal communities है उसका हम क्या करेंगे, उसका resilience बढ़ाएंगे, integrated approach for coastal management होगा। and ये सब करते हुए mangroves would be at the center of all the activities, would be at the center of all the activities। तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, 24 साउथ 24 परगनाज एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है 24 साउथ इन वेस्ट बंगाल, जहां 41.74% जो टोटल मैंग्रोव्स है एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। तो होपफुली यू हैव गॉट एन आइडिया कि हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं। वील टेक वन मोर सेशन दैट वुड बी पार्ट टू होगा। दिस इज पार्ट 1 ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि 30 मिनट्स में what we have done is we have covered so many things, let's revise what we did starting से, so that it is helpful। तो हमने क्या क्या चीज देखी, हमने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट देखा, कौन निकालता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, देहरादून में है, 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1987 में फर्स्ट रिपोर्ट आया, 2 इयर्स निकलता है, 17th रिपोर्ट रिसेंटली निकला था। सैटेलाइट इंपॉर्टेंट है, रिसोर्स सैट 2। नेक्स्ट इज लाइवस्टॉक सेंसस, सारे सेंसेक्स, ये स्क्रीनशॉट निकाल के भी रख सकते हो। आई विल शेयर इट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। 33% कहाँ आया, 33% नॉट जस्ट फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, दोनों मिला के हमको 33% करना है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 17 स्टेट्स हैव अचीव्ड। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के और क्या क्या रोल्स है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डिसेमिनेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट रिसोर्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया 10th है। इंक्रीज ऑफ, अगर हम इंक्रीज की बात करें तो इंडिया एनुअल गेन में 3rd है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। FAO एंड UNEP जो ये रिपोर्ट था दैट इज आल्सो बाय FAO एंड ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट बायोडायवर्सिटी इज बाय WWF। फॉरेस्ट कवर ट्री कवर का डिफरेंस
मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कम हुआ है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कम हुआ है, इसलिए क्या हो गया, ओपन फॉरेस्ट बढ़ गए, एंड वेरी डेंस भी बढ़ गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्या बढ़ा है, ओपन फॉरेस्ट बढ़ा है, फिर मॉडरेट, फिर वेरी डेंस बढ़ा है, एंड देन मॉडरेटली फॉरेस्ट कम हुआ है। तो ये आपको पता चाहिए। श्रब्स कितने हैं आपको पता चाहिए, श्रब्स आपको पता चाहिए, श्रब्स। तो ये आपको बेसिक चीज कौन सा बढ़ा है एंड कौन सा कम हुआ है, ये आपको पता चाहिए। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट टाइप, दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए। नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी क्या है, विच इज रिलीज बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इट मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ग्रोइंग स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, बैम्बू रिसोर्स एंड कार्बन स्टॉक को मेजर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोइंग स्टॉक क्या है, हमने वो भी देख लिया। इट इज वॉल्यूम ऑफ ऑल लिविंग ट्रीज इन अ एरिया ऑफ फॉरेस्ट, measured in solid cubic meters, helpful in measuring biomass and carbon stock. Carbon stock मतलब क्या, where carbon is present in organic form। तो ये भी हमने देख लिया। तो ग्रोइंग स्टॉक सबसे ज्यादा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। कार्बन स्टॉक कहाँ सबसे ज्यादा है, कार्बन स्टॉक कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है, एंड कौन से फॉर्म में कार्बन स्टॉक सबसे ज्यादा है, राइट। ट्री कवर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड काजल, अरुणाचल प्रदेश। एंड सॉइल में सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में ट्री कवर ज्यादा है, बट इफ यू सी कार्बन स्टॉक ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हमने कितना इंक्रीज हुआ, कौन सा टाइप, ट्री कवर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ये हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस कम हुआ। कौन से स्टेट्स में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ हुआ है, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा। ये आपको पता चाहिए, हमने फॉरेस्ट प्रिंसिपल देख लिया, कार्बन स्टॉक देख लिया, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन उसमें सबसे ज्यादा है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कहाँ है, इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो ये रीजंस है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो एमसीक्यू यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज मैंग्रोव्स के बारे में पता चाहिए हमने, एज इफेक्ट, एज स्पीशीज, फ्लैगशिप स्पीशीज, पायनियर स्पीशीज, क्लाइमेक्स स्पीशीज, सब कुछ देख लिया। इंडिकेटर स्पीशीज, मैंग्रोव्स क्या है, कहाँ सबसे ज्यादा है, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने देख ली। दिस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट है, it also focuses on two things. First is it says कि जो हमारे जो forest fires है, it gives an important insight into forest fire, and it said कि forest fire in India has been increasing over the last 2 years, and the major reason is climate change and rising temperature. तो ये important है। It also says कि कौन से type of forest में forest fires बढ़ रहा है, तो it says कि dry deciduous forest में सबसे ज्यादा forest fires है। With respect to कौन से states में सबसे ज्यादा forest fire हो रहा है, according to फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, यू शुड नो, फर्स्ट इज ओडिशा में सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़, एंड एज आई सेड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स है। तो ये डेटा आपको, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव पता चाहिए। नॉट जस्ट गोइंग थ्रू फ्यू ऑफ द टॉपिक्स जानना जरूरी नहीं है, जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे ना, इट इज impossible to solve MCQs. If you are next is with respect to forest fire, this report also says India has launched forest fire alert system 3.0. So basically this system is an early warning system with respect to forest fires. तो बहुत important है, early warning system गवर्नमेंट ने इंडिया में establish किया है, that is forest alert system, forest fire alert system इसको बोलते हैं। And under this system we are getting constant data from an important satellite, that is SNPP VIIRS satellite है। तो ये important satellite से what we are getting constant information। पहले क्या था, टेरा एंड एक्वा सैटेलाइट अंडर फास्ट 2, that is fire alert system 2 में we were getting information through Terra and Aqua satellite of USA. Now we are getting information again a satellite of USA, SNPP VIIRS satellite है। तो ये आपको पता चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, so that what we can do is we can easily disseminate information, and this information is disseminated through one Agni portal of MOEF. तो any forest fire information is disseminated through one Agni पोर्टल। तो फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम पता चाहिए, कहां से इंफॉर्मेशन आ रहा है ये भी आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज वन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो हमेशा न्यूज में रहती है, दैट इज स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है विच इज पब्लिश्ड बाय
World Bank and MOEF, and it says 60% of districts are affected by forest fire. 60% of India's districts are affected by forest fire. तो ये एक important information आपको पता चाहिए. March and April में what you have is highest forest fires कौन से months में होते हैं? Majorly March and April में, where we have summers. तो तब सबसे ज्यादा forest fire होते हैं. तो strengthening forest fire management in India एक important report you should know. जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अफॉरेस्टेशन की बात करते हैं, तो ये यू शुड नो अबाउट an important initiative that is Great Green Wall of Aravallis. What we are doing is 1600 kilometers का हम क्या कर रहे हैं, एक लंबा पैच डेवलप कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात along the Aravallis, जहां 5 किलोमीटर विड्थ का हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं. इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावलीज. तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड दिस कॉन्सेप्ट वी हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव. तो ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव एक अफ्रीकन इनिशिएटिव था वेयर सच टाइप ऑफ ग्रीन पैच वाज डेवलप्ड. तो ये आपको पता चाहिए. And it was an initiative which was led by African Union. So majorly what we are doing is we are developing an ecological corridor, a green patch of 5 kilometer width and 1600 kilometers length, connecting Delhi and Gujarat, so that we improve our green cover and ensure that the air is clean, there is less pollution, and we are able to ensure more CO2 absorption. तो ये आपको पता चाहिए. Then another important program for afforestation is National Afforestation Program. तो ये आपको पता चाहिए, and it is implemented by an important organization that is National Forest Eco Development Board. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नेशनल फॉरेस्ट इको डेवलपमेंट बोर्ड. तो बेसिकली थ्रू नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हम क्या कर रहे हैं, वी एम टू एक्सेलरेट अफॉरेस्टेशन विद अ जॉइंट एफर्ट ऑफ कम्युनिटीज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड कम्युनिटीज, लोकल कम्युनिटीज आर वर्किंग टुगेदर फॉर ensuring that there is afforestation, there is people participation in the process of afforestation. local communities को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं. joint forest management committees हम बना रहे हैं at the village level, side by side, ensuring that we are also taking care of livelihood of people who are dependent on forest. तो ये हम सब कर रहे हैं अंडर नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम. हमारा ग्रीन इंडिया मिशन भी है, आपको पता रहेगा. ग्रीन इंडिया मिशन दैट इज बीन आल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल फॉरेस्ट इको डेवलपमेंट बोर्ड. तो वो भी ये ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहा है. एट द ग्लोबल लेवल, टू इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग इनिशिएटिव्स व्हिच यू शुड नो इज, फर्स्ट इज 1 trillion tree initiative. What is 1 trillion tree initiative? It is an initiative of WEF. WEF का initiative है. And we are trying to plant 1 trillion trees between 2020 and 2030 to support UN decade on ecosystem restoration. जो हमारा present decade है, it is known as UN decade of ecosystem restoration through afforestation. तो जो हम इकोसिस्टम रिस्टोर करेंगे, हम कैसे करेंगे? अफॉरेस्टेशन थ्रू. एंड अफॉरेस्टेशन के लिए WEF has started this 1 trillion tree initiative. We also have 1 billion tree campaign by UNEP. तो 1 trillion is by WEF and 1 billion tree initiative is by UNEP. यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है. If you are following, do not leave this video, watch this video till the end so that you get right information. To make sure, do not leave this video, watch this video till the end. Side by side we have one important committee जो हमेशा जब भी हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो आपको पता चाहिए, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी आपको पता चाहिए. बेसिकली फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी क्या है? These are statutory body. It is a statutory body under Forest Conservation Act 1980. And it is majorly an advisory body under MOEF. तो इसका मेन क्या काम है? It considers questions on diversion of forest for non-forest use. So if you want to convert any forest area for non-forest use, you have to take advice of this important body, that is Forest Advisory Committee. बहुत important है. MCQ आ सकता है फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी के बारे में. एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी which consider question related to diversion of forest area for non-forest use. तो ठीक है. तो this forest advisory committee had approved an important scheme, that is green credit scheme. तो green credit scheme क्या है? तो ये आपको पता चाहिए. तो green credit scheme के अंदर what private players or NGOs what they would do is, first they would develop a forest. वो क्या करेंगे? barren land को forest develop करेंगे. So this
एंड आफ्टर 3 years ऑफ डेवलपिंग दिस फॉरेस्ट लैंड, अगर किसी प्राइवेट कंपनी को कोई फॉरेस्ट लैंड चाहिए विच इज 3 acres, वो क्या करेगा, कोई अलग जगह पर क्या करेगा, एक 3 acres का लैंड फॉरेस्ट डेवलप करेगा एंड ही वुड एक्सचेंज दिस फॉरेस्ट विद दिस फॉरेस्ट लैंड। अगर किसी को वो फॉरेस्ट लैंड चाहिए जो ऑलरेडी फॉरेस्ट है, उसको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉरेस्ट खुद का एक बैरन लैंड पर तैयार करना पड़ेगा, 3 साल बाद वो एक्सचेंज कर सकता है विद गवर्नमेंट। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रीन क्रेडिट स्कीम बोलेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक स्कीम था विद रिस्पेक्ट टू अफॉरेस्टेशन। वी हैव बॉन्ड चैलेंज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, वी आर एंश्योरिंग अफॉरेस्टेशन ऑफ 150 million hectares by 2020 and 350 million hectares by 2030। तो ये बॉन्ड चैलेंज के अंदर हम क्या करने वाले, अफॉरेस्टेशन करने वाले हैं। कितना अफॉरेस्टेशन, 150 million हेक्टर्स बाय 2050 ये टारगेट्स था। अब 2030 का टारगेट्स क्या है, 350 million hectares, and it is an initiative of IUCN and Government of Germany. Hopefully you are getting important points through this session. So make sure अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबाइए, शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड वॉच द कंप्लीट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बॉन्ड चैलेंज हमने देख लिया, ग्रीन क्रेडिट स्कीम देख लिया। व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एक्सचेंजिंग आवर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट विद नेचुरल फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वी हैव इज कैंपा। तो कैंपा में हम क्या कर रहे हैं, इफ एनी प्राइवेट प्लेयर वांट्स अ फॉरेस्ट एरिया, तो what government has done is you have to pay for the forest land and all the forest resources, then only you can what you can do is you can deforest and use this land। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कर दिया, हम इसको लीगलाइज कर दिया। we have passed CAMPA law and under this compensatory afforestation fund management and plantation authority has been developed। तो एक इंपॉर्टेंट कैंपा अथॉरिटी हमने सेंट्रल लेवल पर एस्टैब्लिश की है, स्टेट लेवल पर एस्टैब्लिश की है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी फॉरेस्ट हमने डाइवर्ट कर दिया प्राइवेट यूज के लिए, प्राइवेट कंपनीज के लिए, उसका हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है एंड नेक्स्ट अफॉरेस्टेशन में कितना पैसा लगेगा। तो वी कैलकुलेट दैट अमाउंट एंड वी ensure that this amount is deposited by that private party. So this is deposited into CAMPA fund, National Compensatory Afforestation Fund, which is a part of Public Account of India। तो ये आपको पता चाहिए, नॉट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ MCQ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। एंड सेकेंडली वी हैव आल्सो हैव स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। तो कैंपा नेशनल फंड से स्टेट फंड में पैसा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए। And a company diverting forest land must provide alternative land to take up compensatory afforestation। तो वो ही है, हम क्या है, अगर एक जगह से हमने फॉरेस्ट रिमूव किया या डिफॉरेस्ट किया है, तो अलग जगह पर जो भी कॉस्ट लगेगा अफॉरेस्टेशन का, वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। इसमें का नेशनल फंड विल रिसीव 10% ऑफ दिस फंड एंड 80% विल गो टू स्टेट फंड। तो ये आपको पता चाहिए, 10% इज ओनली फॉर National Compensatory Afforestation Fund and 80% goes to the states। तो ये आपको पता चाहिए। And monitoring of this afforestation, जो भी नया afforestation हो रहा है under CAMPA activities, is monitored through an important portal that is e-green watch portal। तो it's an important portal which you should know। तो हमने CAMPA fund देख लिया, CAMPA authority देख लिया, e-green watch portal देख लिया। Question also comes is which all activities are allowed in this कैंपा में कौन से एक्टिविटीज अलाउड होते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज आपको पता चाहिए। फर्स्ट इज कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन अलाउड है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट अलाउड है, नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अलाउड है, नेचुरल रीजनरेशन अलाउड है, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन अलाउड है, इंप्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट अलाउड है, नेक्स्ट इज management of biological diversity is allowed, soil and moisture conservation in forest। all these activities or the fund can be used for all these activities in the forest। so question might come, which activities are allowed, which activities are not allowed, which activities are allowed, not allowed। you should know this important। ये चलेगा, यहां तक क्लियर है। next is at the global level you should know about global forest watch। तो global forest watch क्या है, it's an ओपन रिसोर्स वेब एप्लीकेशन टू मॉनिटर ग्लोबल फॉरेस्ट इन रियल टाइम। तो रियल टाइम अगर आपको देखना है कि अफॉरेस्टेशन कितना है, फॉरेस्ट कितना है द ग्लोबल लेवल, तो आपको ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के बारे में पता चाहिए। इट्स अ इनिशिएटिव किसका है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट अलोंग विद गूगल, USAID एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड, इनका
और इनका एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच. दिस ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ऑल्सो सेड कि द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर हैव डबल्ड इन रिसेंट टाइम्स एंड दिस वाज डन थ्रू BIRS सैटेलाइट. उसका इंफॉर्मेशन लेके दे सेड द फॉरेस्ट फायर the forest fires have doubled. तो global forest watch एक important web based portal है which you should know. Next is another important report in 2021 which was released was global forest goals report. This report was global forest goals report. This report was released by Department of Economic and Social Affairs of United Nations. Department of Economic and Social Affairs, तो ये आपको पता चाहिए. And it evaluates, what it evaluates is where the world stands in implementing United Nations strategic plan for फॉरेस्ट 2030. तो जो यूनाइटेड नेशंस का स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 में है, वेयर डज स्टेट वेरियस कंट्री स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटिंग दिस प्लान, तो ये एनालाइज करता है. सो बेसिकली बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आपको पता चाहिए व्हाट वाज यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-2030. यूपीएससी माइट आस्क दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो it is a special plan which was adopted as special session of UN Forum on Forest 2017 में adopt किया गया था, and it set 6 global forest goal 26 associated targets to be achieved by 2030 which are voluntary and universal है, तो ये आपको पता चाहिए. And it includes the target to increase forest area by 3% worldwide. तो every 3% से हमको क्या करना है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है by 2030 and increase of 120 million hectares. तो ये गोल है अंडर नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में पता चाहिए. कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र नहीं, वन विज्ञान केंद्र, इसको फॉरेस्ट साइंस सेंटर्स भी बोलते हैं. इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ने वन विज्ञान केंद्र डेवलप किया है. एंड बेसिकली दिस वन विज्ञान केंद्र व्हाट इट डज इज it helps disseminate various technologies developed by farmers which are related to forest based industries and forest research institutes. तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप बाय फॉरेस्ट फार्मर्स हो गया या फॉरेस्ट बेस्ड इंस्टीट्यूट्स हो गया या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की है उसको डिसेमिनेट करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. एंड इट केटर्स टू द need of field research of silviculture, tree improvement, soil and water conservation technique, afforestation technique for saline land हो गया, techniques for afforestation extension, organic farming, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड न्यू टेक्नोलॉजीज है उसके प्रोपगेशन डिसेमिनेशन के लिए वन विज्ञान केंद्र हेल्प. तो ये आपको पता चाहिए. एज वी ऑलरेडी सॉ कि FAO वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट वाज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट. FAO के बारे में पता चाहिए, इट्स अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN, हेडक्वार्टर रोम इटली में है. इट ब्रिंग्स आउट वेरियस रिपोर्ट्स. फर्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज मार्केट. तो कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ऑफ FAO हमेशा याद में रखनी है, FAO के बारे में याद में रखनी है. नेक्स्ट इज बैम्बू के बारे में पता चाहिए बिकॉज दिस रिपोर्ट ऑल्सो ब्रिंग्स आउट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू बैम्बूज. बैम्बू को दूसरा नाम क्या है, ग्रीन गोल्ड बोलते हैं. सबसे ज्यादा कहाँ है बैम्बू, मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देन महाराष्ट्र. मिजोरम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू 2019. मिजोरम में इंक्रीज हुआ है, हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश. नेक्स्ट इज बैम्बूज किसके लिए यूजफुल है, फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बिकॉज दे ग्रो फास्ट, दे एब्जॉर्ब CO2, दे ग्रो फास्ट. इरिगेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, पेपर इंडस्ट्री के लिए, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, फॉर रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है. दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन. इंडिया में इट इज फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट कश्मीर. कश्मीर को छोड़ के द बैम्बूज आर फाउंड everywhere. Bamboos are found everywhere. Next is Project Bold, भी आपको पता चाहिए, which aims at using bamboos in drought prone areas. This Project Bold
is an important initiative of KVIC, Khadi Village Industrial Commission, which is under MSME. It's a statutory body. What we are developing is bamboo oasis in lands in drought. जो भी ड्रॉट प्रोन एरियाज है, डिग्रेडेड लैंड है, हम क्या करेंगे वहां बैम्बू से क्या करेंगे, उस एरिया का रीजनरेशन करेंगे, रिस्टोरेशन करेंगे. So this is an important कुछ important initiative which you should know with respect to Forest Survey of India report. So what we have done till now, till this session, is we have covered entire Forest Survey of India from basic till एडवांस. आज के लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट बोल्ड देख लिया, बैम्बू देख लिया. सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ है? मिजोरम में है. एमपी में सबसे ज्यादा एरिया वाइज है, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र. एमपी एंड महाराष्ट्र में बैम्बू का जो एरिया वो कम हो रहा है, अरुणाचल में बढ़ रहा है. देयर फाउंड एवरीवेयर एक्सेप्ट कश्मीर. तो ये डेटा देख लिया हमने, एफएओ के बारे में देख लिया, उसके रिपोर्ट्स देख लिया. वन विज्ञान केंद्र क्या करते हैं? जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, नई टेक्नोलॉजीज है विच इज डेवलप्ड बाय फार्मर्स, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको डिसिमिनेट करती है. देन ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट्स देख लिया, ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट्स देख लिया. Another important thing which we missed was with respect to United Nations Forum on Forest. It was established in 2000 by Economic and Social Council of United Nations. ECOSOC ने develop किया है. And the aim of this United Nations Forum on Forest is to promote the management, conservation and sustainable development of all type of forest and to strengthen long-term political commitment to this end. To ensure political commitment and ensure proper management, conservation and sustainable development of all type of forest. इसका headquarter is in न्यूयॉर्क में है. तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पता चाहिए. देन नेशनल यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 2013 हमने देख लिया. ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच देख लिया हमने, कैंपा देख लिया, कैंपा के एक्टिविटीज देख लिया हमने, बॉन्ड चैलेंज देख लिया, ग्रीन क्रेडिट स्कीम देख लिया. फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटीज वी सॉ 1 बिलियन ट्री इनिशिएटिव, 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव हमने देख लिया. नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हमने देख लिया. द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावलीज हमने देख लिया. स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट इंडिया एक रिपोर्ट देख लिया. फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 देख लिया. मैक्स कहाँ फॉरेस्ट फायर्स है ये भी हमने देख लिया. सॉरी टू पॉज यू इन बिटवीन, बट मेक श्योर यू पॉज दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल because 80% of you are not subscribing. I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers. Thank you. To start with, one important thing which you should know, that one important news, and you will see how we connect it with static syllabus. जो द्यूपर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको MOEF ने क्या कर दिया है, उसके अराउंड 10 kilometers has been declared as eco-sensitive zone. Eco-sensitive zone. तो who declares eco-sensitive zone? ये क्वेश्चन आ सकता है. And recently it was in news. द्यूपर बिल के बारे में कहाँ पता चाहिए? Where it is based? It is based in Assam. Assam में है, and it is one of the largest freshwater lakes of Assam, largest freshwater lakes of Assam. You have to tell me in the description which is the largest freshwater lake of India. ये आपको comment section में बताना है. Next is, it is states only Ramsar site. ये एक Ramsar site है. Important bird area है. Important bird area is given by whom? Bird Life International. Bird Life International. And ये आपको पता चाहिए. And it is situated near गुवाहाटी सिटी के पास है. And it is a water channel of river ब्रह्मपुत्र. ये basic information about द्योपर बिल पता चाहिए. लेकिन we are not stopping here. Eco-sensitive zone was also in news for one more reason. Eco-sensitive zone was also in news for one another reason. Karnataka government recently said it opposed Kasturi Ranjan committee's report. कस्तूरी रंजन कमेटी रिपोर्ट ने क्या बोला? 37% of the western ghats would be eco-sensitive zone. 37%. And there was one more other report with respect to eco-sensitive zone. तो कस्तूरी रंजन का रिपोर्ट था, वो किसने? कर्नाटका गवर्नमेंट said we are not accepting that report. लेकिन eco-sensitive zones के बारे में आपको पता चाहिए. बेसिक क्या है? These are known as shock absorber. इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? Shock absorber. So these are areas around protected areas. जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, उसके अराउंड जो एरियाज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसके अराउंड 10 किलोमीटर्स एरिया गवर्नमेंट मतलब MOEF करता है notify as eco-sensitive zones, and there are certain restrictions in this eco-sensitive zones. So 10 kilometers ये आपको पता चाहिए, they are known as shock absorbers. Secondly, Environment Protection Act है ना, it does not mention any word as eco-sensitive zone. उसमें eco-sensitive zone का कोई mention नहीं है. तो ये एक important चीज पता चाहिए. And but it gives power. This Environment Protection Act gives power to central government to restrict activities.
to restrict certain activities around protected area. That's why they are been notified as eco-sensitive zone, and these eco-sensitive zones are notified under Environment Protection Act. Though not directly mentioned, but this Environment Protection Act gives rights to central government to restrict certain activities. So UPSC might ask कि which activities are restricted. तो यहाँ important है, कुछ activities which are very, आपको लगेगा कि ये restricted है या prohibited है या regulated है, तो आपको पता चाहिए. जैसे prohibited activities कौन से है, you should know that, such as कुछ ये normal common sense है, that is commercial mining, saw mills हो गया, industry causing pollutions तो allow नहीं करेंगे. Then establishment of hydroelectricity project हो गया, major hydroelectricity project. Then tourism activities such as hot air balloons हो गया, commercial use of foods हो गया, ये सारे activities prohibited है, prohibited, completely prohibited. Make sure you do not go. यहाँ regulated में एक चीज यहाँ there is a confusion, such as felling of trees is regulated, it is not prohibited. तो ये important part मैं बोलना चाहता था, यहाँ UPSC आपको catch करेगा, that is felling of trees, establishment of hotels, resort, commercial use of natural water, erection of electric cables हो गया, drastic change of agriculture system such as adaptation of heavy technology, pesticides, widening of roads are all regulated, they are not prohibited. तो यहाँ confusion हो सकता है. ये allowed activities, permitted activities, anyone can guess it, such as horticulture activities हो गया, organic farming हो गया, then renewable energy sources हो गया, adaptation of green technology, anyone can guess. But question यहाँ आएगा regulated activities में, so make sure you are aware about these activities, make sure. Next, moving on, whenever you're learning about Western Ghats, कुछ basic UPSC has been asking questions with respect to Western Ghats. One of the most वेस्टर्न घाट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से हम देखेंगे. कितना किलोमीटर्स का है वेस्टर्न घाट्स? 1600 किलोमीटर्स का है. इट इज फ्रॉम तापी टू कन्याकुमारी, एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स में याद रखना गुजरात, तमिलनाडु है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वुड बी रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, रिवर्स ओरिजिनेटिंग, एंड फ्यू ऑफ द रिवर्स आर वेस्ट फ्लोइंग. तो यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन से रिवर्स वेस्ट फ्लोइंग है. दैट इज परियार, भरतपूजा, Zori, Mandovi, Sharavati and Netravali are west flowing into the Arabian Sea. Question can come from this side. And east flowing rivers तो हम सबको पता है कौन सा है. गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, तुंगभद्रा हो गया. हम ईस्टर्न घाट्स देखेंगे ना, so these river originates from Western Ghats, move eastwards and they cross or they pierce Eastern Ghats. तो हम देखेंगे. As you know कि Western Ghats is also a hotspot के बारे में हम as we go forward we learn more things. लेकिन the ranges जो वेस्टर्न घाट के रेंजेस है उसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं महाराष्ट्र में. नीलगिरी इज नोन कर्नाटका एंड तमिलनाडु का जो रेंजेस है उसको नीलगिरी रेंजेस बोलते हैं. अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डमम हिल्स आर मेजरली इन तमिलनाडु एंड केरला. तो ये पता चाहिए. The highest peak of Western Ghats is Annamalai Hills. तो ये आपको पता चाहिए. Few of the important passes, somewhere there is a gap in the Western Ghats. Mostly it is continuous. On the other side, Eastern Ghats is what? It is discontinuous. It is not continuous. तो ये आपको पता चाहिए. That बोर घाट के बारे में पता चाहिए. It is between Bombay and Pune के बीच में जो गैप है in the Western Ghats, it is बोर घाट. पाल घाट कहाँ है? कोयम्बटूर एंड पलक्कड़, एंड थाल घाट मुंबई एंड नासिक. तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न घाट्स पता ही चाहिए सबको. नेक्स्ट इज ईस्टर्न घाट्स. अनदर important point from prelims perspective, Mahanadi. It is from Mahanadi to what? Vaigai river. Another important point, there is a confusion which is the highest peak of Eastern Ghats. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? महेंद्रगिरी. बट रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज क्या? जिंदगड़ा which is in Andhra Pradesh is the highest peak. तो ये चीजें ध्यान में रखना. It stretches from Odisha to Tamil Nadu and it is a non-continuous ranges है. इसकी हाइट भी कम है कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स की हाइट कम है कंपेयर टू वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है. नेक्स्ट इज ओरिजिनेट. कौन से रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स? तो ये इंपॉर्टेंट है. कौन से? बैतरना हो गया, पालार हो गया, शारदा हो गया, सेल्लुरु हो गया, पेन्ना हो गया, वेल्लार हो गया, नागावली हो गया एंड वंशाधारा. ये सारे रिवर्स क्या है? ओरिजिनेट्स होते हैं फ्रॉम ईस्टर्न घाट्स. ओरिजिनेट. एंड कौन से फ्लो करते हैं थ्रू ईस्टर्न घाट्स? दे डू नॉट ओरिजिनेट बट दे फ्लो थ्रू ईस्टर्न घाट्स. ये कौन सा है? ब्रह्मणी हो गया, तुंगभद्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और सुवर्ण रेखा. तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको
पता चाहिए। ओरिजिनेट एंड कौन से फ्लो हो रहे हैं। तो ओरिजिनेट मेजरली आपको दो रिवर्स आई वुड जो सबको कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, सुबर्णरेखा, ब्रह्मणी याद रखो, बाकी जो भी ऑड रिवर्स है दे ओरिजिनेट। ये दो रिवर्स ब्रह्मणी एंड सुबर्णरेखा ट्रैवल्स थ्रू ईस्टर्न घाट्स। तो ये दो रिवर भी आपने याद में रख लिए ना। रेस्ट कैन बी मैनेज। मूविंग फॉरवर्ड, एज आई सेड वेस्टर्न घाट, नाउ यू वुड सी वी आर गोइंग इनटू द बेसिक नाउ। as I told you कि western ghats is what? Western Ghat is a hotspot. So what do you understand by hotspot? And this term was coined by biodiversity. Hotspot term was coined by Norman Mailer, and he along with Conservation International has given criteria कि कौन से areas को हम biodiversity hotspot बोलेंगे, which are globally important with respect to conservation of biodiversity. कौन से हैं ऐसे areas where 70% of original species have been lost, यार it has 1500 vascular endemic plants, ऐसे area को हम क्या बोलेंगे? Biodiversity hotspot बोलेंगे। These areas जो criteria it was given by Norman Mailer, ये आपको पता चाहिए। And secondly, the present biodiversity hotspots are assigned by Conservation International। तो Conservation International पता चाहिए। कौन से इंडिया में हॉटस्पॉट्स है? एक तो वेस्टर्न घाट्स आपने देख लिया, नेक्स्ट इज हिमालयन रीजन हो गया, देन इंडो बर्मा रीजन में आपको पता चाहिए, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। अंडमान जो एरिया है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, Andaman Islands is part of Indo-Burma region and Nicobar Island is a part of Sunda land। तो ये यहां कंफ्यूजन हो सकता है। Andaman Island is part of Indo-Burma region, Indo-Burma hotspot, and Nicobar is part of Sunda land hotspot। तो यहां कंफ्यूजन हो सकता है। Indo-Burma region में all the northeast states आते हैं except Assam। Assam is not in Indo-Burma hotspot. Assam is not part of Indo-Burma hotspots. So hopefully you are getting an idea about hotspot also. So Conservation International assigns these hotspots, ये आपको पता चाहिए। There's one more type of hotspots, उसको क्या बोलते हैं हम? Cold spot भी होते हैं। जैसे hotspot होता है वैसे cold spot होते हैं। So what is cold spot? Do you know cold spot? These areas have less biodiversity है but more number of rare species। ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं? cold spot। दो बायोडाइवर्सिटी वहां क्या है? लेस है, लेकिन रेयर स्पीशीज है। तो कोल्ड स्पॉट कौन से होंगे? जितने भी पोलर रीजन्स में होंगे, क्योंकि दो बायोडाइवर्सिटी लेस है लेकिन क्या है? रेयर स्पीशीज वहां मिलते हैं। देन देयर इज होप स्पॉट ऑल्सो। यहां कंफ्यूजन हो सकता है। व्हाट इज होप स्पॉट? होप स्पॉट मतलब क्या? ये पॉइंट याद रखना, ये कहीं नहीं दिया है। These are special places identified as critical for ocean health। तो ओशन में जो भी मरीन एरिया में ऐसे स्पॉट्स है which are critical for the health of the ocean, जो भी मरीन बायोडाइवर्सिटी के हेल्थ के लिए कंजर्वेशन ऑफ दोज एरियाज आर क्रिटिकल, ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे? होप स्पॉट बोलेंगे। एंड दीज आर आइडेंटिफाइड बाय IUCN एंड मिशन ब्लू आइडेंटिफाइज दीज स्पॉट्स। एंड इंडिया के दो इंपॉर्टेंट मरीन एरियाज आर पार्ट ऑफ इट। कौन से हैं? अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आर पार्ट ऑफ दिस होप स्पॉट। along with होप स्पॉट आपको वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता चाहिए, दैट इज मेगा बायोडाइवर्सिटी वाइल्डरनेस रीजन्स। तो मेगा बायोडाइवर्सिटी वाइल्डरनेस रीजन्स किसको बोलेंगे? अगेन these are areas identified by whom? कंजर्वेशन इंटरनेशनल। पहले भी हमने कंजर्वेशन इंटरनेशनल देखा जब हॉटस्पॉट देखा, यहां भी कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो ये क्या है? These are areas where biodiversity is intact in original condition and are still conserved। तो ओरिजिनल कंडीशन में कहां बायोडाइवर्सिटी अभी भी वर्ल्ड में इज इंटैक्ट, ऐसे एरिया को क्या बोलेंगे हम? हाई बायोडाइवर्सिटी वाइल्डरनेस रीजन, वेयर बायोडाइवर्सिटी इज इंटैक्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ऐसे कौन से एरियाज है ये आपको पता चाहिए। अमेजॉन बेसिन ब्राजील में, कॉन्गो बेसिन, रिवर बेसिन हो गया, न्यू गुएना इंडोनेशिया एंड पापा न्यू गुएना, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट मेक्सिको में, एंड मिम्बोबा मोपेन वुडलैंड्स एंड सवाना जाम्बिया। तो ऐसे एरियाज आपको पता चाहिए। इंडिया का नहीं है लेकिन ये 5 रीजन्स आर नोन एज हाई बायोडाइवर्सिटी वाइल्डरनेस रीजन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म विच इज मतलब जिसका आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल आया तो क्या आएगा? हॉटस्पॉट आएगा, वाइल्डरनेस एरियाज आएगा, एंड अनदर thing which you should know with respect to Conservation International is mega diverse countries. These are
world's top biodiversity rich countries. So these are identified by Conservation International, and there are 17 of these countries mostly located in tropical and subtropical regions. Tropical and subtropical. Is India a part of mega biodiverse countries? Yes, India is part of it. India is part of it. These are 17 countries. तो ये आपको देखना. And criteria क्या है इसका? They should have at least 5,000 of world's plant as endemic. 5,000 of world's plant should be endemic and should have marine ecosystem within its borders. ऐसे एरिया को हम क्या बोलेंगे? ऐसे कंट्रीज को हम मेगा डाइवर्स कंट्रीज बोलेंगे. अगेन आइडेंटिफाइड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल. मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, ये आपको पता चाहिए. कंट्रीज है एंड रीजन्स. डिफरेंस फिर से रिवाइंड करके देख लेना. 5,000 प्लांट्स एंड मरीन इकोसिस्टम इन इट्स बॉर्डर, इसको हम क्या बोलेंगे? मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज. इंडिया इज पार्ट ऑफ इट, आइडेंटिफाइड बाय कंजर्वेशन इंटरनेशनल. नेक्स्ट, जब भी हम कंजर्वेशन इंटरनेशनल की बात करते हैं, करंट अफेयर्स की बात करते हैं, अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव व्हिच इज इन न्यूज. ऑल दिस थिंग्स इज इन न्यूज बट मिस्ड एंड स्कैटर्ड. वी हैव स्ट्रीमलाइंड एवरीथिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी हम एक टॉपिक लेते हैं ना, उसका हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंटीग्रेशन करके छोड़ते हैं कि सो दैट सब कुछ याद में रहेगा. जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा ना, उतना याद में रहेगा. तो इस तरीके से पढ़ोगे ना तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा, एलिमिनेशन में हेल्प होगा. तो मेक श्योर यू आर देयर. फर्स्ट इज ब्लू कार्बन इनिशिएटिव. क्या है? इट्स अ ग्लोबल प्रोग्राम वर्किंग टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. तो हम इस प्रोग्राम थ्रू क्या कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज मिटिगेट कर रहे हैं. एंड हाउ वी आर डूइंग दैट इज बाय रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम. सो sustainable use of coastal and marine ecosystem, and by restoration of marine ecosystem we are trying to mitigate climate change. इसको भी blue carbon initiative देते हैं. And it brings together government, research institute, NGOs and communities together and to work towards restoring coastal and marine ecosystem. And this initiative is an initiative of what? Conservation International, IUCN and Indian इंटरनेशनल ओशन कमीशन विच इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को. तो ये आपको पता चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स. एंड मैं एक चीज बोलूंगा कि इफ यू सी करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट, बहुत सारे वल्नरेबिलिटी इंडेक्स आए हैं which said कि India is vulnerable to climate change risk. We have compiled everything so that there is no confusion. Whenever there are confusing point and if we are trying to compare everything together, it becomes easy. तो कौन सा है? First is what? First is climate vulnerability index. Climate vulnerability index क्या है? It is released by whom? Council for Energy, Environment and Water. तो ये रिलीज करता है. तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स याद में रखिए. क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी CVI कौन करता है? क्लाइमेट एनर्जी एनवायरमेंट वाटर काउंसिल, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर. ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स रिलीज किया. एंड इट वाज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडेक्स था, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स. एंड इट एनालाइज्ड 640 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एंड फाउंड दैट 463 are vulnerable to extreme floods, droughts and cyclones. Floods, ड्रॉट्स एंड साइक्लोन के लिए वल्नरेबल है. होपफुली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस पर्सपेक्टिव में ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस पर्सपेक्टिव, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज. तो यू कैन यूज दिस इंडेक्स. तो जब भी आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो एक पर्सपेक्टिव मेंस का रखिए. यार मैं इसको मेंस में कहां लिखूंगा? इफ यू सी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स 463 out of 640 districts are prone to various extreme floods, droughts, cyclone because of climate change. तो ये एक important point रहेगा. And this report had said कि important क्या है? 60% of Indian districts have low adaptive capacity in handling extreme events. तो जो 60% of Indian districts है, they do not have adaptation mechanism और adaptive क्या बोलते हैं, उनकी capacity नहीं. They do not know how to handle this stress, how to handle this extreme climate event. तो ये पता चाहिए. And most of this जो vulnerability increase हुई है, it's because of anthropogenic activities के वजह से the districts have become more vulnerable. तो ये भी important चीज पता चाहिए. And जो उसमें भी जो हमने 463 देखे, उसमें भी कौन से इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट है जो आपको पता चाहिए? 183 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट
आर हाईली वल्नरेबल, हाईली वल्नरेबल है, उसमें भी 460 में से 183 आर हाईली वल्नरेबल। स्टेट्स के हिसाब से देखें तो आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार आर मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सट्रीम इवेंट्स सच एज floods, droughts and cyclone. Northeast states are more vulnerable to floods. Northeast states are more vulnerable to floods. तो ये आपको पता चाहिए. Not much important than this, लेकिन आपको पता चाहिए डेटा, कुछ फैक्ट्स एंड कौन निकालता है रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है. दैट इज 183 आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, 640 में से 463 आर वल्नरेबल टू आइदर ऑफ द क्लाइमेट इवेंट्स, क्लाइमेट की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं उसके लिए हॉटस्पॉट है, तो ये भी पता चाहिए. नेक्स्ट इज नेशनल क्लाइमेट. हमने जैसे क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स देखा, हमने क्या देखा, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स देखा. आपको और एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट पता चाहिए, दैट इज नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट. तो दिस रिपोर्ट अगेन इंपॉर्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्लाइमेट है लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यहां कंफ्यूजन हो सकता है. इट आइडेंटिफाइज मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर it identifies most vulnerable state and district to climate risk and vulnerability. तो ये भी रिपोर्ट क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट्स आर vulnerable to climate change and risk associated with it. And this report found झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आसाम आर vulnerable. तो ये भी पता चाहिए आपको. तो ये रिपोर्ट क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स एंड नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट दोनों अलग है. वन इज बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर इज बाय काउंसिल फॉर एनवायरमेंट, एनर्जी एंड वाटर. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. मूविंग फॉरवर्ड, एज आई सेड कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी बात हुई, वन मोर एटलास व्हिच वाज इन न्यूज. ये सब न्यूज में है, आई एम नॉट प्रेजेंटिंग, कंपाइलिंग, इट्स एवरीथिंग इज इन न्यूज. तो हमने दो चीजें देख ली. फर्स्ट इज असेसमेंट, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट देख लिया, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स देख लिया, क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलास ऑफ इंडिया which was recently released. देख लेना, सर्च कर लेना, क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलास ऑफ इंडिया. किसने निकाला है? इट इज बाय साइंटिस्ट ऑफ क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज ऑफ IMD and it gives information about 14 extreme events. 14 extreme events के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. It atlas, this provides a month-wise hazard level which districts are prone to एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. ये क्या करता है, उनको मैप करता है, इसलिए ये एटलास बोला जाता है. मंथली ये क्या बोलता है, मंथ वाइज हजार्ड लेवल ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट इज पोर्ट्रेड ऑन दिस एटलास. तो ये इंपॉर्टेंट एटलास इज बाय क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विस के साइंटिस्ट का है, विच इज पार्ट ऑफ IMD, which is part of. आई विल बी शेयरिंग नोट्स, लेकिन ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो हमने क्या देख लिया, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स देख लिया, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट देख लिया, एंड थर्ड व्हाट वी सॉ इज एटलास. एटलास कौन सा है? क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलास ऑफ इंडिया. तो ये क्या करता है, ये एटलास बताता है, मंथ वाइज डेटा बताता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आर वल्नरेबल टू एक्सट्रीम इवेंट्स. दीज 14 एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए कौन से वल्नरेबल है. तो क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलास ऑफ इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज, जैसे ये एटलास है, फ्यू अदर एटलासेस व्हिच आर इन न्यूज भी आपको पता चाहिए. जैसे वेस्टलैंड एटलास है, वेस्टलैंड एटलास व्हिच वाज रिलीज इन 2019. लेकिन एटलास ये फ्रॉम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है. इट इज दिस वाज पब्लिश्ड बाय, यहां कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए मैंने लिया, MCQ में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. वेस्टलैंड एटलास इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स इन कोलैबोरेशन विद नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ये निकालता है. तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चाहिए. एंड वेस्टलैंड, इंडिया में कितना वेस्टलैंड है, तो ये आपको पता चाहिए. 5.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स इंडिया में एरिया वेस्टलैंड है. दिस इज, यू शुड नो, वेस्टलैंड एटलस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. लेकिन वेस्टलैंड किसको बोलेंगे, वेस्टलैंड किसको बोलेंगे, यहां इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि वेस्टलैंड किसको बोलेंगे. दी वेस्टलैंड इज डिफाइंड नॉट एज डेजर्टिफाइड लैंड, डेजर्टिफाइड लैंड नहीं है, बट लैंड दैट इज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर, कमर्शियल यूज और फॉरेस्ट लैंड. ये तीनों के अलावा जो भी लैंड है इंडिया में, इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टलैंड बोलेंगे. बैरन अनकल्टिवेटेड लैंड लाइंग अनप्रोडक्टिव और विच इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड टू इट्स पोटेंशियल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेस्टलैंड बोलेंगे. अनदर इंपॉर्टेंट एटलास, गो सर्च, मैं जो बोल रहा हूं ना इसको सर्च कीजिए, हर एक चीज को. नेशनल वेटलैंड
ये रिसेंटली जब वेटलैंड डे कब होता है, सो दिस एटलास वाज रिलीज ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे, दैट इज नेशनल वेटलैंड डेकेडल चेंज एटलास, एंड दिस वाज रिलीज बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन्होंने रिलीज किया है। तो ये आपको पता चाहिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को रिलीज किया गया था, गो चेक इट आउट। सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन ऑल द एटलासेस टुगेदर एंड नेशनल स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कम्स अंडर इसरो। तो ये भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये भी पता चाहिए आपको। नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलास भी है, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलास अगेन बाय इसरो, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। टू स्टार्ट विद वी कवर द्योपर बिल से स्टार्ट किया हमने, इको सेंसिटिव जोन्स देख लिए, एक्टिविटीज देख लिया हमने, कौन से एक्ट के अंडर इको सेंसिटिव जोन्स असाइन करने की पावर है, कौन करता है, ये सारी चीजें देख ली। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि विच ऑल टॉपिक्स डिड वी कवर टुडे। देन हमने वेस्टर्न घाट्स देख लिया, हमने ईस्टर्न घाट्स देख लिया, हमने कस्तूरी रंजन रिपोर्ट हमने बताया, हमने हॉटस्पॉट देख लिया, हमने कोल्ड स्पॉट देख लिया, हमने होप स्पॉट देख लिया, हमने वाइल्डरनेस एरिया देख लिया, हमने मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज देख लिया, हमने ब्लू कार्बन इनिशिएटिव देख लिया, हमने क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स देख लिया, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट देख लिया, हमने एटलास क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलास देख लिया हमने। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट, अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच वाज रिलीज्ड इन 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट रिलीज इन 2021 बाय आईएमडी। एंड आईएमडी आपको पता चाहिए, आईएमडी इज अंडर विच मिनिस्ट्री, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आईएमडी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, यू आर गोइंग टू tell me in the comment section so that I would be asking question and you would be there throughout this live session. Next is this report said कि 2021 का जो year था, it was the 5th warmest year and it led to 175 lives, 1750 lives were lost because of extreme events, because of climate change. तो ये important data mains perspective से है, लेकिन ये prelims perspective से important fact आपको पता चाहिए. Secondly, it said 2016 was the warmest year till now. What we have is 2016 is the warmest year. तो ये एक additional information आपको पता चाहिए. Whenever we are talking about reports, another important report which was launched at the global level, important MCQ 100% आएगा यहाँ पर, 100%. The report is Frontier report आपने recently पढ़ा होगा, Frontier report, and it is released by UNEP. बहुत important है. आज भी there was news with respect to UNEP हम जो cover करने वाले हैं. And the title of this Frontier report was Noise, Blaze and Mismatch. ये एक report का नाम था, जो सब heading होता है वो था. And what this report identifies is, it identifies 3 major issues at the global level with respect to our environment and offers solution to these 3 issues. So 3 major issues which world is facing with respect to environment degradation, the threats to environment. It identifies 3 important issues and try to give solutions. तो 3 important issues कौन से डील किए इस रिपोर्ट ने, that is urban noise, wildfire and triple planetary crisis. तो ये triple planetary crisis किसको है? MCQ can be which are the components? Triple planetary crisis किसको बोलते हैं? That is climate change, pollution and biodiversity loss. इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? Triple planetary crisis बोलते हैं. Triple planetary क्राइसिस बोलते हैं. आपको सर्च करके बताना है. आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट इज इविल क्वार्टरलेट क्या होता है, ये आपको अगले सेशन में बताना है. नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, यूएनईपी, this report was released by UNEP, लेकिन UNEP host one important event which was recently hosted, that was United Nations Environment Assembly. This is hosted by which organization? Again UNEP host करता है. And this United Nations Environment Assembly is the highest decision making body at the global level with respect to environment, highest decision making body. And this body meets every 2 years. It meets every 2 years, and this year it met in February and it was its fifth meeting, 5th session था.
एंड इट वाज क्रिएटेड, कब दिस असेंबली वाज क्रिएटेड, Rio+20 समिट में हुआ था, Rio+20 समिट। एंड दिस Rio+20 समिट को क्या बोलते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत याद में रखिए, Rio+20 समिट को हम क्या बोलते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई एम टेलिंग यू कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, चलेगा। तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली इज होस्टेड बाय यूएनईपी, ये आपको पता चाहिए। एज आई टोल्ड यू, फिफ्थ सेशन है एंड द थीम फॉर दिस ईयर्स यूएन असेंबली, जो एनवायरनमेंट असेंबली का सेशन है, दैट इज स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर नेचर टू अचीव द एसडीजी। स्ट्रेंथनिंग एक्शन फॉर नेचर टू अचीव एसडीजी, ये एक इंपॉर्टेंट थीम है इस बार का जो यूएन असेंबली होता है, एनवायरनमेंट असेंबली का, जो Rio+20 समिट में ये स्टार्ट हुआ था। द Rio+20 समिट इज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। As I told you, this fifth session is important because in this session 175 countries agreed for a legally binding treaty called Global Plastic Treaty, where they said they would at the global level work on eliminating plastic. तो ये आपको पता चाहिए, and it is going to be implemented from 2024 से ये ट्रीटी इंप्लीमेंट करने का इनका प्लान है। and this treaty was agreed by more than 175 countries agreed that they would take a legally binding treaty, that was global plastic treaty बोलेंगे हम इसको। तो hopefully you know this. Next is, जब भी हम यूएनईपी की बात करते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी पता चाहिए, क्योंकि आपका इस बार का प्रीलिम्स कब है, ऑलमोस्ट इट्स ऑन 5th of June, that is वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एंड दिस वाज सेट अप ऑन, कब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन द डे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, उस दिन को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तब से सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे is celebrated by UNE and every year it is hosted by a country. India also hosted few years back. This year also we are hosting 2021 में जो थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन था, 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ, ये थीम है। एंड द होस्ट कंट्री इज स्वीडन। मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दूसरा नाम क्या है, Rio+20। देयर वाज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, ये यहां कंफ्यूजन होता है, दैट इज यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट क्यों है, इंदिरा गांधी अटेंडेड दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। व्हेन वाज दिस स्टॉकहोम कन्वेंशन took place, which year, can anyone tell me? It took place in 1972 and वहां से आने के बाद इंदिरा गांधी was so much influenced by the Stockholm conference. She launched जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है, it was launched after this. तो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जिस दिन था उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। एज आई टोल्ड यू, वन अर्थ इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स 2022 का जो थीम है ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। स्वीडन में सेलिब्रेट करने वाला है। स्वीडन इज द होस्ट कंट्री। नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट कमीशन, तो आपको पता चाहिए, ब्रूटलैंड कमीशन बोलते हैं इसको। ब्रूटलैंड कमीशन आपको पता चाहिए, ब्रूटलैंड कमीशन इज द फर्स्ट कमीशन विच ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, was from ब्रूटलैंड कमीशन। एंड दिस जो ब्रूटलैंड कमीशन है, it is also known as World Commission on Environment and Development। तो World Commission on Environment and Development को ही दूसरा नाम क्या है, ब्रूटलैंड कमीशन। एंड इन दिस the report of this commission, उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उस रिपोर्ट का नाम था आर कॉमन फ्यूचर। तो ये आर कॉमन फ्यूचर में वी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तब ये कॉन्सेप्ट आया, आर कॉमन फ्यूचर इज अ रिपोर्ट सबमिटेड बाय ब्रूटलैंड कमीशन, विच उसका कमीशन का दूसरा नाम क्या है, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम क्या है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो ये दो तीन चीजें आपको पता चाहिए। As I told you, UNEP was also established after Stockholm Conference. Stockholm Conference में there was a establishment of organization, that is UNEP जो हम पढ़ रहे हैं। UNEP was established
इन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद यूएनईपी एस्टैब्लिश हुआ। यूएनईपी रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये न्यूज में है, इफ यू सर्च एवरीथिंग इज न्यूज, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू इंटरलिंक इज जैसे यूएन एनवायरमेंट असेंबली है which is hosted by UNEP, तो यूएन एनवायरमेंट असेंबली कहां हो रहा है? नैरोबी में हो रहा है। क्यों नैरोबी में हो रहा है? क्योंकि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहां है? नैरोबी में है, इसलिए यूएन एनवायरमेंट असेंबली वहां हो रहा है क्योंकि वो यूएनईपी होस्ट करता है। तो प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूएनईपी एंड मोर देन 20 प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दिस प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट ट्रैक्स द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन गवर्नमेंट प्लान्स फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, जैसे इंडिया का क्या फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन या जो हमारा इंपोर्ट है उसको ट्रैक करता है, कंपेयर टू ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल कंसिस्टेंस विद लिमिटिंग वार्मिंग टू 1.5%। तो जो हमारा, अगर इंडिया बोल रहा है कि वी आर गोइंग टू इंपोर्ट, व्हाट इंडिया इज गोइंग टू इंपोर्ट इज 100 बैरल्स, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं 100 बैरल्स, लेकिन वर्ल्ड क्या बोल रहा है कि इफ द वर्ल्ड जो ग्लोबल प्रोडक्शन हमको कम करना है, अगर वो 1000 बैरल्स का है पर ईयर, तो टू एंश्योर दैट कि हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस रहे, तो ये डिस्क्रिपेंसी कि यार कंट्री कहां जा रही है विद रिस्पेक्ट टू क्रूड, विद रिस्पेक्ट टू फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, एंड वेयर आर द ग्लोबल टारगेट्स, जो हमारा ग्लोबल टारगेट्स है कि हाँ फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन इतना ही चाहिए कंपेयर्ड इफ यू वांट टू कीप द टेम्परेचर एट 1.5 डिग्रीज। तो अगर ये ग्लोबल टारगेट्स है तो every country, where are they heading with respect to fossil fuel production? Are they increasing their fossil fuel production, which would hamper the global level targets with respect to reducing the temperature and keeping the temperature at 1.5%? तो ये production gap रिपोर्ट क्या करता है? ये ट्रैक करता है with respect to global discrepancy between government planned fossil fuel production and the global production level, aim to keep जो हमारा टेम्परेचर है at 1.5 डिग्री सेल्सियस। फ्यू अदर रिपोर्ट्स ऑफ यूएनईपी आपको पता चाहिए, जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक हो गया, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट रिपोर्ट हो गया, द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम्स हो गया। ये द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम इज बाय यूएनईपी एंड इंटरपोल, तो ये भी पता चाहिए। नेक्स्ट इज एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया, इमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, all by UNEP। As I told you, UNEP कब establish हुआ था, and what I've already told you headquarter कहाँ है, ये भी आपको पता चाहिए। Next is another important thing with respect to UNEP, that is Champion of the Earth Award. Champion of the Earth Award is given by UNEP, established in 2005. It recognizes outstanding individuals and organizations from public and private sector working towards conservation, working towards protection of environment, working towards ensuring that our environment is on the path of sustainable development. तो ये Champion of the Earth Award is for both, it is for individual and organization working towards better earth. Similarly, जैसे हमने वर्ल्ड एनवायरमेंट डे देखा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये भी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था 3rd of March को, एंड इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे साइट्स कन्वेंशन वाज साइंड। इस जिस दिन साइट्स कन्वेंशन साइन हुआ था उसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड द थीम फॉर दिस, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था, ओनली वन प्लैनेट, द थीम फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो यू शुड नो दिस। मूविंग फॉरवर्ड, जो साइट्स है, that is, what is sites? Basically every time what you see is appendix 1, 2 या 3 of sites with respect to conservation of wildlife. Sites is basically, it's a convention on international trade in endangered species of wildlife, wild fauna and flora. So basically what we are trying to do is we are trying to ensure that जो wildlife इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरा एंड फाउना, उसको हम क्या करें, रिस्ट्रिक्ट करें। वी हैव अ कंट्रोल ओवर इट थ्रू ग्लोबल कन्वेंशन, थ्रू ग्लोबल ट्रीटी, तो ये आपको पता चाहिए। एंड this site was drafted after resolution which was adopted by at a meeting of IUCN के meeting के अंदर ये resolution accept किया गया था। It came into enforce in 1973 and it aims to ensure that international trade in species of wild animals and plant do not
threaten their survival. So though some trade can take place, but it should not threaten the animal extinction. So this is an important CITES convention, आपको पता चाहिए. CITES कब डिस्कस हुआ था? ड्राफ्ट वाज ड्यूरिंग IUCN कन्वेंशन का जो मीटिंग था तब डिसाइड हुआ था. एंड एम इज जो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से किसी भी वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फाउना का क्या नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट थ्रेटन इट्स सर्वाइवल, इट शुड नॉट गो इनटू एक्सटिंक्ट. दो ये आपको पता चाहिए. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनीवा में है. एंड इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय UNEP ने एडमिनिस्टर करता है. ये इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. अंडर साइट्स व्हाट वी हैव इज वेरियस अपेंडिक्स. एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस अपेंडिक्स. तो ये भी आपको पता चाहिए. First, Appendix 1 is includes, what it includes is threatened with extinction. ऐसे species, if we do not stop trade of those species, what would happen is they would go extinct. तो highest level of protection इसमें चाहिए. And species trade is allowed only in exceptional circumstances. तो Appendix 1 है, exceptional circumstances में ही हम क्या करेंगे? ट्रेड अलाउ करेंगे. Appendix 2 क्या? It includes species not necessarily threatened with extinction, but in which trade must be controlled in order to avoid utilization incompatibility with their survival. So it said कि the species is not threatened, but what if we do not restrict the trade? If we do not restrict the trade, what would happen is it would affect their survival. तो इनको कम, इसमें क्या है? ट्रेड अलाउड है, बट इफ वी डू नॉट रिस्ट्रिक्ट, ऐसे नहीं कि हम अनलिमिटेड ट्रेड अलाउड है, लेकिन अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? the animal might become threatened. तो ये आपको पता चाहिए. And third is Appendix 3. It contains species that are protected in at least one country, and किसी एक कंट्री में उसका क्या है? उसका नंबर कम है. And that country has asked other sides parties for assistance in controlling the trade. See, imagine कि इंडिया में क्या है? पैंगोलिन्स कम है. So एंड ऐसे कोई बाकी कंट्रीज में बहुत सारा है. तो इंडिया माइट आस्क अदर कंट्रीज की यार प्लीज हेल्प अस टू रिड्यूस द ट्रेड. तो ये भी आपको पता चाहिए. होपफुली ये अपेंडिक्स पता है. विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग ट्रेड एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड इलीगल क्राइम्स विद रिस्पेक्ट टू animals and what do you say with respect to animals and plants, flora and fauna, India has an important organization that is Wildlife Crime Control Bureau. It is a statutory body. आपको पता चाहिए statutory body है. हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है. न्यू दिल्ली में है. Established under Wildlife Protection Act. Nodal Ministry, Ministry of Environment and Forest, and the aim is to combat organized wildlife crime. Organized wildlife crime उसको क्या करना है? उसको combat करना है. तो Wildlife Crime Control Bureau तक अगर सबको समझ आए, we would revise everything. सब कुछ रिवाइज करेंगे. पहले समझ लो कि हम क्या क्या कर रहे हैं. What we have done is सब कुछ हमने इंटरलिंक कर दिया है. बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं. Next is various operations of वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज इंपॉर्टेंट, हमेशा आते हैं. फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन क्लीन आर्ट. इट्स अ पैन इंडिया ऑपरेशन टू क्रैक डाउन स्मगलिंग ऑफ मुंगूस हेयर. जो मुंगूस हेयर है ना, इट इज यूज्ड फॉर ब्रश, इसलिए क्या है? इट इज नोन एज क्लीन आर्ट. तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए है. एंड इसका मुंगूस का जो IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न है, लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट. ज्यादा पोचिंग हो रही थी, तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म है. थंडरस्टॉर्म क्या है? इट इज एन ऑपरेशन विच इज बाय इंटरपोल एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. एंड इट डील्स विद इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नेटवर्क को उसको क्रैक डाउन करना है. इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए ये ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म लॉन्च किया था. थंडरस्टॉर्म. देयर इज ऑल्सो ऑपरेशन थंडरबर्ड which is also been launched by Interpol. It is a multinational multi-species enforcement operation है. multinational multi-species enforcement operation है to control their trade and wildlife what do you say wildlife crime control करने के लिए है. Then there is Save Kurma. Save Kurma, another operation by WCCB for conservation of olive ridley turtles. Can you tell me olive ridley turtles का IUCN status क्या है? Can anyone tell me olive ridley turtles का IUCN status क्या है? Then what we have is Operation Wildnet. Operation Wildnet बहुत इंपॉर्टेंट है. Operation Wildnet is what? जो भी हमारा जो भी threatened species है उसको क्या करते हैं लोग? Instagram, Facebook, all on the net, on the e-commerce platform they are trying to sell it, to control the sell and trade of endangered species on e-commerce. ये करने के लिए what we have is Operation Wildnet by
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो. देन देयर इज ऑपरेशन लेस नो. ऑपरेशन लेस नो क्या है? दिस इज एन ऑपरेशन टू कंट्रोल ट्रेड एंड टू कंट्रोल वाइल्ड लाइफ क्राइम विद रिस्पेक्ट टू लेसर नोन स्पीशीज. तो लेसर नोन स्पीशीज जैसे डियर हो गया, वाइल्ड बोर हो गया, जैकल हो गया, मंगूस हो गया, उनका वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन लेस नो. देन देयर इज ऑपरेशन बिरबिल. बिरबिल इज फॉर वाइल्ड लाइफ कैट एंड वाइल्ड कैट्स एंड वाइल्ड बर्ड्स का ट्रेड रोकने के लिए है. बिरबिल, बिर इज बर्ड एंड बिल इज बिल्ली, बिल्ली दैट इज कैट्स. तो ये आपको पता चाहिए. देन देयर इज ऑपरेशन फ्री फ्लाई. फ्री फ्लाई इज अगेंस्ट इलीगल trade of live birds जैसे parrots. Recently there was an operation in Uttar Pradesh which was conducted with the help of Wildlife Crime Control Bureau and Forest Department of UP to ensure that there is no illegal trade and wildlife crime with respect to live birds. तो इसके लिए operation free fly. And last is operation wet mark to ensure prohibition of sale of meat of wild animals. So hopefully you are understanding all the operation of wildlife crime control bureau. Next is illegal wildlife trade के लिए एक another important report is published by FATF side by passing by reference, that is money laundering and illegal wildlife trade. So wildlife जो animals है, these are used for money laundering and because of this transportation and trade of this this endangered animals and being used for money laundering, this is becoming a global threat. It is becoming a global threat, and as you know कि money laundering is an organized crime. So the FATF has brought out this report that it says कि every year there is a trade of animals which is amounting to $23 billion. At the global level we have a huge trade of endangered animals for money laundering. तो ये आपको पता चाहिए. Money laundering and illegal wildlife trade is a report by FATF. FATF के बारे में everyone knows that is this organization ensures tries to crack down on money laundering and terror financing. हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है. OECD के अंदर 39 countries are part of it and established in 1989 to give a passing by reference. Moving forward, at the COP level we had various initiatives launched with respect to ensuring climate change. हम इसको डिटेल में भी देखेंगे. तो एक important मीथेन एक important gas है which is a global, it causes global warming. तो ये global warming सबको पता है, लेकिन एक important event हुआ था, that is global methane pledge, this pledge was taken by US and EU. तो ये आपको पता चाहिए. During COP26 of UNFCCC के जो COP26 था, तब उन्होंने ये important initiative launch किया and it was an agreement to reduce global methane emission, and the pledge was announced to aim for reducing methane emission by 30% by the year 2030 and 30% कौन से लेवल का? 2020 लेवल का. सो 2020 में जो लेवल है उसका हम 30% कम करेंगे बाय 2030. ये ग्लोबल मीथेन प्लेज है, आपको पता चाहिए. ठीक है, ग्लोबल मीथेन प्लेज आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज मीथेन रिलेटेड कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो न्यूज में थे. सो सी, वंस वी आर टेकिंग मीथेन, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू मीथेन विल ट्राई टू कवर. दैट इज इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी. This observatory was launched by UNEP with the help of EU. UNEP with the help of EU to monitor methane emission through satellite. तो ये भी आपको पता चाहिए. International Methane Emission Observatory will produce a public trust this will produce a global database of empirically verified methane emission. तो कितना emission at a global level ये हो रहा है, ये एक database create करेगा International Methane Emission Observatory. Moving forward, again important news में क्या था? Global Methane Assessment. एक important report है Global Methane Assessment. This report is Global Methane Assessment Benefit and Cost of Mitigating Methane Emission. So this report, that is Global Methane Assessment Benefit and Cost of Mitigating Methane Emission, is a report by Climate and Clean Air Coalition. हम इसके बारे में भी देखेंगे. Climate and Clean Air Coalition and UNEP. तो जब भी मीथेन की बात आती है तो UNEP आ जाता है पिक्चर में, तो ये याद में रखना. Global, next is, as I told you, that this report, that is Global Methane Assessment Benefit and Cost of Mitigating
mitigating methane emission is by Climate and Clean Air Initiative, Climate and Clean Air Coalition and UNEP. Climate and Clean Air Coalition के बारे में जानना जरूरी है because it was launched in 2019 by UNEP and 6 nations, and India became a part of this Climate and Clean Air Coalition, आपको पता चाहिए, and it is a voluntary partnership of government, intergovernmental organization, business organizations, scientific institutions, civil societies committing to protect the climate protect करना है, air quality भी improve करना है. See, clean air भी है and climate भी है, तो climate and air pollution, air quality improve करनी है by actions. कैसे इंप्रूव करनी है क्लाइमेट एंड क्लीन एयर, कैसे इंश्योर करना है, बाय रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स. तो शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स मतलब दीज आर कॉजिंग क्लाइमेट चेंज आल्सो एंड आर आल्सो कॉजिंग पोल्यूटेंट्स. तो कौन से ऐसे शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं? ब्लैक कार्बन हो गया, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, नॉट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, एंड HFC. तो ये भी आपको पता चाहिए. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? नेक्स्ट, देयर इज आल्सो इनिशिएटिव दैट इज क्लीन एयर इनिशिएटिव. क्लीन एयर इनिशिएटिव क्या है? जैसे क्लाइमेट एंड क्लीन एयर coalition है, climate and clean air coalition है, there is clean air initiative. Clean air initiative is a call on national and subnational government to achieve air quality that is safer for citizen and to align climate change and air pollution policies by 2030. तो what we are trying to do is air quality improve करने के लिए एक national and subnational level पर एक initiative है कि where every country and state government or subnational government would ensure that there is improvement in the air quality, and this initiative was launched by UN, WHO, UNEP and Climate and Clean Air Coalition. तो इनका इनिशिएटिव है. What we want to ensure कि 2030 तक what we ensure is better air quality. और कैसे better air quality? WHO standards, WHO ने जो 2030 का standards दिया है air quality का, वो हम achieve कर पाए हैं through this clean air initiative. Hopefully you have got important points through this lecture. तो ये with respect to methane, क्लाइमेट, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव डन इज बहुत सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है. वील रिवाइज नाउ and ensure that everything what we have done in today's 30 minutes lecture is into your brains. So you have to tell me and you have to revise with me. तो हमने start कहाँ से किया था? Can anyone tell me कि first हमारा क्या topic था जहाँ से हमने start किया? That is state of climate report. कौन release करता है? IMD रिलीज करता है, and it said 2021 is the 5th warmest year and most warmest year कौन सा है? 2016 है, and how many lives? 1750 lives were lost. तो ये important आपको पता चाहिए. Then frontier report again by UNEP, important है, identifies and offers solution to 3 major issues. कौन से issues? अर्बन नॉइज, वाइल्ड फायर एंड ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस. तो ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस कौन सा है? क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. नेक्स्ट इज यूएन एनवायरमेंट असेंबली होस्टेड बाय यूएनईपी. 5th सेशन है, लॉन्च ड्यूरिंग रियो 2020. हमारा थीम क्या है इस बार का? इट्स अ हाईएस्ट एनवायरमेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द वर्ल्ड एंड थीम इज स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द SDG. 5th सेशन है, and इस treaty में, इस assembly में what at the global level what we achieved was 175 countries agreed to have a global plastic treaty by 2024. World Environment Day 5th June, आपका prelims भी 5th June. इस साल का host is Sweden. Only one planet is the theme. 2021 का ecosystem restoration theme था. And कब start हुआ था? Stockholm Conference जिस दिन host किया गया था. एंड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम क्या है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट आपको पता चाहिए. देन ब्रूटलैंड कमीशन आपको पता चाहिए, इसको दूसरा कमीशन का नाम क्या है? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. इसके बाद इन्होंने कौन सा रिपोर्ट पब्लिश किया था? आर कॉमन फ्यूचर. एंड दिस आर कॉमन फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलते हैं, आर कॉमन फ्यूचर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आया था. प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट बाय यूएनईपी आपको पता चाहिए, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. देन इमिशन गैप रिपोर्ट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट आउटलुक, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी आउटलुक भी है बाय CBD. देन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, ग्लोबल
लैंड आउटलुक है बाय यूएनसीसीडी। तो ये ग्लोबल लैंड आउटलुक, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक एंड ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक आपको पता चाहिए। इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट्स, द राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम्स बाय यूएनईपी एंड इंटरपोल, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट अगेन बाय यूएनईपी। नेक्स्ट इज चैंपियन ऑफ अर्थ, यूएनईपी किसको देते हैं, मैंने बताया 2005 से स्टार्ट हुआ है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, साइट्स कन्वेंशन जब ये हुआ था तब हमने लॉन्च किया था। रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इज द थीम। साइट्स कन्वेंशन देख लिया, हेडक्वार्टर्स देख लिया, अपेंडिक्स देख लिया, क्या एम है, कब ड्राफ्ट हुआ था, IUCN का समिट में ड्राफ्ट हुआ था 1963 में, एनफोर्स्ड इन 1973। हमने वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के सारे हमने ये देख लिए। नेक्स्ट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट भी देख लिया। जब हम इलीगल ट्रेड देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ का तो हमने ये भी कवर कर लिया। FATF कवर कर लिया। ग्लोबल मीथेन प्लेज COP26 में US एंड EU का इनिशिएटिव है, आपको पता चाहिए। इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी हमने देख लिया। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट, बेनिफिट एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग मीथेन एमिशन, ये भी हमने रिपोर्ट देख लिया। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन देख लिया, शॉर्ट लिव पोल्यूटेंट्स हमको कम करने, कौन से शॉर्ट लिव्ड है। नेक्स्ट इज क्लीन एयर इनिशिएटिव, जहां हमको WHO लेवल की जो स्टैंडर्ड्स है वो हमें क्या करना है, अचीव करना है बाय 2030। मूविंग फॉरवर्ड, और एक पॉइंट मैं जो भूल गया बताना, दैट इज ग्लोबल मीथेन एमिशन। देयर वाज अ रिपोर्ट a few years back that it said कि global methane emission has been rising and the source for global methane was agricultural waste, fossil fuel emission की वजह से, then animal husbandry, landfills, agricultural activities, waste water treatment, ये सारे sources है of methane. And as you know कि methane is 28 times more potential with respect to causing climate change, and this rise of methane emission was given in global carbon project. So global carbon project noted that there is a rise in methane emission at the global level. This global carbon project is an initiative of Future Earth and World Climate Research Program and Future Earth. And what this global carbon project tries to do is it aims to establish common knowledge base for policy formation and support action to slow down greenhouse gas emission. तो एक common knowledge base तैयार करने की कोशिश कर रहा है for policy formation. So this project would tell कि actually what is the reason for climate change, where are the greenhouse gas emission coming from, which gases are increasing. So what it does is it gives a knowledge, it ensures it tries to have a common knowledge base so that we can make policies based on this. And this global carbon project है, it also releases global carbon budget report. तो ये एक important fact you should know along with this. Sorry to pause you in between, but make sure you pause this video and subscribe to the channel because 80% of you are not subscribing. I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers. Thank you. If you like our way of teaching and if you want to cover entire current affairs of 2 years, you can join our Target 140 Plus current affairs batch, where we have covered current affairs of last 2 years in the most comprehensive way, linking current with static. To start with, one important report which I want to tell you was with respect to एक important report जो आपको पता चाहिए, that is renewable integration in India. I'm going to tell you why it is important and why this organization which is bringing out this report is also in news from multiple perspectives. तो ये आपको पता चाहिए. And this report is published by, that is Renewable Integration in India 2021. This report is by Niti Aayog and International Energy Agency. Amazing energy institution है. It is in news for multiple reasons. तो वो भी हम साथ में देखेंगे. And this report was released, and the main emphasis of this report was to understand the energy transition challenges which are faced by renewable rich states. So what are the challenges which are faced by renewable energy states, renewable rich states? तो वो understand करने के लिए एक important report was released by Niti Aayog and International Energy Agency. With respect to International Energy Agency, few important things which you should know. It is a Paris-based organization under OECD. Secondly, you should know that it was established after 1973-74 oil crisis के बाद it was launched, and this organization was set up to help its member respond to oil crisis. And India became associate member
in 2016-2017 तब इंडिया became an associate member, but recently you should know 2021 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इनवाइटेड इंडिया टू बिकम अ फुल टाइम मेंबर, तो ये भी न्यूज में था. Presently there are 30 members majorly from OECD, but India was what? India was invited for becoming a full-time member of International Energy Agency. The focus area बहुत important है. Focus area is energy security, economic development and environmental awareness. ये तीन focus area है of this organization. Along with it, it focuses on tracking and analyzing key global energy trends. तो whether energy requirement is increasing or not, वेदर विच कौन से सेक्टर में एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रहा है या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी बढ़ रहा है, तो क्या करता है, ट्रैक करता है, एनालाइजेस की ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स. सेकेंडली, प्रमोट साउंड पॉलिसीज एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन अमॉन्ग ऑल द ग्लोबल जो भी इकोनॉमीज है, उसमें क्या करता है, ग्लोबल जो भी टेक्नोलॉजी है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है उसका कोऑपरेशन एंश्योर करता है. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज few reports, amazing, all the time they are in news, that is global energy and CO2 status report, again published by International Energy Agency. उसके बाद हो गया World Energy Outlook, World Energy Statistics, World Energy Balance, Energy Technology Perspective, Net Zero by 2050, India Energy Outlook and World Energy Investment. ये सारे reports are by International Energy Agency. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह अलग स्कैटर्ड है, लेकिन क्या है, व्हाट वी हैव डन इज कंपाइल्ड एट वन प्लेस. तो ये आपको पता चाहिए, दैट इज ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट से जो भी एनर्जी रिलेटेड. तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हाट इट डज इज इट एनालाइजेस एंड ट्रेंड्स, एनालाइज करता है एंड ट्रैक करता है ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी यूटिलाइजेशन, विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सेक्टर में जो भी ट्रेंड्स है ये एनालाइज करता है. तो दैट इज बाय ऑल द रिपोर्ट्स आर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी सेक्टर. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज ऑल्सो बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. मूविंग फॉरवर्ड, देयर वाज what we did was, जब हम एक टॉपिक लेते हैं तो हम उसके स्टैटिक में जाते हैं. So now we are going to take एक टॉपिक न्यूज में था एंड उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स न्यूज में थे हम सारे विल ट्राई टू कवर एवरी सच टॉपिक एंड ट्राई टू कनेक्ट इट टू बेसिक पार्ट ऑल्सो. देयर वाज वन रिपोर्ट दैट इज स्टेटस ऑफ कोरल रीफ अराउंड द वर्ल्ड. एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज किया गया था एंड दिस रिपोर्ट वाज रिलीज बाय ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क. तो इन्होंने रिलीज किया था, तो यू शुड नो. एंड दिस रिपोर्ट सेड लास्ट डेकेड में वी लॉस्ट 14% ऑफ आवर कोरल रीफ्स, 14% ऑफ आवर कोरल रीफ्स. एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन सेड कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस लॉस ऑफ कोरल रीफ्स. तो यू शुड नो. नेक्स्ट इज, तो रीजन क्या दिया उन्होंने, कोरल ब्लीचिंग हो गया, अल्गल ब्लूम हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया, ओवर टूरिज्म, एक्सेसिव टूरिज्म एंड ओवर फिशिंग. सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट रीजंस विद रिस्पेक्ट टू व्हाई वी लॉस्ट लॉट ऑफ कोरल रीफ्स. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज, क्वेश्चन हमेशा आता है कि व्हाई, हाउ इज ओशन एसिडिफिकेशन लीडिंग टू कोरल ब्लीच, कोरल लॉस ऑफ कोरल्स, हाउ ओशन एसिडिफिकेशन इज लीडिंग टू लॉस ऑफ कोरल्स. तो क्या होता है, ओशन एसिडिफिकेशन से क्या होता है, देयर इज शैलोइंग ऑफ, वन सेकेंड, देयर इज शैलोइंग ऑफ कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, CCD बोलते हैं इसको, नॉट आर CCD. तो ये कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ क्या होता है, ये क्या होता है, शैलो होता है, ये ऊपर आता है. नॉर्मली कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ क्या होता है, इट इज अ लेवल बिलो विच देयर इज मोर डिसोल्यूशन, मोर द कार्बोनेट्स डिसॉल्व फास्ट विथ रिस्पेक्ट टू, and there is loss of carbonates. जो भी कोरल रीफ का पॉलिप होता है that is made of carbonates. तो below that level क्या होता है कि carbonates dissolve very fast, supply of carbonate is less and dissolution is high. तो वहां उस लेवल के नीचे कार्बन डिसॉल्व होता है. तो ये लेवल क्या है, अराउंड 3.5 किलोमीटर्स डेप्थ में है. सो एज देयर इज ओशन एसिडिफिकेशन, तो ये लेवल ऊपर आ जाती है. एंड कोरल रीफ्स क्या होता है, जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है, इट गेट्स डिसॉल्व्ड इजीली. तो ओशन एसिडिफिकेशन से क्या हो रहा है, CCD का डेप्थ क्या होता है, शैलो हो जाता है, ऊपर आ जाता है. तो यू शुड नो. सेकेंडली, फ्यू थिंग्स अबाउट कोरल रीफ्स आपको पता चाहिए. दे आर नोन एज रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन एंड दे आर हाईली प्रोडक्टिव, हाई प्रोडक्टिविटी होती है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोलते हैं. सेकेंडली, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन जूज़ैंथेला एंड कोरल पॉलिप. तो आपको पता चाहिए जूज़ैंथेला व्हाट इट डज इज फोटोसिंथेसिस करते हैं एंड पॉलिप क्या करता है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर, इट ensures that the
जो इट प्रोवाइड्स देम स्ट्रक्चर टू अटैच होता है, प्रोवाइड बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कोरल पॉलिप आपको पता चाहिए एंड जूज़ैंथेला आपको पता चाहिए। देन व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कोरल रीफ, फास्ट में हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इज क्लीन वाटर, व्हाट यू नीड इज क्लीन वाटर, टेम्परेचर बिटवीन 20 to 32 डिग्री सेल्सियस, सेडिमेंट फ्री चाहिए, शैलो वाटर एंड अबंडेंट फाइटोप्लैंक्टन चाहिए। सो दीज आर द फ्यू कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड with respect to coral reef, formation of coral reef. Then not just knowing this much is not enough, knowing this much is not enough, what you need to know is few other important things with respect to coral reefs. कौन सी चीजें आपको जानने जरूर है? There is Indian Coral Reef Monitoring Network, Indian Coral Reef Monitoring Network which is by MOEF, MOEF का एक इंडियन कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क है, तो दैट इज एन इनिशिएटिव ऑफ MOEF. सेकेंडली वी हैव ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क. इट इज अ नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन कोरल रीफ इकोसिस्टम फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट. तो एक रिसर्च नेटवर्क ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है दैट हैज व्हाट इट डज इज इट प्रोवाइड्स बेस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन which would be helpful for protecting coral reef ecosystem, their conservation and management. Indian Coral Reef Monitoring Network and Global Coral Reef Monitoring Network. And this Global Coral Reef Monitoring Network, what it does is it releases this report. कौन सा? status of coral reef around the world. तो ये आपको पता चाहिए. Next is we also have what? Coral bleaching alert system. Coral bleaching alert system. See, to understand कि कितना फास्ट कोरल ब्लीचिंग होता है तो ये आपको पता चाहिए. कोरल ब्लीचिंग अलर्ट सिस्टम है, किसका है? इनकॉइस का है. एंड दिस इज अ सैटेलाइट बेस्ड सी सरफेस. तो ये क्या करता है? सैटेलाइट बेस्ड क्या करता है? सी टेम्परेचर मेजर करता है एंड बेस्ड ऑन दिस इट एनालाइज कि कितने कोरल रीफ्स क्या हो रहे हैं? ब्लीच हो रहे हैं. ब्लीचिंग मतलब क्या है? जो जूज़ैंथेला है वो डिटैच होता है फ्रॉम द कोरल पॉलिप एंड व्हाई डिटैच होता है एंड देयर इज डेथ ऑफ दिस जूज़ैंथेला. एंड व्हाई देयर इज डेथ ऑफ दिस जूज़ैंथेला इज बिकॉज देयर इज सेडिमेंटेशन, देयर इज पोल्यूटेंट्स, देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज ओशन एसिडिफिकेशन. तो ये आपको पता चाहिए. एंड दिस इनक्वाइस इज बेस्ड इन, सबको पता है, इज बेस्ड इन हैदराबाद एंड अंडर MOES, under Ministry of Earth Science. Simultaneously you should know there is also Coral Triangle which is also in news. Coral Triangle क्या है? It is an area in the ASEAN region. ASEAN region के पास area है, I would tell you, and this ASEAN region has highest biodiversity of coral reefs, highest biodiversity of coral reefs. तो ये आपको पता चाहिए. And तो where this कौन से countries are part of this coral triangle, कौन से countries के अंदर ये coral triangle आता है? It is tropical marine waters of Indonesia हो गया, मलेशिया, पापा न्यू गिनिया हो गया, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते, सैलमन आइलैंड. तो ये सारे कंट्रीज मिला के क्या है? एक ट्रायंगल फॉर्म होता है. I'll show you in the map also. And what happens is this area is known as coral triangle and it has high coral biodiversity. It is also one of the 3 mega ecological complexes in the world. तो 3 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में से एक मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? इज कोरल ट्रायंगल. अदर 2 कौन से है? कॉन्गो बेसिन एंड अमेज़न ग्रीन फॉरेस्ट. अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो ग्रीन फॉरेस्ट है, दैट इज द अदर 2 मेगा इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स है. ये थर्ड है कोरल ट्रायंगल. दिस एरिया इज ओनली 1.5% ऑफ द अपना पूरा क्या बोलते हैं कोरल एरिया, बट इट हैज 30% कोरल रीफ्स, 30% कोरल रीफ्स. तो ये आपको पता चाहिए. टू शो इन द मैप्स, जो मैप्स में आपको समझेगा, एशियन रीजन में फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, तिमोर लेस्ते, पापा न्यू गिनिया एंड सैलमन आइलैंड. तो ये इफेक्टिवली ऐसा ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है. एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम कोरल ट्रायंगल बोलते हैं. देयर इज एट द ग्लोबल लेवल देयर इज वन मोर इनिशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू कोरल रीफ्स, दैट इज इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव. इट इज अ इंटरगवर्नमेंटल बॉडी. इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ इट एंड एम्स एट शेयरिंग बेस्ट practices with respect to coral protection and working at the global level to ensure protection of global coral reefs. तो क्या है? बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए जाते हैं अंडर दिस इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव. इंडियन इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव, इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ इट. नेक्स्ट इज वी आल्सो plan to establish first dugong conservation reserve, and it would be set up by Tamil Nadu government at Park Bay in southeast coast of India. तो ये पता चाहिए, Park Bay around the coast of Tamil Nadu we are going to set up first conservation reserve of dugong, and with the help of community participation and government would also ensure setting up of dugong marine conservation reserve. तो ये आपको पता चाहिए.
तो डुगोंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चाहिए. इट इज ऑल्सो नोन एज सी काउ. इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सेकेंडली इट्स हैबिटेट क्या है, गल्फ पाक बे में सबसे ज्यादा है, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, एज आई सेड गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, पाक बे में मिलता है, अंडमान निकोबार में भी मिलता है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलता है. लोकली एक्सटिंक्ट लक्षद्वीप में नहीं मिलता है, लक्षद्वीप में नहीं मिलता है, तो यू शुड रिमेंबर दिस. लक्षद्वीप में नहीं मिलता है एंड एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया में नहीं मिलता है, एक्सेप्ट ये एरिया में ही मिलता है, दैट इज पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार, इतने ही जगह मिलता है. इट इज नॉट फाउंड इन लक्षद्वीप. इट इज लोकली एक्सटिंक्ट. पहले मिलता था, अभी नहीं मिलता है. एंड व्हाट यू से, यू कैन नॉट फाइंड देम, you cannot find them around the entire coast, भी नहीं मिलता है. And basically they graze on seagrass. Seagrass पर majorly they are dependent. Seagrass. Secondly, it's the world's only vegetarian marine animal. तो यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है, तो ये आपको पता चाहिए. IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है. एंड कौन से थ्रेट्स है इसको, it faces extinction because of habitat loss, sea pollution, loss of seagrass. तो ये भी important चीज आपको पता चाहिए. Moving forward, there is always confusion between seagrass and seaweeds. Government of India is extensively promoting seaweeds, लेकिन how it is different from seagrass बहुत important है. seagrass में क्या है, basically they are known as ecosystem engineers बोलते हैं. seaweeds को नहीं, seagrass को ecosystem engineers बोलते हैं. they are found in all continents except Antarctica. basically जो है seagrass है, these are normal plants होते हैं, but seaweeds are what, these are algae. तो ये डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. जो वीड्स है वो algae है, ग्रास है जो प्लांट्स है. नॉर्मली इनमें स्टेम, लीव्स सब कुछ मिलता है, तो ये आपको पता चाहिए. एंड these are flowering मरीन प्लांट्स, फ्लावरिंग है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सी ग्रास. नेक्स्ट इज दे आर आल्सो नोन एज लंग्स ऑफ द सी बिकॉज दे जनरेट 10 liters ऑफ ऑक्सीजन एवरी डे. तो 1 square meter ऑफ सी ग्रास जनरेट 10 liters ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लंग्स ऑफ द सी बोलते हैं. इट एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट, इट इज अ सोर्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड नर्सरी फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म. इट इज एन इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक ऑल्सो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड थ्रेट्स, इसको क्या है, नॉर्मल जो हमारे थ्रेट्स है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इरोजन, सेडिमेंट डिपॉजिट, ओवरफिशिंग एंड पोल्यूशन आर व्हाट आर द थ्रेट्स. बेसिकली ये वैस्कुलर प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, with roots, stem and leaves. तो ये सी ग्रास के बारे में इंपॉर्टेंट चीज known as lungs of the sea. ये इंपॉर्टेंट है, lungs of the sea पता चाहिए आपको, lungs of the sea इसको पता चाहिए. नेक्स्ट सीवीड्स क्या है, सीवीड्स आर व्हाट, मरीन मैक्रोएल्गे है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक बट दे आर नॉट प्लांट्स. एल्गी एंड प्लांट्स में डिफरेंस है. दीज सीवीड्स आर मैक्रोएल्गी, ये आपको पता चाहिए. दीज आर primitive marine non-flowering marine algae है without roots, stem and leaves, and they can be बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये आपको पता चाहिए. as I told you, they are not categorized as plant but have photosynthetic ability. वो खुद का जो फूड है वो खुद ग्रो करते हैं, तो ये आपको पता चाहिए. and majorly found in intertidal region, shallow एंड डीप वाटर्स में भी मिलते हैं, इंटरटाइडल रीजन में ज्यादातर मिलते हैं, तो ये आपको पता चाहिए. गल्फ ऑफ मन्नार में यूजुअली यू फाइंड सीवीड्स. इंटरटाइडल रीजन है, लो इंटरटाइडल रीजन है, उस एरिया में यू फाइंड हाई क्वांटिटी ऑफ दिस सीवीड्स. ठीक है. व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स, पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ सीवीड इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी करता है, सीवीड एक्वाकल्चर भी है, मतलब इट प्रोवाइड हेल्दी सी फूड फॉर लोकल कम्युनिटीज भी है, बायो इंडिकेटर है. इफ द सीवीड्स आर डिक्रीजिंग, उनका नंबर डिक्रीज हो गया तो इट इज अ बायो इंडिकेटर. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, आयन सिक्वेस्ट्रेशन भी करता है, तो एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करता है. एज आई टोल्ड यू इट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस, तो ये भी आपको पता चाहिए. तो बेसिकली इट हैज वेरियस बेनिफिट्स. तो इट प्रोटेक्ट्स शोरलाइन फ्रॉम इरोजन ऑल्सो एंड रिड्यूसेस ओशन एसिडिफिकेशन. तो इरोजन कम करेगा, ओशन एसिडिफिकेशन कम करेगा, बायो इंडिकेटर भी है, आयन सिक्वेस्टर भी है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई भी करता है. तो सीवीड्स आपको पता चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस, सीवीड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दीज आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, इंपॉर्टेंट है, आर कंज्यूम्ड एज फूड. चाइना में दे आर एक्सटेंसिवली consumed for food, तो vitamins है. Secondly, they are used as fertilizers also to increase aquaculture production.
बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच और इरोजन कॉम्बैट करने के लिए भी दे आर यूज्ड, they are also used as an ingredient for toothpaste, cosmetics and paints. Toothpaste, cosmetic and paints में भी we use seaweeds. They have anti-inflammatory properties है and antimicrobial agents भी है। Major producer कौन है? China is the major producer, and what India has launched is seaweed mission to increase seaweed aquaculture, to promote farmers and to promote fishermen to take up seaweed cultivation, because it has huge demand in the international market and has huge potential. Next is दो important initiative which took place during COP26. COP26 के वक्त दो important initiative launch हुए थे जो आपको पता चाहिए। One is Clit Bank Declaration. Clit Bank Declaration क्या है? It is a coalition of 22 countries. They have agreed to create zero emission shipping trade routes. तो जो shipping trade routes है वो क्या करेंगे? हम zero emission shipping trade routes हम establish करेंगे। तो ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स हम एस्टैब्लिश करेंगे टू स्पीड अप डीकार्बनाइजेशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री। तो जो शिप रूट्स होंगे उसमें क्या होगा? zero emission the ships would release during the passage through this corridors, and it was launched during COP26, and it agreed to establish at least 6 green corridors by 2025. तो ये आपको पता चाहिए। and India has not signed to this declaration, लेकिन Clit Bank Declaration is an important thing which you should know. Clit Bank Declaration. Next is High Ambition Coalition for Nature and People. तो ये भी न्यूज में था। High Ambition Coalition for Nature and People, HAC बोलते हैं। It is an intergovernmental group of 70 countries launched in 2019 by Costa Rica, France and Britain. And the goal, इसका गोल क्या है? 30 by 30. What that is protecting at least 30% of land, world's land and ocean by 2030. तो जो भी हमारा 30% ऑफ लैंड का क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है। 30% लैंड में हमको बायोडाइवर्सिटी लॉस कम करना, रोकना है। सेकेंडली वी एंश्योर दैट देयर इज कंजर्वेशन इन दिस 30% ऑफ लैंड बाय 2030। 30 by 30 ये आपको है, दैट इज प्रोटेक्टिंग एटलीस्ट 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन बाय 2030, एंड एम इज टू हॉल्ट द एक्सेलरेटेड लॉस ऑफ स्पीशीज एंड प्रोटेक्ट वाइटल इकोसिस्टम दैट आर सोर्स ऑफ अदर इकोनॉमिक सिक्योरिटीज। तो ये ऐसे जगह को हमको प्रोटेक्ट करना है बाय 2030। तो 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एंड ओशन, एंड इसमें सारे टाइप के मेंबर्स है। रिसेंटली इट इज इन न्यूज बिकॉज इंडिया became the first emerging economy from BRICS bloc to join HAC, High Ambition Coalition for Nature and People. High Ambition Coalition for Nature and People. So in today's session what we learned was with respect to International Energy Agency, all the reports with respect to International Energy Agency, where is the headquarter and कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, आपको बताना है। सेकेंडली वी लर्नड अबाउट डुगोंग हमने सी ग्रास के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें देखी। डिफरेंट बिटवीन सी ग्रास एंड सी वीड्स भी हमने देख लिया। हमने क्लिट बैंक डिक्लेरेशन भी देख लिया टू एस्टैब्लिश ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स, एंड लास्ट इज हमने HAC भी देख लिया, हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर लैंड एंड नेचर भी देख लिया। टू स्टार्ट विथ वन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, हमेशा मैं रिपोर्ट से बात स्टार्ट करता हूं, लेकिन आई कनेक्टेड कि मैं चाहता हूं कि रिपोर्ट का नाम याद रखें, बट वी आर नॉट स्टेइंग हियर, वी वुड लिंक इट टू द स्टैटिक पार्ट। तो याद रखना, नोट्स मिल जाएंगे, डू नॉट वरी, नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट, एक रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट, कार्बन सिंक अंडर प्रेशर। तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट विच आई वांटेड टू टेल यू कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एंड इट इज अ रिपोर्ट बाय यूनेस्को, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड IUCN, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर निकाला है। एंड दिस रिपोर्ट हैज फाउंड दैट सुंदरबन इज अमंग टॉप 5 कार्बन सिंक। तो वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट क्या है? ऐसे फॉरेस्ट विच हैज हाई बायोडाइवर्सिटी एंड आर एक्टिंग एज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बन सिंक। बट दिस रिपोर्ट ऑल्सो फाउंड आउट कि ऐसे 10 फॉरेस्ट है एट द ग्लोबल लेवल which are not carbon sink but these are emitting more carbon। तो ये important outcome था out of this report। लेकिन ये रिपोर्ट में इंडिया के बारे में, सुंदरबंस के बारे में बताया कि among top 5 है with respect to carbon sink, that is they are absorbing more
CO2. नेक्स्ट इज व्हाट आर दिस वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट. तो ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट आपको पता चाहिए. वर्ल्ड हेरिटेज फॉरेस्ट आर मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट है, एंड दे आर एक्टिंग एज अ कार्बन सिंक है, एंड दे ओवर द इयर्स दे हैव एक्टेड एज a source of very high biodiversity and a source of carbon sink, and at the global level we have around more than 250 sites which are heritage forest. तो ये basic information इतना जानना जरूरी है. Moving forward, जब भी आप बायोडाइवर्सिटी की बात करते हो, इकोसिस्टम की बात करते हो, देयर आर वेरियस रूल्स ऑलवेज इन न्यूज वेरियस रूल्स. फर्स्ट रूल कौन सा है? एलन रूल हमेशा आता है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज ऑल द रूल्स टुगेदर. तो एलन रूल क्या बोलता है? इन अ कोल्डर एनवायरमेंट व्हाट हैपेंस इज द एनिमल्स हैव शॉर्टर ईयर्स, टेल्स एंड लेग. तो जो भी एनिमल कोल्डर रीजन के हैं, दे हैव शॉर्टर ईयर्स, tail and leg. तो इस रूल को, why they have this characteristic is they do not want to lose more heat, that is why they have this characteristics. And on the other side जो warmer areas है, जो desert area है, वहां क्या होता है? They have longer ears also, longer legs also. Why? जो ग्राउंड सरफेस है दैट इज वेरी हॉट, सो अगर लेंथ ज्यादा है तो हीट इतना ट्रांसफर नहीं होगा उनके बॉडी में. तो ये एक रीजन है. तो आपको पता चाहिए कि एलन रूल क्या बोलता है? कोल्डर रीजन में व्हाट वी हैव इज शॉर्टर ईयर्स, टेल्स एंड लेग. नेक्स्ट इज देयर इज वन मोर रूल, बर्गमैन रूल है. बर्गमैन रूल क्या बोलता है? कोल्डर एरिया में व्हाट वी हैव इज लार्जर साइज ऑफ एनिमल्स, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन, लार्जर साइज है. उनका सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया कम है, बट वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है. सो सरफेस एरिया कम है मतलब दे कैन एमिट, जो रेडिएशन, जो हीट डिसिमिनेट होगी इन द एटमॉस्फेयर, वो कम होंगी कंपेयर टू देयर वॉल्यूम. सो उनका क्या होता है? उनका सरफेस एरिया कम होता है एंड वॉल्यूम ज्यादा होता है टू मेंटेन द टेम्परेचर. तो ये बर्गमैन रूल क्या होता है? कोल्डर एरिया में यू फाइंड एनिमल्स विथ अ लार्जर बॉडी होता है तो सरफेस एरिया कम होता है. बट ऑन द डेजर्ट साइड क्या होता है? उनका एरिया जो ये होता है, जो एनिमल्स होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है एंड वॉल्यूम कम होता है. सो इससे क्या होता है कि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं. तो ये बर्गमैन रूल एंड एलन रूल, कंफ्यूजन होता है, यू शुड नो. नेक्स्ट इज देयर इज आल्सो गॉस हाइपोथेसिस एंड ग्लूगर्स रूल भी है एंड लिंडमैन्स लॉ भी है. ये तीनों यूपीएससी से रिलेटेड है एंड हमेशा क्वेश्चन आते हैं. सो गॉस हाइपोथेसिस क्या बोलता है? इफ इट इज अ स्टेट वेयर दैट इफ टू स्पीशीज हैव कंप्लीटली ओवरलैपिंग नीश, अगर दो स्पीशीज है, अगर उनकी कंप्लीटली ओवरलैपिंग नीश है ना, तो दिस रूल सेज ओनली वन वुड सर्वाइव एंड अदर वुड बिकम एक्सटिंक्ट. कॉमन नीश मतलब क्या? वेयर दे लिव एंड परफॉर्म देयर फंक्शन. What is a niche of an animal is where they live and they perform their function. जो भी ecosystem का function है वो perform करते हैं. So every animal in a specific ecosystem have a unique. No two animals can have same niche. If they have same niche, what would happen is one would be extinct. So that is Gauss hypothesis. Next is Glogger's rule. क्या बोलता है? Glogger's rule बोलता है in warm humid climate animal bear dark pigmentation than those found in कोल्ड ड्राई क्लाइमेट. तो जितने भी पिगमेंटेशन वार्मर एरिया में क्या होता है? डार्क पिगमेंटेशन होता है. दैट इज अ ग्लॉगर रूल. इतना बेसिक जानना जरूरी है. वी डू नॉट हैव टू गो इनटू डेप्थ. एंड लिंडमैन रूल सबको पता है ऑफ ट्रॉफिक इफिशिएंसी. लिंडमैन रूल हमने हमेशा देखा है, जो भी एवरी ट्रॉफिक लेवल हम जो भी हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसका 10% ही एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट हर्बीवोर्स. तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका 10% इज ट्रांसफर टू द हायर लेवल. इस रूल को क्या बोलते हैं? लिंडमैन रूल बोलते हैं. 10% रूल बोलते हैं एंड रेस्ट इज लॉस्ट इनटू रेस्पिरेशन. सो ऑल द 4-5 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको पता चाहिए. एलन रूल, बर्गमैन रूल हो गया. सेकेंडली वी हैव गॉस हाइपोथेसिस, ग्लॉगर्स रूल एंड लिंडमैन रूल. तो ये पांचों चीजें इंटीग्रेटेड वे में आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज, और ये सब याद रखना है. यू हैव टू रिमेंबर, जब आप सो रहे हो ना, एट द एंड हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे. पेन एंड पेपर याद रखना आफ्टर द सेशन. अभी नहीं, अब सिर्फ याद रखो कि यार मुझे सब कुछ याद रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज GSI, that is Geological Survey of India, is establishing first जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया. फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज लेम्हाटा इन जबलपुर. वहां हम फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश कर रहे हैं. एंड दिस जियोलॉजिकल पार्क इज ऑल्सो ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस जियो पार्क. तो जियो पार्क
जैसे बायोडाइवर्सिटी में जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हम जैसे डेजिग्नेट करते हैं, वैसे ही यूनेस्को जियो पार्क एट द ग्लोबल लेवल डेजिग्नेट करता है। एंड दीज एरियाज, कौन से एरियाज को हम जियो पार्क डेजिग्नेट कर सकते हैं? दीज आर सिंगल यूनिफाइड ज्योग्राफिकल एरियाज वेयर साइट्स of geological importance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development. Protection, education and sustainable development. अगर आप बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हो तो यही तीन वर्ड आएंगे। सो बेसिकली these are what? These are sites of geological importance. Similarly, जैसे हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स है, उसी तरीके से एरियाज है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व आर बायोडाइवर्सिटिकली इंपॉर्टेंट रीजन, यहाँ क्या है? जियोलॉजिकली दीज एरियाज आर इंपॉर्टेंट एंड मैनेज इन अ वे टू एंश्योर प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको पता चाहिए। एट द ग्लोबल लेवल वी हैव अनदर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी जियो पार्क्स है उनका एक नेटवर्क है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क बोलते हैं इसको। तो ऑल द जियो पार्क्स are connected together through this organization. It is a legally constituted non-for-profit organization है, established in 2004. Membership is obligatory for all UNESCO global geoparks, जितने भी हैं उनको membership compulsory है. It is a dynamic network of where members exchange ideas of best practices to raise quality standards of UNESCO Global Geopark. So basically all the geopark come together and share an idea how we can maintain this, what measures we can take to ensure that the quality of standards of these geoparks are maintained. तो जो भी best practices है वो share किए जाते हैं under this global geopark network, and जो भी उनके partners है they come together every 2 years. Every 2 years they come together. Now coming back to one important organization, as I already told you, first geological park हम establish कर रहे हैं जबलपुर के पास MP में। कौन एस्टैब्लिश कर रहा है? जीएसआई एस्टैब्लिश कर रहा है। तो जीएसआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिया। एट द ग्लोबल लेवल इट इज द सेकंड ओल्डेस्ट, लेकिन अगर इंडिया की बात करें इट इज द ओल्डेस्ट। सेकेंडली 1850 नॉट 1950, 1851 में एस्टैब्लिश हुई थी। 1851 या 1 एक बार कंफर्म कर लेना, 1851 या 1857 है। तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ अर्थ साइंस नहीं है बट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, कोलकाता में हेडक्वार्टर है। एंड द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएशन, creation, updation of national geoscientific information. तो क्या करना, जो भी geoscientific information है उसका क्या करने का? क्रिएशन करने का एंड अपडेट करते रहने का। एंड नॉट जस्ट geoscientific information बट ऑल्सो मिनरल रिसोर्स असेसमेंट भी करता है कि हमारे अर्थ में जो इंडिया में कितने मिनरल्स है, कहाँ है, उसका ये क्या करता है? उसको अपडेट करते रहता है। तो ये आपको पता चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू जीएसआई दे हैव ऑल्सो जो लोनार लेक है उसको उन्होंने नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट का स्टेटस दिया है। किसको दिया है? लोनार लेक। लोनार लेक इज अ लेक विच इज फ्रॉम क्रेटर के इंपैक्ट से ये लेक बना है। अल्कलाइन वाटर है वहां पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, आपको पता चाहिए। एंड जीएसआई ने इसको डेजिग्नेट क्या किया है? नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज अर्थ ओवरशूट डे। आपको पता चाहिए अर्थ ओवरशूट डे। बेसिकली अर्थ ओवरशूट डे if our earth is producing 100 units of resources and 100 units of resources हम तैयार कर रहे हैं in 1 year, हमारा प्रोडक्शन कितना है? 100 यूनिट्स। बट इफ वी आर कंज्यूमिंग ऑल दिस 100 यूनिट्स इन अगर 365 डेज में, इफ यू आर कंज्यूमिंग इट इन 180 डेज, तो ये क्या है? द डे ऑन विच वी कंज्यूम ऑल द 100 यूनिट्स ऑफ अर्थ्स कैपेसिटी जो हम जनरेट कर रहे हैं, दैट डे इज अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे फॉल्स ऑन 29 जुलाई। If Earth is generating resources from 1st of January to 1st of December, we as a human beings are consuming it by July 29. तो ये आपको पता चाहिए। And it marks the date when humanity has exhausted nature's budget for the year. Nature's budget. तो यहाँ भी हम fiscal deficit में चल रहे हैं। इसमें भी fiscal नहीं, हम deficit में चल रहे हैं। What we do is we consume more than the capacity of Earth's generation. तो ये आपको पता चाहिए। 74% more हम कंज्यूम कर रहे हैं than what ecosystem can generate. And this report, this Earth Overshoot Day is every year released, announced by Global Footprint Network. Global Footprint Network announce करता है
ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क अनाउंस करता है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के बारे में पता चाहिए। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क 2003 में फॉर्म हुआ था, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ओकलैंड कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। पासिंग बाय एकदम डिटेल में, लेकिन पासिंग बाय आपको पता चाहिए। एंड व्हाट इट डज इज एवरी ईयर इट प्रोड्यूसेस अ न्यू एडिशन ऑफ नेशनल फुटप्रिंट एंड बायो कैपेसिटी अकाउंट विच कैलकुलेट्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड बायो कैपेसिटी ऑफ मोर देन 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, it brings out a report of, it brings a account of how much every country का जितना भी इकोलॉजिकल प्रोडक्शन है क्या है, एंड कंजम्पशन क्या है, उस कंट्री का इकोलॉजिकल कंजम्पशन क्या है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना एग्जॉस्ट हो रहा है, उसका एक क्या करता है, एक अकाउंट एवरी विद रिस्पेक्ट टू बायो कैपेसिटी और नेशनल फुटप्रिंट। फुटप्रिंट मतलब हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कैपेसिटी मतलब कितना जनरेट कर पाते हैं, तो इसका एक अकाउंट मेंटेन करता है। एंड उसी को हम ग्लोबली कंबाइन करके व्हाट वी गेट इज अर्थ ओवरशूट डे। तो ये आपको पता चाहिए, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, ओकलैंड कैलिफोर्निया में ये सिचुएटेड है। मूविंग फॉरवर्ड every year on 22nd September what we celebrate is every year on 22nd September and it is every year the और एक ट्रेंड पता चाहिए कि every year अर्थ ओवरशूट डे क्या हो रहा है, जल्दी आ रहा है। सो तो पिछले साल 2021 में क्या हुआ, 29 जुलाई का आया, इस साल क्या होगा, और कम होगा। सो एज पॉपुलेशन इज राइजिंग, एज आवर कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, एज मटेरियलिज्म इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड आवर कैपेसिटी ऑफ जनरेशन, एज डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीजिंग, व्हाट इज हैपनिंग इज आवर कैपेसिटी इज डिक्रीजिंग। होपफुली यू आर एबल टू गेट दिस। तो एवरी ईयर लास्ट फ्यू ईयर से व्हाट हैज हैपनिंग इज द 29 जुलाई इज द डेट इज प्रीपोनिंग, जल्दी आ रहा है। 29 जुलाई पिछले साल था, तो इस साल क्या आएगा, होपफुली इट इज अराउंड 22 जुलाई या पर्सपेक्टिव से कुछ आ सकता है, लेकिन पहले आएगा। ठीक है, तो हम इतने जल्दी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 29 जुलाई तक ही हमने पूरा कंज्यूम कर लिया हमारे अर्थ का जो हमारा कैपेसिटी था, हमें उसको 31 दिसंबर तक इंश्योर करना था, लेकिन हमने जल्दी कंज्यूम कर लिया। तो ये आपको पता चाहिए। 22 सितंबर एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वन राइनो डे, राइनो वर्ल्ड राइनो डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 सितंबर। आपको पता चाहिए IUCN स्टेटस ऑफ वन हॉर्न राइनो आपको पता चाहिए इज वल्नरेबल। कौन से स्टेट्स, कौन से नेशनल पार्क्स में मिलता है आपको पता चाहिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, पोबितारो नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क में है। मेजरली काजीरंगा में है, उसके बाद पोबितारो में है एंड ओरांग में है। तो पता चाहिए मेजरली काजीरंगा में है। व्हाट वी हैव इज पोबितारो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पता चाहिए। इट इज ऑन द सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। हाईएस्ट डेंसिटी वाइज देखा ना, नंबर वाइज काजीरंगा, लेकिन डेंसिटी वाइज पोबितारो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सेकेंड हाईएस्ट नंबर आफ्टर काजीरंगा। मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं इसे, मिनी काजीरंगा भी बोलते हैं। राइनो सेंसस हम कब करते हैं, एवरी 3 इयर्स करते हैं। एंड फर्स्ट टाइम राइनो इज द फर्स्ट एनिमल जिसका डीएनए सीक्वेंसिंग हम कर रहे हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग फॉर कंजर्वेशन हम कर रहे हैं। तो राइनो इज द फर्स्ट एनिमल टू बी उसका डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू राइनो। व्हाट इज दिल्ली डिक्लेरेशन? इट इज साइंड बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड भूटान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एशियन राइनोस। तो दिल्ली डिक्लेरेशन उस पर्सपेक्टिव से पता चाहिए, इट इज बाय इंडिया, नेपाल एंड भूटान फॉर कंजर्वेशन ऑफ rhinos, conservation of rhinos. There's few another declaration क्या है, बिश्केक डिक्लेरेशन। बिश्केक डिक्लेरेशन किसके लिए है? फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। वी हैव सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन, दैट इज डबलिंग ऑफ टाइगर्स बाय 2022। तो 2022 अमेजिंग इंपॉर्टेंट ईवेंट है फ्रॉम टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जो हमारा सेंट पीटर्सबर्ग में जो हमारा समिट हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में उसको ग्लोबल टाइगर समिट, फर्स्ट ग्लोबल टाइगर समिट कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 2002 कहां हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग। हमने वहां तब हमने डिसाइड किया व्हाट वी वुड डू इज 2022 तक हम क्या करेंगे, टाइगर का पॉपुलेशन डबल करेंगे। इसको ही WWF ने क्या बोला, TX2 इनिशिएटिव, वेयर दे एंश्योर्ड कि जो भी टाइगर का पॉपुलेशन है नेक्स्ट 20 इयर्स में हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे। इंडिया अचीव्ड इट 4 इयर्स बिफोर इन 2018। 2018 में हमने क्या कर दिया, हमारा टाइगर पॉपुलेशन डबल कर लिया थ्रू वेरियस इनिशिएटिव। ठीक है, TX2 इनिशिएटिव। तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि
व्हाट इज क्या बोलते हैं हर एक चीज के बारे में विद रिस्पेक्ट टू जो भी टाइगर रिजर्व्स है उसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। एज द लेक्चर गो बाय एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू एवरी टाइगर रिजर्व विच इज इन न्यूज, सब कुछ हम कवर करेंगे, सब कुछ हम कवर करेंगे। एंड 2022 में व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज सेकेंड ग्लोबल टाइगर समिट। सेकेंड ग्लोबल टाइगर समिट समझ में आ रहा है? सेकेंड ग्लोबल टाइगर समिट कहां होने वाला है? रशिया में ही होने वाला है। सेकेंड टाइगर समिट इज गोइंग टू हैपन इन रशिया, बट यू हैव टू टेल मी अभी होगा या नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस वॉर वी डू नॉट नो, बट सितंबर में इट हैज बीन प्लान्ड। फर्स्ट इज सेंट पीटर्सबर्ग में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू हम टाइगर रिजर्व के कुछ आज पॉइंट कवर करेंगे, कुछ अगले लेक्चर में करेंगे। रिसेंटली वी हैड व्हाट फोर्थ एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। एक फोर्थ एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ। इट वाज होस्टेड बाय मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, एंड the aim of this ministerial conference was to review progress made towards global tiger recovery program. Global tiger recovery program है एक important global level पर program है। उस पर्सपेक्टिव से क्या अभी तक मेजर्स हमने लिए हैं ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के रिव्यू करने के लिए, वो प्रोग्राम का रिव्यू करने के लिए हमने ये एक फोर्थ एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हमने रिसेंटली मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम दोनों ने मिलके मलेशिया में ली थी। तो ये आपको पता चाहिए ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम का रिव्यू करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है? ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है? एज आई सेड इट इज जो समिट था वो इट वाज अ इनिशिएटिव ऑफ मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम। तो व्हाट इज ग्लोबल टाइगर फोरम? इट इज अ वर्ल्ड, सो दिस फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 1993 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो एंड इट इज अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, एंड इट इज the forum is an intergovernmental body which meets every 3 years, and what it does is, तो ये आपको पता चाहिए ग्लोबल टाइगर फोरम क्या हेडक्वार्टर का है? न्यू दिल्ली में है। अल्टीमेट एम ऑफ दिस फोरम इज टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, मीट एवरी 3 years, इट मीट्स एवरी 3 years, ठीक है। एंड इट यूटिलाइजेस what it plans to do is all the जितने भी टाइगर रेंज कंट्रीज है उसको क्या करें? कोऑपरेटिव पॉलिसीज हम बनाएं, कॉमन अप्रोच एंश्योर करें, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज हम क्या करें? एंश्योर करें, साइंटिफिक मॉड्यूल फॉर प्रोटेक्शन हम एंश्योर करें। तो हम क्या करें? व्हाट वी डू इज वी एंश्योर दैट whenever there is a forum, intergovernmental body, we share knowledge with respect to tiger conservation. We make cooperative policies. There is a common approach. There is a tech expertise and scientific module for protection and technology का हम use करें, ठीक है। And as I already told you कि जो टाइगर समिट हुआ था 2010 में हुआ था, मैंने 2002 बोला था, 2010 है वो, 2010 में हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, जिसमें हमने बोला कि हम डबल करेंगे। एंड इसको डबल करने के लिए व्हाट वी डिड वाज वी लॉन्च ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया था टू एंश्योर दैट वी डबल पॉपुलेशन इन 12 years। तो 2010 है, 2002 बोला था लेकिन 2010 है, तो ये आपको एंश्योर करना है। एंड दिस प्रोग्राम वाज अ इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव था? 13 टाइगर रेंज कंट्रीज एंड ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव का ये प्रोग्राम था, दैट इज ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो सेकंड हमारा ग्लोबल टाइगर समिट होने वाला है इज इन वेल्डिवोस्टॉक। आई डू नॉट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस, बट वेल्डिवोस्टॉक इन रशिया। तो ये आपको पता चाहिए। तो फर्स्ट कहां हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। हमने वहां डिसाइड किया था 2010 में कि 2022 तक हम क्या करेंगे? इसको डबल करेंगे, इसलिए TX2 इनिशिएटिव लॉन्च किया था। एंड साइड बाय साइड हमने ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, दिस वाज अ इनिशिएटिव ऑफ 13 टाइगर रेंज कंट्रीज एंड ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए। हमने ग्लोबल टाइगर फोरम भी देख लिया, It is a intergovernmental body headquartered in New Delhi, established in 1993, working towards protection of tiger through what? Through cooperative policies, through sharing of knowledge, through tech expertise and scientific modules working together for protection of tigers. तो first topic हमने क्या लिया? Anyone? World Heritage Forest Report. World Heritage Forest Report. And that report said कि सुंदरबन is among the top 5. सुंदरबन is among the top 5 कार्बन सिंक। हमने देखा कि 10 ऐसे फॉरेस्ट है, ग्लोबल हेरिटेज फॉरेस्ट है, दीज आर
इमिटिंग मोर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, हेरिटेज फॉरेस्ट के बाद हमने क्या देखा, हेरिटेज फॉरेस्ट के बाद हमने क्या देखा, विच टॉपिक डिड वी टेक आफ्टर हेरिटेज फॉरेस्ट, वेरियस रूल, एलन रूल देख लिया, देन बर्गमैन रूल देख लिया, गॉस प्रिंसिपल देख लिया, ग्लॉगर, कैन एनीवन टेल मी ग्लॉगर रूल क्या है, ग्लॉगर रूल देख लिया, एंड लिंडमैन रूल। कोई कंफ्यूज होगा इसमें? बर्गमैन याद रखो, बर्गमैन इज लार्जर वॉल्यूम, कहां, लार्जर वॉल्यूम इन कोल्डर रीजन। इसको स्नो लेपर्ड नहीं बोलता, पोलर बियर याद रखो, वो बर्गमैन रूल है, पोलर बियर बर्गमैन रूल। जिन जियोलॉजिकल पार्क देख लिया हमने, फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया कहां है, लेम्हात, जबलपुर, ठीक है। उसके साथ हमने ग्लोबल जियो पार्क भी देख लिया, ऐसे एरिया विच आर जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हमने, एंड विच आर प्रोटेक्टेड, which are protected in a form for sustainable development, education and protection। इस तरीके से उनका मैनेजमेंट हो रहा है कि we are ensuring that there is promotion of education, they are sustainably developed and ये हो रहा है। जियोलॉजिकल पार्क देख लिया, लोनार लेक देख लिया हमने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट इज ग्लोबल टाइगर समिट के बारे में देख लिया, राइट, कब हो रहा है वो देख लिया। ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में बताओ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ग्लोबल टाइगर फोरम। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाओ कि फर्स्ट ग्लोबल टाइगर समिट कहां हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। सेकंड कब होने वाला है, 2022, क्योंकि हमने अभी तक हमने बोल दिया कि हम क्या करने वाले थे, उसको डबल करने वाले थे 2022। नाउ नया रूल चाहिए, तो कब है, व्लादिवोस्टॉक में होने वाला है। इसके बीच में हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, हम डबल करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में। हमने बिश्केक डिक्लेरेशन, एशियन राइनो के बारे में भी देख लिया, राइनो के बारे में देख लिया। हमने क्या बोला था इधर कि हम डबल करेंगे कैसे, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम इज ए इनिशिएटिव ऑफ 13 कंट्रीज एंड ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो एक फोर्थ एशियन मिनिस्ट्रियल समिट हुआ था इन मलेशिया विद द इनिशिएटिव ऑफ मलेशिया एंड ग्लोबल टाइगर फोरम, ठीक है। एंड ये समिट में क्या गया था, हमने रिव्यू किया किसका, ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम का रिव्यू किया, ग्लोबल टाइगर रिकवरी। अब ग्लोबल टाइगर फोरम भी हमने देख लिया, एंड इंडिया इज द फर्स्ट टू डू 4 years before our target। Yesterday's हमने जो टॉपिक देखा है, आई थॉट ऑफ रिवाइजिंग इट, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टोल्ड यू ग्लोबल टाइगर समिट 2010 में हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, एंड सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन हमने तब साइन किया था बाय ऑल द टाइगर रिच कंट्रीज, एंड इट सेड कि वी आर लॉन्चिंग ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के बाद वी सेड वी आर गोइंग टू डबल आवर टाइगर काउंट। तो ग्लोबल लेवल पर टाइगर काउंट कितना था, 3200 था, तो वी सेड इट वुड बी अराउंड 7000। तो TX2 प्रोग्राम हमने लॉन्च किया which aimed at doubling the TX2। basically it is a goal towards doubling the number of tigers, and this TX2 initiative is an initiative of WWF, तो ये आपको पता चाहिए। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के वक्त हमने बोला कि we are going to double it, that would be done through ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। तो ये एक इंपॉर्टेंट था। उसी ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम का रिव्यू मीटिंग था, फोर्थ एशियन मिनिस्ट्रियल रिव्यू, एक टाइगर रेंज कंट्रीज का क्या था, रिव्यू मीटिंग था, वेयर दे वर गोइंग टू रिव्यू दिस ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम का प्रोग्रेस। सेकेंडली, दिस मीटिंग वाज held by Malaysia in association with Global Tiger Forum. We also searched about Global Tiger Forum. Can you tell me in the comment section where is Global Tiger Forum? Global Tiger Forum का headquarter is in New Delhi. Secondly, we also learned कि Global Tiger Summit, the second Global Tiger Summit is going to be held in 2022 in Russia. So that is what we learned yesterday with respect to tiger reserve. Moving forward, one important initiative with respect to tiger reserve आपको पता चाहिए, that is global tiger initiative. Global tiger initiative is an important initiative which is a global alliance. किसका global alliance है, of government or of government bodies,
private individuals, civil society, scientists, international organization, and the goal of this organization is to save tigers from extinction. This initiative was launched in 2008, global tiger initiative. And the founding members कौन थे? तो यहाँ important question आ सकता है. Founding members are World Bank, GEF, Smithsonian Institute, Save the Tiger Fund and International Tiger Initiative. ये इसके founding members थे. But now it is an alliance of all the government what do you say, गवर्नमेंट से है, प्राइवेट प्लेयर्स है, सिविल सोसाइटीज है, साइंटिस्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड द एम इज टू सेव tigers from extinction. Similarly, in 2013, one important thing happened was 2013 में what we included was snow leopard भी इसके ambit में हमने लाया. We are not just preventing tigers from extinction. What we are doing is we are ensuring that snow leopard भी we save snow leopard from extinction. तो ये भी important चीज आपको पता चाहिए. Majorly snow leopards are found in India in the Himalayan states है. Majorly five Himalayan states में मिलते हैं. You have all the initiative with respect to snow leopards भी. तो snow leopard का IUCN status आपको पता चाहिए. Can you tell me IUCN status क्या है? IUCN status is vulnerable. Hope you are able to get this important initiative, that is Global Tiger Initiative. Now it does not look into just with respect to सिर्फ टाइगर्स का एक्सटेंशन से बचाना नहीं है, बट स्नो लेपर्ड वाज इंक्लूडेड इन 2013. ठीक है. नेक्स्ट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व दिस ईयर वाज अवॉर्डेड TX2 अवार्ड. बेसिकली सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? इट्स बेस्ड इन तमिलनाडु, वेस्टर्न घाट्स में है. एंड दिस TX2 अवार्ड इज अ इनिशिएटिव. किसका इनिशिएटिव है? कैट्स, ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN, UNDP, वाइल्ड कंजर्वेशन सोसाइटी एंड फ्लोरा एंड फाउना इंटरनेशनल. इनका इनिशिएटिव ये TX2 अवार्ड है. With respect to it awards tiger reserves who are working towards achieving our doubling of tigers. तो इस डायरेक्शन में जो टाइगर रिजर्व अच्छे स्टेप्स ले रहा है उनको मिल रहा है. तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है. सिमिलरली आई ऑलरेडी टोल्ड यू TX2 प्रोग्राम वाज अ WWF का इनिशिएटिव था, लॉन्च एट सेंट पीटर्सबर्ग, जो हमारा समिट हुआ था, टू डबल द टाइगर्स नंबर बाय 2022. इंडिया हैज अचीव्ड इन 2018 में ही हमने अचीव कर लिया. साइड बाय साइड आपको कैट्स के बारे में पता चाहिए. व्हाट इज कैट्स? बेसिकली दैट इज कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स. तो बेसिकली कैट्स क्या है? इट्स अ सेट ऑफ क्राइटेरिया व्हिच अलाउ टाइगर साइट्स टू चेक इफ देयर मैनेजमेंट विल लीड टू टाइगर कंजर्वेशन. सो it's a criteria that allows the tiger sites, जो भी tiger reserves है, वो चेक करते हैं based on this criteria whether their management will lead to tiger conservation. So basically it's a set of criteria which allow tiger sites to check. So based on this criteria, the tiger sites and the management of the tiger sites can check कि whether they are on the path of tiger conservation. तो cats के बारे में आपको पता चाहिए. Moving forward, few of the other things which was in news is presently इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व है. रिसेंटली 53rd टाइगर रिजर्व was अप्रूव किसने किया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA ने अप्रूव किया. एंड that tiger reserve is Guru Ghasidas Tiger Reserve, which is in the ambit of Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary. ये कहाँ है? Guru Ghasidas National Park and Tamor Pingla Wildlife Sanctuary is in छत्तीसगढ़. तो ये पता चाहिए. 53rd has been approved in छत्तीसगढ़. तो ये भी important चीज पता चाहिए. Next is one more important fact with respect to Guru Ghasidas National Park. It was last known habitat for Asiatic cheetah. Next is आपको ये पता चाहिए कि tiger reserves are designated by tiger reserves. क्या है? स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता है? कुछ टाइगर रिजर्व्स they request National Tiger Conservation Authority to assign or to approve टाइगर रिजर्व अप्रूव करने के लिए वो रिक्वेस्ट भेजते हैं. सो बेसिकली टाइगर रिजर्व्स आर डिक्लेयर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वेयरएज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. दोनों के पास अथॉरिटी है, लेकिन नेशनल टाइगर जो टाइगर रिजर्व इज बाय NTCA. इफ यू वांट टू चेंज द बाउंड्रीज of tiger reserve, you have to have recommendation of National Board for Wildlife and on the advice of NTCA. तो किसका रिकमेंडेशन चाहिए आपको?
नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इनका रिकमेंडेशन चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी पता चाहिए। 52nd टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामघर विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड 52nd वाइल्ड हमने टाइगर रिजर्व डेजिग्नेट किया है, दैट इज इन राजस्थान। सेकेंडली 51st इज शिवल्लपत्थुर मेघमलाई टाइगर रिजर्व इज द 51st, दिस इज ऑल्सो इन तमिलनाडु, तो ये भी आपको पता चाहिए। 2 न्यू टाइगर रिजर्व आर गोइंग टू कम इन मध्य प्रदेश, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। ये कौन से टाइगर रिजर्व होने वाले हैं, माधव टाइगर रिजर्व एंड रत्नपानी, ये टाइगर रिजर्व आपको पता चाहिए। होपफुली यू आर एबल टू गेट important points out of this. What we have done is सिर्फ टाइगर नहीं देखा, उससे रिलेटेड सारी चीजें देखिए। पन्ना टाइगर रिजर्व is also in news because if you see in this year's budget what finance minister told कि we are at an advanced stage with respect to implementing interlinkages of 2 rivers, that is Ken Betwa rivers. Ken Betwa interlinking of rivers होने वाला है and Ken river passes through Panna Tiger Reserve. तो ये एक important fact you should know about this important fact. Next is Panna Tiger Reserve was also in news because here we spotted what, desert cat. Panna Tiger Reserve में हमने क्या देखा, we saw desert cat. Desert cat का दूसरा नाम क्या है, एशियाटिक वाइल्ड कैट। एशियाटिक वाइल्ड कैट दूसरा नाम है। लीस्ट कंसर्न इसका IUCN स्टेटस है एंड साइट्स ऑलरेडी सीन इन द फर्स्ट सेकंड लेक्चर, अपेंडिक्स 2 है। साइट्स अगर किसी को याद नहीं है तो सेकंड लेक्चर हमारा जो इसका है वो देख लीजिए। सेकेंडली दे आर फाउंड इन मेजरली इन वेस्टर्न घाट्स बट डेजर्ट कैट वाज स्पॉटेड इन पन्ना टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट इज फिशिंग कैट, भी हमेशा न्यूज में होता है। डेजर्ट कैट आपको पता चाहिए, फिशिंग कैट नॉक्टर्नल है, मेजरली फाउंड इन सुंदरबन। IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है एंड इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। अमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, CBD का क्या था हमारा, CBD का COP 15 था। CBD दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15th, जिसका फर्स्ट पार्ट वाज इन 2021 एंड सेकंड पार्ट इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन 2022 अप्रैल में होने वाला है एंड ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है, तो ये आपको पता चाहिए। एंड दिस वाज अ वर्चुअल पार्ट एंड दिस वाज व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी अ फिजिकल इवेंट। क्योंकि क्या हो रहा था, बिकॉज ऑफ कोरोना वी मिस दिस पार्ट। तो बेसिकली CBD के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता चाहिए, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दिस एग्रीमेंट, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट केम ड्यूरिंग अर्थ समिट इन 1992 के वक्त आया था एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस CBD was, this convention on biodiversity was conserve biodiversity, ensure sustainable use, and third is fair and equitable sharing of benefit arising out of utilization of genetic resource. तो ये 3 important क्या है, इसके गोल है of convention on biodiversity, CBD का ये important है। इसका ही हम क्या, जैसे UNFCCC का क्या होता है, COP होता है every year, UNFCCC का जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कन्वेंशन है उसका COP इज एवरी ईयर। जो CBD है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड UNCCD है, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, दिस हैपेंस एवरी 2 years। इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैपन every 2 years। तो ये आपको पता चाहिए। सो CBD के बारे में एज आई टोल्ड यू, जो COP 15 था CBD का, विच was supposed to be happening in 2020, लेकिन फिर कोरोना की वजह से 2021 में आधा हुआ, 2022 में आधा होने वाला है। कुनमिंग इन चाइना इज द host city for this conference. As I told you, it is happening in 2 parts, virtual फर्स्ट हुआ एंड नेक्स्ट इज फिजिकल होने वाला है। जो CBD का हेडक्वार्टर है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इज इन मॉन्ट्रियल कनाडा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज यू शुड नॉट मिस। दिस COP इज ऑल्सो होस्टिंग 10th मीटिंग ऑफ कार्टाजिना प्रोटोकॉल एंड 4th मीटिंग ऑफ नागोया प्रोटोकॉल। ये COP के साथ हो रहा है। विल डिस्कस दिस 2 protocols as we move forward. The theme for COP 15 was ecological civilization, building shared future for all lives on earth. ये important क्या था,
theme था of this year's of COP15, that is ecological civilization building shared future for all life on earth. Moving forward, during this Kunming summit and the first part of it, various initiatives were taken. First agenda which happened during this summit was 30 by 30 agenda was placed forward, and 30 by 30 agenda क्या पता चाहिए क्या है? This agenda says ki this agenda says ki all the countries would work toward ensuring 30% of land and ocean would be given protected status of earth by 2030. So this agenda says ki what we need to come together is 2030 तक हमारा जितना भी 30% लैंड एंड वाटर है उसको हम क्या देंगे, प्रोटेक्टेड स्टेटस देंगे. प्रोटेक्टेड स्टेटस मतलब क्या, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ ना कुछ उसको असाइन करेंगे सो दैट वी गिव एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा उस पर एक्स्ट्रा ध्यान है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज कुनमिंग डिक्लेरेशन वाज आल्सो important outcome of this first part. Kunming Declaration क्या बोलता है? It reaffirms the global political commitment to tackle the biodiversity crisis. So it says कि every country should focus on dealing with biodiversity crisis, and it said कि we need urgent integrated action on what we need is urgent integrated action to reflect biodiversity consideration in all sectors of global economy. So it says कि जब भी हम कोई भी decision ले रहे हैं with respect to our economy, biodiversity should be kept in mind and every country should work toward conservation of biodiversity. जो भी actions वो लेंगे, what we need to do is we need to push forward biodiversity conservation in all our actions. तो ये एक important है. Kunming Declaration आपको पता चाहिए. Next is Kunming Biodiversity Fund was also announced by China. That is almost $233 million का fund है with respect to conservation of biodiversity, and this fund would be given to developing countries for conservation of biodiversity. तो ये भी important fact आपको पता चाहिए. जब भी हम CBD के COP की बात करते हैं, 15 was in Kunming, 14th कहाँ था? 2018 में हुआ. शर्म अल शेख इन इजिप्ट हुआ था. इंडिया में भी COP11 हुआ था इन हैदराबाद इन 2015. COP11 कहाँ हुआ था? इंडिया में, हैदराबाद में हुआ था. तो होपफुली यू नो इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस. जब भी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, COP is also event where we have meeting over Nagoya Protocol and Cartagena Protocol. तो कुछ important facts इसके बारे में पता चाहिए. Nagoya Protocol क्या बोलता है? Nagoya Protocol is with respect to giving access to genetic. तो नागोया प्रोटोकॉल क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स द थर्ड पॉइंट ऑफ CBD का जो मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स. तो उसको इंश्योर करने के लिए व्हाट वी हैव इज नागोया प्रोटोकॉल. जो भी बेनिफिट होगा, जो भी हमारे बायोडाइवर्सिटी का बेनिफिट होगा, उसके जेनेटिक रिसोर्स का बेनिफिट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट गो टू वन कंपनी और वन इंडिविजुअल, बट इट शुड हैव फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए. दैट इज नागोया प्रोटोकॉल. एंड देन वी हैव कार्टाजेना प्रोटोकॉल. कार्टाजेना प्रोटोकॉल सेज इट इज a treaty governing movement of living modified organism resulting from modern technology and ensuring safe handling and transportation of LMOs. So basically LMOs are what? These are living modified organism, LMO, living modified organism, and these can cause biodiversity. These are if this living modified organism are sent to certain new place, what they would do is they can affect biodiversity, and there could be threat to biodiversity because of this living modified organism. So to handle the movement of LMO, what we had is Cartagena Protocol. Cartagena Protocol के अंदर we have two important initiatives to ensure that whenever we are transferring LMO, there is an informed decision making. तो जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है उसके अंदर we have advance information agreement and biosafety clearing house. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चाहिए. What is advance information agreement? This is under कार्टाजेना प्रोटोकॉल. तो ये आपको पता चाहिए. So advance information agreement, what it does is it provides information necessary to make informed decision before agreeing to import LMO. So what under this agreement, what we need to do is provide necessary information to the countries who is importing LMO, and he should know what could be the impact of this importing LMO on his biodiversity. तो क्या है? It provides necessary
information necessary to make informed decision before agreeing to import LMO. Secondly, what we have is biosafety clearing house. So सबको लगेगा कि biosafety clearing house might be certain house or an organization or certain physical place, but what it is an online tool है, online portal है, which facilitates exchange of information on LMO and जो भी इंपोर्ट कर रहा है, जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है, उनके बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एक ऑनलाइन टूल है. तो ये आपको पता चाहिए टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एलएमओस, मूवमेंट ऑफ एलएमओस एंड विद रिस्पेक्ट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ कार्टाजेना प्रोटोकॉल. तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ एक्सचेंज होता है बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस में. इट इज एन ऑनलाइन टूल, ये आपको पता चाहिए. देयर इज अ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल अंडर सीबीडी, दैट इज कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन टू कार्टाजेना प्रोटोकॉल. तो बेसिकली इफ we transfer LMO to certain other countries without giving adequate information, so अगर LMO की वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ, तो दिस कुआलालंपुर supplementary protocol what it does is it fixes liability related to damages caused by LMO. तो ये क्या करता है, फिक्स करता है liabilities, तो ये भी आपको पता चाहिए. जैसे CBD में एज आई टोल्ड यू, नागोया इज अ प्लेस इन जापान, वहां पर एक CBD हुआ था एंड CBD का क्या हुआ था, COP हुआ था. COP10 was in Nagoya and during that time what we had is Aichi targets हमने establish किए for all the countries. These are targets to be met by 2020. All the countries should meet this Aichi targets with respect to biodiversity conservation till by 2020. तो जो भी हमारे गोल्स है विथ रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाज टिल 2020. 2020 के बाद क्या हुआ, हमने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एक फ्रेमवर्क हमने एस्टैब्लिश किया है. दिस फ्रेमवर्क वुड हैव टारगेट्स टिल 2030 एंड 2050. तो जो भी आईची टारगेट्स आपको पता चाहिए, बेसिकली आईची टारगेट्स आर टारगेट्स गिवन टू कंट्रीज with respect to conservation of biodiversity and this came during Nagoya protocol. Nagoya जो COP था 10 जब नागोया में हेल्ड हुआ था, तब ये आए थे आईची टारगेट्स. तो आपको पता चाहिए, एज आई टोल्ड यू, तो आईची टारगेट्स के मेन गोल क्या था, जो टारगेट्स के क्या गोल थे, द एम वाज टू एड्रेस द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो क्या कीजिए, फर्स्ट इज जो कॉज है विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, उसको एड्रेस कीजिए. नेक्स्ट इज रिड्यूस प्रेशर ऑन बायोडाइवर्सिटी. थर्ड इज सेफगार्ड इकोसिस्टम स्पीशीज, जो स्पीशीज है उसको क्या कीजिए, सेफगार्ड कीजिए. बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट फॉर ऑल, ये इंश्योर कीजिए. एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. ये 5 मेजर गोल थे, 5 गोल्स थे एंड उसके अंदर 5 गोल्स को 20 टारगेट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था. 20 टारगेट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था. तो ये पता चाहिए आईची टारगेट्स क्या थे, आईची के 20 टारगेट्स थे एंड 5 गोल थे. ये 5 गोल मैंने जो बताया, दैट इज एड्रेसिंग द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, reducing pressure on biodiversity, safeguarding species, biodiversity benefit for all and participatory planning and capacity building. ये 5 गोल थे अंडर आईची टारगेट्स एंड ये इसी गोल्स को हमने 20 टारगेट्स में डिवाइड किया था. तो what we have presently is 2 important reports which you should know. First is protected planet report. Protected planet report came in, the last one came in 2020, 2022 में भी एक आएगा. That report is by IUCN and UNEP, which comes every 2 years and what it does, it tracks progress made to achieve goals agreed in 2010. जो 2010 में जो नागोया जो हमारा COP हुआ था, तब हमने क्या आईची टारगेट्स के कुछ गोल्स हमने सेट किए थे टारगेट्स. तो उसमें हमने क्या प्रोग्रेस अचीव किया है वो हमने देखा, हम देखेंगे, हम ट्रैक करेंगे थ्रू दिस प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट. एंड जो 2020 का रिपोर्ट आया था, इट एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन आईची टारगेट 11. तो आईची टारगेट 11 क्या था, according to this Aichi target 11, what we had to achieve was 17% of territorial and inland water and 10% of coastal and marine area are to be designated as protected area at the global level. अब हमारा 2030 का क्या है टारगेट, 30/30 टारगेट हम क्या बोलते हैं, 30/30 टारगेट, 30% of land and sea area should be designated as protected area by 2030. तो होपफुली ये आपको पता चाहिए. Protected Planet Report by IUCN and UNEP to track the progress made to achieve the goals agreed during 2010 CBD, that was Nagoya.
एंड टारगेट 11 पर स्पेसिफिकली फोकस करता था, ये जो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट था 2020 का। वी ऑल्सो हैव ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक भी आता है। इट इज अ फ्लैगशिप publication of CBD, summarizes latest data on the status and trends of biodiversity. Secondary is draws conclusion for future on further implementation of treaty, how we can improve the implementation of treaty, what is the trend with respect to biodiversity, whether we are whether we are losing our biodiversity or increasing our biodiversity, आपको पता चाहिए। and it also tracks progress made towards achieving Aichi targets। तो ये भी क्या करता है, ये भी रिपोर्ट देखता है कि जो Aichi targets थे तो उस पर्सपेक्टिव ने हमने क्या मेजर्स लिए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी, दैट इज ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम service. This report is by Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Intergovernmental Science Policy प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो बेसिकली जो IPBES है, दैट इज इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी, इट इज सिमिलर टू IPCC। जो IPCC आपको पता रहेगा, विच brings out report with respect to climate change, उसी तरीके से IPBES what it does is it brings out report with respect to biodiversity loss। so जैसे IPCC does not itself take research, वो खुद से रिसर्च नहीं कंडक्ट करता, वो क्या करता है, सारे रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है। यहाँ भी IPBES do not conduct research but analyzes the report। तो ये IPBES is similar to IPCC of climate change and it is हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन जर्मनी में है, बॉन जर्मनी में है। तो हमने क्या क्या देखा इस सेशन में, हमने ग्लोबल टाइगर समिट के बारे में देखा, हमने सेंट पीटर्सबर्ग इनिशिएटिव TX2 प्रोग्राम किसका है हमने वो देखा, WWF का है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम देखा हमने, GTF देखा, सेकेंड टाइगर समिट कब होने वाला है, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव 2008 बिफोर द ग्लोबल टाइगर समिट 2010 था। कौन फाउंडिंग मेंबर्स है ये देखा, कौन फाउंडिंग मेंबर्स है, एंड अभी क्या है, इट्स अलायंस ऑफ किसका, गवर्नमेंट प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स, सिविल सोसाइटी, साइंटिस्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू सेव टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। स्नो लेपर्ड हैज बीन इंक्लूडेड, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको 2x2 अवार्ड मिला था, एंड TX2 अवार्ड इज अ इनिशिएटिव ऑफ कैट्स, GTF, IUCN, UNDP, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, फ्लोरा एंड फाउना इनिशिएटिव, आपको पता चाहिए। TX2 प्रोग्राम, कैट्स क्या है, conservation assured tiger standards is a set of criteria which helps based on these criterias what tiger sites can check, the management of tiger sites can check whether their actions, their management will lead to tiger conservation। तो ये criterias है, तो ये आपको पता चाहिए। Then हमने 53rd टाइगर रिजर्व देखा, कहाँ आ रहा है, गुरु घासीदास में आ रहा है, छत्तीसगढ़ में आ रहा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क में आ रहा है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन डिक्लेयर करता है, टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, बाउंड्रीज चेंज करनी है तो कौन करता है। 52nd हमने देखा, 51 देखा, 51 इज तमिलनाडु, 52nd इज राजस्थान। दो नए कौन से आ रहे हैं, माधव एंड रत्नपानी इन मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश इज ऑल्सो इन न्यूज। Ken river passes through Panna Tiger Reserve। Panna Tiger Reserve was also in news because desert cat वहां मिला था। डेजर्ट कैट का IUCN स्टेटस क्या है, लीस्ट कंसर्न है, एशियाटिक वाइल्ड कैट बोलते हैं। फिशिंग कैट इज ऑलवेज इन न्यूज। नॉक्टर्नल सुंदरबंस एंडेंजर्ड एंड स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। देन हमने CBD देखा, CBD के 3 ऑब्जेक्टिव्स देखा। फर्स्ट इज कंजर्वेशन, सेकंड इज सस्टेनेबल यूज एंड थर्ड इज फेयर एंड इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। टुडे सेशन हैज वी हैव नॉट एंडेड विद CBD, विल कंटिन्यू टुमारो आल्सो। CBD के बारे में COP15 कुनमिंग देख लिया, इंडिया में कब हुआ था वो देख लिया था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। देन वी सॉ थीम ऑफ दिस ईयर COP, दैट इज इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये देख लिया। देन 30 by 30 एजेंडा देख लिया, क्योंकि हमारा आईची टारगेट्स थे वो कब तक थे, 2020 तक थे। तो हमने क्या कर लिया, नए टारगेट्स हमें बनाने हैं फॉर 2030 एंड 2050। कुनमिंग डिक्लेरेशन आपको
बता दिया मैंने कुनमिंग डिक्लेरेशन क्या है, वेयर एवरी एक्शंस एवरी कंट्री वुड वर्क टुवर्ड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड देयर, जब भी कोई भी इकोनॉमिक एक्शंस लेंगे हम कोई भी, तो हमारा बायोडाइवर्सिटी कंसंट्रेशन उस एक्शंस में रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड हमने देख लिया। नेक्स्ट इज नागोया एंड कार्टाजिना प्रोटोकॉल मैंने बता दिया। एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट एंड बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस क्या है? इट इज एन एक्सचेंज, इट्स एन ऑनलाइन पोर्टल वेयर यू कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू एलएमओस। तो ये आपको पता चाहिए। हमने साइड बाय साइड व्हाट वी learned is Kuala Lumpur supplementary protocol to Cartagena protocol which fixes the liability related to damages caused by LMOs। हमने आईटी टारगेट्स देख लिए, 5 आईटी गोल्स देख लिए, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट देख लिया, IUCN एंड यूएनईपी का है, ट्रैक्स एंड बेसिकली जो 2020 का रिपोर्ट था वो आईटी टारगेट 11 को ट्रैक करता है, विच सेज कि 17% ऑफ टेरिटोरियल इनलैंड वाटर एंड 10% ऑफ कोस्टल मरीन एरियाज should be designated as protected areas। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट देख लिया, CBD का है, हमने IPBES भी देख लिया, इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी सिमिलर टू IPCC। Sorry to pause you in between, but make sure you pause this video and subscribe to the channel because 80% of you are not subscribing। I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers। Thank you। मूविंग फॉरवर्ड, पिछले लेक्चर में हमने क्या किया है, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट एज आई से, कि हमने सीबीडी देखा था, हमने अर्थ समिट, कब सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी साइन हुआ, लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, ड्यूरिंग अर्थ समिट 1992 हमने देख लिया। सेकेंडली हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। हमने COP 15 देखा, 2 पार्ट्स में है, होने वाला जो फर्स्ट पार्ट है वर्चुअल है वो हो चुका है 2021 में, 2022 में फिजिकल पार्ट है कुनमिंग में हो रहा है। CBD का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 10th meeting, this COP 15 is also the 10th meeting of Cartagena Protocol and Nagoya 4th meeting of Nagoya Protocol। The theme for a COP 15 was ecological civilization and building shared future for all life on earth। And इसमें what we decided was 30 by 30 agenda push किया गया, where we plan to protect 30% of our land and ocean by 2030। कुनमिंग डिक्लेरेशन भी इसके वक्त हमने सामने लाया, एंड कुनमिंग डिक्लेरेशन सेट की व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू हैव अ ग्लोबल पॉलिटिकल कमिटमेंट टू टैकल बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। सेकेंडली, एवरी इकोनॉमिक एक्शन शुड हैव कंसिडरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। तो ये कुनमिंग डिक्लेरेशन में बोला गया। कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड भी चाइना ने ये किया, एंड दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये आपको पता चाहिए, नॉट जस्ट इन चाइना बट डेवलपिंग कंट्रीज। लास्ट COP 14 वॉज इन इजिप्ट, शर्म अल शेख में होता। CBD जो COP 11 था 2012 में हैदराबाद में हुआ था। तो यहाँ ये आपको और एक इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, UPSC इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो ये आपको पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड हमने नागोया प्रोटोकॉल देख लिया था। नागोया प्रोटोकॉल वाज विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स and side by side ensuring that there is fair and equitable sharing of benefits arising out of utilization of this genetic resource। And Cartagena protocol with respect to living modified organism, that it regulates, it governs the movement of living modified organisms which are derived from modern technology। It deals with safe handling and transportation of this living modified organisms। तो ये हमने कार्टाजिना प्रोटोकॉल देख लिया। कार्टाजिना प्रोटोकॉल के अंदर हमने 2 चीजें देख ली थी, एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो व्हेन 2 countries are transferring or making any trade or any movement of LMO, there should be providing this, they should provide, the transferring countries should provide all the necessary information to make an informed decision। Side by side we also saw biosafety clearing out। It is an online tool, it is not a physical thing, it's an online tool which facilitate exchange of information with respect to LMOs। तो ये एक important चीज है, and it is required and it is a part of Cartagena protocol। हमको कोलालमपुर supplementary protocol भी है, and it fixes the liability with respect to damages caused by LMOs। damages caused by LMOs का responsibility fix करता है। Side by side हमने आईची टारगेट्स भी देखे थे। these target हमको कब तक अचीव करने थे? 2020 तक अचीव करने थे। 2020 के बाद what we have is a new targets till 2030 and 2050। ये हमने 5 गोल्स देखे, 5 गोल्स को they have transferred into 20 targets।
प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट देगा, 2020 में रिलीज गया था। IUCN एंड UNEP का है every 2 years and what it sees was progress made to achieve goals agreed in 2010 CBD। जो 2010 में नागोया प्रोटोकॉल में जो आईची टारगेट्स हमने ये किए थे उसके हम ये देख रहे हैं। नेक्स्ट इज टारगेट नंबर 11 को फोकस किया था प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट में, एंड दिस टारगेट 11 focuses on protecting 17% of territorial and inland waters and 10% of coastal marine areas, which was to be declared as protected area। तो इसका प्रोग्रेस हमने प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट में देखा। देन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट हमने देख लिया, अगेन इनिशिएटिव ऑफ CBD। हमने ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस देख लिया। IPBES हमने इसका, और एंड IPCC हाउ दे आर सिमिलर वो भी हमने देख लिया था। We took only 4 minutes to revise, but this revision is important, so make sure you do not go from now onwards. We are going to take new topics. As I already said कि जो हमारे IC targets में 2020 तक हमारा क्या था, हमारे targets थे, what CBD did was they brought out global biodiversity framework, draft global biodiversity framework, and this framework was with respect to post 2022 targets हमारे क्या रहेंगे till 2030 and 2050। so IC targets as I told you was till 2020, लेकिन 2020 के बाद हमारे वर्ल्ड को क्या बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स रहने चाहिए, दिस वर डिफाइंड इन ड्राफ्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, नॉट फाइनलाइज्ड इन द ड्राफ्ट सेक्शन। 2030 के जो टारगेट्स वो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में है जो आपको पता चाहिए। इट सेज कि हमारा 30% ऑफ लैंड एंड सी शुड बी प्रोटेक्टेड एरिया, दैट वाज सिमिलर टू 30/30 एजेंडा व्हिच वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग कुनमिंग समिट। ठीक है, नेक्स्ट इज इट आल्सो सेड 50% रिडक्शन इन इन्वेसिव स्पीशीज, बिकॉज इन्वेसिव स्पीशीज आर वन ऑफ द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो 50% रिडक्शन करना है। नेक्स्ट इज 50% रिडक्शन इन न्यूट्रिएंट लॉस टू एनवायरनमेंट, जो भी न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे हैं सच एज पेस्टिसाइड्स, fertilizers lost in environment, what it causes eutrophication and this is very harmful to the environment। तो हमें क्या करना है, reduce करना है nutrient loss, and through biodiversity protection what we need to ensure is 10 gigatons of CO2 हमें क्या करना है, उसका climate mitigation करना है, that is we need to absorb 10 gigatons of CO2। तो ये हमारे 2030 तक के टारगेट्स थे अंडर ड्राफ्ट ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फॉर 2030। तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद बायोडाइवर्सिटी एट द स्टेट एट द नेशनल लेवल व्हाट मेजर्स वी हैव टेकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ स्टूडेंट्स स्टैटिक पार्ट को लिंक करना भूल जाते हैं, दैट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हमने एस्टैब्लिश की है थ्रू बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 अंडर CBD एग्रीमेंट। अंडर CBD एग्रीमेंट एवरी कंट्री हैड टू मेक द एक्ट, नेशनल लेवल एक्ट टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। तो उसके पर्सपेक्टिव में हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट एस्टैब्लिश किया एंड इस एक्ट के अंडर वी एस्टैब्लिश नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर इज इन चेन्नई, तो यू शुड नो दिस एंड व्हाट दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन डज, ये इसके फंक्शंस UPSC पूछता है, तो यू शुड नो दैट इज ये पूछता है व्हाट द फंक्शन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज टू एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट इन द सिलेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट एरियाज which are notified as biodiversity heritage sites। so biodiversity heritage site selection mein it helps, it advises the state government। secondly what it does is it facilitates, what role it does is facilitative role है, regulatory role है, and advisory function है to government of India। central government को ये तीनों क्या बोलता है, ये एडवाइस प्रोवाइड करता है, रेगुलेटरी रोल प्रोवाइड करता है, फैसिलिटेटिव रोल प्रोवाइड करता है ऑन द इश्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। तो इस पर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी एडवाइजरी रोल चाहिए, दैट इज टेकन फ्रॉम नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट लुक्स इनटू द इश्यूज and request by foreigners, companies and institutions on matter resulting to transfer of results of research to foreigners, approval of IPR where biological resources is used। तो जब भी if any of our research is to be given to foreign company, any of our क्या बोलते हैं IPR is to be filed with respect to हमारा जो भी बायोडाइवर्सिटी है, अगर उससे रिलेटेड कोई IPR दूसरे कंट्री में रजिस्टर करना है तो अप्रूवल किसका लगेगा, अप्रूवल नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का लगेगा। तो ऑल रिक्वेस्ट बाय फॉरेन कंपनीज, तो ये मेजर रोल किसका है, ये मेजर रोल नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ रिजल्ट ऑफ रिसर्च टू फॉरेनर्स एंड अप्रूवल ऑफ IPR वेरेवर रिक्वायर्ड।
is to be done through National Biodiversity Authority. ये आपको पता चाहिए. On the other side, we have second organization which is set up under National Biodiversity Act, that is State Biodiversity Board. And similarly, जैसे central government में the with respect to foreigners है, for Indians, if any Indian company wants to use this data, genetic resource का data हो गया, and जो भी IPR related कोई फाइल करना चाहता है, he has to take permission from State Biodiversity Board. And at the ground level, what we have is Biodiversity Management Committee, where this committee, what it does is it maintains people biodiversity register, where if in this people's biodiversity register, what local community do is they register all their resources, biodiversity resources in this register, so that if anyone tries to file for IPR, they can tell ki it is our local, what do you say, local biodiversity, and you cannot file IPR on that use of this biodiversity. जो भी resource रहेगा from that biodiversity, you cannot file IPR. So जो भी people biodiversity register is, you register all the biodiversity present, and all the necessary use of this biodiversity you register on this people biodiversity register, which is maintained by biodiversity management committees. ये आपको पता चाहिए. As I already told you, what we have is biodiversity heritage sites which are declared by State Biodiversity Board on the advice of central government, advises State Biodiversity Board, but declared by State Biodiversity Board. And these sites are considered as unique and fragile ecosystem that can be marine ecosystem, coastal or inland waters. कुछ भी हो सकता है, fragile ecosystem होती है. And the criteria for selecting any biodiversity heritage site is richness of wild as well as domesticated species होगा, high endemism होगा, and presence of rare and threatened species. तो ये important चीज है, presence of rare and threatened species होगा, high endemism होगा, and richness of wild and as well as domesticated species होगा. तो ऐसे areas को हम क्या designate करते हैं, biodiversity heritage sites. Biodiversity heritage sites, ये समझ में आ गया कौन रिलीज करता है, and क्या criterias है, ये सब आपको पता चाहिए. ठीक है. See, difference between mitigation and adaptation. Mitigation is to reduce, if we talk in the terms of climate change, mitigation would be to reduce CO2 emission. Adaptation would be, अब climate change हो गया है, but how do you take steps to adapt to such situation? That is mitigation. That is adaptation. Adaptation is post the release of CO2. अब CO2 release हो गया, now we need to adapt to the situation. That is adaptation. Mitigation is to reduce the impact. तो ये आपको पता चाहिए. ठीक है, very good. Moving forward, one important term आपको पता चाहिए, that is key biodiversity areas. This is also important. Key, not mentioned in National Biodiversity Act, but at the global level, what you need to have is key biodiversity areas. What are these areas? These are sites contributing significantly to the global persistence of biodiversity. ऐसे sites which are significantly contributing to global persistence of biodiversity. These sites are responsible for why we have this biodiversity hotspot. Why these sites contribute to global persistence of biodiversity. Because of these sites, biodiversity is still persistent. तो ये आपको पता चाहिए. And these criteria for this selection of key biodiversity area is designated are given by IUCN. तो कौन से criteria पर on which criteria we need to select key biodiversity area is given by IUCN. तो ये भी important fact आपको पता चाहिए. Next is critical wildlife habitat. आपको पता चाहिए critical wildlife habitat are given under which act? ये question आ सकता है. Forest Right Act 2006, not under any Biodiversity Act or Wildlife Protection or Environment Protection, but under critical wildlife habitat. These are areas of national park, wildlife sanctuary that are required to be kept as inviolated for the purpose of wildlife conservation. What do you mean by inviolated? That is, they should be away from human interference. Human interference हमें avoid करना है in this area, that is inviolated, not in contact with human interference. तो ये भी एक important चीज with respect to आपको पता चाहिए, that is critical wildlife habitat. Key biodiversity area समझ में आया. These are sites which because of which we have what these sites contribute significantly to global persistence of biodiversity. Criteria कौन देता है ये आपको पता चाहिए. Next is eco mark के बारे में पता चाहिए. What is eco mark? Eco mark का क्या है? एक earthen pot के हिसाब से eco mark होता है.
अर्दन पॉट है इसका मार्क. These are certificate issued by whom? BIS, Bureau of Indian Standards. To whom? To product which conform to a set of standards aimed to least impact the ecosystem. Environmental friendly products है जिसका production में we have least impact on ecosystem. ये भी important है. This scheme was started in 1991 for increasing awareness among consumer and towards reducing environmental impact. And the implementing agency is MOEF. is implementing an eco-labeling scheme for environmental friendly products. तो ये भी important चीज आपको पता चाहिए. Another animal passing by, रोज हम ट्राई करेंगे हमारे सेशन में. we'll take one animal which is in news, which are in news. First is Himalayan yak के बारे में पता चाहिए. और ये न्यूज में था. IUCN स्टेटस क्या है इसका? वल्नरेबल है. अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर. यू हैव टू टेल मी और एक कोई एनिमल जो वल्नरेबल है एंड उसका IUCN स्टेटस भी वल्नरेबल है एंड फाउंड इन दिस एरिया ओनली, आपको बताना है. पर हिमालयन एक याक के बारे में पता चाहिए. मेजरली फाउंड कहाँ होता है? 14,000 फीट के ऊपर होता है एंड इट इज एंडेमिक टू तिब्बत रीजन. बोवाइन है. बोवाइन is a category of animal classification. उसमें bison भी आता है, buffaloes भी आते हैं, cows, cattle, सब are considered as bovine and yak is also a bovine. तो ये आपको पता चाहिए. And recently what we set up is National Research Center on Yak in Dirang, Arunachal Pradesh. Dirang. This is Dirang. 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 Arunachal Pradesh. Dirang. तो hopefully ये आपको पता चल रहा है. Because of climate change, what we are seeing is mass extinction. This is the 6th mass extinction which is said to be happening. 5th was natural, and this 6th mass extinction is where there is loss of huge biodiversity. It is happening because of anthropogenic. Very good, Amol. Because of anthropogenic reason. And to save this, what we do at the global level and national level, what we have done is we have saved all the seeds of all the plants at one place. We have stored the genetic material of all the plants, animals at one place. इसी के अंदर what we need to know is National Gene Bank. National Gene Bank was established in 1996, aimed to preserve seeds of plants, genetic resource for further generation in the form of seeds, genomic resource and pollens. तीनों के फॉर्म में स्टोर करते हैं, either seeds, genomic material या pollen, and it is hosted by National Bureau of Plant Genetic Resource. तो ये आपको पता चाहिए कौन होस्ट करता है जीन बैंक को? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स. एंड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज टू केटर टू दिस कंजर्वेशन. 4 टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या है? कैटेगरीज है थ्रू विच वी ट्राई टू सेव द प्लांट सीड्स. तो फर्स्ट क्या है? सीड जीन बैंक हो गया, क्रायो जीन बैंक हो गया, इन विट्रो जीन बैंक हो गया एंड फील्ड जीन बैंक हो गया. तो ये 4 टाइप के थ्रू हम व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू प्रोटेक्ट the genetic resource of all the plants. तो ये पता चाहिए. Next is National Bureau of Plant Genetic Resource के बारे में पता चाहिए. Established in 1977 and it is one of the organizations under ICAR, that is Indian Council of Agricultural Research, headquartered in New Delhi, and it is a nodal institute at the national level for acquisition, management and genomic based profiling of indigenous and exotic plant genetic resource. तो जितने भी plant genetic resource है उनका handling, उनका acquisition, management is done by National Bureau of Plant Genetic Resource. इसी के consideration में there was also a news with respect to seed vault. Where is India's seed vault? Basically it's a storage facility with 5,000 seed species at Changla in Himachal Pradesh at a height of 17,300 feet. So this is a storage facility where we have kept all the seeds together in the Himalayan region. Changla region में हमने इसको store करके रखा है so that if there is a catastrophe we get this 5,000 seeds से we can grow all the endemic plants जो भी इंडिया में है उसका हमने सीड स्टोर करके रखा है so that अगर कोई कैटास्ट्रोफी आ गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, we have a genetic resource and we can grow these plants again. Secondly, this vault is a joint venture of National Bureau of Plant Genetic Resource, which we have already seen, and which comes under ICAR and Defense Institute of Higher Altitude Research. Defense Institute of Higher Altitude Research, which comes under DRDO. तो दोनों का इनिशिएटिव है इंडिया सीड वॉल्ट. जीन बैंक अलग है, सीड वॉल्ट अलग है, ये दोनों डिफरेंस आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज at the global level we have Savalbard Global Seed Vault where all the countries have come together and उन्होंने क्या किया, उनके सारे seeds at the global level जो भी मिल रहे हैं we are
we are saving these seeds, and this is located in remote island in Antarctic Ocean, Arctic Ocean में है, not Antarctic, Arctic region में है, close to Norway के पास है, Norway and North Pole के बीच में है, and it has world's largest collection of seeds, world's largest collection of seeds, ठीक है. To start with, एक important initiative was launched by Bureau of Energy Efficiency. Bureau of Energy Efficiency ने एक important initiative launch किया. That initiative was aiming for sustainable habitat. So how do we make our habitat or our workplace, our commercial space or housing space more energy efficient? तो उस perspective से Bureau of Energy Efficiency had started an initiative that is aiming for sustainable habitat, and this initiative brings out what changes this BEA have made with respect to habitat, making habitat sustainable. तो वो उन्होंने they have compiled all the things at one place, so we are going to look into it. So what they have done is, first they have revised energy conservation building code. So what they have done is they have revised. So जो original energy conservation building code आया था, that came in 2007, but now they have recently revised to 2021 को इसको revise कर दिया है, and this building code is applicable to all new commercial buildings which has a connected load of 100 kilowatt. So this code is applicable. They have to make their buildings according to this code, and this code is given by Bureau of Energy Efficiency, Energy Conservation Building Code. And किसके लिए है? तो ये याद रखना, सिर्फ commercial buildings के लिए है. And it prescribes कि आपका air conditioning कैसा चाहिए, how should be the minimum energy performance standards for the building envelope, heating कैसा चाहिए, ventilation कैसा चाहिए, air conditioning system कैसा चाहिए, so as to make the building energy efficient. So energy conservation building code is by Bureau of Energy Efficiency. We have recently revised, and only for commercial building with a load of 100 kilowatt से ज्यादा जो ये करेगा. Secondly, Bureau of Energy Efficiency have also started this Nirman Award. Nirman Award are what? These are National Energy Efficiency Roadmap for movement towards affordable and natural habitat. So basically these Nirman Awards are awards given to buildings who are taking measures to ensure that these buildings are energy efficient, they are designed in a way which are in line with energy conservation building code था, उस line में है, these buildings are energy efficient. So all the buildings जो भी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के हिसाब से बिल्डिंग बना रहे हैं एंड टेकिंग एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स, तो उनके लिए हम व्हाट वी हैव टू सपोर्ट देम, निर्माण अवार्ड व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड इज टू रिकॉग्नाइज देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स एनर्जी कंजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू हैबिटेट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आपको निर्माण अवार्ड पता चाहिए. बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ने ये निर्माण अवार्ड लेके आया है, सो एज टू एंश्योर what we ensure that the buildings are built in an energy efficient way, there is less CO2 emission, there is more natural way of ventilation, natural light, and there is least amount of energy used in the running of the building. Next is we have इको निवास संविदा. सो बेसिकली जो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड था, इट इज फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स, लेकिन जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए कौन सा कोड है? इको निवास संविदा ये कोड है, जो रिसेंटली 2021 में फिर से रिवाइज किया गया था. इको निवास संविदा रिसेंटली रिवाइज, एंड इट इज फॉर whom? इट इज फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग. तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता चाहिए. एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इज फॉर कमर्शियल बिल्डिंग एंड इको निवास संविदा is for residential building, again by Bureau of Energy Efficiency. Secondly, this new initiative with respect to ensuring sustainable habitat, we have various kind of ratings, building rating system. So उसमें सबसे important rating कौन सा है? गृह नाम का rating है. गृह is green rating for integrated habitat assessment. So the buildings, we rate buildings based on their energy efficiency with respect to green measures they are taking, and it is a green rating system which has been developed by TERI, that is the Energy Resource Institute and Ministry of New and Renewable Energy. तो ये आपको पता चाहिए किसने डेवलप किया है? गृह रेटिंग सिस्टम. वी हैव 2 more रेटिंग सिस्टम, लेकिन फर्स्ट कौन सा है? गृह. TERI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना है. The Energy and Resource Institute, it's a non-profitable organization. It conducts research in the field of energy, environment, sustainable development में क्या करता है? रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करता है. हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है. It conducts
an important summit, World Sustainable Development Summit. World Sustainable Development Summit is by TERI. तो ये भी आपको पता चाहिए. Every year it is conducted in New Delhi. So another important thing, Green Olympiad is also conducted by TERI. Next is Light a Billion Lives. एक important initiative है, TERI का है. तो all the initiative of the Energy Resource Institute, the Energy and Resource Institute के आपको initiatives पता चाहिए. As I already told you, World Sustainable Development Summit is by TERI, and इस साल का जो theme है of World Sustainable Development Summit का है towards a resilient planet and ensuring a sustainable and equitable future. तो ये theme है इस साल का. And this awards were started in this summit was started in 2001 में start हुआ है. Every year दिल्ली में होता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट. तो ये भी आपको पता चाहिए. तो दिस गृह आपने फर्स्ट टाइम देखा, हमने गृह देख लिया. गृह इज वन काइंड ऑफ रेटिंग सिस्टम, ग्रीन रेटिंग सिस्टम. देयर इज अनदर ग्रीन रेटिंग सिस्टम दैट इज लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन इंडिया. लीड इंडिया एक नाम का ग्रीन रेटिंग सिस्टम है. एंड दिस रेटिंग सिस्टम इज अ थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन है which looks into the design of the building, which looks into the performance of building, and based on water conservation, water saving, energy saving, तो all the measures taken by the building to ensure sustainability, तो सारे measures को लेके क्या करता है, ये एक rating system देता है. तो this lead system, that is leadership in energy and environment design system, is also a rating system है. And Indian Green Building Council has adopted lead system, which is a US initiative. जो lead ये जो है ना, लीड एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज ग्रीन रेटिंग सिस्टम है. इंडिया में किसने लेके आया है? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने लेके आया है. एंड दे हैव लॉन्च्ड लीड इंडिया, which is a rating system for new construction, तो ये आपको पता चाहिए. एक गृह देख लिया हमने, दूसरा लीड सिस्टम देख लिया, दैट इज लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन इंडिया. तो जो लीड है एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू रेटिंग बिल्डिंग्स. उसी का इंडियन वर्जन वाज ब्रॉट आउट बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. उसको लीड इंडिया नाम दिया है. तो ये भी एक रेटिंग सिस्टम है. थर्ड इज जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, दे हैव कम आउट विद नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम. तो ये भी पता चाहिए, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हैज कम अप विद अनदर रेटिंग सिस्टम दैट इज नेट जीरो energy building rating system, and it is in collaboration with World Energy Building Council and United States Agency for International Development. तो USAID and World Green Building Council के साथ collaboration में they have developed this net zero energy building rating system. So these three rating systems you should know. So as we have already started, we started with new initiatives taken by Bureau of Energy Efficiency. We looked into various initiatives. Griha आपको पता चाहिए is also with respect to Griha, Lead India, and third is Net Zero Energy Building Rating System. ये तीन क्या है? बिल्डिंग का रेटिंग सिस्टम है, so as to ensure sustainability with respect to construction of building, and also ensuring that whatever measures we are taking with respect to construction, this should be sustainable. The energy consumption of the building should be low. There should be less CO2 emission or less greenhouse emission during construction activities. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए we have this three rating system. Coming back to Bureau of Energy Efficiency, आपको पता चाहिए it's a statutory body under Ministry of Power and set up under Energy Conservation Act. तो उसके अंडर सेटअप किया गया था, and it assists in building policies and strategies with primary objective क्या है? Ensuring energy efficiency in Indian economy. That is the main objective of Bureau of Energy Efficiency. तो ये एक चीज, बेसिक चीज आपको पता चाहिए. Bureau of Energy Efficiency के और कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आपको पता चाहिए. फर्स्ट इज साथ पोर्टल पता चाहिए, साथी पोर्टल पता चाहिए. दैट इज व्हाट इट डज इज, साथी पोर्टल इंपॉर्टेंट है. इट्स अ ऑनलाइन पोर्टल. बेसिकली उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी. सो बेसिकली ये पोर्टल क्या करता है? इट हेल्प्स इन रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एनर्जी कंजर्वेशन endeavors which states have taken. So क्या है, एक पोर्टल पर we get to know कि what measures different states are taking with respect to energy conservation and where are they heading towards this, ensuring
that they are following the targets of energy conservation. So basically it's a portal for real time monitoring of state performance with respect to energy conservation. तो state wise action को वो क्या करता है, monitor करता है. That is साथी portal of Bureau of Energy Efficiency. Another important scheme which is implemented by which is under the preview of Bureau of Energy Efficiency, आपको पता चाहिए perform achieved, that is perform achieve trade scheme. So basically perform achieve trade scheme is part of national mission on is a part of national mission on ensuring energy efficiency. तो ये नेशनल मिशन है, नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान है इंडिया का. उसके अंदर 8 मिशन है. उसमें से एक मिशन क्या है, नेशनल मिशन ऑन एंश्योरिंग एनर्जी एफिशिएंसी, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी. उसी मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए व्हाट वी हैव इज परफॉर्म अचीव ट्रेड, एक इंपॉर्टेंट हमारा स्कीम है. अंडर दिस परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम क्या करता है, इट इज अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म वेयर एवरी सेक्टर हैज बीन गिवन टारगेट्स टू एंश्योर एफिशिएंसी. सो एवरी सेक्टर को क्या दिया है, एवरी इंडस्ट्रियल सेक्टर को टारगेट्स दिया है कि दे हैव टू एंश्योर इतना % एनर्जी एफिशिएंसी अचीव करना है इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स. तो इसमें क्या है, एवरी सेक्टर हैज बीन गिवन टारगेट्स एंड एज if you meet the target, what you would be given is energy saving certificates, and these energy saving certificates can be traded. So if certain industry is able to achieve these targets, they would have certificates. If any industry is not able to achieve, they have to buy these certificates and compensate for their deficit. So energy saving certificates क्या है, they can be tradable. These are tradable at 2 exchanges. कौन से, पावर एक्सचेंज इंडिया एंड इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर क्या है, ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स आर ट्रेडेबल. तो ये भी आपको पता चाहिए. जो परफॉर्म अचीव ट्रेड क्या है, एज वी सी, इसमें क्या है, हर एक इंडस्ट्री को टारगेट्स दिया है टू अचीव एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी एंश्योर करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, and if they achieve this, they would be given energy saving certificates. And if any other industry is not able to achieve, they have to buy and compensate for this, and these certificates are tradable. So marketable, क्या बोलते हैं, market driven initiative है and market mechanism है, market based mechanism है to achieve this energy efficiency. तो ये जो energy saving certificates are traded on Power Exchange India and India Energy Exchange, and the regulator for this energy exchange कौन सा है, Central Electricity Regulatory Commission is the market regulator for this exchange. And secondly, you should know that Bureau of Energy Efficiency is the administrator for the trading of energy saving certificates. तो यहाँ भी Bureau of Energy Efficiency का important role है. तो ये भी आपको पता चाहिए. तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इज अ मार्केट रेगुलेटर, एंड जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स का एडमिनिस्ट्रेटर है, दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. मूविंग फॉरवर्ड, स्टार लेबलिंग सिस्टम इज आल्सो इनिशिएटिव ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. एज यू मस्ट हैव सीन ऑल द एसीज, टीवीज, उस पर क्या है, स्टार लेबलिंग इज कंपल्सरी. सो these are done to ensure informed choices and to promote energy efficiency. So 10 ऐसे अप्लायंसेस है वेयर यू हैव टू हैव स्टार लेबलिंग. तो ऐसे कौन से 10 अप्लायंसेस है, एमसीक्यू कैन कम, एंड कुछ लोगों के लिए कंपलसरी है, बाकी के लिए ऑप्शनल है, या दे आर वॉलंटरी. तो 10 कौन से मैंडेटरी, कौन से अप्लायंसेस है वेयर यू नीड टू हैव स्टार लेबलिंग. तो ये आपको पता चाहिए, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, ट्रांसफार्मर हो गया, टीवी हो गया, एलईडी हो गया, इन्वर्टर एसी हो गया, गीजर्स हो गया, डायरेक्ट कूलिंग रेफ्रिजरेटर्स हो गया, फ्लोरोसेंट लैंप्स हो गया, एंड स्टैंडिंग फ्लोर स्टैंडिंग एसीज. तो ये ऐसे 10 इंपॉर्टेंट आइटम्स है वेयर यू नीड टू हैव मैंडेटरी व्हाट, स्टार रेटिंग सिस्टम. स्टार रेटिंग, रेस्ट के लिए क्या है, वॉलंटरी है. आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दिस नोट्स, डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस लेक्चर्स के देखिए, सारे नोट्स मिल जाएंगे. कॉपी पेस्ट दैट लिंक ऑन द इन द टेलीग्राम ग्रुप. तो सॉरी, टेलीग्राम पे वो क्या कीजिए, जो लिंक हमने प्रोवाइड किया कॉपी पेस्ट कीजिए एंड यू विल फाइंड द नोट्स. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपको पता चाहिए. सो कमिंग बैक, 1 मिनट में हम रिवाइज करेंगे. हमने स्टार्ट कहाँ किया गया था, new initiatives taken by Bureau of Energy Efficiency to ensure sustainable habitat. तो उसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, we have revised energy conservation building code for 2021. Secondly, we have Eco Niwas Samhita, again for residential buildings, revised in 2021. These are code according to which the buildings have to be constructed, new buildings have to be constructed. Secondly, we have Nirman Award, where we award buildings who have been following this energy conservation building codes and have taken new steps with respect to
ensuring sustainable development, and for ensuring that the buildings are developed in a sustainable way, there is less energy conservation, less water conservation, and natural light is being used, तो निर्माण अवार्ड है. Then we saw rating system, 3 rating system for sustainable habitat, sustainable buildings को rating system है, which buildings are considered as sustainable buildings, तो उसका एक green rating system है. उसमें सबसे पहले हमने गृह देख लिया. गृह किसका इनिशिएटिव है वो भी हमने देख लिया. गृह इज इनिशिएटिव ऑफ तेरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तेरी हमने देख लिया. तेरी का हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज कंडक्टेड बाय तेरी. लाइट अ बिलियन लाइव्स इनिशिएटिव है. ग्रीन ओलंपियाड है. ये सारे किसके इनिशिएटिव है? तेरी के इनिशिएटिव है. तो हमने ये सारे चीजें देख ली. एंड 2001 से वी हैव स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव. देन उसके साथ हमने लीड भी देख लिया. लीड इंडिया is again a green rating system. एंड जो लीड इंडिया है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड उसका इंडिया में जो रेटिंग सिस्टम इज डन बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है वो क्या करता है? लीड इंडिया को, ये लीड इंडिया रेटिंग सिस्टम रन करता है. सेकेंडली वी हैव नेट जीरो रेटिंग सिस्टम, नेट जीरो एनर्जी रेटिंग सिस्टम. नेट जीरो एनर्जी रेटिंग सिस्टम इट्स आल्सो बाय इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल. इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है. तो ये हमने देख लिया. हमने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में देख लिया. हमने स्टार रेटिंग प्रोग्राम देख लिया कि किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए वॉलंटरी है. हमने वी सॉ पैट स्कीम देख लिया. हमने एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स देख लिया एंड 2 पावर एक्सचेंजेस देख लिया. सो व्हाट वी हैव डन इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के रिलेटेड सारी चीजें हमने एक साथ देख लिया. मूविंग फॉरवर्ड, another important thing at the environmental level, one important initiative was started by IUCN. बहुत important है. IUCN एक important initiative start किया है. Next is what IUCN has started is green status of species. So basically green status of species कैसे है? जैसे रेड लिस्ट है वैसे ही ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज स्टार्ट किया है. रेड लिस्ट में व्हाट वी सी इज कितना इट इज अ नेगेटिव लिस्ट. नेगेटिव लिस्ट इट सेज कि दिस स्पीशीज इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दिस स्पीशीज इज vulnerable, this is critically endangered. So what we are seeing is from the point of view of decreasing the species. But green status क्या है? Green status of species is also an initiative of IUCN where it's a tool to assess the recovery of species population and measure the conservation success. So we see it from a positive side. What steps government has taken? What is the result of the steps with respect to conservation? Whether the species is recovering, how much it is recovering. So based on this, what we give is green status. Red list में क्या है? What we do is we see from negative perspective कि कितना इसका species बच गया है, कितना extinct हो रहा है. So on a negative side, but to see it from a positive side, what is the effect of conservation? So through that, what is the effect through conservation? What is the effect of government measures? What is the effect how the population is recovering? So to analyze this, what we have started is green status of species, again initiative of IUCN, and it is based on 3 facets. कौन से? Whether species is fully recovered, is it in a viable situation, or performance, or third is whether it is performance ecological function in all parts. So based on this, what we give is green status, green score हम देते हैं उस species को to see whether the species is recovering. तो नॉर्मली हम जो है जो रेड लिस्ट में IUCN में जो हम देते हैं वो क्रिटिकल endangered ऐसा देते हैं, लेकिन नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गिव इज ग्रीन स्टेटस, हाउ मच द स्पीशीज हैज रिकवर्ड. हम पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना चाहते हैं. हाँ, पिछले बार क्या था? पिछले बार the species was not doing well, but this time because of our measures, what the species is recovering, its population is increasing. तो हम क्या करने हैं? हमने ग्रीन स्कोर लेके आया है based on 0 to 100%. So जो species रिकवर कर रही है, बहुत रिकवर कर रही है, उसको 100 स्कोर जाएगा. जो रिकवर नहीं कर रही है उसको 0 स्कोर जाएगा. तो उस पर्सपेक्टिव से ये ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज आपको पता चाहिए. इट्स अ टूल टू असेस द रिकवरी. It is not a tool to check whether the species is decreasing, but a tool to assess the recovery and measure the conservation success. उस perspective से green status important है. Next is IUCN has also conducted an important initiative, that is World Conservation Congress was conducted in 2021. 2021 में क्या आया? World Conservation Congress. Though it was stated to be कब होना था? 2020 में होना था, लेकिन because of Corona 2021 में हुआ. And this World Conservation Congress is an initiative of IUCN. First 1948 में हुआ था
IUCN conducts every 4 years, तो every 4 years होता है, तो ये भी एक important है. And it took critical policy decision to address conservation priorities including ongoing biodiversity crisis. तो basically इस conservation congress में what we take is we take steps to ensure biodiversity conservation and address all the issues which is causing biodiversity crisis. तो वो इंश्योर करने के लिए, एक प्रायोरिटी इंश्योर करने के लिए व्हाट वी हैव इज वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस. 2020 में स्टार्ट हुआ था, 1948 में स्टार्ट हुआ था, 2020 में होना था, लेकिन 2021 में हुआ है. फ्रांस में मर्सीली एक जगह है, देयर इट वाज कंडक्टेड इन 2021. तो ये भी आपको पता चाहिए. एंड ड्यूरिंग दिस समिट World Conservation Congress, what was a few of the important initiatives which were taken is Global Indigenous Agenda. So basically under this Global Indigenous Agenda, what the country said is they called for secure recognition and respect of all collective indigenous right and governance of land, territories, water, coastal areas and natural resources. So indigenous people के rights है over this important तो जो indigenous people के rights recognize किए गए हैं with respect to governance of land, territories, coastal water and natural resource. They also updated IUCN red list and they started an important initiative that is sustainable tourism initiative. भी इस summit, इस congress के वक्त start हुआ था. That is वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस के वक्त सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव स्टार्ट किया था. दिस इनिशिएटिव इज फंडेड बाय जर्मनी बट द इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स आर यूनेस्को एंड WWF. यूनेस्को एंड WWF भी इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स है. One important award was given which you should know is given to an Indian, that is Bhelar Turtle Conservation Award was given. Bhelar Turtle Conservation Award, it was given to Shailendra Singh of India and it was given for his conservation efforts towards conserving 3 important turtle species which are critically endangered. तो कौन से है? रेड क्राउन रूफ टर्टल, नॉर्दर्न रिवर टर्पाइन एंड ब्लैक सॉफ्ट शेड टर्टल. तो ये तीन टर्टल के कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए उन्हें ये बेलार टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया था. एंड जो ब्लैक सॉफ्ट शेड टर्टल है, there is a confusion whether it is critically endangered or extinct in wild. Some places it is given critically endangered, some places it is given extinct in wild. So make sure you go through it कि क्या है black soft shell turtle and you tell me in the कमेंट सेक्शन की क्या होने ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल का IUCN स्टेटस क्या है. नेक्स्ट इज IUCN के बारे में पता चाहिए. IUCN इज व्हाट? इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स मेंबरशिप इज यूनिक बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन 1948 एंड इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है. एंड इट इज अ ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ नेचुरल वर्ल्ड एंड द मेजर्स नीडेड टू सेफगार्ड इट. तो जो भी मेजर्स है, इट ब्रिंग्स आउट रेड लिस्ट ऑल्सो with respect to IUCN का रेड लिस्ट लेके आता है with respect to whether the species is critically endangered, what is the status of the species with respect to conservation. तो ये एक important initiative है, important organization है which everyone should know. headquarter ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, 1948 में है. गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी बोथ आर पार्ट ऑफ इट. एंड तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड साइंटिफिक डेटा ऑन द स्टेटस ऑफ स्पीशीज एंड सब स्पीशीज एट द ग्लोबल लेवल, टू एड्रेस द फैक्टर्स ऑफ कंसर्न एंड स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन, एंड लास्ट टू प्लान अ लेआउट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये है. एंड members, as I told you, is states, non-governmental organization, indigenous people, experts, government agencies, सब part है. एंड IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज सबको पता है कि कौन लेके आता है. एंड साइड बाय साइड रिपोर्ट्स आपको पता चाहिए. प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट इज आल्सो बाय IUCN इन UNEP, हमने देखा है ऑलरेडी. वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है दैट इज brought out by IUCN, UNEP and WWF. Hopefully you have got an important idea about this important lecture where we have covered so many topics together at one place. हमने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के सारे टॉपिक्स देख लिए, IUCN के सारे टॉपिक्स देख लिए. IUCN में हमने क्या देख लिया? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल मेंबर स्टेट्स है, नॉन स्टेट एक्टर्स है, इंडिजिनियस पीपल है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, डेटाबेस प्रोवाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू थ्रेटन स्पीशीज, स्ट्रैटेजी भी बताता है कि कैसे इसको कंजर्व करना है. सेकेंडली, वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस इज कंडक्टेड बाय IUCN एवरी 4 years, वेयर वी हैव इन जो 2020 का जो कांग्रेस था वहां हमने बेलार टर्टल अवार्ड दिया. वी ऑल्सो
हमने सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव स्टार्ट किया एंड और एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था कि इंडिजिनस पीपल के राइट को रिकॉग्नाइज किया गया। तो एंड उसके बाद हमने IUCN के बारे में भी देखा कि उस प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट एंड वन कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी भी लेके आता है। तो ये सारी चीजें हमने एक साथ देखी। तो वन इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल जो न्यूज में था इज वाज विद रेस्पेक्ट टू जेम्स वेब टेलीस्कोप। यू मस्ट हैव नोटिस्ड रिसेंटली दिस टेलीस्कोप वाज लॉन्च्ड and this is considered as a successor of Hubble telescope. Though it is an international news, but this is a very important event with respect to science and technology. And I would like to tell you, this telescope looks into electromagnetic waves in infrared region, so that's why it is called as infrared telescope. Here I would also tell you ki why it is called and why it is looking only after infrared waves or infrared जो part है electromagnetic spectrum का, वही क्यों ये analyze कर रहा है, that reasoning is important. So going to the basics why infrared waves are used, ये आपको पता चाहिए. We'll look into it, but before that, it is an initiative of NASA, European Space Agency and Canadian Space Agency. तीनों का initiative, that is also one thing you need to know. Next is why infrared. So UPSC, what you are reading is only just कि it is a infrared telescope, but you should know why it is an infrared telescope. The first thing is there are जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें गामा रेज है सबसे ऊपर, देन वी लुक इनटू इट, बट गामा रेज, एक्स रेज, देन वी हैव यूवी रेज, हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम होता है, एंड देन वी हैव इंफ्रारेड. जो इंफ्रारेड वेव्स है दे आर लेस स्कैटर्ड. जो विजिबल हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में जो विबग्योर लाइट्स है, जो रेडिएशंस है जो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में है, दे गेट स्कैटर्ड. UV light gets scattered, but infrared light है ना जो दूर से आ रही है from any object, it is not scattered by dust and any dust particles or any object in the space. So it is best, analyzing infrared waves is the best way to see various objects, because the light emitted by this object is not scattered by dust, it is not scattered by clouds. That is why these are the most unfiltered or what do you say, unaffected waves. That's why we are observing which rays? Infrared waves. Secondly, what is happening is the infrared waves, most of the you must have heard about Doppler phenomena. Doppler phenomena क्या होता है? As you know कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है. As the universe is expanding, the relative frequency of light changes. The relative frequency of the light changes, and this is known as redshift. Because of this redshift phenomena क्या हो रहा है कि as UV light और हमारा जो color radiations है या हमारे visible radiation है, as they move into space, वो क्या हो रहा है, वो stretch हो रहा है, उनकी wavelength increase हो रही है, उनकी frequency कम हो रही है. Because universe is expanding, the objects, जो observer and जहां से light आ रही है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ इट क्या हो रहा है कि देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड देयर इज चेंज इन वेवलेंथ, एंड द वेवलेंथ इंक्रीजेस, एंड जो भी यूवी लाइट है दैट आल्सो गोज इनटू infrared region. That is why what we are doing is even if the object is emitting ultraviolet or visible spectrum light, it is getting scattered in infrared, it is getting diverted to infrared region because of the redshift phenomena which is happening because of Doppler effect. Doppler effect is not only important it is not only observed for sound wave, but it is also observed for electromagnetic waves. तो ये आपको पता चाहिए. So why we are using infrared region or infrared spectrum to observe is because infrared rays of electromagnetic spectrum क्या है, least scattered है, and because of redshift phenomena even the ultraviolet or visible spectrum के lights is being seen as infrared waves. तो ये एक important reason है why we are observing in the infrared spectrum. जो IR waves है, infrared waves है in the electromagnetic spectrum, it is also used in your TV remotes. जो भी आपके मोबाइल में IR blaster होगा, जो भी UV rays, जो भी रिमोट चलता है, it is because of infrared waves. We are using infrared waves. तो ये आपको पता चाहिए. जब भी हम infrared waves, gamma waves की बात करते हैं, you should know about electromagnetic spectrum. On one side, what we have is gamma rays. So gamma rays are the rays which has very high frequency. इनका क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है बट वेवलेंथ कम है. वेवलेंथ क्या है, कम है, and because of that they can penetrate into any body. And gamma rays is used where they are used in agricultural purpose to what,
टू डिसइंफेक्ट आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो ऑनियन डिसइंफेक्ट करने पड़ते हैं, जो भी गामा रेज मेजरली कहाँ यूज होते हैं, टू एज अ डिसइंफेक्टेंट, एंड देन द मोस्ट पावरफुल वेव्स विच यू शुड नो। तो क्या होता है कि जब गामा रेज हम बात करते हैं तो दे आर द मोस्ट हार्मफुल वेव्स। तो ये आपको पता चाहिए, व्हाई? बिकॉज स्मॉल वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। बिलो दैट व्हाट वी हैव इज एक्सरे वेव्स, यूवी रेज, देन विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है? 400 नैनोमीटर्स उसका वेवलेंथ होता है टू 700 नैनोमीटर्स। बिलो विजिबल स्पेक्ट्रम व्हाट वी हैव इज इंफ्रारेड वेव्स, एंड व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज इंफ्रारेड वेव्स। एंड एज यू मूव डाउन you would also find radio waves. But as we are through हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप, we are observing radio as we are observing infrared waves. But हबल से हम कौन से वेव्स देख रहे थे? हम हबल से अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम देख रहे थे। There is चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी through which we are observing X-rays. Then there is Compton gamma ray observatory through which we are observing what? Gamma rays. And there is also giant radio waves, radio wave telescope through which we are observing radio waves. So we are observing all of them, but the best way to see the celestial events, the form of early galaxies, the form of star, the lifestyle of star, is the best way is through infrared waves. So ये पता चाहिए आपको. And as we move down from gamma rays to radio waves, the wavelength increases, and as we move from gamma rays to radio waves, the frequency decreases. तो ये आपको पता चाहिए, ये correlation, wavelength is inversely proportional to frequency. Wavelength is inversely proportional to frequency. जो कैसे याद रखना है? Gamma rays are more harmful because they can penetrate, they are small. So that is why उनका क्या है? Wavelength कम है, तो क्या होगा? Frequency ज्यादा होगी. Radio waves क्या है? उनकी wavelength ज्यादा है but frequency कम है, तो उस perspective से पता चाहिए. And where was, कहां से ये लॉन्च किया गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये आपको पता चाहिए. So what we usually do is, हमने देख लिया सिर्फ जेम्स वेब कहाँ, why we launched जेम्स वेब टेलीस्कोप, कौन सा स्पेक्ट्रम देख रहा है हमने? इंफ्रारेड. We did not ask a question why. So here what, through science and technology, if you go to basics, it's important. So it was launched from Arena 5 launch center. Where is this Arena 5 launch center? And you should know that it is part of European space agencies. India के बहुत important satellites are launched from Arena 5 satellite, that is Earth observation satellite GSAT-30. Where is this Arena 5? कौन से continent में है? कौन से कॉन्टिनेंट? आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज ऑन द ईस्ट कोस्ट. मैं इतना ही बोलूंगा, इट इज ऑन द ईस्ट कोस्ट में ही है. सो इफ यू सी ऑल द लॉन्च सेंटर्स, दे आर मेजरली ऑन ईस्ट कोस्ट. कौन से है? अभी जैसे मैंने बोला अरीना 5 हो गया, देन श्रीहरिकोटा, देन हमारा जो यूएस का भी लॉन्च सेंटर है, दैट इज ऑल्सो ऑन द ईस्ट कोस्ट. Sriharikota is also on the east coast. हमारा Arena 5 is also on the east coast. South America is the continent. South America on the east coast. So you should know why east coast. So this is going back to the basics, because I would tell you we have also developed one more space launching center. We have two space rocket launching center. One is Sriharikota, which is based in Andhra Pradesh. We had Thumpa rocket launching centers, but जो Thumpa है, it only launches sounding rockets. Sounding rockets, they go up to a distance of 100 kilometers. They majorly experimental rockets होते हैं. लेकिन we have also developed one more launch center, तो मैं आगे बताऊंगा. It is also on the east coast. तो majorly east side में क्या है? East coast में ही क्यों है सारे जो launch centers है? तो you should know that as Earth move from west to east, as if we launch satellite from the east coast, the satellite would get an initial boost in the initial boost during its launch, and because of this initial boost क्या होगा? The rocket, we would use less fuel in the in sending the rocket into the space. तो initial boost मिलता है because Earth is moving from west to east, and if we launch a rocket in the east direction, there is an initial boost. And secondly, even if the rocket falls, or there is some hazardous situation, the जो matter है, it falls into the ocean, and there is no harm to life. तो ये आपको पता चाहिए. एंड मोस्टली फ्रॉम इक्वेटर. क्योंकि इक्वेटर पर क्या है, जो बूस्ट मिलना है सबसे ज्यादा इक्वेटर पर होगा, क्योंकि इक्वेटर पर जो सरफेस वेलोसिटी है अर्थ की सबसे ज्यादा इक्वेटर पर है. बिकॉज इक्वेटर हैज टू मूव फास्टर टू कंप्लीट वन सर्कल कंपेयर्ड टू पोल्स में क्या है, देयर इज no movement, comparative movement. The velocity of Earth on the pole is almost zero, and at the equator it is highest. That is why we are launching our satellites from equator. So you should know about this. As I told you कि हमारे east coast पर है, and most of them are near center.
Why Sriharikota is the first most commonly used. Second which we have developed, which second important space launch center which we recently developed was Kulasekara. It is based in Tamil Nadu. Kulasekara is the newly launched rocket launching center. And जो थुम्पा है ना, basically it is for only majorly for sounding rockets, small rockets, testing rockets, उसके लिए होता है. Next is, so what is the role of James Webb? तो majorly we'll going back to James Webb. We started with James Webb. We covered two important static part, that is infrared electromagnetic spectrum, and we also covered what? We also covered why East Coast and Equator. Secondly, I would like to tell you what is the role of James Webb. So basically James Webb is trying to look into light from early galaxies. After Big Bang, the galaxies slowly started forming. जो Hubble था ना, they were looking after, if you see, मतलब अगर if you consider from birth to adult, तो जो Hubble था, it was looking after toddler galaxies. But James Webb would go into looking into baby galaxies or just born galaxies. So it would tell us more about Big Bang and origin of stars and origin of galaxies. तो उस perspective से आपको पता चाहिए. And so it would analyze light from early start of universe and galaxies, study origin of universe, stars and its life cycle. It is also known as time machine. Coming back to again, I would like to tell you, where is this placed? So again, important static part which you should know. It is placed at Lagrange point. कौन सा Lagrange point? L2. There are how many Lagrange point in our जो हमारा solar system है, उसमें कितने Lagrange point है between Earth and Science? There are 5 Lagrange points. सबसे important है. And these are point of equilibrium between gravitational force of Sun and Earth. Basically क्या होता है कि if you see this figure, तो जो gravitational force of Sun क्या करेगा? It would pull anything which is near this. It would slowly pull every satellite or every every body near it, जो gravitational pull of Sun की वजह से. लेकिन Earth would also do this here. तो आपको दिख रहा है ये जो पूरा है, ये gravitational pull of Sun है. ये किसका है? Earth का gravitational pull है. And there are certain points where there is an equilibrium. Even if we place these satellites there, they would remain stable. They would not move inside, or they would not crash into Earth, or they would not crash into the Sun, and they would be stable because of balance of gravitational pull of Earth and Sun. So similarly, there are 5 points. First, इसको क्या बोलते हैं? ये Earth है, ये Sun है. जो first point है, इसको L1 बोलते हैं. हमारा जो आदित्य L1 सैटेलाइट है, आदित्य L1 जो हमारा जो solar observatory है, which we are going to launch, it is going to be placed here at L1 between Earth and Sun. There is another point, that is L2. This is L2. तो L2 कहाँ है? तो if you see, this is Sun, this is Earth. L2 is it is away from Earth and Sun. तो ये पता चाहिए, it is not between Earth and Sun, but it is far beyond Earth. It is far beyond Earth. तो ये आपको पता चाहिए. ये जो पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? L2 बोलेंगे. L1 यहाँ है. And L3, L4, L5 कहाँ है? ये L3, L4 and L5. ये 5 Lagrange point है. तो basically ये आपको पता चाहिए. These are known as parking spots. And जो हमारा James Webb telescope, it is placed at where? It is placed at L2. It is not placed at L1, but it is placed at L2. तो ये आपको पता चाहिए. एंड तो हमने उसका सारा बेसिक चीजें विद रिस्पेक्ट टू ये कर लिया. वी हैव ऑलरेडी सीन व्हिच आर द मोस्ट डेंजरस वेव्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इज gamma waves. ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव. आई वांटेड टू गिव यू थ्रू एग्जांपल कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए. यू शुड आल्सो नो अबाउट हबल टेलीस्कोप. क्या था? It was also a space observatory. NASA, European Space Agency and Canadian Space Agency का इनिशिएटिव था. ये कहाँ था? लो अर्थ ऑर्बिट, ऑलमोस्ट 500 to 600 किलोमीटर्स के फ्रॉम द अर्थ ये सिचुएटेड था. सेकेंडली, यूवी लाइट एंड विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को मेजरली इट वाज कैप्चरिंग दोज electromagnetic waves.
and it had a smaller mirror compared to James Webb. तो ये भी आपको पता चाहिए था, and it was looking after toddler galaxies. जो James Webb है, it is looking far beneath and looking at baby galaxies. तो ये अभी आपको पता चाहिए. And Hubble was part of great observatories. कौन से great observatories है? First is Chandra X-rays, Compton Gamma Rays and Spitzer Space Telescope. ये क्या है? ये तीन, and along with Hubble telescope is known as Great Observatory. Chandra X-ray observatory क्या करता था? X-ray observe करता था. Compton Gamma Rays, as I already told, Gamma Rays observe करता था. Spitzer Space टेलीस्कोप था, वो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के जो रेडिएशन से उनको ऑब्जर्व करता था, एंड इट रिटायर्ड इन 2020. अनदर इंपॉर्टेंट infrared observatory of European space agencies आपको पता चाहिए is Herschel Space Observatory. It is also a space observatory looking after infrared waves and infrared spectrum of हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो इंफ्रारेड जो लाइट है, वेव्स है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. Another important program with respect to infrared waves जो आपको पता चाहिए, SOFIA, that is Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. तो this SOFIA initiative is an initiative of NASA and German aerospace centers to construct and maintain an airborne observatory to look into infrared waves. So ये another important initiative which is also in news in last 1.5 years. तो ये भी आपको पता चाहिए. Hopefully you are able to get all the important telescope. We started with James, but we tried to cover many static syllabus. Moving forward, we need not just cover static syllabus, but आपको कुछ प्रीवियस इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप्स भी पता चाहिए, जैसे 30 मीटर टेलीस्कोप है. 30 मीटर टेलीस्कोप तो it is also an important telescope. Where it is located is Mauna Kea in Hawaii, USA में located है. Secondly, it has been constructed and it is a joint venture of USA, Japan, China, India and Canada. And इसका जो prime mirror है, उसका diameter is 30 meters, and it is going to observe cosmic objects and with unprecedented sensitivity. तो ये क्या है? एक ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप में 30 मीटर टेलीस्कोप है. तो टू गिव अगेन इंफॉर्मेशन अबाउट अर्ली स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स. 30 मीटर टेलीस्कोप कहाँ बेस्ड है, कौन से कंट्रीज है, ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट स्क्वायर किलोमीटर एरे भी आपको पता चाहिए. इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. इट इज मेजरली जो स्क्वायर किलोमीटर एरेस के एंटीनाज है, दे आर बेस्ड इन साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया. And this project, India is also part of this square kilometer array telescope, and it is a radio telescope. तो ये आपको पता चाहिए, रेडियो टेलीस्कोप है. and जो कलेक्टिंग एरिया वुड बी 1 स्क्वायर किलोमीटर्स का कलेक्टिंग एरिया रहेगा ऑफ दिस टोटल टेलीस्कोप, एंड रेडियो वेव्स को ये कैप्चर करता है. तो ये आपको पता चाहिए. एंड अगेन different type of electromagnetic radiations are released when there is any event, formation of galaxies, formation of stars. So it is going to help us observe various events. तो ये भी आपको पता चाहिए. Then there is another important telescope, Kepler telescope of USA, which looks into habitable planets in our galaxies. So habitable planets is those who are in Goldilocks zone. Goldilocks zone is what? Where water exists in liquid form. तो ये आपको पता चाहिए. Kepler telescope भी पता चाहिए. Next is giant meter wave radio telescope. Again radio telescope, but based in Pune and operated by National Center for Radio Astrophysics. So National Center for Radio Astrophysics monitors this giant meter wave radio telescope based in Pune. नेक्स्ट इज अनदर टेलीस्कोप जो आपको पता चाहिए इज LIGO is basically what it tries to detect is it's also known as telescope. LIGO क्या है? लेजर इंफरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी. तो ये क्या करता है? ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करता है. एंड ग्रेविटेशनल वेव क्या है? इट इज अ रिपल इन हमारा जो स्पेस टाइम फैब्रिक है, बेसिकली जो प्लैनेट्स के बीच में जो जगह है, उसको आइंस्टाइन के हिसाब से इट इज अ काइंड ऑफ फैब्रिक मेड अप ऑफ स्पेस एंड टाइम. एंड व्हेनेवर देयर इज एनी इवेंट सच एज मर्जर ऑफ 2 ब्लैक होल्स, एंड देयर इज such a big event, formation of new star, there is
the space time is affected and it leads to formation of ripples. जैसे नहीं कि हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो कैसे waves तैयार होते हैं, उसी तरीके से gravitational जो fabric है उसमें ripples तैयार होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, gravitational waves होते हैं. तो and these gravitational waves are detected by LIGO and based on this detection of gravitational wave we can know which event happened a few light years ago. तो ये क्या करता है, it aims to detect gravitational waves. इंडिया में we are also setting up हमारा खुद का gravitational wave observatory that is Indigo and it has been planned at Hingoli in Maharashtra. तो basically जो space time fabric है उसमें उसके जो variations है, ये मेजर जो ग्रेविटेशनल वेव तैयार होता है बिकॉज ऑफ रिपल्स इन द स्पेस टाइम फैब्रिक इज बीन गैदर्ड बाय LIGO. देयर इज लीसा पाथफाइंडर आल्सो. लीसा पाथफाइंडर क्या है, बेसिकली इट इज लेजर इंफ्रोमीटर स्पेस एंटीना. हियर हमारा जो LIGO जो सेंटर था, जो LIGO एक्सपेरिमेंट था, इट इज ग्राउंड बेस्ड, बट टू डिटेक्ट gravitational wave in the space what we have is laser pathfinder. Basically it is a space mission launched by European Space Agency. And the aim is to launch space-based observatory for detecting gravitational waves. तो जो gravitational wave है हमें space-based में ही observe करनी है. तो ये चीजें आपको पता चाहिए. जब भी हमने देखा कि every telescope मतलब जैसे जेम्स वेब is looking after infrared and some part of visible spectrum also it looks into. हमारा भी एक important space based observatory है, that is AstroSat, which was launched in 2015 and it is a multi-wavelength telescope है which looks into all the important जो spectrum है, जैसे ultraviolet, visible and infrared, सारी चीजों को डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है सारे वेव्स को. तो ये आपको पता चाहिए. इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी एंड इंडियन यूनिवर्सिटी सेंटर. तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इनका इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है. तो what I want to tell you through this initiative is we need not just cover current aspect. What we did was we जेम्स वेब देख लिया, जेम्स वेब के साथ हमने लॉन्च सेंटर्स भी देख लिया, हमने वाई इंफ्रारेड भी देख लिया, हमने साइड बाय साइड we saw launch centers why they are in east coast भी देख लिया, हमने infrared why it is an infrared, हमने electromagnetic spectrum भी देख लिया. तो हमने सिर्फ जेम्स वेब नहीं देखा, हमने हबल भी देख लिया and all the major telescopes हमने साइड बाय साइड कवर कर लिया. सॉरी टू पॉज यू इन बिटवीन, बट मेक श्योर you pause this video and subscribe to the channel because 80% of you are not subscribing. I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers. Thank you. If you like our way of teaching and if you want to cover entire current affairs of 2 years, you can join our Target 140 plus current affairs batch where we have covered current affairs of last 2 years in the most comprehensive way, linking current with static. So all the Indian telescope will try to compile at one places because UPSC, though at the global level we had James Webb, an important event, हमने, लेकिन you should also know that what are the observatories which are in India which are looking after all the important events at the global level. तो ये आपको पता चाहिए. First is Indian Astronomical Observatory. ये एक important observatory है because it has 3 sub units under it. तो ये where it is located ये आपको पता चाहिए. हेनले नियर लेह लद्दाख में है, लेह के पास है. इन जम्मू कश्मीर, सॉरी, इन द प्रीवियस इट वाज नोन एज जम्मू कश्मीर स्टेट ऑफ जम्मू, नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख जो एक अलग से यूनियन टेरिटरी है वहां इट इज बेस्ड. तो ये आपको पता चाहिए. एंड इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लोकेटेड साइट्स फॉर ऑप्टिकल, इंफ्रारेड एंड गामा रेज टेलीस्कोप. एज आई सेड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप व्हिच इज प्रेजेंट. तो कौन से 3 है? फर्स्ट इज ऑप्टिकल भी है, इंफ्रारेड भी है, गामा रे टेलीस्कोप भी है. as in the previous lecture I have already told you these 3 why we have different type of telescope. As there is, what do you say, any event in the solar system, in our galaxy, what we have is light which is released, electromagnetic spectrum, what do you say, waves which are released which are in the various electromagnetic spectrum में होती है. तो to analyze each electromagnetic waves we have different type of telescope. जो हमने हबल टेलीस्कोप देखा था, जो जेम्स वेब है, इट इज लुकिंग इनटू इंफ्रारेड पार्ट. तो ये भी आपको पता चाहिए, वो भी इट इज लुकिंग इनटू इंफ्रारेड पार्ट. तो ये आपको पता चाहिए. इट इज ऑपरेटेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स व्हिच इज बेस्ड इन बैंगलोर. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हेनले नियर लेह लद्दाख में है. सेकेंडली ऑप्टिकल, इंफ्रारेड एंड गामा रेज है.
and third is Indian Institute of Astrophysics है, Indian Institute of Astrophysics. And as I told you कि Indian Astronomical Observatory जो है that includes 3 type of telescope. First is Groth telescope जिसके बारे में हम देखेंगे, it is an optical telescope. Next what we have is high altitude gamma rays observatory, and third is Himalayan Chandra X-ray observatory. तो what we are looking into is optical rays, ऑप्टिकल टेलीस्कोप भी है, गामा रेज भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चंद्रा एक्सरेज भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं थ्रू दिस इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी दैट इज इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ टेलीस्कोप आपको पता चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्रोथ टेलीस्कोप का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल रिले एंड ऑब्जर्वेटरी टू वॉच ट्रांजिएंट हैपनिंग. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज ऑल द इंपॉर्टेंट ट्रांजिएंट हैपनिंग्स we are observing through this important telescope, Groth telescope, which is a part of Indian Astronomical Observatory. It is India's first robotic telescope है, based लद्दाख लेह में, हेनले में. लेह कहाँ है? लद्दाख में है. तो there it is, and it is a initiative of किसका? IIT बॉम्बे and Indian Astronomical Institute, Indian Astronomical Institute, supported by SERB. ये हम देखेंगे, that is Science and Engineering Research, Science and Engineering Board, जिसको SERB बोलते हैं. And what it does is study supernova, rare near Earth asteroids, इनको सर्च करता है, जो भी ट्रांसिएंट इवेंट्स है उसको सर्च करता है. एंड also looks into interdisciplinary projects. तो interdisciplinary projects है with respect to जो भी हमारे जो भी at the global level we have interdisciplinary projects where so these are also observed by this Groth telescope. तो ये भी आपको पता चाहिए. तो basically studies all the transient events such as the study of supernova, early supernova, near earth asteroid, ये क्या करता है? इसको स्टडी करता है. एंड इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स को भी ये एग्जीक्यूट करता है. एंड इट इज सपोर्टेड बाय सर्ब एंड इनिशिएटिव ऑफ आईआईटी बॉम्बे एंड इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट. तो ये आपको पता चाहिए. इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. ठीक है. सर्ब, एज आई टोल्ड यू, इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी. इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो दैट इज वाई ये आपको पता चाहिए. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो ये आपको पता चाहिए. इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी under Department of Science and Technology, under Ministry of Science and Technology, passed through an act of parliament in 2009. And what the aim of SERB, ये आपको पता चाहिए, because it aims to promote basic research in science and engineering and provide financial assistance to scientists, academic institutions, research and development laboratories, industrial concerns and other agencies for such research. So basically what it does is it promote research, साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करता है. एंड दैट इज व्हाई दिस इंपॉर्टेंट बॉडी यू शुड नो. एंड आप हमेशा लिख सकते हो, मेंस में भी लिख सकते हो इसके बारे में. तो सर्ब इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच प्रमोट्स बेसिक रिसर्च ऑल्सो एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल्सो. इट इज चेयर्ड बाय सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एमिनेंट साइंटिस्ट. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड साइंटिस्ट आर पार्ट ऑफ दिस सर्ब. Moving forward, SERB has taken various measures. उनके अंडर various programs run होते हैं. तो you should know about these programs also. That is Accelerate Vigyan Scheme. This is an important scheme which is launched by SERB, that is Science and Engineering Board. And what it does is it tries to give more thrust on encouraging high-end scientific research and preparing scientific manpower which can lead research career and knowledge-based economy. So high-end research को promote करता है through this Accelerate Vigyan Scheme, which is an initiative of SERB. Secondly, SERB Power is also an important program of SERB, that is promoting opportunities for women in exploratory research. So SERB Power is to promote women scientists in the field of science and technology. So as I told you, it is launched by Science and Engineering Board, and what it does is it encourages emerging as well as eminent women researchers to undertake R&D activities in frontier areas of science and engineering. So basically women scientists को promote कर रहे हैं through this SERB Power, which is an important program, which is run for women. कौन सा एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है विमेन साइंटिस्ट के लिए? इट इज फेमस. नाम इज किरण इनिशिएटिव. मूविंग फॉरवर्ड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज में तीन ऑब्जर्वेटरीज है. फर्स्ट इज ग्रोथ टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी एंड गामा रेज ऑब्जर्वेटरी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टेलीस्कोप है इज हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप. आपको पता चाहिए. एंड
तो जो चंद्रा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, चंद्रा टेलीस्कोप, चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप है, तो ये आपको पता चाहिए कहां लोकेटेड है। अगेन हेनली, लद्दाख, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, माउंट सरस्वती में लोकेटेड है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का पार्ट है, एंड इट इज रिमोटली operated using a dedicated satellite communication link from the Center of Research and Education in Science and Technology। तो क्रेस्ट से एक इंपॉर्टेंट है, क्रेस्ट नाम की एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उससे एक सैटेलाइट लिंक के थ्रू वी आर गोइंग टू ऑपरेट दिस हिमालयन चंद्रा, what do you say, Chandra telescope, and this CREST is part of Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. And what this Himalayan Chandra telescope does is it makes observation of extra solar planets, and it looks into for comets and asteroid, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड को भी स्टडी करते हैं, एंड एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को भी स्टडी करते हैं। दैट इज हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप जो आपको पता चाहिए इज एरीज टेलीस्कोप, बेस्ड इन नैनीताल। इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ हुम, इंडिया एंड बेल्जियम। इंडिया एंड बेल्जियम का इनिशिएटिव है, एंड जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन विच इज लीडिंग दिस इज आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लीडिंग दिस एरीज टेलीस्कोप का जो क्या बोलते हैं जो प्रोजेक्ट है, एंड इट इज वन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट टेलीस्कोप विद 3.6 मीटर्स का उसका जो ऑप्टिकल डायमीटर है ऑफ द मिरर। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है ऑफ द एशिया। तो इसके पहले द लार्जेस्ट टेलीस्कोप वाज, इसके पहले एरीज के पहले द लार्जेस्ट टेलीस्कोप ऑफ इंडिया वाज multi-axial solar telescope. Multi-axial solar telescope was one of the biggest telescope. It was based in Fateh Sagar Lake in Udaipur, and it was installed under the project undertaken by Ministry of Science and Technology and was funded by Department of Space. So it is a project undertaken by Ministry of Science and Technology but funded by Department of Space. तो ये आपको पता चाहिए। And project will be monitored by Ahmedabad based Physical Research Laboratory. Physical Research Laboratory would be what it would be monitoring this important project. So multi-axial solar telescope is an important telescope which was India's largest telescope before एरीज से पहले ये एक सबसे लार्जेस्ट था। अभी एरीज है। एरीज इज इनिशिएटिव ऑफ इंडिया एंड बेल्जियम, एंड आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज रनिंग दिस टेलीस्कोप। तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज मास्ट के बारे में पता चाहिए। मास्ट इज व्हाट इट डज इज इट प्रोवाइड्स it provides three-dimensional images of solar activity such as solar bursts and solar flares, and gives तो solar sun को study करते हैं, solar flares and जो solar activities है उसका 3D image तैयार करता है, and also is important for vital studies about other planetary movements even in the daytime। तो other planetary movements के study के लिए भी एक important telescope है। तो hopefully you have idea about not just Hubble and James Webb telescope, but इंडिया के इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, हिमालयन चंद्रा ऑब्जर्वेटरी, मास्ट के बारे में, एरीज टेलीस्कोप के बारे में, ये सब आपको पता चाहिए। Next, moving forward, if you have learned recently that Ukraine had requested Elon Musk with respect to starting what Starlink services. So basically, what is Starlink service? It is satellite-based internet service. So basically what we are doing is, through this satellite-based internet services, we are providing wireless internet connection using wireless internet connections through satellite. So what we are doing is, through satellite we are providing the internet service provider. What it is doing is, it is providing internet signals to your home through satellites. What we are doing is, through satellites we are providing internet under the satellite based internet service, satellite based internet। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें? स्टारलिंक एक जो SpaceX का इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, where they are trying to provide internet services through satellite, and so basically जो satellite based internet provide करते हैं, the satellite is based, can be placed in both जियोस्टेशनरी में एंड लो अर्थ ऑर्बिट में। सो जो भी स्टारलिंक के सैटेलाइट्स है, दे आर बेस्ड इन लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी में, लो अर्थ ऑर्बिट में दे आर बेस्ड। लो अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या? अप टू 2000 किलोमीटर्स के
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो भी ऑर्बिट है उसको हम क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो दीज सैटेलाइट्स कैन बी बेस्ड इन जियो स्टेशनरी में भी बैठ सकते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट में भी बैठ सकते हैं, तो ये आपको पता चाहिए। एंड व्हाट दिस डज इज these satellites do not use radio waves for communication. What they use is laser communication. They do not use radio waves but use laser communication. So why they use laser communication, तो ये आपको पता चाहिए। What is the advantage of laser communication over radio communication? So more data can be sent in a shorter time. Secondly, they have huge bandwidth. Laser communication have huge bandwidth, more data in less time, in a shorter time. They use less power and have a smaller size. The components which is transmitting this laser communication, they have what? They have less power and they use less power and as a smaller size. And last mile connectivity के लिए बहुत important है। last mile connectivity, जहां भी आप वो dish setup करोगे, you can provide internet there. You can provide internet there. So आपको पता चाहिए जो भी Starlink है, satellite based internet है, they are using which communication? Laser communication. And why we use laser communication over radio telescope is what? They can send more data in less time. They have a higher bandwidth. Secondly, less power, they utilize less power, smaller size है, last mile connectivity में बहुत important है, बहुत important है। But there are certain other issues with respect to such satellite based communication के कुछ major issues है। First is what? They increase space junk. They increase space junk क्योंकि बहुत सारे सैटेलाइट प्लेस करने पड़ेंगे। जैसे स्टारलिंक में they have placed 1700 satellites in low earth orbit, so there is a chance of rising space junk, and if the space junk increases, it is a threat to all the satellites, all the other satellites. And secondly, the latency is also more of this satellite based internet. And other issue is satellite based का जो मैक्सिमम स्पीड है दैट इज ऑल्सो कैप्ड। मैक्सिमम स्पीड इसका कितना 500 Mbps हो सकता है, नॉट मोर देन दैट। तो एक तो है लेटेंसी ज्यादा है एंड स्पेस जंक क्रिएट कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, नेक्स्ट इज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे स्पेस जंक पड़ेगा, व्हाट वुड हैपन इज, जैसे ड्यूरिंग मिशन शक्ति जो हमारा क्या हुआ था, वी टेस्टेड व्हाट एंटी सैटेलाइट मिशन, एंड ड्यूरिंग दैट क्या हुआ, स्पेस जंक बहुत बढ़ गया एंड एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट केस्लर सिंड्रोम। तो केस्लर सिंड्रोम इज अ फिनोमेना in which the amount of junk in orbit around the earth reaches a point where it just creates more and more space debris, causing big problem for satellite astronauts and mission planners. तो basically क्या होता है कि जब एक स्पेस डेब्रिस तैयार होता है, इट गोज एंड हिट अ सैटेलाइट, इसको हिट करने के बाद क्या है, और स्पेस डेब्रिस तैयार होता है, एंड फिर क्या होता है, द स्पेस डेब्रिस गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड अफेक्ट्स ऑल, इट अफेक्ट्स एवरीवन। तो दिस इज व्हाट केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं, इसको केस्लर सिंड्रोम बोलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देयर वाज अनदर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव व्हिच वाज इन यूज, वाज रिमूव डेब्रिस इनिशिएटिव। रिमूव डेब्रिस इनिशिएटिव व्हाट वाज, इट वाज अ सैटेलाइट व्हिच वाज sent to space, where the aim of this satellite was to demonstrate various space debris removal technologies. So various space debris technologies were studied through this satellite based project. Remove debris इस नाम का प्रोग्राम का नाम था, and it was undertaken by University of Surrey. University of Surrey ने ये important initiative, ये important satellite launch किया था, that is remove debris initiative, where various debris removal technologies were studied and demonstrated. तो ये भी आपको पता चाहिए। Whenever we are talking about orbits, as I already told you कि जो Starlink है, it is in low earth orbit. Low earth orbit में है ये जो हमारा that is majorly up to 2000 kilometers from the surface of earth, इसका ऑर्बिट है। there is another middle earth orbit होता है, that is from 2000 kilometers to 36,000 kilometers, and above that what we have is geostationary, that is around 36,000 kilometers. तो जो हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में कौन से इंपॉर्टेंट स्पेस इवेंट्स, स्पेस जो हमारे प्रोग्राम्स है, सच एज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज इन लो अर्थ ऑर्बिट। जो हमारा हबल टेलीस्कोप था, दैट वाज इन आल्सो इन लो अर्थ ऑर्बिट। जेम्स वेब इज एट L2 पॉइंट, ये बहुत दूर है फ्रॉम द अर्थ, इट इज व्हाट डू यू से, इट इज फार अवे फ्रॉम जियोस्टेशनरी, एंड इट इज
बियॉन्ड द, तो बेसिकली एज आई ऑलरेडी टू इन द लास्ट, ये सन है, ये अर्थ है, एंड जेम्स वेब यहाँ है, यहाँ है, तो इट इज नॉट बिटवीन सन एंड अर्थ बट इट इज ऑन द अपोजिट साइड, इट इज ऑन द अपोजिट साइड। सो ये आपको पता चाहिए। तो ये तीनों आपको पता चाहिए, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में पता चाहिए। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर कहाँ है, स्पेस स्टेशन कहाँ है, इट इज इन लो अर्थ ऑर्बिट। हमारा जो गगनयान प्रोग्राम है कहाँ होने वाला है, लो अर्थ ऑर्बिट में होने वाला है, लो अर्थ ऑर्बिट में होने वाला है। नेक्स्ट इज पोलर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी सबको पता है, it is at a 36,000 kilometer and its revolution time around the earth is similar to the revolution of earth, so that is why it seems to be fixed at one place, इसलिए इसको geostationary बोलते हैं। There is another orbit, that is polar orbit, which moves from north pole to south pole, and ये भी क्या है, low earth orbit है। polar orbit cannot be from it is the polar orbit, the satellite moves from north pole to south pole and it is in a low earth orbit। जो geostationary है it moves along the equator। तो ये आपको पता चाहिए, डिफरेंस पता चाहिए। सैटेलाइट which are based in low earth orbit कैसे, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, रीसैट सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जितने भी है दे आर बेस्ड वेयर, दे आर बेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट, तो आपको पता चाहिए। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि गगनयान इट वुड बी इन लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये आपको पता चाहिए। इंडिया वुड बी फोर्थ नेशन to have sent humans into space। तो गगनयान is what ह्यूमन स्पेस मिशन है, इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। 2022 में हमें लॉन्च करना था बट इट वाज पोस्टपोन टू 2023। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, लो अर्थ ऑर्बिट में होने वाला है, एंड वी आर गोइंग टू हैव कोलैबोरेशन विद टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज, दैट इज रशिया and France। Russia would be providing training to our astronauts and France would be providing they would train flight physicians। So जो भी डॉक्टर्स रहेंगे who would be involved in the training of the astronauts before going and after going, तो ये डॉक्टर्स का ट्रेनिंग would be done by France। Next is this Gaganyaan has three important parts। First is crew module हो गया, next is service module हो गया, and last and जिससे लॉन्च करने वाले हैं that is launch vehicle। तो इसमें launch vehicle कौन सा यूज करने वाले हैं हम, GSLV that is geostationary launch vehicle हम यूज करने वाले। दो सैटेलाइट इज the Gaganyaan is a low earth orbit, we are not sending into geostationary or at a height of 36,000, we are going to send it in low earth orbit around 400 to 500 kilometers तक ही हम इसको सेंड करने वाले हैं, but we are still using why geostationary launch vehicle because the weight is more। किसका weight more है, so launch इससे करेंगे। crew module is the place where all the 3 astronauts would be placed and they would stay there in the space for 5 to 7 days, and the crew module के नीचे क्या अटैच होगा, सर्विस मॉड्यूल अटैच होगा। सर्विस मॉड्यूल इज इट वुड गाइड, तो इसमें एक रॉकेट, इसमें एक इंजन होगा, प्रोपेलेंट इंजन होगा, दैट वुड गाइड दिस क्रू मॉड्यूल। तो and this would be there till the re-entry of this crew module back to earth। तो जब back to earth आएगा तो ये रिलीज होगा and it would be separated। तो यहाँ एक separate engine है, propulsion engine है, तो ये आपको पता चाहिए। Simultaneously this mission, Gaganyaan mission would be coordinated and executed by Human Space Flight Center, which is based in Bengaluru under ISRO, and it would coordinate this Human Space Flight program। तो ये आपको पता चाहिए। And so before undertaking this Gaganyaan mission, what we need to have is a Indian data relay satellite system। So what this Indian data relay satellite system does is it helps to communicate between satellite। So inter-satellite communication is necessary if you want to conduct such Gaganyaan like mission where you are sending astronauts। What we need to have is inter-satellite communication network चाहिए, that has been done through Indian data relay satellite system, and these satellites जो Indian data relay satellite system है, these would be placed in geostationary orbit। तो ये geostationary orbit में placed है because all the communication satellites are placed in geostationary orbit, remote sensing are placed in polar orbit। तो ये क्या है, inter satellite communication एस्टैब्लिश करेगा, एंड दैट इज व्हाई ये सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, एंड इट वुड हेल्प इन गगनयान ट्रैकिंग ऑल्सो एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो ये भी आपको पता चाहिए। एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि GSLV was in news, but another important type of launch vehicle जो recently news में था was small satellite launch vehicle, which India is planning to we are planning to launch this small satellite launch vehicle। जैसे हमारा PSLV है, GSLV है,
So PSLV can send satellite to polar orbit also and geostationary orbit also. GSLV also can send satellite to polar orbit also and geostationary orbit. तो GSLV का है, it can send satellite of more weight, तो ज्यादा weight के बड़े satellite can be sent to both polar orbit and also in geostationary orbit. इसका कैपेसिटी कम है, इस the weight it can carry is less, तो ये आपको पता चाहिए. एंड इससे भी छोटा कौन सा है, लो. तो बेसिकली व्हाट वी हैव इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज अप टू 500 kgs इन लो अर्थ ऑर्बिट, एंड सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में हम क्या करेंगे, अप टू 300 kgs का हम क्या करेंगे, सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं. जैसे माइक्रो सैटेलाइट अगर लॉन्च करना है तो वी डू नॉट हैव टू यूज PSLV, वी कैन यूज व्हाट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. होपफुली यू आर एबल टू गेट इंपॉर्टेंट what do you say point out of this, that is सबसे powerful GSLV, then PSLV, and last is small satellite launch vehicle which is used for only polar orbits. Polar orbit में polar orbit में low earth orbit में कौन सा, up to 500 kgs and sun synchronized orbit में 300 kgs तक. So what is sun synchronized orbit? Sun synchronized orbit is a type of polar orbit का ही एक type है. But what is important in this, what is the difference between sun synchronized and polar what do you say, polar orbit is so the traveling is in synchronous with the sun, the traveling is in synchronous with the sun, which means they are synchronized as so basically they are synchronized to always be in the same fixed position relative to the sun. तो जो भी so they are in sync with the rotation of the sun and at the same fixed position relative to the sun. This means the satellite always visits the same spot at the same local time. तो सेम स्पॉट एट सेम लोकल टाइम, दैट इज पासिंग ओवर सिटी ऑफ पेरिस एवरी डे एट नून एग्जैक्टली. तो हर एक जगह पर वो एक ही जगह पर मतलब एट द स्पेसिफिक टाइम इट वुड बी देयर इन सिंक्रोनस विद द सन, इन सिंक्रोनस विद द सन. तो ये आपको पता चाहिए, इट इज एट अ सेम फिक्स पोजीशन रिलेटिव टू द सन. तो सन के मूवमेंट के हिसाब से इट इज रिलेटिवली फिक्स. तो इसको क्या बोलते हैं हम, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं. तो ये आपको पता चाहिए, इट इज अ टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट, इट इज अ टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट वेयर द पोजीशन इज फिक्स इन रिलेशन टू द मूवमेंट ऑफ द सन. तो इसको सन सिंक्रोनाइज बोलते हैं. दैट इज इट्स पोजीशन इज फिक्स एट अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, इट वुड बी प्रेजेंट. तो 12 बजे अगर एक स्पेसिफिक जगह पर है तो एवरी डे 12 बजे वो उसी जगह पर रहेगा. दो इट इज मूविंग इन अ पोलर ऑर्बिट, एक स्पेसिफिक जगह पर एक स्पेसिफिक टाइम पर ही रहता है. तो ये इसका रोटेशन इज सिंक्रोनाइज विद द सन. तो ये आपको पता चाहिए. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पता चाहिए. तो इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज और 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे यूएसए का कौन सा है, नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इनिशिएटिव है. 1998 में फर्स्ट पार्ट इंस्टॉल किया गया था एंड फर्स्ट मैन वाज देयर इन 2000 में फर्स्ट ह्यूमन व्हाट डू यू से ह्यूमन रीच्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इसका हाइट वेरीज फ्रॉम 200 किलोमीटर्स टू 400 किलोमीटर्स, दैट इज इट इज बेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड 93 मिनट इट टेक्स फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. वन रेवोल्यूशन को कितना, 93 मिनट्स लगते हैं. पर्पस इसका क्या है, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशनल एंड एक्सप्लोरेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है. एंड रिसेंटली 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हमेशा थे, दैट इज ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट. So basically it what this Dragon spacecraft, it is a what it is a sorry it is not it is a module, it is a spacecraft to transport goods and astronauts to International Space Center, and it is a first private such initiative by SpaceX. SpaceX का क्या है, एक स्पेसक्राफ्ट है टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड एस्ट्रोनॉट टू इंटरनेशनल स्पेस सेंटर. एंड इसको लॉन्च करने के लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल है, दैट इज आल्सो बाय स्पेसएक्स, दैट इज फैल्कन 9, एक लॉन्चिंग रैकेट है. ठीक है, ठीक है. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज सिमिलर, देयर इज वन मोर, चाइना इज आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड इट्स ओन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, दैट इज टियांगोंग नाम से है, टियांगोंग, एंड इट इज ऑल्सो प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट. एंड द एम इज it is China बोलता है all the countries are invited to join this. And as I already told you, Hubble telescope of NASA and European Space Agency is also in low Earth orbit. Communication satellites are in geostationary orbit, and जितना भी remote sensing है that is in low
लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड वाज विद इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इसमें हमने 3 चीजें देखी। कौन सी देखी? हमने ग्रोथ टेलीस्कोप देखा, हमने हिमालयन चंद्रा ऑब्जर्वेटरी देख लिया, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी एंड हिमालयन गामा रेज ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, हमने ग्रोथ टेलीस्कोप के बारे में भी देख लिया, ग्रोथ टेलीस्कोप के बारे में भी देख लिया। जितने भी ट्रांजिएंट इवेंट्स है जैसे सुपरनोवा, अर्ली सुपरनोवा फॉर्मेशन, नियर अर्थ, ये हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गया, या फिर इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में भी ये एक इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड ये हमने, और एक आईआईटी बॉम्बे का इनिशिएटिव है, ये भी देख लिया था हमने। फिर हिमालयन चंद्रा ऑब्जर्वेटरी देख लिया था हमने, जो एक्सो प्लैनेट्स है उसका स्टडी करने के लिए हमने देखा था। देन हमने एरीज टेलीस्कोप भी देख लिया, एरीज टेलीस्कोप एंड मास्ट भी देख लिया, मल्टी एक्सियल सोलर टेलीस्कोप भी देख लिया, मल्टी एक्सियल सोलर टेलीस्कोप भी देख लिया। देन उसके बाद हमने क्या देख लिया? मास्ट के बाद हमने क्या देखा? सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस, एंड एज आई टोल्ड यू इट इज बेस्ड ऑन लेजर कम्युनिकेशन एंड व्हाई लेजर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई लेजर इज इंपॉर्टेंट। तो ये लेजर कम्युनिकेशन हैज मोर व्हाट यू से एडवांटेजेस ओवर रेडियो कम्युनिकेशन हमने देखा, लेकिन लेजर कम्युनिकेशन के कुछ इश्यूज भी हमने देखा कि लेटेंसी ज्यादा है, एंड जैसे ही स्टारलिंक के बहुत सारे सैटेलाइट होंगे तो स्पेस जंक होगा। हमने केस्लर सिंड्रोम भी देख लिया, हमने रिमूव डेब्रिस इनिशिएटिव भी देख लिया, हमने लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी देख लिया, पोलर अर्थ ऑर्बिट भी देख लिया, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट भी देख लिया, वेयर द ऑर्बिट इज इन सिंक्रोनस विद द रोटेशन ऑफ द सन। तो ये भी हमने देख लिया। हमने गगनयान देख लिया, एंड 3 पार्ट है गगनयान के जो आपको पता चाहिए। क्रू मॉड्यूल जिसमें लोग बैठने वाले हैं, एस्ट्रोनॉट्स बैठने वाले हैं। सर्विस मॉड्यूल इज विच वुड गाइड दिस service module in the space, and it would be removed or it would be separated just before the entry, and launch vehicle हमने देख लिया। हमने इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम भी देख लिया। इट्स अ कॉन्सलेशन ऑफ सैटेलाइट्स। इनिशियली 2 सैटेलाइट्स होने वाला है जियो स्टेशन में, इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए एंड गगनयान के ट्रैकिंग के लिए एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाले हैं। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी हमने देख लिया। स्मॉल सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में अप टू 500 kgs हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो व्हाई डू वी नीड टू हैव पीएसएलवी? क्योंकि पीएसएलवी को असेंबल करने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत टाइम लगता है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज फास्टर, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लेस कॉस्टली है। तो मोर सैटेलाइट कैन बी लॉन्च इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में अराउंड 300 kgs एंड माइक्रो सैटेलाइट बेसिकली हम लॉन्च करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के बारे में देख लिया, एंड ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, ड्रैगन कैप्सूल भी बोलते हैं इसको, एंड फैल्कन 9 लॉन्च रॉकेट भी देख लिया। चाइना का हमने देख लिया, टियांगोंग हेवनली प्लेस, इट्स ऑल्सो इन बेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। टू स्टार्ट विथ, इफ यू हैव नोटिस्ड वन इंपॉर्टेंट इवेंट, a transformational event which was undertaken in last few months was with respect to transplantation. A pig's heart was transplanted into human heart. So this was an important event because what is happening is the number of available organs for donation is very less, and so this was an important event in the field of in the medical history. So that's why this important event is important. इसको हम क्या बोलते हैं? Xenotransplantation बोलते हैं. So basically what is xenotransplantation is transplantation of organs between 2 different species. So basically pig is a different species, human is a different species. So what we are doing is we are transplanting one organ from pig, we are transplanting from pig to human. So that is xenotransplantation. And which type of heart we use was genetically modified pig का heart हमने use किया है, and we'll see in the lecture कि why is genetically modified pig heart was used. Moving forward आपको ये पता चाहिए कि why pig is a preferred animal with respect to जब भी हम xenotransplantation हम try करेंगे, why pig is a preferred animal. So whenever you try to transplant an organ, any organ, even if it is from same species, what our body does is it recognize it as a foreign body, and foreign body है तो उसको antigen की तरह treat करती है, and body tries to attack that, and there is a rejection of the transplantation, and this rejection is even high when we are taking any organ from different species. But now through genetically modified pigs, what we have done is we have tried to ensure that the organ won't be rejected, there won't
won't be autoimmune reaction to this pig's heart. That is why the genetically modified pig's heart is used. And in general also, why pig is used for xenotransplantation, or its organs are used for xenotransplantation, you should know, because pig mature quickly, and secondly their size is, the organ size is comparable to the human organ size both during infancy and during adulthood. तो जो pig का heart का size है वो is similar to human heart का size. तो that is one reason why we are using pig heart, because size भी बैठना चाहिए. तो that is one reason. Secondly, there are other types of grafts transplantation आपको पता चाहिए, जैसे autograft हो गया. Autograft is where we transfer a skin patch from my skin patch from hand to thighs. That is autograft, where within the transplantation is within the same human being, within the same individual. So that is autograft. So if you see during burns, what we do is we transplant the graft tissue, skin graft, from one place, healthy place, to the burned place. तो इसको क्या बोलते हैं? Autograft. And there is allograft. Allograft is between, so kidney transplantation from one individual to other individual, that is allograft. तो xenotransplantation, allograft transplantation and autograft transplantation, ये तीनों का important difference you should know whenever you are talking about transplantation. Next is, as I already told you, why we are using genetically modified pig is to avoid antigen antibody reaction, to ensure that there is no rejection or less chance of rejection. So basically anything outside, from anything which is inserted into our body from outside, is considered as antigen. So antigen is any foreign substance which induces immune response. So whenever there is a bacteria or any virus which is entering our body which causes immune response, उन सबको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं. And antibody is what the protein produced by the body to attack those antigen. तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी तो बोलते हैं. तो एंटीजन एंटीबॉडी का डिफरेंस you should know. तो that is what I want to tell you. Moving forward, जब भी हम organ transplantation की बात करते हैं, तो organ transplantation day is celebrated on 27 November in India, and according to National Health Portal, 5 lakh people die every year because of lack of availability of organs. ये आपको पता चाहिए. And only 0.65% per million people are donating organs in India. Tamil Nadu is the best state with respect to organ transplantation donation. And organ donation in India is regulated by an important act, that is Transplantation of Human Organs and Tissue Act 1994. तो ये एक important act है, Transplantation of Human Organs and Tissue 1994. इसको amendment 2011 में भी हुआ था. And why this act is important? Because what it does is provide various regulations for removal of human organ, and with respect to regulation, with respect to its storage also. So पूरा regulatory framework establish करता है. This act also defines the criteria to be decided as brain dead. तो जब भी brain death होती है किसी human की, उसके बाद ही we can remove the organ. So what is brain death? तो ये भी define इस act के अंदर हमने किया है. Side by side, what it does is it provides regulatory and advisory bodies for monitoring transplantation activities across India, and it also provide for maintenance of registry of donors. तो ये सारे चीजें कहाँ मेंशन की है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 अमेंडेड इन 2011. तो ये आपको पता चाहिए. जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, वी हैव वन इंपॉर्टेंट नोडल ऑर्गेनाइजेशन which ensures that information is disseminated with respect to human organ transplantation. There is standard operating procedures ensured, there is a proper framework established with respect to organ transplantation, and that organization is National Organ and Tissue Transplantation Organization. As we move forward, we are not just going to look into what is organs and tissue, हम इसका difference भी देखेंगे, but ये organization पता चाहिए. It is a national level organization, National Organ and Tissue Transplantation Organization. तो ये आपको पता चाहिए. It is set up under Director General of Health Services. Director General of Health Services के अंडर ये सेटअप हुआ है, where at सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, and it has two parts.
कौन सा दो पार्ट्स है? फर्स्ट इज नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क एंड सेकंड इज नेशनल बायोमटेरियल सेंटर। तो जो भी नेशनल बायोमटेरियल सेंटर है इट लुक्स इनटू टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के बारे में देखता है, एंड दिस नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क लुक्स इनटू organ donation। तो ये आपको पता चाहिए। And what this organization does is it is an apex center for all India activities of coordination, networking and distribution of organs and tissue. Secondly, it lays down policy guidelines and protocols with respect to organ transplantation. It focuses on creating awareness with respect to organ transplantation. Next is all registry data of state and regional organization is combined and portrayed from this organization। तो जितने भी available donors हैं and जिसको organ donation लगता है, so they send all their data here, and what this organization, the National Organ and Tissue Transplantation Organization, what does it do is it combines all the data of regional and state level transplantation organization, and it focuses also on information dissemination with respect to organ transplantation। तो एक important चीज ये करता है, तो ये आपको पता चाहिए। इट्स एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन सफदरजंग हॉस्पिटल, कोऑर्डिनेट्स नेटवर्क्स, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ये करता है। ग्रीन कॉरिडोर आपको पता चाहिए, ऑलरेडी डन इन प्रीवियस लेक्चर्स, इज व्हाट इट इज अ सेफ पैसेज which has been established within the city so as to ensure faster transportation of organs because they have a shelf life। तो जितना जल्दी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो हम क्या करेंगे, उस ऑर्गन को सेव कर सकते हैं। सो व्हाट थ्रू दिस ग्रीन कॉरिडोर इज डन इज द पाथ, द रोडवेज आर क्लियर्ड फॉर मूवमेंट ऑफ सच एम्बुलेंस एट अ वेरी फास्ट रेट। सो दिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं। देयर इज अनदर प्रोग्राम व्हिच यू शुड नो, दैट इज नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम। व्हाट इट डज इज गिव फाइनेंशियल ग्रांट्स टू रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन है एट द रीजनल लेवल, स्टेट लेवल, उनको फाइनेंशियल ग्रांट देती है। सेकेंडली what is does this financial grant is used for developing new and upgrading existing retrieval and transplantation network है ना, तो उसके existing network है and new network establish करने के लिए जो भी facilities है for retrieval and transplantation उसको support करने के लिए, उनको revive करने के लिए, उनको new and upgrade करने के लिए ये funds का use होता है। Secondly, this program also focuses on training, जो man power है उसका हम train करेंगे under this program, National Organ Transplantation Program के अंदर, and it protects vulnerable from organ trafficking, it protects vulnerable and poor people from organ trafficking के इससे ये ऑर्गेनाइजेशन बचाता है। तो ये प्रोग्राम क्या करता है, जो भी पुअर से वल्नरेबल है उसको बचाता है फ्रॉम ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तो ये आपको पता चाहिए। सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर लुकिंग आफ्टर ऑर्गन टिश्यू, यहाँ बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। सो व्हाट वी हैव इज अ body is our human being where various organs work together in a combination way to perform a function, and each organ has a specific function, and so this is body. What we have is various organs. So liver is an organ, heart is an organ, our spleen is an organ, जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स है, दैट इज एन ऑर्गन विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। हमारा आईज एक ऑर्गन है, एंड विद इन दिस ऑर्गन व्हाट वी हैव इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। सो व्हाट वी हैव इज डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, एंड this species within this what we have is different type of tissue. So different type of tissue form an organ together. तो आपको पता चाहिए tissue is a group of specialized cells. टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो ये आपको पता चाहिए। तो टिश्यू क्या होता है, जैसे टू गिव यू एन आइडिया कि जैसे हार्ट है, हार्ट में देयर इज मसल एक टिश्यू है, देन देयर इज वाल्व्स, वो एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्या होता है कि ऑर्गन में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं। जो सरफेस कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं हम, इपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो ऑर्गन के अंदर वी हैव स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। एंड टिश्यू के अंदर व्हाट वी हैव इज सेल्स। तो ये डिफरेंट ये क्या बोलते हैं ये कैटेगराइजेशन आपको पता चाहिए। दैट इज ऑर्गन इट्स अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एंड उसके अंदर भी टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गन विच परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो ऑर्गन के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं। तो ये आपको पता चाहिए। स्किन इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट ऑर्गन, इसको ऑर्गन भी कंसिडर करते हैं बहुत सारे लोग, लार्जेस्ट ऑर्गन। कॉर्निया इज व्हाट, आई एक ऑर्गन है, आई
उसका जो एक लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एक टिश्यू है, कौन सा टिश्यू है, कॉर्निया है। तो आई जो आई डोनेशन देते हैं, आई कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो दैट इज टाइप ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन है। बोन ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, बोन इज ऑल्सो अ टिश्यू, बोन इज ऑल्सो अ टिश्यू। तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए ऑर्गन एंड टिश्यू में। कॉर्निया इज अ टिश्यू, बोन इज अ टिश्यू, बोन इज अ टिश्यू। Whenever we are talking about cells, usually you should know difference between different type of cells. तो दो type of cells usually UPSC is focused on is plant cell and animal cell में क्या difference है, ये basic से जानना। हम we'll go to the basics now, we'll go to the basics. So basically plant जितने भी cells होते हैं, these are जितने भी cells है वो क्या होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होते हैं। जो एनिमल सेल होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। प्लांट सेल में व्हाट वी हैव इज सेल वॉल। तो बेसिकली इफ यू सी अ सेल, तो एक तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लेकिन जो प्लांट सेल है उसके बाहर भी क्या होता है, एक सेल वॉल होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पॉलीसैकेराइड, सेल्यूलोज, पेक्टिन, इनसे बना होता है। सो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। प्लांट सेल में वी हैव सेल वॉल एंड दिस सेल वॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट कहां, किसमें, फंगाई में भी होता है, फंगाई में भी सेल वॉल होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी सेल वॉल होता है। तो ये इतना ध्यान में रखिए अभी। तो सेल वॉल किसमें होता है, प्लांट सेल में होता है, फंगाई में होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। एनिमल सेल में वी डू नॉट हैव सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, इट्स द आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको ही जो सेल मेम्ब्रेन में बोल रहा था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में है। वैक्यूल्स जो होते हैं, इट्स दीज आर लार्ज स्पेसेस विद इन द सेल, दीज वैक्यूल्स आर लार्जर इन प्लांट सेल, स्मॉलर इन एनिमल सेल्स। द प्लांट सेल डू नॉट हैव सीलिया। सीलिया बेसिकली क्या होता है, दीज आर एक्सटेंशन फॉर मूवमेंट। ये क्या होता है, सीलियाज होते हैं अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन। तो ऐसे सीलियाज आर एब्सेंट कहा, किस में होता है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये सीलियाज बहुत बार प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स आर, इट्स अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल विच इज important for photosynthesis, is present in plants, absent in animal cell. And centrosome is an important organelle, मैं उसके बारे में बताऊंगा what is centrosome are absent in plant cell and are present in animal cells. तो ये basic difference between animal cell and plant cell आपको पता चाहिए। Major different, प्लांट सेल में वी हैव सेल वॉल एक है, सीलिया एब्सेंट है। प्लास्टिड इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, वो ये मिलता है। सेंट्रिजोम एब्सेंट है, सीलिया एब्सेंट है। सीलिया इज फॉर मूवमेंट, तो एनिमल मूव करते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं, सीलिया इज यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड these are present, cilias are present in animal cells. तो ये आपको पता चाहिए। सेंट्रिजोम are what they are useful for, basically इतना याद कीजिए कि they help in cell division. तो cell division के वक्त क्या होता है, what we require is microtubules लगते हैं and these organization of this microtubules is done by centriosomes. So basically during cell division what we require is microtubules. These tubules help in cell division and the organization of this microtubules is done by centriosome. तो ये आपको पता चाहिए। Moving forward, there are different cell organelles, जैसे as I already told you कि बॉडी होता है, बॉडी के नीचे क्या होता है, बॉडी के अंदर वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं एंड सेल्स के अंदर व्हाट वी हैव इज, जैसे ह्यूमन बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स है वैसे सेल्स में भी वेरियस ऑर्गन्स है। तो ये आपको पता चाहिए। फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स व्हिच यू शुड नो इज गोल्जी एपैरेटस होता है, साइटोप्लाज्म इज जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है दैट इज अ टाइप ऑफ ब्लड ऑफ द क्या बोलते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। राइबोसोम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक ईआर रेटिकुलम बोलते हैं, सेंट्रीजोम्स बोलते हैं एज आई टोल्ड यू, लाइसोसोम्स होते हैं एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एंड फंक्शन ऑफ each important of all the organelles is important because usually UPSC asks and it is ensured कि सबको पता चाहिए about this important, हर एक चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या है, एवरीवन नोज, न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे बट यू शुड नो न्यूक्लियस में व्हाट वी हैव इज जेनेटिक मटेरियल एंड डिफरेंट ऑर्गेनल ऑफ ईच सेल। मोस्ट ऑफ द सेल्स में कॉमन ऑर्गेनल्स ये कॉमन होते हैं। फर्स्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में कंसिस्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कैन बी इन टू फॉर्म, डीएनए भी हो सकता है एंड आरएनए भी हो सकता है। मेजरली इट इज डीएनए बट आरएनए कैन बी अ जेनेटिक मटेरियल। जैसे कोरोना वायरस में व्हाट वाज द जेनेटिक मटेरियल, इट वाज आरएनए।
हमारा HIV ह्यूमन क्या बोलते हैं HIV वायरस इज उसमें भी डीएनए मटेरियल, उसमें जेनेटिक मटेरियल इज आरएनए, ह्यूमंस में क्या है डीएनए होता है। तो ये आपको पता चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया एज आई टोल्ड यू दीज आर पावर हाउस ऑफ द सेल विच जनरेट एटीपी। तो एटीपी आर व्हाट दीज आर फ्यूल, जैसे पेट्रोल होता है एनर्जी के लिए, जो भी जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल होता है वैसे ही हमारे सेल के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज एनर्जी, एंड दिस इज एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दीज आर जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपको पता चाहिए। राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये राइबोसोम दीज आर हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम क्या करता है, जैसे हमारी डाइजेस्टिव बॉडी डाइजेशन हमारा जो गट करता है, वेरियस एंजाइम रिलीज करते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन होता है, वैसे ही सेल में व्हाट वी हैव इज लाइसोसोम। दीज आर डाइजेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन रिपेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड अगर कोई फॉरेन बॉडी आया है, अगर बैक्टीरिया कोई आया है, तो व्हाट सेल डज इज इट टेक्स इनसाइड एंड उसको लाइसोसोम के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो व्हाट लाइसोसोम हैज इज it has very strong enzymes which can degrade anything. So lysosome is used for digestion also and against foreign substance such as bacteria and virus. And what we have is last is Golgi apparatus. These are ये जो है ना, ये इसको गोल्जी apparatus बोलते हैं। एंड दीज आर पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स के लिए यूजफुल है। जो भी प्रोटीन्स तैयार होता है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न में पैकेजिंग होना चाहिए। तो ये पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स इनटू वेसिकल्स प्रायर टू सिक्रीशंस, तो इसका पैकेजिंग कहाँ होता है, गोल्जी एपैरेटस में होता है। सो प्रोटीन्स और एंजाइम्स आर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स होता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में रिलीज होते हैं। सो ये पैकेजिंग किसका रोल है, गोल्जी एपैरेटस का रोल है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। जस्ट नोइंग, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं पता, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। एज आई टोल्ड यू, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। तो बेसिकली अब हम जानेंगे कि क्या रोल है डीएनए का, आरएनए का, तो ये आपको पता चाहिए। सो बेसिकली डीएनए इज व्हाट, इट स्टोर्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एंड इफ यू वांट टू जनरेट प्रोटीन, तो प्रोटीन का किस टाइप का प्रोटीन जनरेट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द डीएनए। तो बेसिकली डीएनए व्हाट इट डज इज इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्रोटीन, वेरियस जितने भी हमारे एंजाइम्स है, दीज आर जनरेटेड फ्रॉम डीएनए। तो जो सोर्स कोड है, जो कैसा बनना चाहिए प्रोटीन, दैट सोर्स इज इन डीएनए। तो ये आपको पता चाहिए। तो डीएनए क्या करता है, डीएनए से क्या बनते हैं, एमआरएनए बनते हैं। ये अभी सिर्फ जान लो, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग आगे जाके। व्हाट डीएनए इज इन द न्यूक्लियस, वहां से क्या होता है, इफ बॉडी वांट्स प्रोटीन, इफ बॉडी वांट्स सर्टेन प्रोटीन, तो कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो क्या होता है, सेल किसको कमांड करता है, डीएनए को कमांड करता है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको। डीएनए का क्या होता है, एक अपोजिट कॉपी जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फ्रॉम डीएनए टू आरएनए क्या है, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। एंड फ्रॉम एमआरएनए तो मैसेंजर आरएनए होता है। एंड मैसेंजर आरएनए कहां आता है, इट कम्स इनटू द राइबोसोम। एज आई टोल्ड यू, राइबोसोम इज अ प्लेस वेयर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम के उधर क्या होता है, एमआरएनए आता है। एंड दिस एमआरएनए हैज द इंफॉर्मेशन कि किस क्या बोलते हैं, किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स वुड बी लाइन टुगेदर टू फॉर्म एन protein. So basically protein is made up of amino acids, various amino acids. So what this mRNA does is it is a code कि किस sequence में amino acid attach होंगे. So we have various type of amino acids. So mRNA comes into ribosome, then there with the help of rRNA, ribosomal RNA and transport RNA along with amino acids, what is formed is proteins are formed. तो ये आपको पता चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए राइबोसोम में जाता है, राइबोसोम पर वी ऑन दिस एमआरएनए वी हैव अटैचमेंट ऑफ वेरियस अमीनो एसिड व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए एंड टीआरएनए। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन सा, आर सबसे इंपॉर्टेंट, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसपोर्ट आरएनए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएनए आरएनए आपको पता चाहिए। लेकिन आरएनए कैन आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जो बाद में हम देखेंगे, लेकिन आपको पता चाहिए। एमआरएनए क्या होता है, एक कोड होता है। इट इज अ
code which is sent from DNA to ribosome कि इस सीक्वेंस में what we need to develop is the protein should be in this sequence, amino acid should be added in this sequence. We have various type of amino acids. तो सीक्वेंस किस सीक्वेंस में वो अमीनो एसिड्स ऐड हो रहे हैं उस टाइप का प्रोटीन बनता है, तो ये आपको पता चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड, डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंस पता चाहिए. देयर इज अ डिफरेंस. एक तो फंक्शनल डिफरेंस है, देयर आर सर्टेन केमिकल डिफरेंस आल्सो, बट डीएनए इज व्हाट it is genetic material of the cell. They are present in nucleus, and this DNA is some amount of DNA is also present in mitochondria. तो ये some amount of DNA is also present in mitochondria. Some amount of DNA is also covered in mitochondria. तो ये आपको पता चाहिए. ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आगे हम जब देखेंगे करंट अफेयर्स में, ये इंपॉर्टेंट है. डीएनए क्वेश्चन कैन बी डीएनए इज ऑलरेडी ओनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. नो. डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल. नो. आरएनए कैन बी a genetic material and DNA can be present in mitochondria. Mitochondria हमने देखा, these are known as powerhouse of the cell. तो ये आपको पता चाहिए. And genetic material DNA में कैसे स्टोर होता है हम आगे देखेंगे, लेकिन you should know that जो बेस पेयर्स होता है उसके सीक्वेंस पर जिस फॉर्मेट में, जिस सीक्वेंस में बेस पेयर अरेंज होते हैं उस फॉर्मेट में जेनेटिक क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. तो दीज बेस पेयर्स आर इन द फॉर्म ऑफ ATCG, दैट इज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन. 99% क्या होता है, सब 99% ऑफ ह्यूमंस का क्या होता है, डीएनए सेम होता है, 1% डिफरेंट होता है. सो बेसिकली डीएनए इज व्हाट, इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. तो आपको पता चाहिए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब क्या. व्हाट वी हैव इज जो डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. तो डीएनए किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से बना है. न्यूक्लियोटाइड, so there are the two nucleotides attached to each other. तो nucleotide is formed by what, sugar phosphate backbone. ये किससे बना है, sugar phosphate. And this is base pair. This is base pair. तो so दो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को ऐड होते हैं and the whole structure is in the form of helical. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डीएनए बोलते हैं. एंड व्हाई इट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिकॉज जो शुगर होता है दैट इज डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर है. आरएनए इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड. तो वो द शुगर इज नॉट डीऑक्सी बट इट इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड. यहां क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है. द शुगर का क्या नेचर है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है. दैट इज व्हाई उसका नेमिंग उस तरीके से है. एंड वन मोर डिफरेंस हम आगे देखेंगे. तो ये क्या होता है, ये बेस पेयर का सीक्वेंस, जैसे यहाँ जी है, ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, यहाँ थाइमिन है. तो ये जो बेस पेयर का सीक्वेंसिंग है, बेस्ड ऑन दैट क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. तो ये आपको पता चाहिए. सो बेसिकली व्हाट वी हैव इज डीएनए इज व्हाट, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर between formed by phosphates, sugar and base pair. तो ये इससे क्या है, डीएनए फॉर्म होता है. जब a part of DNA which is responsible for formation of any protein, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अगर इस पार्ट ऑफ डीएनए से कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बन रहा है या स्पेसिफिक फंक्शन एस्टैब्लिश होता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, जीन बोलते हैं. द पार्ट ऑफ डीएनए विच इज फंक्शनल इज नोन एज जीन. तो ये डिफरेंस आपको जानने की जरूरत है. तो पार्ट ऑफ डीएनए विच इज फंक्शनल और हैज जनरेट्स एनी प्रोटीन, that is known as gene. If see we have insulin, that is also a protein, that is a hormone, that is also generated in the form of, हमारे डीएनए से क्या होता है कि मैसेज जाता है एमआरएनए से, एंड वहां से वी जनरेट व्हाट, इंसुलिन, अ हार्मोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. लेकिन इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द जो इंसुलिन बनाने की जीन है, वो पार्ट ऑफ डीएनए इज अफेक्टेड, तो what happens is proper type of protein or insulin would not be happen, and what we would have is diabetes. So genetic engineering या gene editing में what we do is we remove that specific what is a malformed DNA, part of DNA, and replace it with appropriate DNA, and what we do is we treat that disease. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम ये क्या करते हैं, जहां भी जीन जो भी जीन खराब है हम उसको रिप्लेस करते हैं. तो इसलिए जेनेटिक जीन एडिटिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट है. तो जो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जीन पता चाहिए. जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटीन. तो ये आपको पता चाहिए. तो ये बेस पेयर्स आपको पता चाहिए कि कैसे ये होता है. ए पेयर्स विथ adenine pairs with thymine
एंड ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन, ये ऐसे ही होता है। एडेनिन डज नॉट पेयर विद साइटोसिन, तो ये भी आपको पता चाहिए। ए पेयर्स विद ATCG, ऐसे याद रखो, हमेशा G के साथ क्या होगा, C ही होगा, जैसे एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन ही होगा। थाइमिन ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, 4 थाइमिन एक साथ हो सकते हैं या फिर 3 साइटोसिन एक साथ होते हैं, तो ये क्या होता है, ये वेरिएशन होता है, तो ये आपको पता चाहिए। सो डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए क्या होता है? फर्स्ट इज जो बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में, दैट इज एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड ग्वानिन। आरएनए में व्हाट वी डू नॉट हैव इज थाइमिन, उसके जगह यूरासिल होता है। तो वन बेस पेयर इज डिफरेंट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सेकेंडली, डीएनए हैज ओनली जेनेटिक फंक्शन, it does not have any specific with respect to direct relation in photosynthesis नहीं है। RNA can have a genetic function and it is 100% involved in protein synthesis। Majorly DNA is double stranded, RNA सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड होगा। जैसे हमने ये देखा, RNA क्या होगा, इतना आधा ही होगा, एक साइड ही होगा। डीएनए कैसे डबल हेलिक्स है ना, तो आरएनए इज ऑलवेज सिंगल हेलिक्स, आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज डीएनए इज लॉन्गर, दिस इज शॉर्टर। डीएनए इज वल्नरेबल टू डैमेज, दिस इज लेस वल्नरेबल टू डैमेज। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर है, इसमें राइबोस शुगर है, तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज जीन के बारे में पता चाहिए। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ पोर्शन ऑफ द डीएनए दैट इज टास्क्ड विद स्पेसिफिक फंक्शन, इसको जीन बोलेंगे। जीन जैसे इंसुलिन प्रोटीन तैयार करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन होगा, उस जीन का क्या होगा, उस जीन से व्हाट वी वुड हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एमआरएनए। वह एमआरएनए कहां आएगा, राइबोसोम में आएगा, एंड राइबोसोम में व्हाट वी विल हैव इज जनरेशन ऑफ प्रोटीन दैट वुड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? सो व्हाट हैपेंस इज, जब भी हम आरएनए की जब भी हम डीएनए की बात करते हैं, तो अभी यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म ड्यूरिंग कोरोना वायरस। सो अंटिल वी अंडरस्टैंड कि कौन सा जो कोरोना वायरस है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट फंक्शन। सो इफ आउटर कवर है वायरस का, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक जीन, वी कैनॉट अंडरस्टैंड कि जो म्यूटेशन हो रहे हैं वायरस में, वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे अंटिल वी एनालाइज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इफ यू वांट टू बिल्ड अ वैक्सीन, what we would require is genetic understanding of the genetic material, कि कैसे उसका genetic material है, कौन सा part कैसे बन रहा है। If you want to target any part, which type of protein is we would require, which type of antibody we would require. So to understand the history and to understand the whole virus, what we need to do is we need to sequence it. We need to understand कि कहाँ कौन से base pairs है, कौन से genes है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, genome sequencing, that is determining the location of genes on chromosome and determining the sequence of nucleotide. तो ये इसका सीक्वेंस अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको रीड करने के लिए सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग इज बेसिकली रीडिंग द डीएनए so that we understand कि कौन से टाइप ऑफ जीन्स यहाँ प्रेजेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू जीनोम सीक्वेंसिंग जो न्यूज में है। फर्स्ट इज सैंगर टेक्निक भी है, स्टार ट्रेक ये लेटेस्ट टेक्निक है, नैनोपोर मिनियन ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेटेस्ट है दैट इज न्यू जनरेशन सीक्वेंसिंग, जिसको NSG बोलते हैं, दैट इज बीन यूज्ड ड्यूरिंग कोरोना वायरस टू अंडरस्टैंड इट्स जीनोम सीक्वेंसिंग, टू अंडरस्टैंड इट्स म्यूटेशन, कि कौन सा टाइप ऑफ कोरोना वायरस इज कॉजिंग which type of infection. So जैसे Omicron was less harmful, Delta was harmful, तो there is difference in the genome, there is difference in the DNA, and जैसे DNA difference रहेगा, उनका proteins भी अलग रहेगा, उनका structure अलग रहेगा। तो to understand the structure, what we need to know is genome sequencing। तो वो कैसे करते हैं, ये techniques हैं, and सबसे latest technique है new generation sequencing, इसको बोलते हैं NGS बोलते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इट इज फास्टर, एट अ बिगर स्केल कर सकते हैं, वो डीएनए एंड आरएनए का क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, एंड लोकेशन ऑफ जीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स कौन से कहां प्रेजेंट है वो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो व्हाई डू वी नीड जीनोम सीक्वेंसिंग इज फॉर अंडरस्टैंडिंग वायरस,
so how the virus is evolving, we want to trace mutation, तो म्यूटेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जीनोम सीक्वेंसिंग से ही पता पड़ेगा. नेक्स्ट इज वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, इफ यू वांट टू अटैक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, वी नीड टू नो हाउ दैट प्रोटीन इज मेड, तो वो कहां से आएगा. वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी व्हाट वी रिक्वायर इज, आई विल टेल यू कि कैसे वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जीनोम सीक्वेंसेस रिक्वायर, जीन एडिटिंग के लिए भी, जीन थेरेपी के लिए भी रिक्वायर genome sequencing. So gene therapy, if you want to edit specific gene, before that we need to understand कि कहाँ वो जीन है, कौन से क्रोमोसोम पर है, तो that is why we require genome sequencing. तो ये आपको पता चाहिए. Recently why I am telling everything is, you will come to understand कि क्यों चीजें इंपॉर्टेंट है, and क्यों superficial पढ़ना is not a solution to your जो सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है. बच्चे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड स्मॉलर थिंग्स. वो जब तक आपको छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें नहीं समझेगी ना, सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक इंटीग्रेटेड वे में नहीं पढ़ोगे. सो जैसे न्यूज क्या था, इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम हमने डेवलप किया है. तो दिस कंसोर्टियम, दैट इज, इस कंसोर्टियम का नाम क्या है, इंडियन सार्स कोरोना वायरस 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम. इट्स जॉइंट इनिशिएटिव, किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इनका इनिशियली दे हैव इनिशिएटेड दिस, बट मेजरली अभी जो रोल परफॉर्म किया जा रहा है, इट इज डन बाय CSIR, दैट इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड ICMR. एंड this consortium is a consortium of 38 laboratories which is working towards genome sequencing of coronavirus in India. तो इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ वेरिएंट है, ये कैसे समझेगा, is through this consortium. 38 laboratories are working together to understand or to do genome sequencing, and this initiated किसने किया था, Ministry of Health and Family Welfare and Department of Biotechnology, and then taken forward by CSIR and ICMR. तो ये आपको पता चाहिए. 38 laboratories का consortium है which is focusing on genome sequencing, and why genome sequencing is important, we have already looked into. तो हमने स्टार्ट कहां से किया, we started with xenotransplantation से स्टार्ट किया. xenotransplantation आपको समझ आया, different species. Then we saw why pigs are used, and we saw difference between antigen and antibody. आपको अगर कोई भी बोलेगा कि what is antibody and antigen, you should be able to tell the difference. ठीक है. पिग्स क्यों यूज करते हैं, हमने एलोग्राफ्ट एंड ऑटोग्राफ्ट का डिफरेंस देखा. ठीक है. हमने उसके बाद हमने एक्ट देखा. कौन सा एक्ट देखा, एक इंपॉर्टेंट एक्ट देखा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू. Transplantation of Human Organs Act 1994, amended in 2011, and what it does is it provides a regulatory framework so as to ensure removal and transportation of जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के लिए जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो एस्टैब्लिश करता है. ब्रेन डेथ का डेफिनेशन ये डिसाइड करता है कि कौन से क्राइटेरियाज होंगे जिस पर से वी वुड बी डिसाइड कि ये ह्यूमन ब्रेन डेड है या नहीं है. इट प्रोवाइड्स रेगुलेटरी एंड एडवाइजरी बॉडीज का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ this act, and for monitoring transplantation activities it provides for maintenance of registry of donors. Secondly, we saw National Organ and Tissue Transplantation Organization. इसके दो पार्ट्स है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर है, सफदरजंग हॉस्पिटल में है. इसके दो पार्ट्स है, दैट इज नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क एंड नेशनल बायोमेटेरियल सेंटर्स. तो ये ऑर्गन के लिए देखता है, ये टिश्यू के लिए देखता है. ये एक्टिविटीज कौन से, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, पॉलिसी गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करता है, प्रोटोकॉल्स एस्टैब्लिश करता है, अवेयरनेस डेवलप करता है. ऑल द रजिस्ट्रीज आर मर्ज टुगेदर, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्प करता है. एंड तो मेजर एक सेंट्रल अथॉरिटी की तरह एक्ट करता है, वेयर द इंफॉर्मेशन इज डिसेमिनेटेड, अवेयरनेस जनरेशन हो रहा है, नेटवर्किंग हो रही है, इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड एंड डिसेमिनेटेड. रजिस्ट्री जो भी सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ द रीजनल सेंटर्स एंड स्टेट रजिस्ट्री है विद रिस्पेक्ट टू डोनर्स एंड रेसिपिएंट्स, उसको मर्ज करता है. सेकेंडली, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम है. इट गिव्स फाइनेंशियल ग्रांट्स टू regional organ tissue and transplantation organization to upgrade their facilities, to develop new facilities, to train manpower,
required manpower. Secondly, to protect vulnerable people from organ trafficking. हमने देखा, हमने organ, tissue and cell का difference देखा. Skin, as I told you, is an organ, biggest organ, but part of skin कैन बी टिश्यू. तो हमने डिफरेंस देखा, कॉर्निया इज व्हाट, इट्स अ टिश्यू, तो आपको पता चाहिए. प्लांट एंड एनिमल सेल का डिफरेंस देखा, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड होता है, एनिमल सेल में सीलिया होता है, एंड व्हाट डिफरेंस यू हैव इज वी हैव सेंट्रोसोम, सेंट्रीजोम होता है. सेंट्रीजोम का जो फंक्शन इज इन सेल डिवीजन, तो ये याद रखना. एंड सीलिया इज फॉर मूवमेंट, तो याद रखना, कोरिलेट ऐसे कर सकते हैं, एनिमल मूव करते हो तो उनमें सीलिया है. सेल वॉल किससे बना है आपको पता चाहिए, पॉलीसेक्राइड, सेल्यूलोज से बनता है, पेक्टिन से बनता है. फंगाई एंड प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनका हमने डिफरेंस देखा. हमने डीएनए से आरएनए बनता है, इसको क्या हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं. तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए. डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस हमने देखा. आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड. डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोस कैसा है, डीऑक्सी है, इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड है. एंड डीएनए इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, दिस कैन बी अ जेनेटिक मटेरियल आल्सो, whereas डीएनए इज ओनली जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो. तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए. सेकेंडली, जीन डिफरेंस पता है, सही है. जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए which is having a specific, which is tasked with production of specific protein. तो complete aggregation of all the genes together, इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं. तो ये आपको बोलता है. तो सो जो डीएनए है, डीएनए जब डीएनए को कंप्रेस करते हैं, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स. तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं, अगर ह्यूमंस में देखा जाए, वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है. तो बेसिकली क्रोमोसोम के अंदर क्या है, दिस डीएनए इज पैक्ड टुगेदर, कंप्रेस्ड टुगेदर, क्योंकि द डीएनए का लेंथ बहुत बड़ा है, बट दे आर पैक्ड टुगेदर इन अ कंप्रेस्ड फॉर्मेट इन द क्रोमोसोम्स. तो क्रोमोसोम्स कितने हैं, एक पेयर, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है, ऐसा पेयर होता है. तो 22 क्या है, ऑटोसोम्स होते हैं. एंड देयर आर 2 सेक्स क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई किस में होते हैं, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन मेल्स में होता है, एंड एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन फीमेल्स में होता है. तो इसको क्या बोलता है, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं. एंड बाकी 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं. जीनोम सीक्वेंसिंग इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स. नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, फास्ट के स्केलेबल है, बोथ डीएनए एंड आरएनए का सीक्वेंसिंग करता है. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट हमने देखा. एंड कंसोर्टियम देखा, दैट इज इंडियन SARS-CoV-2 genomics consortium, किसका, initiated by Ministry of Health and Family Welfare and Department of Biotechnology, then carried forward by ICMR and CSIR. तो ये एक कुछ important चीज आपको पता चाहिए. Sorry to pause you in between, but make sure you pause this video and subscribe to the channel, because 80% of you are not subscribing. I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers. Thank you. In the last session, I told you that's why genome sequencing is important, and we at की genome sequencing of हमने virus देखा था, so that we can target that virus, we can make a vaccine against that virus, we can trace its mutation. Similarly, for human beings, we have done our genome sequencing, and at the global level through human genome project. But at the India level, for Indians, to map the genome of Indians, we have 2 different projects which you should know. First is Genome India project. It is by Ministry of Science and Technology and collaboration of 20 institutes, including Indian Institute of Science and IITs. And what it does is it tries to build the grid for Indians' reference genome. So what we are trying to build is a reference genome कि Indians का क्या reference genome है, what are the genes present in Indian population. So what we are trying to do is we are trying to build a reference genome of India. Secondly, why this sequencing or sequencing of all the DNA of Indians is necessary, because it would help us to understand the nature of diseases and trait that comprises diverse Indian population, which are present in diverse Indian population. So we would be able to understand which types of genes are present, which type of diseases are common in Indians. तो ये सब हम जानेंगे through this genome mapping, which is done under Genome India project, and it is inspired by Human Genome Project, initiative of Ministry of Science and Technology along with 20 institutes. Similarly,
Similarly, there is one more project, Indigene project, तो ये भी पता चाहिए, Indigene project, where we are mapping genome of 108 1008 individuals. 1008 individuals का हम क्या करेंगे, genome mapping करेंगे, and the aim is same. The aim is to map the genes, to understand the traits, to understand the diseases associated with which the Indians are going through. तो ये understand करने के लिए है. तो Genome India एक है, Indigene project है, and this Indigene project is a project by Center for Cell and Molecular Biology, which is an important organization under CSIR, and second important organization is Institute of Genomics and Integrative Biology. तो ये दो important organization मिलके we are leading this project, that is Indigene project. तो यहाँ confusion हो सकता है. This is a project of Center for Cell and Molecular Biology, and second is Institute of Genomics and Integrative Biology, which is based in Hyderabad. तो ये दो difference आपको पता चाहिए. Moving forward, जैसे हमने CSR की बात करी, few important initiatives which were in news with respect to CSR you should know. तो basically Purple Revolution आपको पता चाहिए, इसको Lavender Revolution भी बोलते हैं, and it was launched by Ministry of Science and Technology through CSIR, तो initiative of CSIR, and this Lavender mission is a part of Aroma mission जो हम आगे देखेंगे, तो Aroma mission का part है, and the aim of this lavender revolution or purple revolution is to increase lavender cultivation in Jammu and Kashmir and support India's aromatic crop based agro economy by reducing import of aromatic oils and increase homegrown varieties. So these lavender is used in perfumes. So aroma based plants they are classified under aroma based classification, and what we want to grow is जो aromatic oils है उसका production बढ़ाना है, reduce the import through this purple revolution, specifically focusing on lavender. But it is a part, as I told you, is a part of Aroma mission, which is launched by CSR, and the aim of this Aroma mission is to bring in transformative change in the aroma sector through desired intervention in the area of agriculture, processing and product development by fueling growth of aroma industry and rural employment. So basically through जो अरोमा इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करना थ्रू कल्टीवेशन, थ्रू प्रोडक्शन, थ्रू प्रोसेसिंग, all the efforts करना है for developing this industry, aroma industry, and basically it is the aromatic plants are not only used in perfumes but has medicinal use also. And plants कौन से इसमें, रोजमेरी हो गया, लेवेंडर हो गया, लेमन ग्रास हो गया, सो अलग अलग जो भी एरोमेटिक प्लांट्स हैं, एरोमेटिक इससे ग्रो होता है, तो वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे. तो एरोमा मिशन के अंडर व्हाट वी हैव इज लेवेंडर मिशन एंड पर्पल रेवोल्यूशन या लेवेंडर मिशन बोलते हैं. तो ये आपको पता चाहिए, एरोमा मिशन एंड लेवेंडर रेवोल्यूशन और पर्पल रेवोल्यूशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ initiative of CSIR. Indigene project is initiative of CSIR. CSIR के अंदर एक important organization है, that is Center for Cell and Molecular Biology, and दूसरा इंस्टीट्यूट कौन सा है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी. तो ये दो चीजें आपको पता चाहिए. कमिंग बैक टू CSIR, इट्स एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये आपको पता चाहिए कि CSIR इज द लार्जेस्ट research and development organization in India, established in 1942. So pre-independence है, located in New Delhi and funded by Ministry of Science and Technology, and it operates as an autonomous society through Societies Registration Act 1860. So it acts as an autonomous institute, and it covers wider range of research and development in various fields such as environment, health, drinking water, food, हाउसिंग, एनर्जी, फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर. तो बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में ये काम करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, एंड इट हैज वेरियस organization under the purview of CSR. There are various laboratories under the purview of CSR. तो ये आपको पता चाहिए. And the head of CSR is important because you can make a mistake here. The head of CSR is Prime Minister, and the vice chairman or vice president is Ministry of Science and Technology, but the president is PM, Prime Minister of the country. So ये आपको पता चाहिए, ये आपको बेसिक चीजें पता चाहिए. ठीक है, तो CSR हमने देख लिया, हमने अभी तक जो चीजें देख ली ये आपको पता चाहिए. कमिंग बैक टू पिछले लेक्चर में वी सॉ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs which are present in most of the eukaryotic animals. तो 3 RNA कौन से थे? एक तो मैसेंजर RNA था, मैसेंजर RNA, देन ट्रांसपोर्ट RNA एंड एक राइबोसोमल RNA. तो ये तीनों कहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं, तो ये आपको पता चाहिए. देयर इज वन मोर RNA which is you should know, which is also in news. So whatever we are taking is
present in you, so make sure you're there till now. That is micro RNA. So micro RNA क्या होता है, तो ये आपको पता चाहिए micro RNA. So this is micro RNA. हम आगे RNA interference भी देखेंगे, लेकिन आपको micro RNA के बारे में पता चाहिए. These are non-coding RNAs, extra chromosomal. So they are not present. Extra chromosomal मतलब बाहर है. They are non-coding, extra chromosomal and attack COVID virus. And basically what it does is attack COVID virus है, उसके cells को affect, उसके viruses को affect करता है and reduces its severity. तो these are good parts of RNA which are non-coding, extra chromosomal and attack COVID virus. So and reduces its severity. The microRNA are also biomarkers. So basically biomarkers मतलब क्या? So if you have those things in your blood, that indicates that you have a specific type of disease. So जैसे if you want to know do you have prostate cancer, so you have various biomarkers. If you want to know if you have blood cancer, there is biomarkers. So whenever these biomarker का क्या बोलते हैं concentration is seen in the blood in a higher range, micro RNA का अगर concentration is present in higher range, that indicates that you have specific type of disease. So these are bioindicators, and basically they are also found during tongue cancer के वक्त भी. You can find microRNAs in higher number, so they act as a biomarker. So biomarker are basically biological components suggesting underlying disease. ठीक है, तो biomarkers खत्म हो गया. As I already told you, microRNA are other type. So another important thing with respect to RNA आपको पता चाहिए, recently we had a mRNA vaccine which was released with respect to handling the coronavirus. We had mRNA, that is messenger RNA virus messenger RNA vaccine. So how does this vaccine works, ये आपको पता चाहिए, and it is a unique way of ensuring vaccination. So basically as I already told you कि virus has a spike protein, या it has a outer coating which is made up of protein. And as you know already in the last lecture we have already seen कि जो protein है, that protein is, how does protein is made is from DNA the message is sent in the form of mRNA, and then this mRNA is converted into protein. The message of mRNA is translated into protein. So basically the spike protein which is present on virus has a specific mRNA present which ensures the synthesis of this spike protein. तो basically हम mRNA vaccine में क्या कर रहे हैं, we are trying to, जो भी हमारे cells में, we are trying to inject this mRNA into our cells. जब ये mRNA हमारे cells में जाएगा तो इस mRNA से हमारी बॉडी क्या करेगी, एक नया प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन तैयार करेगी, एंड द बॉडी वुड थिंक यार दिस इज एन आउटर एजेंट, इट वुड, दिस mRNA protein, this protein, spike protein which is generated by our body from this mRNA vaccine would be considered as a antigen and it would start producing antibodies. तो ये भी आपको पता चाहिए. So basically as I told you कि तो mRNA vaccine से क्या होता है, we inject mRNA into our cells, this cell produces spike protein which is similar to जो वायरस में प्रोटीन होता है, and this spike protein is an antigen. So body sees it as an antigen and produces lots of antibodies against it. तो antibodies produce करता है. Next time there is any virus with similar spike protein, these antibodies act against it. So this is an unique type of antigen which was recently released with respect to dealing with coronavirus. So you should know कि पहले क्या होता है, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस में फर्स्ट पार्ट इज डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो दैट मैकेनिज्म इज यूज्ड इन mRNA वैक्सीन. तो सेगमेंट ऑफ आरएनए फ्रॉम वायरस इज इंजेक्टेड इनटू सेल to stimulate response. तो response is in the form of formation of spike protein. तो ये आपको पता चाहिए. And there are various advantages of using mRNA vaccines over regular vaccines. तो क्या है uses? These are considered as safe because we are transferring only mRNA. We are not transferring जैसे live attenuated vaccine रहता है where we are injecting the live organisms, तो वैसे live viruses वैसे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक part of mRNA, we are not injecting the entire virus but a mRNA of that. तो that is comparatively safe. इसमें higher efficacy है. So what it leads to is हायर एफिकेसी की क्यों है, क्योंकि इसमें
सेल इम्यूनिटी डेवलप होती है, सेल्यूलर इम्यूनिटी डेवलप होती है, तो ये आपको जानना जरूरी है। एंड दिस mRNA कैन बी जनरेटेड इन अ फुल्ली सिंथेटिक वे, वी डू नॉट हैव टू take this mRNA from the virus. These mRNA can be synthetically also formed, क्योंकि it is just जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक पेयर है, तो ये आपको पता चाहिए। तो these can be synthetically produced, तो ये चीज विद रिस्पेक्ट टू mRNA आपको पता चाहिए। माइक्रो RNA हमने देखा, mRNA वैक्सीन देखा। देन यू शुड नो अबाउट RNA interference. RNA interference is also in news. What is RNA interference? It's a process of genes, it's a type of gene slicing technology है। तो what it does is it targets protein synthesis in targeted cell using double stranded RNA. So basically this double stranded RNA, what it does is it leads to, it affects protein synthesis. What this double stranded RNA does is it affects the gene, it goes and stick to the gene and protein synthesis is affected in the respective cell. तो ये RNA interference से क्या होता है, protein synthesis affect होता है। तो ये double stranded RNA is responsible for affecting protein synthesis in a cell. That's why this is known as RNA interference, and it is used against HIV, to deal with HIV. This process of gene slicing is again used to treat HIV, to control cholesterol. तो ये सारी चीजों के लिए we are using this RNA interference, which is also in news. So everything is in news and you should know these basics. Basically double stranded RNA are used to what do you say, to slice the gene, to reduce the impact of the gene, to nullify the gene so that protein synthesis does not take place. तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज eDNA भी पता चाहिए। हमने mRNA देखा, माइक्रो RNA देखा, हमने mRNA वैक्सीन देखा, हमने RNA इंटरफेरेंस देखा, हम आपको eDNA भी पता चाहिए, दैट इज एनवायरमेंटल DNA. So basically environmental DNA is what, so the DNA which is present in the last lecture, as we have already seen, then DNA is present in nucleus also and mitochondria also. So basically this DNA usually the terrestrial animals and aquatic animals क्या करते हैं, DNA is released in the environment, and this DNA which is released in the environment can be captured, and through analysis of this environmental DNA we would be able to understand, we would be able to track species, detect species through this environmental samples and detecting DNA from the environment. And so this eDNA or environmental DNA would help in tracking animals, population census में भी काम आता है, and basically it is usually helpful for terrestrial animals, though aquatic animals also release DNA in the environment, but the quantity is very less, तो ये चीज याद रखना, मेजरली इट इज यूज्ड फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है क्या होता है कि जब पानी में होता है तो उसका डाइल्यूशन होता है एंड कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, सो दैट वी कैन डिटेक्ट एनिमल। तो कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट होता है इन एक्वेटिक कंडीशन, बट एनवायरमेंटल डीएनए इज वेरी यूजफुल फॉर टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू eDNA, that is environmental DNA which is released by organisms in the environment, be it soil, water, feces, kahin bhi jo bhi released by the human beings or any animal, that is known as environmental DNA. And by tracking this or understanding the quantity, we would be able to get to know their senses, where they are moving. We would also understand ki kaun sa species hai nahi hai. So environmental DNA is an important thing you should know. Next is recombinant DNA technology pata chahiye. What do you understand by recombinant DNA technology? Basically recombinant DNA technology is the process of joining together DNA molecule of two different species through gene editing. So two different species का हम क्या करेंगे, DNA mix करेंगे। तो to give you an example, जो हमारा BT cotton है, BT cotton is what we have included a gene from a bacteria, Bacillus thuringiensis, into a plant gene. प्लांट के अंदर, प्लांट के जीनोम में we have transferred that DNA into the plant from बैक्टीरिया से कोई एक स्पेसिफिक पार्ट निकाला हमने डीएनए का, which that part of DNA or that gene is responsible for प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टॉक्सिन। तो वो हमने पार्ट निकाल के, बैक्टीरिया से निकाल के प्लांट में डाला। दैट इज व्हाई इट इज अ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। वी हैव डन दिस, that is transfer of DNA from one species to other species. तो ये एक आपको पता चाहिए, and this is done through gene editing. तो gene editing मतलब का, it is a type of genetic engineering where in which DNA is inserted, deleted, modified, replaced in the genome of living organism. So हमारा जो DNA है,
तो if you cut that DNA, replace it or modify it, the whole process is known as gene editing. And there are various gene editing technique which you should know. First is mega nuclease technology. Next is zinc finger nuclease, ZFN. TALEN, that is transcription activator like factor nucleases. CRISPR-Cas9 method है, and jumping gene editing tool है. So the most famous which we have recently understood is CRISPR-Cas9, where this Cas9 enzyme is very effective in cutting the DNA at a specific position and ensuring a very good DNA editing tool, so that we can replace the defective gene and replace it with a normal gene, so that our gene editing technology can help us to solve many genetic disorders. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो ये आपको जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज अलग अलग पता चाहिए. दैट इज मेगा न्यूक्लियस, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टैलेन हो गया, CRISPR-Cas9 हो गया, जंपिंग जीन एडिटिंग टूल हो गया. तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज, as I already told you, to know about blood and diseases with respect to blood which are always in news, तो ये आपको पता चाहिए. So basically blood में क्या components है, blood में कौन से components है आपको पता चाहिए. blood में basically we have two things, we have plasma and we have cells. Plasma is the liquid form, जो liquid part है of the blood is plasma, and जो cells है, there are various types of cell present in the blood. तो ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब डे टू डे करंट अफेयर्स में आता है, बट यू मिस द बेसिक्स, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस. सो ब्लड कंपोनेंट कौन से है, आरबीसी, दिस हैज रेड ब्लड सेल्स, दिस हैज हीमोग्लोबिन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर transfer of oxygen from lungs to body parts and back from taking CO2 back to the lungs. तो ये एक है हीमोग्लोबिन, आपको पता चाहिए. एंड ऑक्सीजन इज द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर पार्ट, तो हीमोग्लोबिन आपको पता चाहिए. एंड second is WBC. These are of two types. First is granulocytes and agranulocytes. इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ WBC बहुत इंपॉर्टेंट है. Whenever you see your blood report, तो आपको पता चाहिए. तो फर्स्ट उसमें होगा कि कितना RBC है, नेक्स्ट होगा उसमें कितना हीमोग्लोबिन है, उसके बाद होगा WBC काउंट, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स. सो व्हाइट ब्लड सेल्स आर वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग इन्फेक्शंस. जब भी आपके बॉडी में इन्फेक्शंस रहेगा तो WBC का काउंट बढ़ेगा. तो व्हाट डॉक्टर सीज इन योर ब्लड रिपोर्ट इज राइज ऑफ WBC. उसमें भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स. फर्स्ट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स आर न्यूट्रोफिल्स. तो न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, इओसिनोफिल्स जब एलर्जी होती है तब बढ़ते हैं. सेकेंडली अग्रैन्युलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स है, तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं. तो इस तरीके से ये सारे सेल्स आर अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन. इफ देयर इज इन्फेक्शन, WBC काउंट वुड इंक्रीज. तो ये आपको पता चाहिए. एंड देन वी हैव प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स का मेजर फंक्शन क्या है, कोगुलेशन. इफ यू हैव अ इंजुरी, ब्लड कम्स आउट, बट ब्लड स्टॉप्स आफ्टर अ टाइम. इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ platelets. Platelet क्या करता है, it leads to coagulation of the blood, and along with platelets there are various clotting factors which are responsible for clotting of blood. So if we have any disease in which the clotting factors are not produced, what would happen is continuous bleeding would happen. तो वो situation हम आगे देखेंगे. उसको हीमोफीलिया भी बोलते हैं, where a small injury leads to heavy bleeding because clotting factor का defect होता है. तो plasma is the liquid part. It has protein and antibodies. Protein और antibodies, जैसे clotting factor is a proteins, so proteins and antibodies are present in plasma. It is yellow in color. And forms 55% of the total blood. अगर total blood का volume है उसका 55% is plasma. जैसे plasma में as I told you कि हमारे antibodies किस में होते हैं, plasma में होते हैं. We had recently during COVID time convalescent plasma therapy, आपने पढ़ा होगा. So plasma therapy is what we are only taking plasma. ब्लड लेंगे जो भी कोविड से रिकवर हो चुके हैं पेशेंट्स, द पेशेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड विल टेक ब्लड फ्रॉम देम, सेपरेट ऑल द सेल्स आउट, द रिमेनिंग पार्ट व्हाट इज रिमेनिंग इज प्लाज्मा. एंड प्लाज्मा से क्या करेंगे, वील गिव, प्लाज्मा इज रिच इन एंटीबॉडीज, सो वील इंजेक्ट प्लाज्मा इनटू द अदर पेशेंट, helping him to fight the virus in an effective way. That is plasma therapy, where we are giving plasma because plasma is rich in antibodies. So ये आपको पता चाहिए. तो that is why you should know about convalescent plasma therapy, and it is a type of passive immunity. पैसिव इम्यूनिटी में हम आगे देखेंगे पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी का डिफरेंस, बट इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी. तो कॉन्वोल्यूसेंट प्लाज्मा थेरेपी पता चाहिए. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो जीन डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा, वी वुड हैव
in the last lecture I told you gene defect leads to various diseases, and that's why we need to have genome mapping of India so that we can have individualized treatment for specific specific diseases. So as I already told you कि जो clotting disorders है, clotting factors होते हैं which leads to coagulation, तो one of the clotting factor कौन से है, there's clotting factor 8, 9. अगर if there is deficiency of those clotting factor 8 and 9, what disease we have is hemophilia. That is it's a inherited bleeding disorder, and it is because of defective gene. तो आपको पता चाहिए, and वो जीन कहाँ है, X chromosome पर है. In the last lecture we have looked into autosomes and sex chromosome X पर वो जीन है. So hemophilia से क्या होता है, bleeding होता है because of defective clotting factor. तो ये basic idea पता चाहिए. Sickle cell anemia is what normally the RBCs are flexible, इतने rigid नहीं होते, they can move anywhere in the blood vessels, but in sickle cell anemia there is defect in chromosome 11 पर का एक gene में defect होता है, and because of that most of the RBCs become sickle shaped and they cannot transport oxygen effectively. It leads to blockage of blood vessels. तो sickle cell anemia में क्या होता है, RBC defective हो जाते हैं, sickle shaped हो जाते हैं, लेकिन that's why you should know about this sickle cell anemia. And last is thalassemia. Basically thalassemia is a type of disorder जिसमें hemoglobin has various strands. So for and the जो hemoglobin बनता है is based on formation of this, क्या बोलते हैं, for effective formation of hemoglobins we require 4 strands, and if there is any defect in the protein which leads to formation of hemoglobin, what we lead to is thalassemia, where there is defective formation of hemoglobin and it leads to anemia. And this is also because there is defect in chromosome 16 and 11. That is why it leads to defective formation of hemoglobin and leading to anemia. इसको हम thalassemia बोलते हैं, where hemoglobin is not formed in a effective way. There is a genetic disorder. तो ये basic चीजें लगेगा कि आपको बहुत डिटेल में जा रहे हैं, बट दीज आर कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स. जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी दे रहे हैं यू शुड नो दिस. तो टू रिवाइज व्हाट वी फर्स्ट सॉ इज, हमने क्या देखा, हीमोफीलिया देखा, दैट इज क्लॉटिंग डिसऑर्डर. देन वी सॉ इज सिकल सेल एनीमिया, जहां आरबीसी का शेप सिकल शेप्ड हो जाता है. एंड लास्ट इज थैलेसीमिया, वेयर हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन अ इफेक्टिव वे. जब whenever the concentration of hemoglobin in the blood decreases drastically, what we lead to is anemia. Anemia can be because of various reasons. One is iron deficiency. Iron के deficiency भी we have anemia. Then vitamin B12 हम आगे देखेंगे, B12 and folic acid के deficiency से भी we have anemia. And thalassemia के वजह से if hemoglobin is inherently not produced effectively, then also we have anemia. तो various causes, तो ये आपको पता चाहिए. आयरन डिफिशियंसी एनीमिया विटामिन B12 से भी होता है, फॉलिक एसिड से भी होता है, एंड थैलेसीमिया से भी अनीमिया होता है. अगर हीमोग्लोबिन नहीं हुआ अच्छे से प्रोड्यूस, सो व्हाट वुड हैपन इज CO2 वुड नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द ह्यूमन बॉडीज अक्रॉस वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडीज. And if hemoglobin is not transferred, we cannot generate energy, and what we would feel is fatigue feel होता है. तो hemoglobin deficiency anemia से what we have is fatigue. तो ये आपको पता चाहिए. Moving forward with respect to blood, there was one important news which was important article which was in news is dried blood spot testing. So what is this dried blood spot testing which was in news is with respect to World Anti-Doping Agency has approved use of dried blood spot testing. This was approved during Tokyo Olympics to identify banned substances. Use of banned substances was identified for testing use of banned substances to check whether athletes are using banned substances. We started this dried blood spot testing. तो ये आपको पता चाहिए, and it was an initiative of WADA. आपको पता चाहिए, that is World Anti-Doping Agency. Whenever you are looking into WADA, आपको पता चाहिए World Anti-Doping Agency क्या है. It is a foundation initiated by International Olympic Committee. उनका initiative है, and it is based in Canada for promoting, coordinating and monitoring the fight against drugs in sport. And so basically what it does is this organization does R&D with respect to use of how we need to detect doping substances, how we can stop this, increasing awareness, checking athletes at a regular interval with respect to whether they are taking any
any activities, monitoring them, educating them. तो ये सारा रोल किसका है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बेस्ड इन Canada and founded by International Olympic Committee. International Olympic Committee was also in news because इसका meeting is to be held in India after at least 40 years. तो ये आपको पता चाहिए. तो International Olympic Committee is what? International Olympic Committee was created on 23rd June 1894 when the first modern Olympics were held, 1894, and as a supreme authority of the Olympic movement, it is a non-profit independent international organization that is committed to building better world through sports and ensure regular celebration of Olympic Games, supports all affiliated member organization, strongly encourages by appropriate means the promotion of Olympic values. So basically Olympic Games are conducted under the purview of International Olympic Committee. इसका recently the meeting was to be held in India. तो ये आपको पता चाहिए. Olympic Games के बारे में कुछ basic चीजें आपको पता चाहिए. The Olympic Games initiated in the prehistoric times in Greece as a religious festival in the honor of Zeus, a Greek god, at Olympia in Greece. तो ग्रीस में स्टार्ट हुआ था to honor the god that is Zeus, that is a god of the sky. And presently जो modern day Olympics start हुए थे, they also started in Greece. Athens में start हुए थे, 1896 में start हुआ था. तो ये आपको पता चाहिए, 1896. Similarly 2022 में we have Winter Olympics which have been happening in Beijing. These are 24th Winter Olympic Games. So there are summer games which everyone knows as Olympic Games, and there are winter games where we have sports related to snow and ice, started in 1924. तो ये 1924 में start हुआ, वो 1896 में start हुआ, 1894 में what we had is Olympic Committee. Moving forward, one important news was there with respect to Tundra satellite system. तो ये आपको पता चाहिए what is Tundra satellite system. Basically it's in news because this is an early warning system. If there is any incoming missile, incoming aircraft, the country should know which missile or which aircraft is coming and which can affect its security. So it's an incoming early warning system which has been developed by Russia, and it is in the form of constellation of satellites. So various satellites have been launched by Russia to monitor any incoming threats with respect to missiles and aircrafts. So उस perspective से आपको पता चाहिए Tundra satellite system. India also has a similar thing, but it is not in the form of satellites. What we have is airborne early warning and control system. Airborne early warning and control system. This has been developed by DRDO. We have also, one thing was also in news that we are going to make 6 new such airborne early warning system. In this, what we do is we send an aircraft in the space in our atmosphere, and this spacecraft has what? It has a radar system which it has sensors to catch any incoming missile or aircraft. So basically what it is eye in the sky, and this system which has been developed by DRDO has been named, इसका दूसरा नाम क्या है? नेत्रा system, that is airborne early warning and control system. So these are indigenously developed, but we have another system which is Falcon airborne early warning system, which we have got from which country? Israel. So this is also placed in India. We have our indigenous DRDO airborne early warning and control system, and we have Falcon airborne early warning and control system which we have got from Israel. Moving on, as Russia has a satellite system, recently aaj hi, if you see today's newspaper, there's one more thing that was in news, that was Patriot defense system. What is this Patriot defense system? It is a ballistic missile defense system. Ballistic missile defense system किसका है? US and allied countries का है. जो हम ballistic missile defense system देखेंगे वो आगे जाके देखेंगे, लेकिन आपको पता चाहिए this was also in news. तो जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम किसका है? हमारा रशिया का है टुंड्रा, इंडिया का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड फैल्कम. लेकिन आपको एक टर्म विच वाज इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू यूक्रेन वॉर एंड US Ukraine was Patriot defense system, जो हम आगे देखने वाले हैं, but you should know that is Patriot defense system is been developed by US but has been installed at various places. It's an anti-ballistic missile defense system which I'm going to tell you forward. So why this early warning system is important? Airborne early warning system is important. This is important to track enemy aircrafts, hostile missile and movement of
ट्रूप्स, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है. सो वंस वी डिटेक्ट दैट एनी इनकमिंग मिसाइल इज कमिंग, एनी इनकमिंग एयरक्राफ्ट इज कमिंग, व्हाट वी नीड टू हैव इज we need to have a defense system. We need to have a missile defense system, and every country has developed their own ballistic missile defense system. The NATO countries along with US has developed this Patriot defense system, but Russia has another defense ballistic missile defense system by the name of S-400, which is also in use because India is trying to procure this S-400 system. Secondly, India is trying to develop its own anti-ballistic missile defense system, anti-ballistic missile defense system. It is by the name of Ashwin and Prithvi. It has two components. Ashwin, which would attack missiles in the endosphere between the range of 15 to 30 kilometers, and Prithvi, which would attack missiles in the exosphere at the range of 50 to 80 kilometers. तो ये दो component Indian anti-ballistic missile defense system का है. Next is इजराइल का जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको आयरन डोम बोलते हैं, एंड जो यूएसए का है which is especially for USA is known as THAAD, and one more which we have seen was Patriot ballistic missile defense. तो ये तीन चीजें आपको पता चाहिए, ये चार चीजें आपको पता चाहिए. Next is, so whenever we are looking at the ballistic missile defense system, you should go into the depth. What do you understand by ballistic missile? So ये आपको basic आपको पता चाहिए कि ballistic missiles क्या होते हैं. Basically ballistic missiles are missiles which follow ballistic trajectory. So ballistic trajectory कैसे होती है? It has a trajectory, and the what you said, the trajectory is decided by various factors, and the missile goes into the space, and what it does is it tries to attack multiple targets. तो ये क्या है? इसका ballistic trajectory है. This is the trajectory, and this trajectory is decided by what initial velocity से decide होता है, then effect of gravity, air resistance and motion of the earth से decide होता है. तो ये आपको चीजें पता चाहिए कि ballistic missile का जो trajectory है, how it is decided. We have one more important ballistic missile which was in use was Agni-P. Agni missile हो गया, Trishul हो गया, we have various ballistic missiles, and but one of the ballistic missiles which we have is Agni missile, and उसका भी एक सब मिसाइल जो हमने डेवलप रिसेंटली किया है, Prime, Agni Prime. Already we have Agni 1 to Agni 5, but this is new missile which we have developed, Agni P, yeah, Agni Prime, and this missile is a nuclear missile having range of 1000 to 2000 kilometer, and it is a canister based solid propellant missile. Canister based मतलब क्या? They can be loaded over a truck in the form of canisters. तो आपने देखा होगा कि ये ट्रक है, इसके ऊपर various canisters बनते हैं, so that they can be launched from anywhere, can be launched very fast at a quicker rate. Secondly, accuracy high and maneuvering high है. तो canister based missile है Agni P, तो ये आपको पता चाहिए. India have a very good ballistic missile program in the name of integrated guided missile development program, which was it was started by Dr. APJ Abdul Kalam sir, and to ensure self-sufficiency in the missile technology. And under this integrated guided missile development program, we developed 5 missiles. कौन से है? Prithvi हमने develop किया है, which is a surface to surface. Next is Agni, which is it's also a ballistic missile. As I told you, it has a range of there are various Agni missiles from 1 to 5. Fifth is a intercontinental ballistic missile with a range of 5000 kilometers. Next is Trishul. Trishul is also a ballistic missile, surface to air है, ये surface से air तक to target the aircraft है. Then we have Nag anti-tank missile है, Akash missile है, that is surface to air, again surface to air. So we have 2 surface to air, that is Trishul and Akash, तो ये आपको पता चाहिए. Next is what is cruise missile? हमने ballistic missiles तो देख लिया. So what is cruise missiles? So ballistic missile, as I told you, has a ballistic trajectory. Cruise missile has a what? It has a tree line trajectory. It has a straight trajectory. It does not go into the space. It moves on the tree line पर क्या बोलते हैं वो tree line level पर straight line में move करता है. And as I told you, self propelled है. जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को ग्रेविटी का हेल्प है, इसमें सेल्फ प्रोपेल्ड है, स्ट्रेट लाइन में है, एंड दे आर नॉट डिटेक्टेड बाय रडार बिकॉज दे डू नॉट गो इनटू स्पेस, ट्री लाइन पर रहता है एंड हाई प्रिसीजन होता है. तो ये आपको पता चाहिए. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्रूज मिसाइल विच इंडिया हैज डेवलप्ड इन एसोसिएशन विद रशिया, जो सबको पता है, इज BrahMos missile, which is an initiative of DRDO and NPOM of Russia. It is a cruise supersonic missile. Supersonic is what? Where the
speed of the missile is between 1 Mach to 5 Mach. 5 Mach is 1 Mach is speed of sound. 1 Mach जितना होता है is more than 1 हुआ तो क्या more than 1 and less than 5. अगर कोई मिसाइल जिसका 5 से ज्यादा स्पीड है, 5 Mach से, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हाइपरसोनिक बोलेंगे, हाइपरसोनिक बोलेंगे. एंड अगर लेस देन 1 है तो सबसोनिक बोलेंगे. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इस ब्रह्मोस के बारे में पता चाहिए. इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयर, लैंड एंड वाटर. तीनों जगह से हम लॉन्च कर सकते हैं. इनिशियल रेंज कितना था? 290 किलोमीटर्स था. Why 290 kilometers? Because India was not part of MTCR, that is Missile Technology Control Regime. So under this MTCR, we were trying to regulate the distribution of missile technology to rest of the countries. So जो इसके members है, उन्होंने क्या करना था? जो missile technology proliferation रोकना था, तो उसके अंदर the country who is not part of this MTCR group, उनको आप you can give the technology up to 300 kilometers and up to weight of 500 kgs. इतने तक ही Russia could give us technology with respect to or make a missile, because India was not part of MTCR. Now India has become part of MTCR, so the range of BrahMos has been increased from 290 kilometers to 450 and which would be later extended to 600 kilometers. तो ये आपको पता चाहिए. BrahMos में you should know it has a ramjet engine. So basically there are two types of engines in a missile or in a missiles. So one is ramjet and other is scramjet engines. तो ramjet is what? It's a air breathing engine without compression. So basically इसमें क्या होता है कि जो normally air pass होती है engine से, उसी का ऑक्सीजन लिया जाता है and there is the air is not compressed. So basically इसमें क्या है? The ramjet engine के जो missiles होते हैं, जो aircrafts होते हैं, उनका speed is up to supersonic level, But scramjet में क्या करते हैं हम? We do not just get the air from the atmosphere, but we compress it. So as we compress it, क्या होगा? उसकी amount of oxygen more होगा, it can combust more and it can have a more speed. तो इसमें क्या है? Compression होता है and compression at a supersonic speed. As I have told you, that is more than 5 Mach होता है and it is efficient at high speed. This engine, scramjet engine, is efficient at high speed. तो ramjet and scramjet का आपको difference पता चाहिए. Scramjet is the compressed air जाती है and hypersonic speed से जाता है. Ramjet में supersonic speed तक ही we are able to propel the missile. तो ये difference पता चाहिए. As I told you, recently hypersonic missiles were also in news that has speed of more than 5 Mach. Russia has two types of hypersonic missile. One is ballistic and one is cruise. Recently they launched hypersonic missile on Ukraine, that was Kinzhal नाम का क्या बोलते हैं, ballistic hypersonic missile था. They have avant-garde cruise hypersonic missile. China has Dongfeng ballistic hypersonic missile. तो ये आपको पता चाहिए. सबसोनिक मिसाइल इंडिया का कौन सा है? निर्भया सबसोनिक मिसाइल है. तो ये डिफरेंस आपको पता चाहिए. Next is, as I already told you, what is missile technology control regime? It is to avoid proliferation of missile technology. 35 countries are part of it. And another important thing you should know, that regulation of UAVs, unmanned aerial vehicle, is under MTCR. तो MTCR के अंडर है and the decision is based on consensus based decision होते हैं and the MTCR group can give non-MTCR group the technology with respect to missile. इसमें restrictions लेके आया है, that is up to 500 kgs and up to 300 kilometers. इसलिए जो ब्रह्मोस का initial range था वो 290 kilometers था. Now India is part of it, so the range has been automatically increased. Next is आपको Australia group भी पता चाहिए. As you know कि Australia group looks into regulation of biological and chemical weapons. We have Wassenaar agreements which look into transparency and accountability in the transfer of dual use technology. Dual use technology मतलब ऐसे technology which has civilian use also and which has military use also. Secondly, I would like to tell you that India is now part of all these three groups, but India did not get entry into NSG, that is nuclear supplier. India did not get entry into nuclear suppliers group. तो NSG के अंदर हमें एंट्री नहीं मिली है. So what is this NSG or nuclear suppliers groups? It's a multilateral export control regime which prevents nuclear proliferation by controlling the export of nuclear material and equipments and technology. So basically it's a multilateral control regime which
ensures that there is no proliferation of nuclear technology and nuclear weapons by controlling the sale of nuclear material, nuclear technology and nuclear equipments. So countries who are part of this are not allowed to share latest technologies to non-NSG members. Basically it was formed after Pokhran test to ensure that nuclear technology is not used for military purpose. It is also referred as London Group, and it regulates export of nuclear technology and nuclear fuel. दोनों का कंट्रोल करता है, nuclear technology and nuclear fuel का ये कंट्रोल करता है, and India does not have access to this group. तो ये भी आपको पता चाहिए. Next is there is one more missile which was in news, that was आपको पता चाहिए Rudram missile. Rudram missile is what is an anti-radiation missile that can locate and target any radiation emitting source. तो ये आपको पता चाहिए. It's a air to surface missile, air to surface with a range of 100 to 150 kilometers, and it has been developed by DRDO. It's a first indigenous anti-radiation missile. तो ये difference आपको पता चाहिए, and it can neutralize the adversaries, radars, communication assets and other radio frequency sources. तो basically what it does is anti-radiation missiles, जहां से radiations आएंगे, जैसे radars हो गया, communication networks हो गए, उसको target करता है Rudram 1. तो ये आपको पता चाहिए. Recently there was few satellites which was launched exclusively for what do you say, for army aircrafts, for army air force. तो कौन से satellite हैं? GSAT-7 was the first satellite which was launched in 2008, and it was also known as Rukmini. It was the first defense communication satellite for Navy. तो Navy के लिए first defense communication satellite था, and that was Rukmini GSAT-7. We had GSAT-7A which was launched in 2018 for Indian Air Force and Indian Army. It is also a communication satellite. Now we are going to have one more satellite. The Defense Acquisition Council has approved the procurement of what? GSAT-7C, which would be used for Indian Air Force, which would be available for in next 2 to 3 years and would be procurement by Defense Acquisition Council. तो ये नया satellite आने वाला है Indian Air Force के लिए, which is a communication satellite, defense communication satellite. तो ये difference आपको पता चाहिए between three. Defense Acquisition Council के बारे में कुछ important चीजें पता चाहिए. It is headed by Defense Minister and is responsible for giving policy guidelines for acquisition based on long-term procurement plans. It also clear all acquisition, including both imported and those produced indigenously or under a foreign license. It was formed after a group of ministers' recommendation on reforming the national security system in 2001 after Kargil war. उनके recommendation के बाद we had this Defense Acquisition Council, Defense Acquisition Council. तो ये चीजें आपको पता चाहिए. Next is आपको और एक मिसाइल पता चाहिए, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल. स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, इट इज व्हाट? एयर टू सरफेस मिसाइल, एंड इट इज इक्विप्ड विथ स्टेट ऑफ art millimeter wave seeker. So it has high precision and it can attack tanks at a very high precision. तो ये आपको पता चाहिए. इसको क्या बोलते हैं? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, ये भी पता चाहिए. एंड इट इज व्हाट? इट इज आर्मर ग्रेड मिसाइल developed by DRDO, and it has both lock on before launch and lock on after launch capabilities. So you can decide on the target before launch also and after launch also you can decide. तो ये आपको पता चाहिए. stand off anti tank missile which is in news. तो ये भी पता चाहिए, ये भी पता चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड और कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेते हैं. दैट इज Akash new generation missile is also in news. It is a medium range mobile surface to air missile defense system developed by DRDO. तो ये NG is what? New generation. तो ये आपको पता चाहिए. Range is what? 60 kilometers and can travel at 2.5 times the speed of the sound. तो इसको हम क्या बोलेंगे? Supersonic बोलेंगे. And developed by Defense Research and Development Laboratory Hyderabad in collaboration with other DRDO laboratories. तो ये कुछ important चीजें with respect to आपको पता चाहिए. with respect to missile system कुछ important चीजें आपको पता चाहिए. We started with what? We started with one important news, that was a airborne early warning system in the form of Tundra satellite system which has been developed by Russia. हमने airborne early warning system देख लिया इंडिया का. We have a Falcon system, airborne early warning system which we have got from Israel. Then we saw anti-ballistic missile system S-400 देख लिया हमने. पृथ्वी and इंडिया का anti
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम भी देख लिया, विच हैज 2 पार्ट, अश्विन एंड पृथ्वी 2 पार्ट है वो देख लिया। देन वी सॉ थर्ड किसका है वो देख लिया हमने, आयरन ड्रोम देख लिया हमने, पेट्रॉइड सिस्टम देख लिया, पेट्रॉइड। देन वी सॉ बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल का डिफरेंस देख लिया, अग्नि पी देख लिया। देन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल का डिफरेंस देख लिया, हाइपरसोनिक मिसाइल्स आर इन न्यूज, वो भी चीजें हमने देख ली, वो भी चीजें देख ली। सुपरसोनिक क्या होता है वो भी देख लिया, रैमजेट एंड स्क्रैमजेट का डिफरेंस देख लिया, ब्रह्मोस मिसाइल देख ली एंड एमटीसीआर ग्रुप देख लिया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम देख लिया। देन वी लुक्ड इनटू मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम हो गया। देन एनएसजी देख लिया हमने वैसेनार एग्रीमेंट देख लिया हमने। Sorry to pause you in between, but make sure you pause this video and subscribe to the channel because 80% of you are not subscribing. I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers. Thank you. If you like our way of teaching and if you want to cover entire current affairs of 2 years, you can join our Target 140 plus current affairs batch, where we have covered current affairs of last 2 years in the most comprehensive way, linking current with static. Moving forward, I want to tell you with respect to current affairs, I want to tell you about an important topic, that is, what do you understand by flavonoids? So these are important chemicals which have been recently in news, and these are phytonutrients which are present in fruits and vegetables. So these are polyphenol phytonutrients which are present in fruits and vegetables, and they have unique property. These nutrients are antioxidant and anti-inflammatory. So in our body we generate lot of free radicals which affects our cell, which causes cancer, which causes inflammations. To tackle these free radicals, what we need to have is antioxidants. So these antioxidants is in the form of flavonoids which we need to have. Why do we need to have fruits? Is because it contains flavonoids, and these flavonoids along with carotenoids also give color to the fruits. Color जो आता है is because of flavonoids and carotenoids, तो ये आपको पता चाहिए. Next is these flavonoids protect, as they are antioxidant, they protect our heart, liver, kidney from various diseases such as inflammatory diseases. Cancer से protect करता है. And recently it was in news because Agarkar Research Institute have successfully synthesized such flavonoids in an artificial situation. तो ये एक important news आपको पता चाहिए. Moving forward, there are multiple vitamins during COVID time. We took multiple vitamins which are antioxidants. तो antioxidants कौन से vitamins है? विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई आर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स, तो ये आपको पता चाहिए. जब भी हम विटामिन्स की बात करते हो, दीज आर न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट in our body, essential component of our food, essential component to run our body, to run various functions in our body in an effective way. तो बहुत important part है. Vitamins are divided into 2 parts, that is fat soluble vitamins and water soluble vitamins. तो ये आपको पता चाहिए. Fat soluble are A, D, E, K and water soluble are vitamin B and C. तो ये differentiation आपको पता चाहिए. NCERT में as हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मॉड्यूल में भी हमने पूरा NCERT का बेसिक्स कवर किया है. जो भी करंट अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो करंट का स्टैटिक पार्ट जो NCERT में दिया है वो कवर करेंगे. तो NCERT में यू फाइंड दिस चार्ट वेयर various vitamins, the diseases caused by it and symptoms caused by it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजुअली यूपीएससी ask questions from this side, तो ये आपको पता चाहिए. तो फर्स्ट इज विटामिन ए के बारे में पता चाहिए. विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ देयर इज लॉस ऑफ विटामिन ए, व्हाट हैपेंस इज लॉस ऑफ विजन, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर विजुअल, in our color memory and having good vision. तो vitamin A is important and vitamin A is usually present in vegetables, papaya. तो उस perspective से आपको पता चाहिए. Then we have vitamin B1, and if deficiency of B1 causes beriberi, एक important disease है which you should know, and it leads to muscle weakness and less lack of energy, lack of stamina. तो उस perspective से आपको पता चाहिए vitamin B1 causes beriberi disease. Next is vitamin C, which usually everyone consume during COVID time. Vitamin C के deficiency से what you have is scurvy, which leads to bleeding gums and the wounds take longer time to heal. तो ये आपको पता चाहिए. Vitamin D के deficiency से we have rickets which where the bone becomes soft. तो ये भी आपको पता चाहिए.
नॉट जस्ट दीज वाइटामिन्स बट सम मिनरल्स भी आपको पता चाहिए, जैसे कैल्शियम की वजह से भी व्हाट वी हैव इज बोन एंड टूथ डिके होता है, वीकनेस इन द बोन आता है, एंड आयोडीन डिफिशिएंसी से व्हाट वी हैव इज गॉइटर, दैट इज द हमारा जो ग्लैंड है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसका स्वेलिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉइटर बोलते हैं। तो ये आपको पता चाहिए। एंड once we have deficiency of iodine, there is increase in weight, there's puffiness, there's graying of hairs, there's loss of hair, तो ये सब कुछ होता है। एंड मेंटल स्टेबिलिटी भी, मेंटल डिसेबिलिटी भी इन चिल्ड्रंस आ जाती है बिकॉज ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी। एंड लास्ट इज आयरन डिफिशियंसी। इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू कि आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होता है, एंड व्हेनेवर देयर इज अनीमिया व्हाट हैपेंस इज ऑक्सीजन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ इफेक्टिव वे, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, and because of hemoglobin concentration oxygen is not able to be distributed, and what we have is weakness in the body because of iron deficiency। तो ये सबसे important चीज with respect to vitamin deficiency जो NCERT में दिए हैं, जो important है आपको पता चाहिए। So beriberi is caused by vitamin B1 deficiency, C is scurvy आपको पता चाहिए, antioxidant कौन से विटामिन्स है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल, ये आपको सब कुछ पता चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, एज यू नो कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स EV revolution, electric vehicle revolution, and one of the most important components of EV is batteries. Usually we were using lithium ion batteries. Lithium ion batteries में what we have is, any battery what we have is, we have a cathode, we have a anode and a इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट होता है या जो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। नाउ द रिसर्च और द यूज ऑफ बैटरीज आर स्टार्टिंग टू मूव फ्रॉम लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट टू सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, एंड दीज टाइप ऑफ बैटरीज आर नोन एज सॉलिड स्टेट बैटरीज, वेयर we have solid electrodes and solid electrolyte instead of polymer gel. Instead of gel what we have is solid electrolyte। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है which you should know। Instead of liquid जो बीच का पार्ट होता है where the ions are transferred, ये क्या होता है, लिक्विड या जेल फॉर्मेट में होता है। Now it has been replaced by solid कंपोनेंट। तो ये आपको पता चाहिए, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बैटरीज। आपको पता होगा, ये न्यूज में है। एंड देयर आर सो मेनी बेनिफिट ऑफ दिस सॉलिड स्टेट बैटरीज व्हिच यू शुड नो। फर्स्ट इज दे हैव हाई thermal stability, less self discharge, high energy density, high capacity and more charging cycles. So these have various benefits, and now the use would be shifting from lithium ion batteries to solid state batteries। तो ये एक important चीज पता चाहिए, पता चाहिए। Next is Niti Aayog and various ministries came together to launch an important mission with respect to promoting EV vehicles and to promote manufacturing of batteries। तो वो एक important mission आपको पता चाहिए, that is National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage। तो ये important mission है, that is National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage, and the aim of this mission is to promote clean, connected, shared, sustainable mobility initiative। तो जो भी हमारा mobility होना चाहिए, that should be clean, sustainable, shared and driven by electric vehicles। तो ये इस टाइप के मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। एंड अंडर दिस मिशन वी आर प्रमोटिंग व्हाट, फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम ऑफ ईवीज, EV components and batteries। तो इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। Those who are ready to manufacture these components in India and जो भी प्राइवेट प्लेयर्स है, जो भी EV मैन्युफैक्चर करेगा, बैटरीज मैन्युफैक्चर करेगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो ये फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है इन विच वी आर सपोर्टिंग EVs, EV कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, एंड this phase manufacturing program is valid from 2019 to 2024। तो ये भी important news पता चाहिए। As I already told you कि presently which we are using lithium ion batteries, and for production of lithium ion batteries what we require is lithium। तो lithium is an important element which is required for production of lithium ion batteries, and until we have lithium we cannot have EV revolution। With respect to lithium आपको पता चाहिए, its atomic number is 3 atomic number, it's a soft silvery white alkali metal है। तो ये आपको उसके characteristics पता चाहिए, and it's highly reactive and flammable है, inflammable है, and it never occurs freely in nature due to its high reactivity। तो ये भी आपको पता चाहिए, highly reactive है। ठीक है। Next is what are the use of lithium। So lithium is not used just for production of batteries, but it has
वेरियस एप्लीकेशन सच एज हीट रेजिस्टेंट ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेरामिक्स, फ्लक्स एडिटिव फॉर आयन, स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्शन, लिथियम बैटरीज, लिथियम आयन बैटरीज हो गया, तो इसमें सब में लिथियम यूज होता है। सेकेंडली, लिथियम इज ऑल्सो यूज्ड टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन डिसऑर्डर्स, तो उसमें भी लिथियम देते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन। तो बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, डिप्रेशन में व्हाट वी गिव इज लिथियम, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग बोलते हैं इसको, मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको भूलना नहीं है जब भी हम लिथियम की बात करते हैं। एट द ग्लोबल लेवल लिथियम इज मेजरली फाउंड इन लिथियम ट्राइंगल, तो लिथियम इंडिया में बहुत कम, मोस्ट ऑफ द लिथियम ऑलमोस्ट 100% इज इंपोर्टेड and imported from various parts of the world, but majorly lithium is produced in lithium triangle. It's a part in Argentina, Bolivia and Chile. उसका क्या बोलते हैं, एक रीजन है इन साउथ अमेरिका विद इन दीज 3 कंट्रीज। तो ये 3 कंट्री के जो रीजन है, इन बिटवीन का रीजन है, दिस इज नोन एज लिथियम ट्राइंगल वेयर मैक्सिमम लिथियम रिजर्व इज प्रेजेंट, तो ये आपको पता चाहिए। एंड बोलिविया इज द होम फॉर वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिथियम रिजर्व, 1/3 ऑफ द लिथियम ट्राइंगल, तो ये आपको पता चाहिए। बोलिविया, अर्जेंटीना एंड चिली, उसके आसपास ये रीजन है, दैट इज लिथियम ट्राइंगल विच हैज वन ऑफ द हाईएस्ट लिथियम रिजर्व। इंडिया currently imports all its lithium needs, पता चाहिए। and but recent survey by Atomic Minerals Directorate that has shown that lithium reserve is present in Mandya district in Karnataka. They have found this reserve there, तो ये भी एक important fact आपको पता चाहिए जब भी हम लिथियम की बात करते हैं। Moving forward, जब भी हम ऑटो इंडस्ट्री, ईवी इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यू मस्ट बी नोइंग देयर इज अ सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेमीकंडक्टर्स, तो ये बेसिक डिफरेंस आपको जानना जरूरी है। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, दीज आर मटेरियल विच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो दीज आर दे फॉल इन बिटवीन ऑफ 2 components. एक तो होता है कंडक्टर which allows complete passage of electricity, electrons, and there are insulator which does not allow movement of any electrons. लेकिन semiconductors are type of material where they fall in between. They sometimes allow, they sometimes restrict, so they can be regulated. The flow of current can be regulated through semiconductors. And these semiconductors can be pure metals such as silicon, germanium, and or compounds such as गैलियम आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड, तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं तो सेमीकंडक्टर्स के बारे में। एंड दे हैव वाइडर एप्लीकेशन, सारे आईटी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, wherever we require chips, wherever we require automation, we would require semiconductors, तो ये आपको पता चाहिए। एंड what India recently found that we do not have lot of experience with respect to synthesis of chips and manufacturing of chips because we lacks generation of semiconductors. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक important program launch किया है, that is Design Link Initiative Scheme, scheme। तो ये आपको पता चाहिए Design Link, it was announced by METI, that is Ministry of Electronics and Information Technology, where they provide financial incentives and design infrastructure support will be extended to domestic companies, startup and MSME across various stages of development, deployment of semiconductors, design for integrated circuits, chipset, system on chip, system and IP course, semiconductor link design for over a period of 5 years. तो सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर भी सपोर्ट करेगा। who is interested in designing these chips, semiconductor chips, who is interested in deployment of semiconductor designs in integrated circuits, तो जो भी चिप डिजाइन करना चाहता है, मैन्युफैक्चर करना चाहता है, सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करना चाहता है, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट, फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहा है। एंड सेकेंडली डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर रहा है फॉर एमएसएमईज एंड स्टार्टअप। सेकेंडली 5 years का प्रोग्राम है, initiative announced by MITI है, but it is going to be implemented by CDAC, that is Center for Development of Advanced Computing। ये क्या करने वाला है, इसको सपोर्ट करने वाला है। तो CDAC के बारे में पता चाहिए आपको। तो डिजाइन लिंक इंसेंटिव इज to push startups, MSMEs to manufacture chips, to manufacture semiconductors in India। तो ये आपको पता चाहिए डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, किसने अनाउंस किया है। CDAC के बारे में आपको पता चाहिए, दैट इज
it's an important organization with respect to science and technology, that is Center for Development of Advanced Computing, आपको पता चाहिए. And it has been developed, this organization is under MITI, that is Ministry of Information and Information Technology, set up in 1988 to build supercomputers. Not just build supercomputers, it carries out research and development in the field of IT and electronics. तो ये आपको पता चाहिए. And this organization was built when Rajiv Gandhi went to USA, but he was rejected. He wanted supercomputers from USA, but USA rejected that India would USA rejected India's request to for a supercomputer. So he came back to India and set up this organization, CDAC, to manufacture supercomputers. So India's first supercomputer was Param. Recently, we have an important mission with respect to supercomputers, that is National Supercomputing Mission. It's an initiative of Ministry of Science and Technology and Ministry of Information Technology. तो Ministry of Science and Technology के लिए कौन हेड कर रहा है ये मिशन? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. एंड मिट्टी के लिए CDAC. मिट्टी के लिए कौन? CDAC. तो ये आपको पता चाहिए. ठीक है. Moving forward, आपको पता चाहिए under National Supercomputing Mission, what we are trying to do is we are trying to build 70 clusters, 70 cluster of 70 supercomputers in various academic and research institute across India. इसके अंदर we developed Param Shivai in last 2019-20 में we had Param Shivai, which was established at BHU. Recently we developed Param Pravega at Indian Institute of Science under this National Supercomputing Mission. तो ये आपको पता चाहिए. तो इसमें हम 7 years में we are going to build 70 supercomputers. इसके अंदर there are 3 phases. First phase is where we would focus on assembling supercomputers in India. Second phase is manufacturing important components of supercomputers in India. And in the third phase we would be designing supercomputers in India. तो ये एक important चीज with respect to supercomputers आपको पता चाहिए. Whenever we are talking about supercomputers, semiconductors, you should know about superconductors. तो ये एक अलग कैटेगरी ऑफ मटेरियल है. इसको हम क्या बोलते हैं? सुपरकंडक्टर्स बोलते हैं. हमने सेमीकंडक्टर्स देखा. नेक्स्ट इज superconductor. Superconductors are material that could conduct electricity with no resistance. So these can conduct इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेजिस्टेंस. तो क्या है कि तो ये आपको पता चाहिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सुपर कंडक्टर्स? दे आर मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस. अनलाइक फेमिलियर कंडक्टर्स सच एज कॉपर, स्टील, सुपर कंडक्टर्स कैन कैरी करंट इंडेफिनेटली विदाउट लूजिंग एनर्जी. लेकिन नॉर्मल जो कंडक्टर्स है जैसे हमारा कॉपर वायर्स, उसमें क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है, लॉस ऑफ बिकॉज ऑफ हीटिंग हो जाता है. लेकिन सुपर कंडक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है. एंड तो ये आपको पता चाहिए. सुपर कंडक्टर्स आर द नेक्स्ट फ्यूचर. सो क्योंकि दे कैन ट्रांसमिट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी एंड they also have several other very important properties such as the fact that no magnetic field can exist within superconductors. तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता है. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए. सो सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में पता चाहिए. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिटिकल टेम्परेचर? तो क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टर इज अ टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रिकल resistivity of a metal drops to 0. तो at what temperature the metal can act as superconductor? उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? critical temperature. A temperature below which at that temperature the metal acts as superconductor. तो ये आपको पता चाहिए. उसको हम critical temperature बोलते हैं. And it is the transition is so sudden and complete. The transition after achieving critical temperature is so sudden and complete that it appears that a transition to a different phase of matter. And this superconducting phase is described in BCS theory. तो इसके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता चाहिए it's a point after which the metal act as a superconductor where there is zero zero resistance. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो हम लेने वाला है इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. it's always in news, Directorate of Revenue Intelligence, and I think many students might miss this organization. That's why we are taking this organization. So basically it's a apex anti-smuggling agency of India constituted in 1957. Though it's not a statutory body, but आपको पता चाहिए apex anti-smuggling body है of Government of India, and it works under Central Board of Indirect Taxes and Customs.
तो सीबी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के अंदर काम करती है, एंड दिस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस it comes under Ministry of Finance. It comes under Ministry of Finance, as everyone knows. Secondly, it is tasked, क्या इसका role है? It is tasked with detecting and curbing smuggling of contraband, including drug trafficking and illicit international trade in wildlife and environmentally sensitive items. So जो भी smuggling हो रहा है of any item including wildlife trade, including drug trafficking, is detected and curbed through this important organization, and it's also responsible for combating commercial fraud related to international trade and evasion of कस्टम ड्यूटीज. तो इस पर भी ये काम करता है. तो इसका जो रोल है, इट्स गोइंग टू बी अ वाइडर रोल. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट पता चाहिए. ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो गया. सेकेंडली, कॉम्बैटिंग कमर्शियल फ्रॉड्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड एंड इवेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी इज लुक्ड आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन. एंड DRI हैज आल्सो बीन डेजिग्नेटेड एज लीड एजेंसी फॉर द एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर. तो इट्स अ लीड एजेंसी फॉर एंटी स्मगलिंग नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर. तो उसका एक लीड एजेंसी है. तो नेक्स्ट इज another important fact with respect to current affairs जो DRI के साथ में आपको पता चाहिए, is Operation Molten Metal, which was launched by DRI. Operation Molten Metal. तो this important mission was launched by Director of Revenue Intelligence, and this operation, the aim of this operation was to nab several Indians and foreign nationals suspected to be indulging in smuggling of gold into India from Hong Kong using air cargo routes. तो उसको डिटेक्ट करना, ये इस मिशन का इंपॉर्टेंट रोल था, एक मिशन का इंपॉर्टेंट रोल था. नेक्स्ट इज, जब भी हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स की बात करते हैं, देयर इज वन मोर ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा न्यूज में होती है, which is also comes under this. तो उसका नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स. सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी अलग है, which we are going to look, लेकिन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स आपको पता चाहिए. इट इज headed by Narcotics Commissioner, who is an IRS officer from IRS IT, indirect taxes, IRS GST से Narcotics Commissioner होता है. हेडक्वार्टर कहाँ है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स. हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्वालियर में है. द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एज आई सेड, इज अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. एंड बेसिकली द मेन रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, the main role of this organization is to stop opium production. तो प्रोडक्शन लेवल पर ये काम करता है. एंड सेकेंडली, रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस. तो दो रोल है इसका. तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स का दो रोल क्या है? एक तो है स्टॉप ओपियम, इलीगल ओपियम प्रोडक्शन, एंड सेकेंडली, opium or narcotics drugs and psychotropic drugs are also used for medicinal purposes for various diseases. तो उसके लिए जितना भी रिक्वायर्ड है उसका रेगुलेट करना, उसका प्रोडक्शन रेगुलेट करना. तो होपफुली यू आर एबल टू गेट थ्रू दिस सेशन. नेक्स्ट इज जब भी हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की बात करते हैं, आपको नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में पता चाहिए. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1986 अंडर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंडर ये एस्टैब्लिश हुआ था. एंड अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है इसका? अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन है? हु इज द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज. ये एजेंसी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो ये आपको पता चाहिए. द प्रीवियस टू ऑर्गेनाइजेशन कम्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो एनी क्राइम कंडक्टेड अंडर दिस नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस. सो इफ यू आर फाउंड विथ एनी ड्रग्स, you would be charged under this act, narcotic drugs and psychotropic substance, and you would be matlab the role of narcotics control bureau is to stop drug abuse, not drug production but drug abuse. तो drug abuse किसका रोल है? इन्वेस्टिगेट करना cases with respect to drug abuse and drug trafficking is narcotics control bureau. तो ये डिफरेंस आपको जानना बहुत जरूरी है. ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स एंड नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का क्या डिफरेंस है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, प्रोडक्शन कौन रोकता है, एंड ड्रग अब्यूज कौन रोकता है, इन्वेस्टिगेट कौन करता है, एनफोर्स कौन करता है, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कौन इंप्लीमेंट करता है, ये एक्ट कौन रोकता है ड्रग अब्यूज, ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज़ इज विद रिस्पेक्ट टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. इसका पहले नाम क्या था? एनफोर्समेंट यूनिट था.
and this was initially formed as enforcement unit under Department of Economic Affairs for handling FERA related crimes. 1957 में क्या हुआ, इसको रीनेम कर दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लिए. नाउ इट इज पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट इज मैंडेटेड विद टास्क ऑफ एनफोर्सिंग 2 स्पेशल फिस्कल लॉस. कौन सा है? फेमा एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो ये 2 इंपॉर्टेंट एक्ट पर के इंप्लीमेंटेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज, आपको पता चाहिए व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज of union. सबको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज. वी डू नॉट हैव अ नेशनल लैंग्वेज, वी हैव ऑफिशियल लैंग्वेज. तो ये आपको पता चाहिए. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ये आपको पता चाहिए. 8 शेड्यूल में वी हैव शेड्यूल लैंग्वेजेस. वी हैव 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस. इनिशियली 14 थे, लेकिन 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट एंड 92nd अमेंडमेंट से वी हैव नाउ 22 लैंग्वेजेस. नेक्स्ट इज इंग्लिश. So English के बारे में as you must be knowing कि article there are few important articles with respect to languages and use of English जो आपको पता चाहिए. 343(2) important है. 343(2) said कि till 26 Jan 1965 we can use English as an official language for the official purposes. लेकिन 243(3) क्या बोला? 343 subsection 3 that parliament can extend this date जो 26 Jan 1965 कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किया था, वो पार्लियामेंट एक्सटेंड किया था. एंड दस पार्लियामेंट एक्सटेंडेड थ्रू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट. इट एक्सटेंडेड फर्दर. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चाहिए. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिसेंटली देयर वाज अ इंसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ लैंग्वेज इन कोर्ट्स. तो उस पर्सपेक्टिव से पता चाहिए. आर्टिकल 348 क्या बोलता है, तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 348 क्या बोलता है? लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सो इट सेज अनलेस पार्लियामेंट चेंजेस द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वुड बी इंग्लिश. तो ये किसने बोला है? 348. लेकिन क्या है इसमें और एक इन्होंने सबसेक्शन दिया है. क्या दिया है? तो गवर्नर, this is in constitution, governor with previous consent of president authorize use of Hindi or any other language used for official purpose in proceedings in high courts. तो ठीक है, ये सिर्फ प्रोसीडिंग के लिए अगर गवर्नर कैन चेंज द लैंग्वेज विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली फॉर प्रेसिडिंग, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है. नथिंग वुड अप्लाई टू जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट. तो ये किस में दिया था? कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था कि दिस the power of governor is only with respect to proceeding but is not related to judgment, decree and order of high court. But this was later changed through official language act. तो official language act में क्या किया गया? तो not just proceeding, this act empowers governors of a state to, with previous consent of president, authorize the use of Hindi or as Hindi, the official language of the state, in addition to English, for the purpose of any judgment, degree, order passed by High Court of that state. So, not just for proceeding, but for other purposes such as judgment, decree, and order के लिए भी the governor can allow use of other language with the consent of president. ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए. ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में डिग्री क्या बोलते हैं, जजमेंट, ये अलाउ किया गया था. एंड it further provide that where any judgment, decree, order is passed in any such language, it shall be accompanied by translation of the same in English. तो जब भी दूसरे लैंग्वेज में जजमेंट पास किया गया था, उसका एक कॉपी इंग्लिश में होगा. द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेक्स नो मेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेयर इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज which in which the proceedings are conducted. तो जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में किसके बारे में बोला है? it is only be said by high court. तो सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज कौन सा है? Its only language is only we have only English as a language. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या लैंग्वेज है? तो यहां भी क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्या है? द लैंग्वेज ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट टू हाई कोर्ट जनरली रिमेन्स द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ Civil Procedure Code 1908 till the state government determines. So till जो लैंग्वेज सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड था 1908, वही कंटिन्यू रहेगा till the state government decide, and the state government has to declare
the state government has the power to declare any regional language as an alternative for proceeding of the court. However, judgment, order, decree may be passed by magistrate in English. The recording of the evidence shall be done in the prevailing language of the state, and in case the pleader being unacquitted in English, the translation service would be provided with a request to the court. तो ये आपको पता चाहिए. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में वही लैंग्वेज रहेगी जो ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड था. एंड द स्टेट गवर्नमेंट may declare any regional language as an alternative language. तो ये भी अलाउ है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज अ राइट टू चेंज. यहाँ स्टेट गवर्नमेंट हैज, वहां ऊपर अगर हाई कोर्ट का चेंज करना है तो गवर्नर विद अ कंसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट. तो ये भी आपको पता चाहिए. लैंग्वेज रिलेटेड वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म विच इज इन न्यूज is with respect to giving classical language status. Classical language status बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में होता है. एंड आपको पता चाहिए कि what are the criterias through which a language has been given classical status and why it is important. तो ये आपको पता चाहिए. तो classical language का status किसको मिलता है? The language which has extraordinary antiquity of its earliest transcripts or verified history over a period of 1500 to 2000 years का उसके पास कुछ manuscripts है, transcripts है. And we know that the language has a age of at least 1500 to 2000 years. Next is a body of ancient literature or text which is considered valuable heritage by generation of speakers. So एक manuscripts या literature चाहिए which is considered as a heritage, valuable heritage. Third is literature tradition should be origin unique and certainly not had from other language community. should तो जो literature heritage है should be unique and original. ये आपको पता चाहिए. एंड द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग ड्राइवर्स फ्रॉम मॉडर्न मे आल्सो बी discontinued among the classical languages and its later form or its sprouts. तो ये आपको पता चाहिए. तो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डाइवर्स फ्रॉम मॉडर्न languages, there may also be discontinuity among the classical language and its later form or its sprouts. तो जो ओरिजिनल फॉर्म था एंड अभी का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें क्या है, डिफरेंसेस रह सकते हैं. तो ये आपको पता चाहिए. तो ये 4 क्राइटेरियाज विद रिस्पेक्ट टू क्लासिकल लैंग्वेज यू शुड नो. एंड इंडिया में प्रेजेंटली वी हैव 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस. कौन से? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम एंड उड़िया. Marathi is also been said कि उसको भी status देना चाहिए. So we are working towards it. But अभी presently we have 6. And what are the advantages? So ये आपको advantages पता चाहिए कि what are the advantages given to that language once it is declared as classical language. तो ये आपको पता चाहिए. There are 2. So the following benefits are available for languages which are declared as classical language. तो first क्या है? 2 major annual international awards for scholars of eminence in the concerned language. तो 2 annual awards दिए जाते हैं for scholars. Secondly, a center for excellence for studies of classical language for the respective classical language has been set up, and the UGC can be requested to create or to start at least one central university, a certain number of professional chairs for classical language for scholar of eminence in the concerned language. तो ये आपको पता चाहिए. तो ये 3 important benefits है with respect to classical language. तो एक तो है center of excellence, next is international awards, and UGC can be requested to create or to start at least in central university a certain number of professor chairs for classical languages. तो central universities में what we can have is we can have minimum number of professor chairs for classical languages. तो ये UGC के पास रिक्वेस्ट किया जा सकता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चाहिए. रिसेंटली महाराष्ट्र में कुछ MLA सस्पेंड हुए थे. तो ये आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू MLA सस्पेंशन. सो एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ डिफरेंट रूल, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स है विद रिस्पेक्ट टू हाउ डू डील विद MLAs हु आर डिसोबिंग और हु आर मिसबिहेविंग. तो महाराष्ट्र में क्या था कि महाराष्ट्र में इफ एनी MLA वाज मिसबिहेविंग और डिसोबिंग, स्पीकर में सस्पेंड हिम फॉर अ डे, फॉर द डेज मीटिंग. अगर इफ ही इज मिसबिहेविंग तो उतने दिन के लिए, उतने डे की मीटिंग के लिए उसको सस्पेंड किया जा सकता था. लेकिन if the same thing happens for second time in the same session, the speaker may direct for longer period. तो इसमें क्या था कि अगर
the same member is been misbehaving for twice, so इस condition में speaker had the right to extend according to for a longer time indefinitely. ये क्या है? ये महाराष्ट्र का रूल है, महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रूल है, which was overturned by Supreme Court and it gave various reasons for it. लेकिन ये आपको पता चाहिए था कि महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेकिन इसके साथ आपको ये भी पता चाहिए कि with respect to suspensions of members of parliament there is rules with respect to लोक सभा एंड राज्यसभा आल्सो. तो ये क्या रूल्स है ये आपको पता चाहिए. तो अंडर रूल्स 373, 374, 374A of the rules of procedure and conduct of business in Lok Sabha provides for the withdrawal of the member whose conduct is grossly disorderly and suspension of one who abuses the rules of the house or willingly obstructs the house. तो इसमें क्या है? The speaker can withdraw the member, but the maximum suspension as per the rules is for 5 consecutive sittings or the remainder of the sessions, whichever is the less. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 5 सेशंस मैक्सिमम है. जैसे स्टेट गवर्नमेंट में देयर वाज नो टाइम लिमिट, तो कितना मैक्सिमम सस्पेंशन हो सकते हैं, यहां मैक्सिमम सस्पेंशन कितना है? 5 सेशंस और टिल द एंड ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द सेशन व्हिचएवर इज द अर्लियर. एंड ऐसे ही सिचुएशन राज्यसभा में द मैक्सिमम सस्पेंशन ऑफ राज्यसभा अंडर रूल्स 255 एंड 256 does not exceed the remainder of the session. तो जब तक सेशन है, जैसे विंटर सेशन तक ही उसको सस्पेंड किया जा सकता है, नॉट फॉर 1 ईयर और 2 इयर्स. तो ये डिफरेंस आपको लोकसभा एंड राज्यसभा का आपको पता चाहिए. ठीक है. तो एंड दिस इज यूजुअली डन बाय presiding officer. Next is democracy report. आपको पता चाहिए, which was recently released, democracy report 2022, and this report India said कि it does not validate this report and it is anti-India report as said by Government of India. And the report आपको पता चाहिए, the title of the report is Democracy Report 2022 Autocratization Changing Nature. तो ये आपको पता चाहिए. And this report is published by Varieties of Democracy, which produces so this organization, what it does is, जो भी largest global database है with respect to democracy, over 30 million data points from 202 countries are gathered together to bring out this report. And the report classifies countries into 4 regimes based on the score liberal democratic index के basis पर 4 regimes में classify करता है कंट्रीज को बेस्ड ऑन लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स. तो ये आपको पता चाहिए. एंड इंडिया इज पार्ट ऑफ अ ग्लोबल ट्रेंड of an anti-plural global party driving countries' autocratization, which is wrong, which according to India, and I also feel this is very wrong and it is an anti-India report. लेकिन आपको for knowledge आपको पता चाहिए कि what it says is anti-plural political party driving countries' autocratization, but this is not. We have a stable democracy, though the opposition might not be strong, but our democracy is functional democracy. तो ये आपको पता चाहिए. And the rank, India's rank is 93rd according to liberal democratic index, and India figure in bottom 50. तो ये एक important चीज आपको पता चाहिए. And this report says India further degraded itself from in electoral democracy index and deliberative component index and electoral democracy index में इंडिया का क्या बोलता है, इंडिया का जो रैंकिंग है वो फर्दर डिक्रीज हुआ था. लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक स्लिप हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस डेमोक्रेसी रिपोर्ट. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इंडेक्स भी है कुछ जो आपको पता चाहिए. इट इज रिलीज बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एंड इट इज बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स. कौन से हैं? फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, इलेक्टोरल प्रोसेस, प्लूरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सिविल liberties and political culture. Per based on this we have a democracy index and India's rank is 46th. Overall India scores 6.91 and Norway has topped. So based on the functioning of democracy we have democracy index and India का rank 46th है in this democracy index. तो ये भी एक important है, पता चाहिए. democracy index, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, डेमोक्रेसी रिपोर्ट इज बाय वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी, वीडेम बोलते हैं. नेक्स्ट इज एज यू नो कि प्रेस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड अकॉर्डिंग टू रीसेंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो ये आपको पता चाहिए, इंडिया रिटेन्स 142 रैंक
out of 180 spots, and India is considered, according to this report, as one of the world's most dangerous countries for journalists. And you must be seeing there are various attacks on journalists. So उस perspective से ये report release किया गया था. And this freedom index is published annually since 2002 by Reporters Without Border. एक important organization है, वो release करता है. ये रिलीज करता है. नेक्स्ट इज अनदर इंपॉर्टेंट इंडेक्स. सी ऑल द इंडेक्सेस विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी हमने कंपाइल कर दिए. ग्लोबल गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये आपको पता चाहिए 2021 गुड गवर्नेंस इंडेक्स, एंड दिस वाज रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन. इन्होंने रिलीज किया गया था. एंड गुड गवर्नेंस डे, एज यू नो, इज ऑन 25th of December. So this good governance index is a comprehensive and implementable framework to assess the state of governance across state and union territories, which helps us to rank these states based on the measures taken to promote good governance. So basically, these are comprehensive and implementable framework to assess the state's performance with respect to good governance. So what we are doing through this index is assessing states performance with respect to steps taken to implement measures to implement good governance and to promote good governance. And the objective of this good governance index is to create a tool that can be used uniformly across the state to assess the impact of various interventions taken by central and state government, including union territories. The good governance index 2021 says that 20 states have improved on their composite good governance index over the 2019 score, and this good governance index is a biennial exercise. So every 2 years ये conduct होता है, तो ये आपको पता चाहिए. तो basically ये क्या बोलता है कि 20 states have improved on good governance index, and through this index we would be able to rank states, we would be able to compare states, and we would be able to see the impact of steps taken by central government and state government in order to promote good governance. तो ये आपको पता चाहिए. Recently, Jammu Kashmir is the first union territory where we had डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स. तो ये फर्स्ट टाइम कहां कंडक्ट किया गया था? वेयर वी आर मेजरिंग benchmarking at the district level. So this district good governance index represents next generation administrative reform in benchmarking governance at district level, prepared for extensive stakeholder consultation. तो basically through हम ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपैरिजन कर रहे हैं कि व्हाट स्टेप्स डिस्ट्रिक्ट आर टेकिंग इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड गवर्नेंस. तो ये आपको पता चाहिए. इट कंप्राइजेस मेजरिंग परफॉर्मेंस अंडर 10 गवर्नेंस सेक्टर्स, 58 इंडिकेटर्स देख रहे हैं, 116 डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, एंड दिस इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस इन पार्टनरशिप विद यूनियन टेरिटरी administration. So first was done in Jammu Kashmir recently, which was released by Ministry of Home Affairs. तो ये आपको पता चाहिए. And provides a roadmap for similar benchmarking for governance at district level for all states and union territories, starting with Jammu Kashmir, and this would be taken over for all the different states. So ये आपको पता चाहिए. Whenever we are talking about good governance, you should also know about corruption perception index. So corruption perception index is brought out by Transparency International, and which is an NGO which is based in Germany. India का rank कितना है? 85th है among 180 countries with a score of 40. And India का score क्या है? It has remained stagnant over the past decade, and some mechanism that could help bring corruption are weakening. तो ये आपको पता चाहिए. As RTI has been, there are various amendments in RTI which has affected its performance. So our rank has been stagnant, though we have taken various steps, but these are not actionable steps, and the laws are not getting converted into actions. तो ये आपको पता चाहिए. Denmark, New Zealand, Finland have topped index, corruption perception index. तो ये just as I told you, these are few of the important steps which are suggested by Transparency International to tackle corruption. तो कौन से है? तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, नेक्स्ट इज कंट्रोल पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, उसके बाद है रेगुलेट लॉबिंग, नेक्स्ट इज एम्पावर सिटीजन, नेक्स्ट इज एंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस, एंड टैकल प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. तो ये सारे कुछ मेजर्स है विच यू कैन राइट इन मेंस आल्सो with respect to how to tackle corruption. Next is Transparency International ने also brings out two important what do you say reports. कौन से है?
ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर एंड ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट। तो ये अनदर टू इंपॉर्टेंट चीज है आर ब्रॉट आउट बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। तो हमने किससे स्टार्ट किया, लेट्स रिवाइज। हमने किससे स्टार्ट किया, डीआरआई से स्टार्ट किया। हमने उसका रोल देखा, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर देखा है। हमने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स भी देखा जो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। हमने एनसीबी भी देख लिया, हमने ईडी भी देख लिया, ठीक है, ईडी भी देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, ईडी भी देख लिया हमने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। हमने लैंग्वेजेस देख लिए, लैंग्वेजेस हमने देखा इंग्लिश कब तक यूज किया जा सकता है। हमने कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज, हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट में। तो ये तीनों का क्लैरिटी, इंग्लिश हमेशा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या हो सकता है, इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइडेड ओनली फॉर प्रेसिडिंग कि गवर्नर विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडिंग में लैंग्वेज चेंज कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में सब कुछ चेंज कर सकता है गवर्नर विद द प्रीवियस कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट हमने देख लिया, सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोर्ट था, जब कमेंसमेंट के वक्त कौन सा लैंग्वेज था वही कंटिन्यू है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कैन चेंज। तो ये हमने देख लिया। हमने और क्या देखा, हमने क्लासिकल लैंग्वेज देख लिया, उसके स्टेटस देख लिया, क्लासिकल लैंग्वेज एंड उसके क्राइटेरिया देखा, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एमएलए का सस्पेंशन देख लिया, एमपीज एंड एमएलए का सस्पेंशन देख लिया। देन उसके बाद हमने गुड गवर्नेंस इंडेक्स देख लिया, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स देख लिया, डेमोक्रेसी रिपोर्ट देख लिया, डेमोक्रेसी इंडेक्स देख लिया एंड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स देख लिया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स देख लिया, डेमोक्रेसी रिपोर्ट देख लिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज के सेशन में देख। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो इज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्टोरल बॉन्ड। बहुत एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल फंडिंग। इन द लास्ट सेशन हमने जब इसके बारे में देखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वन ऑफ द थिंग्स व्हाट इट सेज वाज विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग पॉलिटिकल फाइनेंसिंग, politicization so why does corruption happens is because high cost of political financing and illegal financing and so usko control karne ke liye what we have is electoral bonds. This scheme, as you should know, was introduced in Finance Bill 2017 and was notified in 2018. तो कब start हुआ, कब, ये आपको पता चाहिए with respect to electoral bond. Basically, what do you understand by electoral bond? These are financial instruments for making donations to political parties. And in this session, we are not just going to cover this, but हम और एक चीज देखेंगे, तो वो भी हम करेंगे, वो भी is related to political financing, तो that will also be taken care of. तो इसमें क्या है, it's a financial instrument for making donation to political parties, and these bonds are issued in the multiples of 1,000, 10,000, lakh, 10 lakhs and 1 crore without any maximum limit. तो आप कितना भी donate कर सकते हो. Taking these bonds, where do you get this electoral bond? SBI में मिलते हैं, and this bonds has a validity of 15 days. तो ये आपको पता चाहिए. Once these bonds are issued, these has to be क्या बोलते हैं, redeemed within 15 days. They have to be redeemed within 15 days. उसके बाद ये invalid हो जाते हैं. And these bonds can be redeemable in designated account of a registered political party. So any registered political parties, here also there has been a condition given by in the scheme that which political parties. So you might start a political party and start saying कि give me electoral bonds. So no, there is a criteria. तो ये आपको हम आगे बताएंगे. So these bonds, कौन इस bonds को ले सकता है from SBI? तो the thing is important. Who these bonds are available for purchase for any person who is citizen of India or incorporated or established in India. So any company which is incorporated in India, and secondly who is a citizen of India, ये available, मतलब these can be purchased by them, and they are available for a period of 10 days each in the month of January, April, July and October. तो 4 months के first 10 days में ये available होते हैं. So person being an individual can buy bonds either singly or jointly with other individual. तो jointly भी बात कर सकते हो. And donor's name is not mentioned in the bond. So कोई भी जाके, लेकिन जो भी bond रहेगा
उसमें ये है, उसमें एनोनिमिटी इंश्योर करने की कोशिश की है, द डोनर्स नेम इज नॉट देयर इन द इलेक्टोरल बॉन्ड। सेकेंडली, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हु कैन एक्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, तो ये कंडीशन आपको पता चाहिए, ओनली पार्टीज रजिस्टर्ड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर्ड अंडर 1951 रजिस्ट्रेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड है could receive donations under electoral bond, and they should, second criteria क्या है, they should have तो उनका जो voting percentage, they also should not have secured less than 1% of the vote polls in the previous election. So more than 1% votes आपको चाहिए in the previous election to accept donation. तो ये दो criteria important है. Simultaneously, there is another mechanism which was in news recently, was with respect to electoral trust. तो ये आपको पता चाहिए. What is electoral trust and why they are required? So basically, electoral trust is a trust set up by a company. So these trusts are set up by a company with the sole objective to distribute the contribution received by it from other companies and individuals to the political parties. So basically, जो भी एक trust develop करते हैं, by companies develop a trust, and this trust is used to distribute money which they have received from companies by that respective company or other companies, and this trust, the role of this trust is to distribute money, political donation to various political parties. तो basically क्या है, it is set up by company with the sole objective, इसका दूसरा कोई objective नहीं है, the only objective is to distribute money, the objective is to distribute the contribution received by it from other companies and individuals to the political parties. And in 1931 in 2013 क्या हुआ था, government had brought out electoral trust scheme, and this scheme, through this scheme, government specified the eligibility and procedures for registration of electoral trust. तो through this scheme, government specified कि कौन register कर सकता है, कौन eligible है, and it has been noted that only companies which are eligible to make application for approval of electoral trust, which are registered under Section 25 of Companies Act 1956. So those companies who are registered under Section 25 of 1956 can apply to make a electoral trust. तो ये भी एक important fact आपको पता चाहिए. You must be knowing कि 2017 के बाद कुछ important ऐसे decision लिए गए that made political fundings from corporate very easy, and these are some of the negative points which you should know. Mains perspective से भी important है, लेकिन आपको पता चाहिए कि amendment to Companies Act जो 2013 का एक्ट था, उसको क्या किया, फाइनेंस बिल 2017 में सेक्शन 128 अमेंड किया गया, एंड देयर वर सर्टेन चेंजेस ब्रॉट आउट टू दिस पॉलिटिकल फंडिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट्स. सो बेसिकली अर्लियर क्या होता था, 2013 के एक्ट के अंडर ओनली प्रॉफिट मेकिंग डोमेस्टिक कंपनीज कुड कंट्रीब्यूट, लेकिन post this amendment any loss making companies can also contribute, and they can keep this contribution hidden from their account, or they cannot it was not compulsory to disclose their receipts. तो ये एक important था. Secondly, earlier the limit was 7.5% of their total revenues or total profits could be given as political donation. लेकिन now this criteria has also been removed. This criteria has been also removed, and as I already told you, the amendment. With this amendment, corporations are free to donate any amount and are not liable to declare the recipients of their donations. So they can declare any amount to anyone without declaring who is the recipient. So basically, what is happening through this is what threat we face is crony capitalism. So if any company gets a tender from Government of India and he can give kickbacks. He can give kickbacks. तो ये अभी kickbacks तो crony capitalism को push कर सकता है ये amendments. तो ये आपको पता चाहिए. With respect to political funding and election expenditure, आपको ये पता चाहिए. So election expenditure क्या होता है? What is the expenditure limit? Recently there were changes with respect to it. तो expenditure limit for election. So what is counted in election expenditure? तो ये आपको पता चाहिए. It is the amount that an election candidate is legally allowed to spend and must account for their election campaign, which includes expenses for public meeting, rallies, posters, banners, vehicles, and advertisement. So what would happen is, if tomorrow Ambani decides to conduct an election, he has billions of rupees, so he can spend
an X amount on advertisement, social media person, and he can influence. So to avoid that, Government of India through election, so not Government of India, Election Commission of India has set a certain amount beyond which you cannot spend for election campaigning, beyond which cannot be spent for election campaigning. तो ये आपको पता चाहिए. So this election expenditure is different for different states. It is different for state legislature and different for Lok Sabha. So according to the size of the constituency and according to size of the state, the expenditure varies. So ये आपको पता चाहिए. Recently this limit was increased, which we are going to look. But before that, so if you spend more than that, or if you do not give account of whatever you have spent during election campaign, you might be debarred. तो ये आपको पता चाहिए. तो basically this is given in section 77 of Representation of People's Act, which says each candidate must keep a separate and correct account of all expenditure incurred between the dates where date they were nominated and the date till the result is declared. तो nomination से result तक जितना भी आपका ये है, आपको एक separate account maintain करना है, and you have to keep it in a separate account. And after election, within 30 days of the conclusion of the election, all candidates, not just winning candidates, but all candidates must submit the expenditure statement to Election Commission of India. And under section 10A of Representation of People's Act 1951, any incorrect account of expenditure or excess of the cap can result in candidate disqualification by the ECI for up to 3 years. So recently there has been case on few of the important politicians from Maharashtra with respect to this, that they have not maintained and they have not disclosed their expenditure limits and they have not given a proper idea. तो उस perspective से ये sections important है, कौन से act के अंदर उनको ये लिया जा सकता है, ये आपको पता चाहिए. So recently, as I said, the expenditure limit of candidates for Lok Sabha was increased. So basically पहले कितना था, 54 lakhs to 70 lakhs depending on the size of the state. Every state का अलग रहता था. तो इसको increase करके 70 to 95 lakhs increase कर दिया है ECI. Secondly, state assembly के लिए भी the limit was 20 to 28 lakhs. Now it has been increased to 28 to 40 lakhs. तो ये आपको पता चाहिए. Next is, whenever you are talking about representation of people's acts, two important things are important. There are two acts. हमेशा confusion होता है, लेकिन you should know कि कौन से act में क्या features है. तो representation of people's act 1950 में क्या है? Basically it talks about allocation of seats. तो allocation of seats to Lok Sabha, State Assembly, State Council and not Rajya Sabha. तो ये राज्यसभा इस थ्रू 4th शेड्यूल आपको पता चाहिए. तो बेसिकली एलोकेशन ऑफ सीट्स इसके अंडर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट 1950. सेकेंडली, प्रेसिडेंट पावर टू डिलिमिट कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर कंसल्टिंग ECI, दैट इज आल्सो गिवन इन 1950 का एक्ट. इलेक्टोरल रोल्स फॉर लोकसभा, स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल इज मेंटेन्ड थ्रू under representation of people's act 1950. and जो actual conduct है ना, actual conduct of election and जो भी crimes होते हैं during election, that has been looked after representation of act 1951. so just such as qualification and disqualification for MPs and MLAs. so qualification and disqualification is not just mentioned in constitution but also mentioned in representation of people's act. तो ये भी MCQ आ सकता है. notification of general election, administrative machinery for conduct of election, registration of political parties, conduct of election, dispute during election, corrupt practices. तो corrupt practices 1951. तो ये आपको पता चाहिए. by election and term of Rajya Sabha members, everything is done taken care by 1951. ठीक है. next is another important authority which was in news जो आपको पता चाहिए, that is इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. तो बेसिकली इन्वेस्टर यहाँ इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टर फर्स्ट क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी सेटअप बाय कौन से मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो ये आपको पता चाहिए. एंड इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप अंडर which act? Companies Act 2013 के वक्त ये important authority setup की गई थी. तो basically the aim of this authority is to administer, कौन सा fund administer करना है इनको? Investment, Education and Protection Fund, उसको administer करना है with the objective of promoting investor education, awareness and protection. And secondly, the authority takes various initiatives to fulfill its objective through investor awareness program and various other mediums like print, electronic, social media and community radio. So जो fund का है एडमिनिस्टर करना, कौन सा फंड? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड.
उसको एडमिनिस्टर करना इज द रोल ऑफ दिस अथॉरिटी एंड इंक्रीजिंग द अवेयरनेस ऑफ इन्वेस्टर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंड है। सेकेंडली, दिस इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, व्हाई आई एम टेकिंग दिस, आई एम गोइंग टू टेल यू इन फ्यूचर। दिस फंड बेसिकली इज अ fund where unclaimed dividends, refund application money, matured company deposit, debentures, as well as the interest on them is used to provide is used and provided it is not claimed within 7 years. तो इस सबका मनी एक जगह ये करते हैं, कलेक्ट करते हैं in this investor education protection fund, and it is set up by, as I told you, by Ministry of Corporate Affairs to promote investor awareness and protection of investors' interest. तो अवेयरनेस जनरेशन के लिए। सिमिलरली देयर इज अनदर फंड, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ फंड का नाम क्या है, यहाँ फंड का नाम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। पहले कौन सा फंड देखा हमने, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड देखा, एजुकेशन देख लिया, फर्स्ट एजुकेट किया हमने, देन सेकंड फंड कौन सा है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। तो टर्म्स रिवर्स हो गए। तो बेसिकली दिस फंड इज ऑपरेटेड बाय सेबी, तो ये आपको पता चाहिए। एंड again the aim of this is to promote investor awareness, लेकिन किसका ऑपरेट करता है, कौन ऑपरेट करता है, सेबी ऑपरेट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, सिमिलरली आरबीआई हैज आल्सो अ सिमिलर फंड दैट इज डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, तो इसको डेफ बोलते हैं, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो ये आपको पता चाहिए। And by which bank must transfer money from accounts that have not been operated over 10 years, तो जो भी 10 ईयर्स से ज्यादा अनऑपरेटेड मनी है वो आरबीआई के पास जाएगा, और उससे व्हाट वी हैव इज डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। 2013 में, एज आई टोल्ड यू, जैसे एक इंपॉर्टेंट हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। देयर वाज अनदर अथॉरिटी व्हिच वाज सेट अप, दैट वाज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, व्हिच वाज सेट अप अंडर सेक्शन 132 of Companies Act, and what it does, it monitors and enforces compliance with accounting standards and auditing standards. So accounting and auditing standards ये enforce करती है। And due to establishment of this National Financial Reporting Authority, India is now eligible for membership of International Forum for Independent Audit Regulators. तो ये भी एक important fact आपको पता चाहिए। Next is one important report with respect to education, India के education के बारे में, जो यूनेस्को ने रिलीज किया गया था, आपको पता चाहिए, State of the education report for India, state of the education report for India, and in this report says, मतलब इसका टैगलाइन था no teacher no class, यूनेस्को ने रिलीज किया गया था, and the aim was to serve as a reference for enhancing the implementation of national education policies toward the realization of SDG goal number 4, SDG goal number 4. So basically what it does is it acts as a reference for enhancing the implementation of national education policy towards the realization of SDG goal. So जो भी national education policy को implement करने के लिए जो भी एक reference point लगेगा कि what steps government should take, what are the basic points, what is the standards presently we have, कितने teachers deficiency है, तो एक reference point रहेगा from where we can move forward. तो ये आपको पता चाहिए। And the project, the report projects that India need 11.16 lakh additional teacher to meet the current shortfall. जब भी हम education की बात करते हैं, 3 important reports you should know. First is National Achievement Survey. So similar survey, तो National Achievement Survey is done by whom? It is done by NCERT. तो यहाँ आप confuse मत करना, National Achievement Survey is by NCERT, and the aim of this achievement survey is to monitor improvement in children's learning level and assess the health of the government education system as a whole. तो National Achievement Survey का ये रोल है। Second important report जो हमेशा हम पढ़ते हैं, that is ACER report, that is Annual Status of Education report, brought out by Pratham, एक NGO है, that brings out this report. It is an annual survey that aims to provide reliable estimate of children's enrollment and basic learning level. So what is the learning level? How much students are learning from the school, private colleges, government schools and private schools? तो ये analyze करता है for each district and state in India, and this survey is conducted every year since 2015 in all rural districts. तो basically ये survey कहाँ होता है? Rural districts में होता है, and it is the largest citizen-led survey in India, and it is also the only resource of information on children's learning outcome available in India today. तो एक major source है कि learning हो रही है या नहीं हो रही है, are students able to learn things, तो ये analyze करते हैं through this important initiative. Next is there is another initiative जो आपको पता चाहिए, is a triennial international survey program, PISA बोलता है इसको, Program for International Student Assessment, is a triennial international survey which aims to evaluate education system worldwide by testing the skills and knowledge of 15-year-old students.
15-year-old students, तो ये आपको पता चाहिए. एंड दिस PISA इनिशिएटिव इज बाय इनिशिएटिव ऑफ OECD, आपको पता चाहिए. The program for international student assessment is a triennial survey, as I already to सेम चीजें रिपीट हुई है, लेकिन आपको ये पता चाहिए. नेक्स्ट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुआ था ऑन ई गवर्नेंस. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस जहां एक इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन साइन किया गया था. तो दिस कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय किसने? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना तीनों ने ऑर्गेनाइज किया था. एंड एज यू नो कि जो भी ई गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज है, जो भी पब्लिक ग्रीवेंस रिलेटेड इश्यूज है, दैट इज टेकन केयर बाय एन इंपॉर्टेंट एजेंसी. कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, which does not just look into grievances but also focuses on administrative reform and public grievances pertaining to central government. तो ये आपको पता चाहिए. And the conference provides, this conference what it does is provide platform for constructive exchange of ideas on some of the latest technologies for promoting e-governance. So what latest technologies we can inculcate to promote e-governance in India, तो ये आपको पता चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज एट दिस कॉन्फ्रेंस हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस वाज अडॉप्टेड. हैदराबाद डिक्लेरेशन, तो व्हाट इज हैदराबाद डिक्लेरेशन, कब एस्टैब्लिश किया गया, आपको पता चाहिए. द डिक्लेरेशन एम्स टू प्रोवाइड सिटीजन एंड गवर्नमेंट. द डिक्लेरेशन क्या करता है, एम क्या है उसका, कि टू ब्रिंग सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट क्लोजर थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म सिटीजन सर्विसेज through use of technology. So to bring them together and transform the experience of using technologies, जो भी services है उसका जो experience है वो transform करना through जो experience of service delivery through technology transform करना. And the theme for the national e-governance conference क्या था? India जैसे डेकेड है तो डेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड. तो ये एक इंपॉर्टेंट थीम था इस कॉन्फ्रेंस का, तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इज कॉमन सर्विस सेंटर्स आर ऑलवेज इन न्यूज. तो बेसिकली क्या होता है कॉमन सर्विस सेंटर्स, कौन एस्टैब्लिश करता है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चाहिए. तो बेसिकली इट्स अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT एंड इट इज अ स्ट्रेटेजिक कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम. जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड through this common service centers, what we provide is high quality, cost effective video, voice, data content services in order to, in the areas of e-governance, education, health, telemedicine, entertainment, as well as other private services. तो जो भी e-governance services are provided through this common service centers which are related to education, e-governance हो गया, telemedicine, tele-education, तो सारे services are provided through this. And the and what this scheme of this common service center aims to do is it provides conducive environment for the private sector and NGOs to play an active role in implementation of common service center for implementation of common service center scheme, thereby becoming a partner in government in development of rural India. So basically through this scheme government wants private and NGOs to come together to set up such common service centers where schemes where e-governance initiatives can be delivered to citizens, e-governance initiatives can be delivered to citizens. तो ये आपको पता चाहिए. ये 3 लेवल जानना जरूरी नहीं है. रिसेंटली देयर वाज न्यूज अबाउट डिजिटल राइट्स. तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल राइट्स. तो ये आपको पता चाहिए कि डिजिटल राइट्स किसको बोलेंगे. तो बेसिकली these rights allow people to create. These were in news because you recognize these digital rights, European Union. So basically this allow people to create, use, access and publish digital media and also use computers and other communication networks. So basically it allows people to create, use, access and publish digital media. उनका personal right है. And it comes under the कौन से fundamental right के अंदर आता है. Digital rights are related to freedom of privacy and expression. दोनों के अंदर आता है. Privacy भी है, expression का भी personal right है. That's why these are known as digital right. And EU is the first country in the worldwide to propose digital rights. The first country, first organization which has proposed that every individual should have digital right, and the right aims to support democracy and support people's right, because everyone has the right to use internet and to publish media and to publish things on internet. तो उसको ये करता है, and it ensures a safe online environment. तो ये आपको पता चाहिए. And there are 6 principles जो विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल राइट्स जो ड्राफ्ट प्रिंसिपल्स आए थे, लेकिन आपको नाम जानना जरूरी है कि कौन से प्रिंसिपल्स थे. फर्स्ट इज टू प्रमोट सस्टेनेबल
sustainability of digital future. Next is to ensure safety, empowerment and security of individuals. Third is foster participation in digital public space. Next is ensure freedom of choice online. Next is to support solidarity and inclusion. And last is to put people and their right in the center of digital transformation. So basically everything talks about keeping individuals right with respect to use of internet, with respect to publishing content on internet and having right to do so. इसको हम डिजिटल राइट बोलते हैं एंड ईयू के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट था. एंड टू इट आल्सो फोकस ऑन फोस्टरिंग पार्टिसिपेशन इन डिजिटल पब्लिक स्पेस. एवरीवन हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन डिजिटल पब्लिक स्पेस. तो ये आपको पता चाहिए. Next is special protection group was also in news. Basically, these were rest. तो जो भी protection of PM and ex-PM and their close family members who are residing with them in a same bungalow for 5 years. इनको security कौन देता है? SPG देता है. They were raised in 1985 to provide security cover to Prime Minister and former Prime Minister and their immediate family members. लेकिन amendment के बाद क्या होता है? Immediate family members who are residing them in a common bungalow, government bungalow, उनको ही मिलेगा. And SPG comprises personnel from CRPF, BSF and other government and state forces. It was created on the recommendation of Birbal Nath Committee in 1985. तो ये आपको पता चाहिए. And the protection received by the former minister and their family members residing at the official residence is only up to 5 years from the date of he ceased to hold the office. तो 5 साल के लिए ये है. तो ये आपको पता चाहिए. After they cease to be in the office. तो ये आपको पता चाहिए. And it draws. So basically, the power of this SPG, it draws its power and authority from Special Protection Group Act 1988, and this body functions under Cabinet Secretariat. So Cabinet Secretariat already covered in Target 140 plus batch. बहुत सारी चीजें हम Target 140 plus batch में directly and indirectly cover किए गए हैं. अगर if you follow all the 70 lectures we have uploaded till now, you will find in this. ठीक है. Next is there was also news with respect to जब policing की बात करते हैं. पुलिसिंग की बात करते हो कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में पता चाहिए. तो बेसिकली पीएम ड्यूरिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मीटिंग्स विद डीजीपीज एंड आईजीपीज ऑफ स्टेट्स he said कि there is need to adopt commissionerate system in cities with a population of more than 10 lakh. तो बेसिकली क्या है, पुलिस इज बेसिकली अभी जो पुलिसिंग है इंडिया में, इट इज बेस्ड ऑन पुलिस एक्ट 1861 एंड ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम there was dual system of police administration. Dual system क्या मतलब, there was DM and there was SP, and this SP would report to DM, district magistrate. तो ये dual system था where the authority, the policing authority overall in charge was district collector. And the primary, ये ऐसा क्यों था, क्योंकि the primary objective of British government was to कलेक्ट द रेवेन्यूज. तो ये इंपॉर्टेंट था कि उनका क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन था, इसलिए डीएम के अंडर ये पावर्स दिए गए थे. क्या बोलते हैं, द पुलिस वाज केप्ट अंडर डीएम बिकॉज रेवेन्यू कलेक्शन एंड टायरनी टू एंश्योर दैट द फोर्सेस कैन बी यूज फॉर रेवेन्यू कलेक्शन. तो उस वजह से इट वाज केप्ट. तो इसको डुअल सिस्टम बोलते हैं. एंड लेकिन इसके साथ ब्रिटिश ऑल्सो ब्रॉट पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इन इंडिया एट कोलकाता, फॉलोड बाय मुंबई, चेन्नई प्रेसिडेंसीज इसमें स्टार्ट किया गया था. तो बेसिकली कमिश्नरेट सिस्टम क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ पुलिस रिफॉर्म जहां the police does not report to DM but it reports to commissioner of police and who is directly responsible to state government, who is responsible for state government. तो ये आपको पता चाहिए. The command structure with the commissioner of police who is the rank of deputy IG or above is the sole head of force in the city and allows. So basically जो पुलिसिंग का रोल था which was under मतलब पहले SP would report to DM, अभी क्या था, the entire authority is with the commissionerate of police in cities. तो ये सिस्टम कमिश्नरेट सिस्टम कहाँ है, सिटीज में होती है. जैसे इफ यू सी इन महाराष्ट्र वी हैव मुंबई कमिश्नर, पुणे कमिश्नरेट, औरंगाबाद कमिश्नरेट हो गया, नांदेड़, नागपुर कमिश्नरेट, वेयर the commissioner of police directly reports to the state government. He does not report to DM or IS officers. तो ये आपको पता चाहिए. And the power of policing and magistracy is concentrated in commissioner and directly accountable to the state government and state police chief. तो यहाँ क्या है, instead of having dual control, एक तो है किसका, DM का भी control and then senior का भी control, यहाँ हमने commissionerate system में what we have done is the authority cities में where the population is more than 10 lakh, the direct accountability is to the state government and state police chief, not to the
एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, IAS ऑफिसर और DM और द जुडिशियल और द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो यहाँ नहीं है। तो कमिश्नरेट सिस्टम इज व्हाट, इट्स अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वेयर वी हैव यूनिफाइड एक्शंस एंड क्विक रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कमिश्नरेट सिस्टम। Sorry to pause you in between, but make sure you pause this video and subscribe to the channel because 80% of you are not subscribing. I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers. Thank you. Recently you must have seen, एक हिंदू में आर्टिकल था, द इंडियन एंटार्क्टिक बिल के बारे में आर्टिकल था and its various provision. So basically if you see this आर्टिकल फ्रॉम बेयर पर्सपेक्टिव, मैं इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करूंगा, बट बिफोर दैट आई नीड टू नो व्हाट इज एंटार्क्टिक। ये जब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इफ आई डू नॉट नो वेयर दिस एंटार्क्टिक रीजन लाइज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आर द अदर न्यूज एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि एंटार्क्टिक सिर्फ ये बिल की वजह से न्यूज नहीं है, देयर आर अदर रीजंस व्हाई एंटार्क्टिक इज आल्सो इन न्यूज, बट आपको एंटार्क्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी पता चाहिए। सो बिफोर गोइंग इनटू दिस बिल जो हम डिस्कस करेंगे आगे, आपको एंटार्क्टिक के बारे में पता चाहिए। बेसिकली एंटार्क्टिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज अ ग्लोबल कॉमन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल कॉमन? सो दीज आर places or these are areas where no one nation can have control over it or cannot enforce its sovereignty and it is shared by everyone. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉमन बोलते हैं। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल कॉमन्स कौन से हैं? 4 इंपॉर्टेंट लीगली आइडेंटिफाइड ग्लोबल कॉमन्स कौन से हैं? हाई सीज, एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिक एंड आउटर स्पेस। सो नॉट जस्ट दिस बिल बट यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ। तो ये क्या है? चार ग्लोबल कॉमन्स है। तो क्वेश्चन कैन बी, यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है विच आर द ग्लोबल कॉमन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज जब भी हम बेसिक चीजों की बात करते हैं तो आपको हाई सी के बारे में पता चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाई सी? इट इज नॉट जस्ट वाटर फ्रॉम द बेस लाइन और फ्रॉम द कोस्ट, बट वाटर और a region of water beyond 200 nautical miles। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एरिया बियॉन्ड 200 nautical miles from the baseline। उसके बियॉन्ड जो है, ये इंडिया की बेसलाइन है, उसके बाद 200 nautical miles क्या होता है? हमारा क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, EEZ होता है। एंड बियॉन्ड दैट what we have is high sea, and this high sea is a global common. No one country has control over it. Next is question is what is space? As I told you कि outer space is also global common. So कौन से पार्ट को हम स्पेस बोलेंगे? So ये भी न्यूज में था। So outer space is 100 kilometers beyond the mean sea level। उसको क्या बोलते हैं? 100 kilometers from the surface of the earth, उसको हम क्या बोलते हैं? outer space बोलते हैं। And it is designated by कारमान लाइन बोलते हैं इसको, कारमान लाइन बोलते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर क्या होता है? द एयर प्रेजेंट अराउंड अस, वो आपको पता चाहिए। दैट इज ऑल्सो ग्लोबल कॉमन। उसका कंपोनेंट क्या है? नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.9%। एंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता चाहिए। ये भी एमसीक्यू एनसीईआरटी में दिया है ये सब कुछ। आई एम नॉट टेलिंग समथिंग what I am telling from internet, but everything is given in NCERT. So not just one part whenever you're reading newspaper, लेकिन आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। So एटमॉस्फेयर के क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में? CO2, नियॉन, हीलियम, मीथेन एंड हाइड्रोजन, ये उसके डिसेंडिंग ऑर्डर के कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता चाहिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटार्क्टिक। सो एंटार्क्टिक इज व्हाट? एंटार्क्टिक एरिया इज डिफाइंड एज all of the land and sea shelves beyond south of 60 degree south latitude। तो beyond 60 degree south latitude जो भी water and sea होगा, ice and land होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? Antarctic continent बोलेंगे। So if you see in this diagram, this is the 60th क्या है? ये लैटिट्यूड है। सो बियॉन्ड दिस लैंड एंड सी जो भी रहेगा हम उसको क्या बोलेंगे? उसको एंटार्क्टिक बोले। सो एंटार्क्टिक आल्सो हैज अ डेफिनेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। सो व्हेनेवर यू रीडिंग अबाउट करंट अफेयर्स यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ। आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा। सो एंटार्क्टिक के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको सर्च करनी पड़ेगी। सो व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नो अबाउट एंटार्क्टिक? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज मेजरली हाई प्लेट्यू
it is not coastal plains, it is not plains, it is mostly high plateau and it does not have any coastal plains, it does not have any coastal plains. तो ये भी एक important fact है. आप देख पा रहे हो इधर कोई plains नहीं है, majorly it's majorly based on high plateau है, तो ये एक important fact आपको पता चाहिए. Next is there are two inlets from where you can enter Antarctic. तो ये भी important चीज है, from where you can enter Antarctic. First is Weddell Sea and next is Shell, Ross Ice Shell. तो ये दो areas you need to mark. तो कहाँ है ये? तो first is as I said कि Ross Ice Shell ये है and next is Weddell Sea यहाँ से you can enter. So two places from where you can enter this Antarctic region, इसको हम क्या बोलते हैं? Weddell Sea and ये. तो दो important चीजें आपको पता चाहिए. Next is what? So you just need not study about Antarctic, you need to know the weather there because UPSC usually asks. अगर आप tundra and taiga region देखोगे तो majorly tundra and taiga region is in this Antarctic region. तो summers is between December, Jan, Feb and temperature is around 0 degrees Celsius. Winters is May, June, July and -90 degrees तक जाता है. तो ये एक important fact आपको पता चाहिए. Fauna में what type of animals do you find here? What type of animals do you find here is also important. Penguins मिलता है, whales, seals मिलता है and albatross मिलता है. तो ये कुछ important animals you will find here. कौन से penguins, whales, seals and albatross. ठीक है. So whenever we are looking at Indian Antarctic bill, we are not just looking at that bill, but we have linked it to the static syllabus. लेकिन why we need to have an Antarctic bill, global common पर why we Indian government has to pass a bill? तो उसके पीछे reason क्या है? Antarctic Treaty. So you should know what is Antarctic Treaty. ये एक important fact है from prelims aspect, mains aspect भी बहुत important है. When it was signed by 12 countries in Washington on 1st of December 1959 to make Antarctic continent demilitarized zone to be preserved for scientific research only. So this continent would only be used for scientific research, for conservation of biodiversity, for research and development के लिए use होगा, not for any military use. And no country can क्या बोलते हैं, can say that it's their country, तो it's their land. तो sovereignty नहीं है, it's a global common है, सबकी उस पर sovereignty है. And this is an important treaty. So 12 nations came together and it entered into force in 1961 with and hence since been acceded by various members. तो basically बहुत सारे members ने इसको join किया है. India is also part of this treaty. तो ये भी एक important part है. Presently 54 members है. इंडिया ने 1983 में ज्वाइन किया था. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी अंटार्कटिका इज डिफाइंड एज ऑल लैंड एंड सी शेल्फ साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. तो ये आपको पता चाहिए. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस एंटार्क्टिक ट्रीटी इज इन ब्यूनोस एरिस अर्जेंटीना में इसका हेडक्वार्टर है. तो ये भी आपको पता चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, एज इंडिया हैज साइंड दिस ट्रीटी, every country according to this treaty has to make laws for conservation and for preservation of Antarctic, and they should ensure through legal ways that their country members should not take any measures that can harm flora and fauna of Antarctic. तो ये इसके लिए क्या है? Every country has to bring a Antarctic bill. So government of India has introduced Antarctic bill in Lok Sabha to which envisage what? Regulating visits and activities in Antarctic, so that our aim of the treaty is ensured that the aim is for the Antarctic regions biodiversity need to be protected, and there is no other activity which can cause harm to the region of Antarctic are carried out. तो ये आपको पता चाहिए. And this bill is applicable to not just Indian citizen, also to foreign citizen. तो ये भी important fact है. And why we need such law is to fulfill the provisions under Antarctic Treaty. So we have signed this Antarctic Treaty in 1983. तो उसके अंदर we had this obligation to pass a law. तो ये आपको पता चाहिए. So what are the provisions of this law? What are the provisions of this bill? First is visiting regulation. So strict guidelines and system
of permits, so who can visit and why he can visit, तो ये strict guidelines है कि कौन visit कर सकता है, कब visit कर सकता है, तो strict guidelines है, strict guidelines every country has to make. Second is protection of mineral resources. Bill further prohibits drilling, dredging, evacuation and collection of mineral resources except for scientific purpose. Next is protecting native plants. So bill enumerates strict prohibition on damaging native plants, flying or landing helicopters or operating vessels that could disturb local ecosystem. So any measures which can affect the local biodiversity has to be stopped. Prohibition on introducing birds not native to Antarctic, even microscopic animals. You should not, what do you say, take microscopic animals or birds into Antarctic, because that species would be exotic and can disturb the entire ecosystem. तो ये आपको पता चाहिए. And provision for Indian tour operators. So tour can be possible after permit from government. So if anyone wants to visit, only after permission of government he can visit. तो ये आपको पता चाहिए. And Antarctic has various research bases. So presently there are 40 permanent research stations in Antarctica. India के इसमें 2 है जो सबको पता है, मैत्री and Bharti. Simultaneously, not just Antarctic Treaty, but there is another treaty. There are 2 conventions which are working towards protection of biodiversity in Antarctic. कौन से हैं? India is also signatories to treaties such as Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resource. So this convention also focuses on conservation of marine living resource in Antarctic region, and the Protocol of Environment Protection of the Antarctic Treaty. Both are signed by India and focuses towards conservation of biodiversity in Antarctic region. तो ये आपको पता चाहिए. So as we have seen Maitri and Bharti. See Maitri and Bharti तो देख लिया, but Maitri and Bharti जो stations है, research stations, are being operated by an important organization, that is कौन सा organization? National Center for Polar and Ocean Research. So National Center for Polar and Ocean Research is a premier R&D institute of Government of India responsible for research activities in the polar and South Ocean realms. तो जो भी activities होगी is carried out by this organization. Headquarter कहाँ है? गोवा में है. Secondly, it comes under Ministry of Earth Science, set up in 1988. तो ये कुछ important आपको पता चाहिए. अबाउट द बेसिस आपको पता चाहिए. फर्स्ट बेस कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री था, बट नाउ इट इज जस्ट व्हाट? इट इज सप्लाई बेस. ये क्या हो गया है? इसको हमने सिर्फ सप्लाई बेस बना दिया है, बहुत पुराना था. सो नो मच एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस. सो एक्टिव कौन सी है? मैत्री एंड भारती. तो ये आपको पता चाहिए कि कहां है. तो थ्रू द मैप आई वुड लाइक टू शो कि मैत्री एंड भारती कहां 2 रिसर्च स्टेशन है. फर्स्ट इज मैत्री, यहां है, एंड भारती is on this here. Bharti and Maitri and Bharti आपको पता चाहिए. तो ये 2 important आपको लोकेशंस पता चाहिए. एंड फर्स्ट कौन सा था? मैत्री था. 1989 में ये हुआ था. एंड मैत्री के अराउंड वी हैव डेवलप्ड अ फ्रेश वाटर लेक. India has also built a freshwater lake near Maitri station. उसका नाम क्या है? Lake Priyadarshini. Bharti is the latest research station operated since 2012. तो ये भी आपको पता चाहिए. It's in harsh condition. It is 3,000 kilometers east of Maitri. 3,000 kilometers east of Maitri. Not just three these 2 research stations, but आपको सागर कन्या भी आपको पता चाहिए. So सागर कन्या is what? This is a research vehicle which is again managed by National Center for Polar and Ocean Research organization, and it is a research vessel to Antarctica. So what do you understand by research vessel? So basically what is research vessel आपको पता चाहिए. Research vessel is an important tool for ocean research and development of ocean technology, and Ministry of Earth Science has 6 ocean research vessels. तो आपको पता चाहिए कौन सा है? सागर निधि हो गया, सागर मंजूषा, सागर कन्या, सागर संपदा, सागर तारा एंड सागर अन्वेषिका. तो ये 6 वेसल्स है. उसमें जो सागर कन्या इज अ रिसर्च वेसल व्हिच वाज सेंट टू एंटार्क्टिका. तो ये भी आपको पता चाहिए. नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड सेंटर फॉर पोलर and ocean research has also launched an important initiative. कौन सा है? पेसर initiative, again in news. So this initiative is also in news, not just तो सिर्फ ये बिल के बारे में जान के इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इनिशिएटिव के बारे में पता चाहिए. This is it's one of the flagship program of Ministry of Earth Science. So the Polar Science and Cryosphere Research Scheme comprises Antarctic Program, Indian Arctic Program, Southern Ocean Program, and Cryosphere and Climate Program. So it's a flagship program which has various programs, sub programs under it. ये आपको पता चाहिए. As I said कि this program is
implemented through National Center for Polar and Ocean Research, which is a part of Ministry of Earth Science. And secondly, the objective of this is to study various aspects relating to polar and the cryosphere with special emphasis on Antarctic, Arctic and glaciers of the Himalayas. तो उसका स्टडी करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दैट इज पेसर इनिशिएटिव, एंड द इनिशिएटिव हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कंटिन्यूएशन फ्रॉम 2021 to 2026. तो नेक्स्ट 5 years के लिए भी इसको अप्रूवल मिला है, तो इट इज गोइंग टू फंक्शन फॉर नेक्स्ट 5 years. सो एज आई सेड, इट इज वन ऑफ द 5 मेजर फ्लैगशिप programs, major programs of Ministry of Earth Science. तो फर्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू, पेसर हो गया, नेक्स्ट इज अक्रॉस प्रोग्राम हो गया, next is ocean service technology observation resource and modeling and science हो गया, SAGE that is seismology and geoscience, and last is research education outreach and training. ये 5 प्रोग्राम है of Ministry of Earth Science. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है. Apart from this, there was one more reason why there was Antarctic was in news, because an important iceberg carved away from Antarctic, बहुत important, biggest largest iceberg carved away, so moved away. This happened because of climate change. तो ये क्या था? A76 उसका नाम था, A76. Weddell Sea is also one. So where this carved away, it carved away or it moved into Weddell Sea. तो ये Antarctic से निकल के Weddell Sea में आया है, largest iceberg है. तो ये भी important fact है. It spreads through blood and sexual contact. तो ये आपको चीजें पता चाहिए. There is hepatitis A also, which is transmitted through food and waterborne disease, as it's a food and waterborne disease. तो ये आपको पता चाहिए. लेकिन hepatitis B and hepatitis C is hepatitis C, which is transmitted through blood and sexual contact. तो ये आपको पता चाहिए. And hepatitis B basically affects liver. सिंपल थिंग्स है, करंट अफेयर्स से लिंक्ड है, लेकिन आपको पता चाहिए इट अफेक्ट्स लिवर एंड कैन कॉज कैंसर ऑल्सो. एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हैव बीन डेवलप्ड एंड इट इज इंक्लूडेड इन आवर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. तो ये सारी चीजें आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट. इट इज रिलीज बाय वन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन विच यू कैन मिस इज UN Office on Drug and Crime. It is released by UN Office on Drug and Crime. So you should know this. Important organization and report related to it. You can get confused between WWF and IUCN, but it is it's UN Office on Drug and Crime. Next important thing is about tuberculosis. Many news articles are coming about tuberculosis. So I thought of covering. It's a bacterial disease and various initiatives related to it. You should know that. First is Nikshay portal. It's a unified portal developed by Government of India so that we can track all the TB cases both in public and private sectors in an effective way. तो निक्षय पोर्टल आपको पता चाहिए. निक्षय पोषण अभियान भी आपको पता चाहिए, which is respect to giving 500 rupees per month to all the TB patient for improved nutrition. ये आपको पता चाहिए. Then there is one more drug that is coming up after bedaquiline, that is pretonamide. तो ये आपको प्रोटोनामाइड के बारे में भी पता चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट. दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय FAO. तो यू शुड नो अबाउट दिस इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड इट सेज इंडिया में कितना % फॉरेस्ट, इंडिया हैज improved the forest cover in last decade and India ranks 3rd in addition of forest. India जितना भी हमने addition किया, India is ranked 3rd with respect to addition. Overall India is ranked 10th with respect to forest cover. Forest cover सबसे ज़्यादा is in Russia. तो ये आपको पता चाहिए about global forest resource assessment report released by FAO. Next important चीज़ आपको पता चाहिए about UPI. Basically, Unified Payment Interface initiative is developed by NPCI, that is National Payment Corporation of India, and UPI is basically bringing all the banking accounts and banks on one platform so that there is seamless transfer of money. And it is developed by NPCI. NPCI is an initiative of RBI plus Indian Banking Association. NPCI is also important because it
it looks after various initiatives such as Aadhaar linked payment system भी इन्हीं का initiative है. Bharat bill payment system is also their initiative. Bharat QR code Bhim is also their initiative. National electronic toll collection which is in news because of FASTag is also their initiative. तो ये सारे initiative आपको NPCI के बारे में पता चाहिए. That is National Payment Corporation of India. It's developed by RBI, instituted by RBI and Indian Banking Association. तो ये information, additional information आपको पता चाहिए जब भी हम इसके बारे में NPCI, UPI के बारे में पता चाहिए. And it's also in news all the time. And they are important for promoting digital economy. तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट आपको पता चाहिए इज लिक्विडिटी ट्रैप. बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप कब होता है? व्हेन द इकोनॉमी इज इन रिसेशन एंड टू ओवरकम दिस रिसेशन व्हाट गवर्नमेंट डज इज इट पंप्स इन मोर मनी. बट इन स्पाइट ऑफ पंपिंग मोर मनी देयर इज नो इन्वेस्टमेंट. what on the other hand what public does is they save more money. So the money is trapped in the hands of the people and it is not invested. So irrespective of how much increase in the money supply, it fails to increase the investment and the money is trapped in the hands of the public. So liquidity trap is India is feared that India would enter this liquidity trap, and because of COVID and economic recession most people are focusing towards saving rather than investment. और एक important organization जो news में है that is KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल commission. It's a statutory body आपको पता चाहिए under MSME, Ministry of MSME, and it promotes runs and organizes village industries in rural area, and it has social and economic objective. तो ये आपको पता चाहिए. And खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के बारे में आपको दो प्रोग्राम्स आपको पता चाहिए जो इम्प्लीमेंट करता है. दैट इज सोलर चरखा प्रोग्राम. सोलर चरखा प्रोग्राम में व्हाट द एम इज दैट इज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट. विमेन एम्प्लॉयबिलिटी करना और एम्पावरमेंट करना, ये दो एम है of solar charkha. And second program is प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. इट्स अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जिसमें हम क्रेडिट एट अ लोअर इंटरेस्ट रेट देते हैं. तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू प्रमोट MSME, ये स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन. एंड द सेकेंड स्कीम इज सोलर चरखा स्कीम. वन मोर ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पता चाहिए इज अपेडा. इट्स एन एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगेन स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड इट इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बट इट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. आपको पता चाहिए. इट गिव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस to farmers and industries to export agriculture products. International level पर you should know about important organization that is ILO. It was established in 1919 through Treaty of Versailles. India has been part of this and 187 other countries are part of it. India has ratified various convention of ILO. सबसे important है is 138 that is with respect to minimum age, 182 with respect to worst form of child labors, convention number 29 that is forced labor, about forced labor, 105 about abolition of forced labor, and 100 about equal remuneration. तो ये important conventions आपको पता चाहिए. reports आपको पता चाहिए about ILO, that is the World Employment and Social Outlook Report, Global Wage Report, and World Social Protection Report. So तीन important report आपको पता है. The World Employment and Social Outlook, Global Wage Report, and the World Social Protection Report. बहुत important है. Next important schemes जो news में है प्रधानमंत्री Street Vendors निधि. It's an important program implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs, and it gives amount up to 10,000 rupees to street vendors at subsidized rate so that they can start their business. तो बहुत important program है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स निधि, एंड इट प्रमोट्स और रिवॉर्ड्स डिजिटल पेमेंट, तो इनडायरेक्टली प्रमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी. मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के बारे में जानना चाहे तो और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके अंडर है दैट इज राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट. इट्स बेस्ड इन तमिलनाडु एंड इट ब्रिंग्स आउट एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट इज यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ इंडिया. तो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स. Under Ministry of Youth, there is one important program that is राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण program. Again, Ministry of Youth and Sports के अंडर है, and it is an umbrella schemes which has integrated all the 5 to 6 schemes that such as National Youth Crops. तो ये सारे schemes किसके अंडर है? राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम. With respect to youth, you should know about युवा program of UNICEF.
the aim is to provide skill development to youths and those who are out of the formal education, उनके लिए skill development ensure करना अब under this युवा program. India is also planning to buy various UAVs from various countries. सबसे important है इसराइल से हम सर्चर ले रहे हैं, हर्मेस ले रहे हैं, हिरॉन ले रहे हैं, and USA से we are taking a maritime reconnaissance aircraft that is P8I and Predator drones भी हम इंडिया प्लान कर रहा है लेने के लिए. तो important MCQ and match the following के इस perspective से ये question आ सकते हैं. P8I is also in news, Searcher, Hermes and Huron is also in news. India has its own drones. Few of the examples जो मैं देना चाहता हूँ, निशांत एक है, बहुत सारे ड्रोन्स है, तो निशांत एक आपको ड्रोन्स के बारे में पता चाहिए. यू शुड नो अबाउट वर्ल्ड टाइगर डे एंड एवरीथिंग वील लुक इनटू विद रिस्पेक्ट टू टाइगर्स. टाइगर्स आर बेसिकली एंडेंजर्ड एनिमल्स, तो उनका IUCN स्टेटस इज एंडेंजर्ड, तो यू शुड नो अबाउट दिस. एंड द फर्स्ट डे ऑफ टाइगर समिट which happened in 2010 in St. Petersburg was celebrated as, from then onwards it was celebrated as World Tiger Day because it happened on 29th July. तो ये आपको पता चाहिए. The aim of this St. Petersburg Declaration was to double the population of tigers around the world by 2022. So you should know this. Simultaneously, we also launched this Global Tiger Recovery Program during this summit, and this Global Tiger Recovery Program exclusively focused on actions towards reducing the decline of tiger deaths and improving or doubling the survival of the tigers. So it was an important program which was launched during this St. Petersburg Declaration. You should know about this. Simultaneously आपको और एक declaration with respect to animal conservation आपको पता चाहिए is Bishkek Declaration. बिश्केक डिक्लेरेशन के बारे में आपको पता चाहिए. बिश्केक डिक्लेरेशन इज बेसिकली टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड्स. तो साइमल्टेनियसली अगर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन देख रहे हो तो बिश्केक डिक्लेरेशन भी पता चाहिए. एंड बिश्केक डिक्लेरेशन द IUCN स्टेटस ऑफ स्नो लेपर्ड होपफुली यू ऑल नो इज वल्नरेबल. तो वल्नरेबल है, तो ये आपको पता चाहिए जब भी हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम विद रिस्पेक्ट टू टाइगर कंजर्वेशन इज, यू शुड नो देयर इज वन मोर प्रोग्राम TX2. इट इज अ प्रोग्राम बाय WWF and the aim is again to double the population of tigers in tiger range countries. So there are 13 tiger range countries, and the aim of this program, TX2 initiative, is to double the population of tigers in tiger range countries. Simultaneously, we also have conservation assured tiger standards, CATS. That is an accreditation scheme which encourages the tiger range countries and the tiger reserve to maintain adequate standards with respect to conservation. So ये एक accreditation scheme है, and under which the tiger reserves, उनको एक specific standards दिए गए कि आपको जो भी आपके conservation standards है, जो भी steps ले रहे हो, आपको एक specific standards meet करना चाहिए. तो उसके लिए एक standards है, तो आपको CATS पता चाहिए, that is Conservation Assured Tiger स्टैंडर्ड्स. तो ये और एक इनिशिएटिव. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको और एक चीज़ पता चाहिए इज विद रिस्पेक्ट टू टाइगर्स इज ग्लोबल टाइगर फोरम. ग्लोबल टाइगर फोरम इज एन इनिशिएटिव विच वॉज लॉन्च इन 1993 इन न्यू दिल्ली, एंड द एम इज of this global tiger program is to run campaigns for protection of tigers, to run campaigns with respect to protection of tigers. And this global tiger forum is an intergovernmental body. तो ये आपको साइमल्टेनियसली चीज़ पता चाहिए, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, एंड ऑल द टाइगर रेंज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट. तो ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में पता चाहिए. साइमल्टेनियसली व्हेन यू आर लुकिंग अबाउट टाइगर्स, यू शुड नो अबाउट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन authority, which was set up in 2005 under Wildlife Protection Act, and it is the organization which looks into the implementation of Project Tiger and giving the status of tiger reserve to the respective national parks. तो National Tiger Conservation Authority आपको important है, पता चाहिए. Project Tiger was started in 1973. बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है 1973, बिकॉज 1972 में इंदिरा गांधी अटेंडेड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. बिकॉज यू शुड नो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बिकॉज ऑन दैट डे we had established one important organization on the day of Stockholm conference, that is UNEP, and the day on which Stockholm conference happened is celebrated as World Environment Day. तो ये simultaneously आपको पता चाहिए. And post taking inspiration from Stockholm conference, we launched Project Tiger.
तो ये आपको पता चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर इज ऑल्सो एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द टाइगर्स। नेक्स्ट और एक चीज़ जो करंट अफेयर्स में है, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू टाइगर्स, सो वेन एवर यू आर स्टडिंग इन सच अ वे, इन अ इंटीग्रेटेड वे, थिंग्स यू वुड रिमेंबर इन अ क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट। एम स्ट्रिप्स आपको पता चाहिए, एम स्ट्रिप्स के बारे में आपको पता चाहिए। एम स्ट्रिप्स इज अ सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन 2010 एंड इट्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ नंबर्स ऑफ टाइगर्स। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर नंबर्स इज द एम ऑफ दिस एम स्ट्रिप्स सॉफ्टवेयर। तो ये आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता चाहिए एंड यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन ऑन दिस। With respect to tiger reserves, there are 50 tiger reserves in India, 50 tiger reserves in India, and in principle approval have been given to 3 more important tiger reserves. तो ये आपको पता चाहिए। रत्नपानी टाइगर रिजर्व, रत्नपानी टाइगर रिजर्व इज इन MP, it's in MP. सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व इट्स इन ओडिशा एंड गुरु घासीदास इज इन छत्तीसगढ़। तो ये चीज़ें आपको इन प्रिंसिपल, ये नए टाइगर रिजर्व्स आने वाले हैं, कहाँ हैं आपको पता चाहिए। तो 3 टाइगर रिजर्व्स इंपॉर्टेंट है, रत्नपानी, सुनाबेड़ा एंड गुरु घासीदास। तो दीज आर इन छत्तीसगढ़, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, टाइगर सेंसस हैपन्स एवरी 4 years। तो ये आपको डेटा आपको पता चाहिए, इट हैपन्स एवरी 4 years। इट इज कंडक्टेड बाय NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन एसोसिएशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, विच इज बेस्ड इन देहरादून, which is based in आपको पता चाहिए, इट्स बेस्ड इन देहरादून। तो ये आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इज इन मध्य प्रदेश फॉलोड बाय कर्नाटका। अगर किसी नेशनल पार्क में है सबसे ज़्यादा है तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइगर सेंसस, इट हैपन्स इन 4 stages। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज पहले होता है कि ऑन फील्ड, नेक्स्ट होता है थ्रू मॉनिटरिंग, थ्रू स्पेस मॉनिटरिंग, एंड थर्ड इज कैमरा ट्रैप। तो इन तीनों तरीक़ों से वी हैव 4 stages जिसके थ्रू टाइगर सेंसस कंडक्ट किया जाता है। तो इट हैपन्स एवरी 4 years। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा साइमल्टेनियसली पता चाहिए जब भी हम टाइगर के बारे में बात करें। तो होपफुली हम टाइगर जितना भी हमने चीज़ें जानी हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइगर, दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव थिंग्स। यू शुड नो देयर आर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज जो आपको पता चाहिए, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, एंड इंडिया में 70%, मोर देन 70% आर इन इंडिया। प्रेजेंटली इंडिया हैज़ अराउंड 2,967 tigers in India and in 50 tiger reserves. So you should know about these tigers, and tigers are they are national animal of India, and the census happens every 4 years. So hopefully you have got the enough information about M strips, everything about NTCA, Project Tiger, Global Tiger Forum, TX2, CATSA, Bishkek Declaration, Tiger Summit एंड ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम। तो होपफुली ये आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो न्यूज़ में है इज डेयर टू ड्रीम कॉम्पिटिशन। इट्स अ कॉम्पिटिशन विच वॉज लॉन्च्ड ऑन द इन द मेमोरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम बाय DRDO ने लॉन्च किया है, एंड इट वुड प्रमोट द स्टार्टअप्स who are working in the defense sector and in aerospace sectors, and we would incentivize them to come up with innovation. तो Dream to Dare competition is by DRDO in the field of एरोस्पेस एंड डिफेंस। तो ये आपको साइमल्टेनियसली पता चाहिए जब भी हम प्रिम्स पर्सपेक्टिव से बात करें। और एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पर एक अलायंस बना है, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। It is formed by 8 countries, though India is not part of it. USA, Australia, Sweden, Norway are part of it, but you should know about this important inter-parliamentary alliance on China. The aim is to curb the global ambition of China, the aggressive ambition of China at the global level. तो उसको curb करने के लिए, उसको control करने के लिए एक important alliance बना है। तो hopefully you remember this. Next important चीज़ आपको और एक organization और एक unit के बारे में पता चाहिए, that is Financial Intelligence Unit। बहुत important है, न्यूज़ में है। जितने भी हमारे मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, जितने भी चीज़ें हो रही है, एंड दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन sharing important data with respect to money laundering, with respect to trafficking of money, with respect to any terrorist activities. तो FIU is important, and Financial Intelligence Unit is under Finance Ministry. तो ये आपको पता चाहिए, Finance Ministry के अंडर आता है, and it reports to इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करता है, एंड इट इज़ हेडेड बाय
finance minister. The Economic Intelligence Council is what do you say, headed by finance minister. And at the global level, when you have all the FIUs coming together, the group of FIUs coming together of various countries, they form an important group known as Egmont Group. So Egmont Group is an association of all the financial intelligence unit at the global level. तो ये आपको 2-3 चीज़ें आपको पता चाहिए with respect to ये, and it comes under finance ministry, तो ये भी चीज़ आपको पता चाहिए. Next important thing is recently Assam में there were floods and Kaziranga National Park was hugely affected because it, and majorly Kaziranga mein you have one-horned rhinos also, and we have tiger reserve also, and it is also UNESCO's World Heritage Site. So ये आपको पता चाहिए. And जब भी हम काजीरंगा की बात करें तो rhinos आते हैं, and rhino का status आपको पता चाहिए. one-horned rhino का it is vulnerable according to IUCN, and you should know about IRV 2020 program. The aim of this IRV 2020 program is to ensure that the number of rhinos in Assam increases to 3,000 by 2020. तो ये सिर्फ आसाम पर्सपेक्टिव से है IRV, तो ये भी आपको पता चाहिए. आसाम फ्लड्स, जब भी आसाम की बात करें, यू शुड नो अदर नेशनल पार्क्स इन आसाम. सो फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स इन आसाम जो आपको पता चाहिए. फर्स्ट इज दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देन मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी नेशनल पार्क. तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ आसाम पता चाहिए. रिसेंटली why I am taking all this, because Dihang Patkai Wildlife Sanctuary was converted to national park in Assam and there was a controversy related to it. तो ये आपको और एक नेशनल पार्क जो कन्वर्ट हो चुका है या जिसकी बात चल रही है, इन अप्रूवल दिया है नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने, दैट इज दिहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिन कन्वर्टेड टू नेशनल पार्क. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इज BIS केयर ऐप, जो रिसेंटली BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने रिलीज किया है. एंड द एम ऑफ दिस BIS केयर ऐप इज टू ऑथेंटिकेट द BIS मार्क्स थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन. तो ये इंपॉर्टेंट है. BIS के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज BIS इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर BIS एक्ट 1986 एंड इट इज़ नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया. नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है, एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंडर आता है. Recently we had amendment to this BIS Act 1986 and there were so many changes made to it. Please go through our Telegram channel for all the notes and for all the updates related to it. You can go through it. Next, which I want to tell you is about Central Groundwater Authority. It is established under Environment Protection Act. It is established under Environment Protection Act and it is in news because it gives NOC for the use of groundwater extraction. If any private company, corporation or industry wants to use groundwater, it has to take NOC certificates from Central Groundwater Authority. Authority important है because next we would see is Central Groundwater Board. तो authority important है. And the aim of this Central Groundwater Authority is to regulate and control management of groundwater. तो groundwater का actual management and execution किसके पास है? Central Groundwater Authority के पास है. And NOC, you have to take the NOC of Central Groundwater Authority, and they can fine also. They can issue fines if you do not follow the recommendations or you over extract the water from groundwater. तो ये एक फाइन्स का इनके पास पावर है एंड इट हैज़ एग्जीक्यूटिव फंक्शन. तो इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता चाहिए जब भी हम बात कर रहे हैं इस सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में पता चाहिए एंड इट इज़ अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री. बोथ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड प्रोवाइड साइंटिफिक इनपुट्स. तो इसका मेन काम है इट टू प्रोवाइड साइंटिफिक इनपुट्स विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन एंड ऑगमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर. मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, ऑगमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एक साइंटिफिक इनपुट्स देता है. तो एक उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है जब भी हम सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की बात कर रहे हैं. अथॉरिटी का मेन एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, फाइन्स लगाता है, NOC लेना पड़ता है जब भी एनी इंडस्ट्री और हैव टू एक्सट्रैक्ट वाटर. एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का मेन फंक्शन is giving scientific inputs with respect to use, utilization and management of central groundwater. About groundwater, to start with, first is Malabar exercise, an important news term which is in news. Malabar exercise, as you know, it happens between India, USA and Japan. It started in 1992 with India and USA, then Japan joined in 2005, and 2020 we have one more country joining. It is Australia. We have Australia.
So Malabar exercise is a naval exercise in Indian and Pacific Ocean, and it is said it is indirectly targeting China's growing presence in both this region. So it's an important exercise for maritime security and the security of our nations. So बहुत important है. Simultaneously, you should know India and Australia have an important exercise that is pitch black, and OS index, which are exercise between India and Australia. One more exercise between India and USA which is in news is PASEX. PASEX is a maritime exercise between India and USA. तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है. You should know about this Malabar exercise and when it started and which all countries are part of it. In the last lecture, we have studied about FAO and Global Forest Resource Assessment Report. And it said India has increased its forest cover, and with respect to increase in the forest, India ranks 3rd, overall India ranked 10th. We thought of covering FAO in depth. FAO is basically, it releases various reports. First is Global Forest Assessment Report. Next is State of Food and Agriculture, along with it State of World Forest, State of World Forest. Whenever you get a report with respect to forest, the chances of FAO presenting it are high, and so you can go with it. State of World Forest is also by FAO, and State of Food Insecurity in the World is also produced by FAO. So you should know about all these reports produced by FAO. To go forward, FAO is also important from prelims perspective because FAO was established in 1945 and the headquarters is in Rome, Italy. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एंड यू शुड नो अबाउट दिस. वन मोर इनिशिएटिव ऑफ FAO जो आपको पता चाहिए इज FAO and WHO have worked towards formation of Codex Alimentarius. These are the food standards. So these are the food standards which are developed by FAO and WHO coming together, and this is an important initiative about FAO जो आपको पता चाहिए. Next important चीज about FAO and India, you should know that FAO has said in its report that 14% of Indian population is undernourished. So you can use this data while writing answers with respect to mains. So 14% of India's population is undernourished according to FAO report. So this is one of the important thing. Then there is an important program known as Green AG. Important है. It's funded by GEF. GEF is Global Environment Facility. ये आपको पता चाहिए. When was it established? It was established during Earth Summit in 1992. So you should know about this Earth GEF, and it is implemented. The Green AG project is implemented by Department of Agriculture under Ministry of Agriculture. तो ये आपको पता चाहिए. Along with it, two important organizations are also part of Green AG project, that is FAO and MOEF, that is Ministry of Environment and Forest. So you should know about this concept of Green AG, and FAO is also supporting Green AG. Under Green AG, what we are trying to do is we are trying to integrate biodiversity, climate change and sustainable land management in the agricultural practices of India, so that agriculture is more sustainable. It is sustainable and it follows the principle of climate change. It follows the principle of conservation of biodiversity. So ये important project, and it is implemented in 5 states including Mizoram, Rajasthan and few other states. तो ये आपको Green AG project के बारे में भी पता चाहिए, and FAO is also associated with it. When we are thinking of FAO, one important treaty was signed under FAO. You should also know about that treaty. That is, it is also known as Sea Treaty, but the main name of this treaty is International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture. That is International Treaty on Plant Genetic Resource for Food and Agriculture. So it was adopted under FAO and India is signatory of it, and it was the treaty aims at recognizing farmers' contribution to biodiversity. It also aims at access and benefit sharing of the plant genetic resource and sustainability of plant genetic resource. That is, we should sustainably use plant genetic resource and we should not overuse it. The aim of this treaty is to ensure that the farmers get the benefit of the plant genetic resource and of the diversity. They are recognized as one of the important players or important factors जिसके वजह से plant biodiversity बढ़ रही है and we are getting benefit of it, and that benefit is shared between all the farmers. So farmers, it recognizes farmers' contribution to biodiversity. It ensures access and benefit sharing and sustainability of plant genetic resource. For compliance of this treaty, India has passed an important act जो आपको prelims में क्वेश्चन आके गया है, that is Protection of Plant Variety and Farmers' Right. Protection of Plant Variety and Farmers' Right Act 2001. तो एक important act है. This act gives farmers the right over the seeds.
their own seeds, and no one can ensure, no one can say that they are patented seed, and the farmers can benefit over their own seeds, and they are recognized as equal partner to this initiative. तो ये आपको पता चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट गिव्स फार्मर्स द राइट एंड बेनिफिट of the diversity, plant diversity which they have generated. ठीक है, next important thing जो इंडिया ईयर बुक से important concept है, that is there are two important funds where you can get confused, that is Investor Education and Protection Fund. Investor Education and Protection Fund, it is established under Companies Act, and Ministry of Corporate Affairs looks after this fund. It focuses on increasing the awareness about the investor and works towards protection of the fund. तो ये important initiative है. Simultaneously there is a similar fund where you can get confused is Investor Protection and Education Fund, and it is run by SEBI. तो एक important initiative आपको पता चाहिए, and these funds are given in India Yearbook and you can get confused. So India Investor Education and Protection is by Ministry of Corporate Affairs, Companies Act under, and Investor Protection and Education Fund to protect minority stakeholders, and उनके लिए है, वो investors को protect करने के लिए SEBI का initiative है. Next important project जो you should know is World Bank STARS project. World Bank STARS project, it is strengthening teaching and learning result for state program. So aim of the STARS project, and it is a World Bank led initiative to improve quality and governance of school education. So it helps the state government to improve quality and governance of the school education system, and it is supported by World Bank. So ये STARS project is also one of the important thing. In next video we'll look about the new education policy and some of the important features of it. One more animal which is in news is fishing cat. You should know about this. It's a state animal of West Bengal, and it IUCN status is vulnerable. It is found in Sundarbans and Western Ghats. So ये आपको important IUCN and उस पर्सपेक्टिव से, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से उसका स्टेटस पता चाहिए. तो ये आपको फिशिंग कैट आपको पता चाहिए. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज इन न्यूज इज संकल्प पर्व, विच वॉज इन न्यूज इज संकल्प पर्व. इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का इनिशिएटिव है, याद रखिए. एंड संकल्प पर्व was celebrated between 28th June to 12th July, and the aim of the संकल्प पर्व was to plant trees in every office. So 5 trees were focused which should be planted in each office across India. The trees was Bargad tree, Avla tree, Peepal tree, Ashok tree, and Bell tree. So these 5 trees were proposed to be planted in each office across India through this Sankalp Parv initiative of Ministry of Culture. तो ये Ministry of Culture का initiative है. You should not forget this Sankalp Parv. So question can be asked around this. One more program which aims at promoting urban forest or generating urban forest is Nagar One scheme. Nagar One scheme के बारे में आपको पता चाहिए. Important scheme है, and the aim is to develop 200 urban forest across India. Across Indian cities, 200 urban forest, and it's based on Varje model which is based in Pune. उस model पर we are developing this urban forest, and it was started on Environment Day. Environment Day, as I last time मैंने बताया कि when do we celebrate World Environment Day is 5th June. On the day we had Stockholm Conference. The first day of Stockholm Conference was celebrated as World Environment Day. तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज विथ रिस्पेक्ट टू जो और एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, विच इज इन न्यूज इज मौसम ऐप. इट्स इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड डेवलप्ड बाय IMD, that is Indian Meteorological Department, Indian Institute of Tropical Meteorology and ICR SAT. ये तीनों लोगों ने मिलकर ये एक मौसम ऐप बनाया. एंड गिव्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड ऑफ अबाउट 200 cities. 200 cities का ये क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस बताता है. तो ये मौसम ऐप आपको पता चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपको पता चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का वन मोर इनिशिएटिव आपको पता चाहिए, दैट इज सफर ऐप. So Safar app is also one of the initiative of Ministry of Earth Science. It says, it gives early warning of the. So ये क्या करता है कि आपकी सिटी में फ्यूचर में नेक्स्ट 2 to 3 days में एयर क्वालिटी कैसे होता है. तो what it majorly does is फोरकास्टिंग करता है. क्या करता है? फोरकास्टिंग ऑफ एयर क्वालिटी. तो एंड इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ IITM, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, एंड IMD. इन दोनों का इनिशिएटिव है. सिमिलर उस तरीके से जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट समीर ऐप. समीर ऐप इज जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसी को ऐप थ्रू हम
प्रोजेक्ट करते हैं थ्रू समीर ऐप एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये आपको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऐप, समीर ऐप, सफ़र ऐप एंड मौसम ऐप के बारे में डिफरेंस पता चाहिए। सफ़र एंड मौसम इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड समीर इज बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो ये आपको पता चाहिए। You should also know about an important anti-torpedo missile which is indigenously developed by DRDO for Indian Navy, that is Marich and ये उसका फोटो है। तो ये आपको पता चाहिए when we are talking about this anti-torpedo which is indigenously developed by India। तो और एक चीज़ आपको पता चाहिए। नेक्स्ट और एक चीज़ जो न्यूज़ में continuously you will be heard, मतलब आप पढ़ रहे हो, that is DCGI, that is Drug Controller General of India, and it is an important organization which gives approval of license for various vaccines। जो भी हम vaccines हम इंडिया में लेके आ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन, इंडिया वाला वैक्सीन है, जो उसका अप्रूवल है, लाइसेंस अप्रूवल है, वो कौन दे रहा है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। एंड दिस ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यू शुड नो, इज अंडर इट्स अंडर CDSCO। तो एंड इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो उसके अंडर है, एंड गिव्स अप्रूवल ऑफ लाइसेंस फॉर वेरियस वैक्सीन्स, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड सीरा। तो यू शुड नो अबाउट दिस। एज आई सेड कि DCGI इज अंडर CDSO, दैट इज सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी फॉर which is a central regulatory body for pharmaceutical industries, and it's an important body and it works towards implementation of one important act, that is Drug and Cosmetic Act का implementation इसके पास है, इसके पास रोल है। तो you should know about this, and CDSCO works towards important roles such as clinical trial approval। So clinical trial approval is by CDSCO। Standards for drug is also ensured by CDSCO। Control over quality of imported drugs है, उसके quality पर कौन ensure करता है? CDSCO। And enforcement of drug and Cosmetic Act। To continue, सबसे important topic which आज हम जो लेने वाले हैं, state of matter। I'll tell you why we are taking this topic as we proceed in the lecture। Initially, we know 3 types of state of matter, that is solid, liquid, and gas। The fourth most important state of matter is plasma। Plasma is created when gas is heated at very high temperature। At this stage, the atoms disintegrate. The nucleus, which is positively charged, and electrons, which are negatively charged, are separated। So at this stage, we have gas of iron, and it is created at high temperature, and it is mostly charged atom। So you should know about this plasma state, which is known as the 4th stage, and usually you find this in the sun, where you have high temperature। Next important जो state of matter which is in news because it was observed in the universe for the first time, and which was predicted by Bose and Einstein, and that's why it is known as Bose-Einstein condensate। तो बहुत important है, it is known as fifth state of matter। And atoms, certain atoms at very when they are cooled at sub-zero temperature, they form this state of matter, that is Bose-Einstein condensate, and its existence was predicted by Satyendranath Bose and Albert Einstein। So you should know about this Bose-Einstein condensate, and it was observed in the universe for the first time। Recently it was discovered। It was predicted in 1990s, but it was first time predicted, and it is very fragile because it's only visible or only active at sub-zero temperature। You should know about this 5 state of matter which are given even in NCERT। So NCERT maybe you would find the NCERT में भी इसके बारे में आपको पता चाहिए, इसके बारे में लिखा है। तो you should know about this basic concept। And last year they had asked a question about Satyendranath Bose and Higgs boson। तो उस perspective से भी this concept is important। Next important thing जो science and technology perspective से है is lunar polar exploration mission, which India and Japan are togetherly going to carry in 2023, and they are going to land a rover and lander on the south pole of Moon। So you should know about this lunar polar exploration mission, which is a collaboration between ISRO and the space agency of Japan। तो उस पर्सपेक्टिव से आपको ये एक important मिशन आपको पता चाहिए। Next important thing, there's one common term which is presently used and it is coming in newspaper, is anthropause। It is also known as great pause। So basically anthropause and great pause are the terms to denote the impact of coronavirus induced lockdown on other species। Because of this coronavirus lockdown, humans are restricted to their homes, and new animal species are coming into our environment। You would find leopards, tigers in the urban environment because of this lockdown, because of coronavirus। So this phenomena is presented through a term known as anthropause or great pause। So you should know about this important term। One more thing which is in news, if you see yesterday's paper, there was one term which was in news, that is permafrost। So I thought of taking the basic concept and link it with cryosphere, and as you go through this lecture, you would get to know the importance of it। Basically, permafrost is any ground which remains
at zero temperature for more than 2 years is known as permafrost. So it basically involves soil and rock which are at sub-zero temperature for more than 2 years, and it's found in high mountains, north and south pole. तो वहाँ ये चीजें मिलती है, तो you should know about this. And basically, because of climate change, what is happening is the temperature is rising, and there is thawing of this permafrost, and there's melting of this ice which is present on the rocks and the soil, and there is leading to release of greenhouse gas. It is also leading to release of new bacteria and viruses which were inactive at sub-zero temperature, and because of rising temperature they are becoming more active, and it is also leading to destruction of road and houses, as there is melting of water which is present in soil and rocks. It creates instability, and thus it is leading to destruction of roads, houses and infrastructure. You should know on that perspective that it also releases greenhouse gas. So permafrost is important. It is basically ground at sub-zero temperature for more than 2 years. Next important term when you are looking at permafrost, you should also know about cryosphere. Permafrost, ये cryosphere है. Permafrost is a part of cryosphere. Cryosphere is frozen water which is a part of Earth system. So basically cryosphere is frozen water which is part of Earth system. So ice or iceberg which are present on our Earth system are all part of cryosphere. Why cryosphere is important? Because this year IPCC released a special report. The report is named as Special Report on Ocean and Cryosphere in Climate Change. The report is named as Special Report on Ocean and Cryosphere in Changing Climate. So, एक important report you should know, and it is released by IPCC. In this report, what they are predicting or what they want to project is that because of climate change, there is impact on cryosphere, and cryosphere indirectly have impact on climate change. So, effectively, we need to know about this important report, and which is a special report. If you see about IPCC, जब भी हम IPCC के बारे में बात करें, तो you should know few of the important terms with respect to IPCC. IPCC Interpanel Committee on Climate Change है, and it was established by UNEP and WMO. You should know about this. And it releases two kinds of reports, that is assessment report and special report. Assessment report and special report. Till now, we had 5 assessment report, and the work on 6th assessment report is going on. In this assessment report, what they do is they work on 3 important things. First is whether climate change is happening. Next is who is responsible for it, and what would be the impact of climate change. So ये सारी चीजें इस assessment reports through हमें आते हैं. Simultaneously, we have special reports. Few of the important special reports which were released in 2019 and 2020 is, first is, as I told you, special report on ocean and cryosphere in changing climate. Second is special report 1.5 degrees Celsius. In this report, they are predicting what would be the impact of climate change if the temperature increases by 1.5 degree. So what would be the impact on the Earth system, on the biosphere if the temperature? तो वो चीजें यहाँ predict की है in the special report 1.5 degree. And the last report is climate change and land. Climate change and land is the third report. These are the 3 special reports which are released in 2019-20. So you should know about these special reports and importance. And UPSC has been asking questions in mains and prelims with respect to this special reports. So cryosphere पर question आ चुका है, and that was related to this report. So hopefully you are able to link things between permafrost, cryosphere, and permafrost is a part of cryosphere, and melting of permafrost or cryosphere leads to climate change, and climate change indirectly leads to melting of this permafrost and cryosphere. तो ये interlinked way में है, तो ये सारी चीजें आपको पता चाहिए. One important report side by side आपको पता चाहिए which is in news is money laundering, that is money laundering and the illegal wildlife trade. Money laundering and the illegal wildlife trade, it is released by FATF. तो important चीज आपको पता चाहिए. FATF is basically an international organization which deals with money laundering and terror financing. Initially, it dealt with only money laundering, but later the function of dealing with or curbing terror financing was added. The headquarters of FATF is in Paris. It's at the similar place where OECD headquarters is placed. 39 countries are part of it, and it was established in 1989. So you should know about this FATF. Side by side, 2 things which are in use is blacklist and grey list. Blacklist countries are those countries which are, or countries or territories which are non-cooperative with respect to curbing terror financing or money laundering. And grey list in which they are indirectly supporting, and there have been proofs that they are indirectly supporting, and it is a type of warning. So Pakistan was given a warning, and it was put in grey list. Once the country is in the blacklist or grey list, there is economic sanctions, and there is curb on the business and curb on the trades, and there are so many restrictions. So that is why Pakistan was trying to come out of this grey list, and India was trying to put it in the blacklist as it was supporting terror financing.
Sorry to pause you in between, but make sure you pause this video and subscribe to the channel because 80% of you are not subscribing. I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers. Thank you. If you like our way of teaching and if you want to cover entire current affairs of 2 years, you can join our Target 140 Plus current affairs batch, where we have covered current affairs of last 2 years in the most comprehensive way, linking current with static. We have released these guidelines for digital education in the name of Pragyata. Pragyata are the guidelines which NCERT has released, and it aims, मतलब Pragyata का full form is plan, review, arrange, guide, talk, assign, track and appreciate. तो इस फॉर्मेट में डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करना है, and these guidelines are named Pragyata and they are released by NCERT. तो ये guidelines आपको पता चाहिए about this promoting digital education. Next important आपको एक platform पता चाहिए, that is Diksha, that is digital platform for knowledge sharing. Digital platform for knowledge sharing, and it is a platform for teachers where they can learn, train and connect with other teachers and get the best practices. So Diksha is an important portal and you should know about this Diksha portal. Again, Ministry of Education का ही है. Side by side, whenever we are talking about teachers, this year an important scheme was launched, that is Nishtha. Nishtha is National Initiative for School Head and Teacher Holistic Advancement. So through this Nishtha portal and online initiative, we are training the head teachers and the principals for effective management of the school. तो ये Nishtha portal भी आपको side by side पता चाहिए. One of the important steps which was earlier taken by Government of India way back was Swayam Prabha. These are 32 high quality educational channels and these are projected through GSAT 15 satellite. So GSAT 15 satellite के हिसाब से we have 32 high quality DTH channels which are projected by Ministry of HRD or Ministry of Education, and this is also to promote digital education. So you should know about this. We have ePathshala app, again an important initiative by NCERT and Ministry of Education. ePathshala app. In this ePathshala app, what you would find is all the textbook, all the NCERTs, all the audio material, all the MCQs, questions, banks, everything which is available to the students and parents through this ePathshala app, and it's an initiative of NCERT and Ministry of Education. So you should know about this. Next important thing is National Digital Library of India. National Digital Library of India. And this digital library is free of cost and it has all the books, articles, videos which are important for university education or also for school education. So all the books which are and it is free of cost. The National Digital Library of India is a digital depository containing textbook, articles and videos. So एक important initiative आपको पता चाहिए. You should also know about Swayam, that is massive open online courses at the national level, and which would ensure that is skill development through online courses. So these Swayam are web-based online courses which are available to all the students, and anyone can take it at the national level. So Swayam, massive online open courses, is also one of the initiative taken by Ministry of Education. Then we have Shagun portal. So Shagun portal can be a question. Shagun portal is basically Shala Gunvatta. In this portal, what we are doing is it is a repository of good practices, photographs, videos, studies of the school management, and जो भी success story है about school management, about improvement of schools. What we are doing is we are collecting all the information and putting it on one portal so that other schools can learn from this good practices and this case studies. So these are important initiative with respect to Ministry of Education. To promote digital education or to promote digital education governance. तो ये सारे initiatives आपको पता चाहिए. साइड बाय साइड जब भी हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में है इज ट्राइफेड. ट्राइफेड वाज स्टार्टेड इन 1987. इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, तो ये भी आपको पता चाहिए. एंड द फुल फॉर्म ऑफ ट्राइफेड इज ट्राइबल कोऑपरेटिव्स मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. तो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो यू वुड फाइंड दिस इज इन न्यूज इन ऑन वेरियस पर्सपेक्टिव. ट्राइफेड इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन 1987. And the main aim of TRIFED is ensuring socio-economic development of tribal people. Socio-economic development of tribal people बहुत important है. And it acts as a facilitator and service provider. It acts as a facilitator and service provider to sell important products. तो जो भी ट्राइबल्स के माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इट प्रोवाइड्स स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू द ट्राइबल पीपल सो दैट दे कैन ऐड वैल्यू टू देयर प्रोडक्ट एंड गेट बेटर वैल्यू फॉर देयर मटेरियल. तो इट फोकसेस ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड इट एम्स एट क्रिएटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्राइबल पीपल. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, स्किल देना, प्रोक्योरमेंट ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग ट्राइबल पीपल एंड ensuring socio-economic development of the tribals. So TRIFED is an important organization in that perspective. Whenever you are looking about TRIFED, there are other initiatives of TRIFED you should know. That is Adi Mahotsav, which is conducted every year. It's the exhibition cum sale of tribal handicraft, art and painting and fabric. And Adi Mahotsav is an initiative of TRIFED and Ministry of Tribal Affairs. You should know. Other initiative of TRIFED is Tech for Tribals. Tech for Tribals is also in use. It's an initiative of TRIFED. It provides, it aims at providing
और ट्रांसफॉर्मिंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स। तो ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स है, उनको स्किल डेवलपमेंट देना, उनका कैपेसिटी बिल्ड करना एंड टेक्नोलॉजिकली उनको एनेबल करना सो दैट दे परफॉर्म इन अ बेटर वे। तो इट एम्स एट प्रमोटिंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड ट्राइबल एंटरप्रेन्योर का स्किल डेवलपमेंट इंश्योर करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग इंश्योर करता है थ्रू टेक फॉर ट्राइबल, अनदर इनिशिएटिव ऑफ TriFed. One Dhan scheme is also important. We'll look into this scheme in details, but you should know it's also initiative of TriFed and Ministry of Tribal Affairs. And the aim of One Dhan scheme is to improve tribal income through value addition of tribal products. जो भी tribal products है, if you sell it directly, you will get less amount. But if you add value, if you उसका branding करते हैं, उसके उस पर if you have MSME industries, if you make certain products, अगर सिर्फ bamboo बेचोगे तो कम प्राइस मिलेगा, लेकिन अगर bamboo के baskets बना के बेचोगे तो you will get more price. So what TriFed is doing through One Dhan scheme is aiming for it aims to provide skills so that they can add values and sell this product. One important topic, that is one-horned rhino, which was in news, which is always in news because of recently it was in news because Kaziranga, there was floods in Kaziranga and it led to death of many rhinos and displacement of many. So IUCN status of one-horned rhino, which is present in India, is vulnerable. So you should know that it is vulnerable. Secondly, it is part of Schedule 1 of Wildlife Protection Act. So there are 6 schedules you should know about them, and rhino is in Schedule 1 where the punishment is very severe. So Schedule 1 में है. So in order to ensure greater conservation of rhinos. Next important thing is the census. We have seen tigers in our previous lecture, I think so, lecture number 2. In lecture number 3, lecture number 5, what we want to tell you is tiger census is every 4 years, rhino census every 3 years, and elephant census every 5 years. So you should know about all this census and कब होता है, तो UPSC might ask. And as I told you, it's majorly found in Kaziranga. Next important thing is what are the steps taken by government with respect to conservation of rhinos. And first is rhino is the first animal जिसका हम DNA sequencing करने वाले हैं for a wild animal जो wild area में रहता है, natural habitat में रह रहा है, उसका what we are trying to do is ensure DNA sequencing, and it is conducted by WWF and Wildlife Institute of India, Wildlife Institute of India, WII. तो ये आपको initiative पता चाहिए that rhino is the first animal which is present in wild जिसका हम DNA sequencing कर रहे हैं. Next is I have also told you about IRV, Indian Rhino Vision 2020. The aim is we want to ensure 3,000 rhino population ensure करना है in Assam, not in India but in Assam, and shift rhinos from Kaziranga to different national park and wildlife sanctuaries so that if there is any calamity in Kaziranga, we would have an alternative place where we have conserved rhinos. So Manas, Dibru Saikhowa and Laikhowa, ये 3 places है जहाँ where we are trying to translocate and conserve rhinos, one-horned rhinos. तो ये important है. There is also one important initiative, that is New Delhi Declaration on Asian Rhinos 2019, which was signed by 4 Asian countries. So you should know about this New Delhi Declaration on Asian Rhinos, and it was towards conservation and protection of rhinos. So strategically सारे countries एक साथ आके decision लेके and they would share knowledge and work towards conservation of rhinos. So ये 3 initiatives with respect to rhino conservation you should definitely know. Next important thing is one important portal developed by Ministry of Education or Ministry of HRD is Yukti, that is Young India Combating COVID with Knowledge, Technology and Innovation. So Yukti portal is an important initiative where all the youths, they can contribute with their ideas on how to tackle COVID and how to bring out innovative solutions so that we can work in a collaborative way and find a solution to it. So Yukti portal is also in news and it's a very important initiative from prelims perspective, so you should know. One other important report by which you should know is Ocean Deoxygenation, Everyone's Problem. It's an important report which was released by IUCN this year. IUCN is an important organization. It started in 1948. Its headquarters is in Gland, Switzerland. And it's a collaboration between governmental and non-governmental organization. Not only just governmental organization, but NGOs also are also part of it. And it was responsible for execution and drafting of 2 important conventions, that is CITES and Ramsar. So you must have known about this convention, CITES and Ramsar. So uske drafting and execution mein they have played an important role. Simultaneously, it brings out Red Data Book, a book which says about all the critical endangered species, which are the species and classifies based on extinct
extinct in wild, critically injured, endangered, vulnerable, near threatened. So there are 9 categories, and it tries to categorize every species into this category so that our awareness and our seriousness towards them increases. And this categorization is based on their population, the area where they live, whether their population is decreasing in a faster way. तो इस basis पर the categorization होता है 9 species पर. You should know this. You should also know about this red data book. There are pink pages and green pages. Pink pages are जहाँ pink pages represents animals which are critically endangered और जिसका condition worsen हो रहा है, तो these are represented in pink pages. Green pages is where the condition or the number of species are increasing and there is a positive recovery of those species. तो pink pages उससे related है. तो hopefully आपको ये ocean deoxygenation report and IUCN के बारे में you would have got an idea. International Energy Agency के बारे में it's also news you should know about. It's a Paris based agency under OECD framework. It was established after 1973 oil crisis, ये पता चाहिए. And India is not part of this. India is not part of International Energy Agency, and it provides information source for statistics about oil market. So it generally provides कि what would be the price of oil, where it is stored, कौन सी कंट्रीज के पास कितना स्टॉक है. तो इन सारी चीज़ों के बारे में OECD कंट्रीज एंड नॉन OECD कंट्रीज को भी इट हेल्प्स. तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज पेरिस बेस्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है. एंड इट ब्रिंग्स आउट 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स विच आर ऑल्सो इन न्यूज, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू एंड वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट. तो important है. We just do not want to know about one report, that is energy progress report, but you also should know about global energy review and world energy investment. 2 important reports brought out by International Energy Agency based in Paris. Next important चीज is International Renewable Energy Agency. बहुत important है. It's based in Abu Dhabi. And it facilitates cooperation, it facilitates transfer of knowledge, transfer of expertise with respect to renewable energy. So you should know that it helps in collaboration and coordination with respect to renewable energy, and 160 members are part of it. India is also part of it. Hopefully you would have got about knowledge about these 2 important organizations which are also in news and also in current affairs, and we have linked it to this new report. Next important thing, one important island is in news, Socotra Island. You should know about this Socotra Island because it was in news, and Yemenis have got this island from Saudi Arabia. उन्होंने कैप्चर कर लिया है, तो ये आपको पता चाहिए. ये इट्स ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आपको पता चाहिए. नॉर्दर्न इंडियन ओशन में है. यू कैन सी दिस साइट वेयर दिस इज द प्लेस, दिस इज द सोकाटो आइलैंड. You should know, and it is at the mouth of Gulf of Aden. It is at the mouth of Gulf of Aden, तो ये आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है. गल्फ ऑफ एडन के बारे में पता चाहिए. गल्फ ऑफ एडन इज बेसिकली बाउंड इन द नॉर्थ बाय येमेन, इन द साउथ बाय सोमालिया, इन द ईस्ट बाय सोकाटो आइलैंड एंड इन द वेस्ट बाय डिजिबोटी. तो ये इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ एडन के बारे में पता चाहिए. एंड गल्फ ऑफ एडन इज बिटवीन अरेबियन सी एंड रेड सी. इट कनेक्ट्स रेड सी थ्रू बल्बे-मंदब स्ट्रेट. तो ये एक इंपॉर्टेंट आपको प्लेस पता चाहिए. एंड गल्फ ऑफ एडन ओपन्स इनटू अरेबियन सी. तो ये सारे आपको ये न्यूज़ आर्टिकल मैपिंग पर्सपेक्टिव से भी पता चाहिए. एंड एवरी डे वी वुड टेक सम इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग. तो आपको अरेबियन सी पता चाहिए, सोकाट्रा आइलैंड पता चाहिए, गल्फ ऑफ एडन पता चाहिए, एंड सोमालिया, डिजिबोती, येमेन, ये सब आपको पता चाहिए. एंड बल्बे-मंदब स्ट्रेट भी आपको पता चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो न्यूज़ में है इज पोर्ट लुइस इज मॉरिशस, एंड इंडिया इज बिल्ड अ पार्लियामेंट बिल्डिंग देयर. एंड यू शुड नो ईस्ट टू वेस्ट पूछ सकते हैं कि मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड, मडागास्कर एंड मोजाम्बिक. दे माइट आस्क ईस्ट टू वेस्ट. तो सबसे ईस्ट में है मॉरिशस, फिर रियूनियन आइलैंड, देन मडागास्कर एंड देन मोजाम्बिक कंट्री विच इज पार्ट ऑफ अफ्रीका, एंड देयर वी हैव मोजाम्बिक चैनल. तो ये आपको पता चाहिए. बट रियूनियन आइलैंड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. रियूनियन आइलैंड, इट इज अ फ्रेंच आइलैंड, फ्रेंच
and we have collaborated with France in a greater way through buying Rafale, and we would be using the Reunion base of France so that to tackle Chinese intrusion in the Indian Ocean. तो Reunion Island भी बहुत important है, it's closer to Mauritius and Port Louis. आपको ये सारी चीज़ें पता चाहिए with respect to current affairs. Next important thing which I want to tell you is Niti Aayog and Niti Aayog, Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology has taken various steps to promote artificial intelligence. Basically, artificial intelligence is where a machine acts or behaves in a human like a human. तो artificial intelligence के बारे में पता चाहिए कि where a machine acts or behaves in a human-like way. Next, the subset of artificial intelligence is machine learning. So there is a difference between artificial intelligence and machine learning. Machine learning is a program in which you feed data into a computer, and the computer based on these data tries to take independent decision and tries to behave like human. So artificial intelligence is a broader term. Machine learning is a part of it, a subset of artificial intelligence in which we use statistics, we use data so that the computers can take effective decisions. And the subset of machine learning is deep learning, and which means computation of multi-layer neural network, in which in deep learning we have multi-layer neural network which helps us to achieve machine learning, and thus machine learning helps us to achieve artificial intelligence. So artificial intelligence का subset machine learning है, machine learning का deep learning है. Deep learning is about neural networks similar to our brain. So multiple neural network help us to take to have faster computational speed. This faster computational speed help us to achieve machine learning, and machine learning helps us to achieve artificial intelligence. तो ये आपको basic difference पता चाहिए, and UPSC might ask you question related to this. This is a very what do you say, a difficult concept, and hopefully I am able to explain you in a simpler way. There is an important national AI portal for National Artificial Intelligence Portal of India was recently inaugurated. It was inaugurated by MITI and NASSCOM. It's an initiative of both MITI and NASSCOM, and sharing resources, knowledge, research and case studies with respect to AI, so that on one platform the startups, all the bigger companies, the government, private companies, corporates can share their experience, can share their knowledge, so that we grow faster in a faster way with respect to artificial intelligence, because future is artificial intelligence. Next importance is Niti Aayog also has produced an important research paper, that is National Strategy for AI, and in that they have identified 5 areas where AI can be applicable in India in a major way. So 5 areas which was brought out by Niti Aayog, that is National Strategy for AI. Question can be asked on this perspective. The 5 areas which they identified were health, agriculture, education, smart cities and transportation. So these are the 5 areas given in National Strategy for AI. The report was brought out by Niti Aayog, so you should know about this. There was a task force to explore the possibilities to use AI in various streams. तो important government ने एक task force बनाया था V Kamakoti committee के अंडर, V Kamakoti के chairmanship के अंडर task force. तो you should know, in this task force the aim was to identify areas where we can use artificial intelligence in a and take benefit out of it. तो वो important committee ये है. Government has also set up Chandrasekhar committee. Chandrasekhar जी was the TCS के जो हेड है उनके अंडर एक कमेटी बनाए थे, एप्लीकेशन ऑफ एआई इन द डिफेंस सेक्टर, उसके लिए है. तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट एआई. व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट एआई यू शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू लर्निंग ओनली वन पार्ट, बट गोइंग थ्रू ऑल द थिंग्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो नीति आयोग ने एक अप्रोच पेपर रिलीज किया था, उसमें बोला था कि इंडिया नीड्स टू डेवलप एआई स्पेसिफिक cloud computing network, AI specific cloud computing network. So AI, what basically it requires huge computational skill, huge cloud computing skills, and what we need to have an AI specific cloud computing network by name of AR-WAT. तो ये इसके बारे में भी आपको पता चाहिए कि what is AR-WAT and what is AI specific cloud computing network which was proposed by नीति आयोग. तो ये एक important चीज़ आपको पता चाहिए जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें. नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट इज गवर्नमेंट हैज सेट अप एन इम्पॉर्टेंट organization, that is InSpace, that is Indian Space Promotion and Authorization Center.
It is going to be a one point contact between private organizations and ISRO, so that we have greater privatization of the space sector, and it would come under Department of Space and it would ensure level playing field in the space field. To promote privatization, उसके लिए एक one point center है, and single point interface between ISRO and everyone who wants to participate in the space related activities, and it would act as a facilitator and regulator also. तो ये in space के बारे में आपको पता चाहिए, and it is different from ISRO. So the aim of InSpace was ISRO should specifically focus on the technical aspect, and InSpace would specifically focus on the clearing the regulatory hurdles and bringing in private sectors, so that there is easier collaboration with private sector. So it is a one-stop center. So InSpace, you should know, and it was recently announced under Atmanirbhar Bharat that we should have more privatization. Next important thing, India had also established a new Space India Limited नाम की एक second commercial entity was established by Government of India. It was second commercial arm of ISRO, and the aim of this NSIL was जो भी ISRO की एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कमर्शलाइज इट. तो कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इसरो टेक्नोलॉजी एंड यूजिंग इट for commercial gains was the main aim of NSIL. The other aim was to produce SSL, small satellite launch vehicle, and PSLV with private sector collaboration. So indirectly it also promotes privatization. Secondly, it was as I said, the use of R&D of ISRO for commercial purpose with help of private sector, with the collaboration of private sector was the aim of NSIL. NSIL also it does not looks after only domestic customers but also global customers. तो सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर्स के बारे में नहीं देख रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कस्टमर्स के बारे में को भी डील करेगा, एंड साइड बाय साइड इट वुड फोकस ऑन लॉन्च सर्विसेज एंड सैटेलाइट बिल्डिंग में भी इट वुड कंट्रीब्यूट. सो NSIL the aim is build satellite launch vehicles with collaboration of Indian industry. Secondly, जो भी लॉन्च सर्विसेज है, सैटेलाइट बिल्डिंग है, उसमें हेल्प करना. यूज ऑफ इसरो का R&D फॉर कमर्शियल पर्पस विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. तो ये सारे एम NSIL के हैं. इन स्पेस के बारे में देखा हमने आज, इसरो इसके बारे में देखा, ग्लोबल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एरावट के बारे में देखा, देन टास्क फोर्स देखे हमने, नीति आयोग का नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर AI देखा, देन हमने नेशनल AI पोर्टल ऑफ इंडिया देखा, देन वी सॉ डिफरेंस बिटवीन AI, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, उसका डिफरेंस देखा, पोर्ट लुइस, गल्फ ऑफ एडन, सोकाट्रा आइलैंड देखा, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस देखे हमने, IUCN के बारे में देखा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर टुडे विल स्टार्ट विद दिस इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी which was set up in 1957. So you should know about this International Atomic Energy Agency. It's based in Vienna, and it is known as the organization is known as Atoms for Peace, and it reports, though it is not directly part of UN, but it reports to UN Assembly and UN Security Council. So you should know that though it is not part of UN, but it reports to UN and UN Security Council. And the aim of this organization is to promote peaceful use of nuclear energy, to avoid military use of the nuclear technology, and so that there is no proliferation of nuclear weapons, and ensure nuclear safety. So these are the few important functions of International Atomic Energy Agency which you should know. Side by side, this year we had 63rd conference of International Atomic Energy Agency. And in this conference, India announced that India would set up Vishwam Cancer Care Connect. Vishwam Cancer Care Connect. It's an important initiative taken by Government of India during this international conference of International Atomic Energy Agency. Through this Vishwam Cancer Care Connect, what we are trying to do is connect all the cancer hospitals around the world through one network and through internet, so that they can share the knowledge, they can share the experience, and then we can have better treatment of cancer patients. So it's a global care network, and it would cover the premium institute of every country which are dealing with cancer and connect them. So it's an important initiative taken by India. Similarly, India also has National Cancer Grid.
India took this inspiration from National Cancer Grid, which it set up under TMH, that is Tata Memorial Hospital in Mumbai. We have a premier institute who are expert in cancer care. So based on that, India had already developed a domestic cancer care network known by National Cancer Grid, and to replicate at the global level, we have Vishwam Cancer Care Connect. So you should know about this important organization. We have taken about the organization also and the current affairs also. It's linkages between static and current. Next important thing which you should know about International Atomic Energy is India has ratified additional protocol of International Atomic Energy Agency. What is this additional protocol? It ensures that the civilian reactors, civilian nuclear reactors or sites of India would be under the surveillance of International Atomic Energy Agency. So we have allowed and we have ratified to this protocol, and under this protocol we would allow the experts and scientists from International Atomic Energy Agency to come to India and inspect the civilian reactors, so that we have ensured transparency and we tell the world that we are not involved in any nuclear proliferation. So you should know about this important initiative taken by government. Next important thing you should know is Blue Heart campaign. Blue Heart campaign, it's an important initiative of UN, and it is initiative to raise global awareness about human trafficking and how it impacts the society and how we can stop it. So Blue Heart campaign is important, and you should know about this, and the question can be directly in your prelims with respect to Blue Heart campaign. It's related to human trafficking, its awareness and its impact on society. So iska global awareness, what we need to cover is important. Next important organization which you should know is Commonwealth. I will tell you why it is in news. Commonwealth is an important organization. 54 countries are part of it. The head of Commonwealth is Queen of UK, that is Queen Elizabeth, and these 54 countries are countries which were under British Empire during pre-independence. So you should know about this. The headquarters is in London. So there are two offices under Commonwealth. First is Commonwealth Secretariat and Commonwealth Foundation. Commonwealth Secretariat looks after intergovernmental aspect, जो भी country के बीच में relationship है between all the 54 countries, that is looked after Commonwealth Secretariat, and Commonwealth Foundation looks after non-governmental relationship, all the NGO related works, all the relief and rescue measures, जो भी non-governmental initiatives है उसके बारे में देखता है. And it was established by London Declaration. Which you should know. Simultaneously you should also know about Youth Development Index, which is last lectures we have seen Indian Youth Development Index released by Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development, but at the Global Youth Development Index is released by Commonwealth organization. So you should know about this. One more important organization which is in news is Commonwealth Human Rights Initiative. Again a non-profit, non-partisan organization which you should know, and it is 53 countries are part of it, and it's working in the field of human rights and promotion of Universal Declaration of Human Rights. So this organization works towards protection of human rights and working towards implementation of Universal Declaration of Human Rights. Its headquarters is in New Delhi, and recently it presented a report on slavery on World Human Trafficking Day. So ये उस perspective से भी important हो जाता है. So you should know about this. Recently NASA has planned a Mars mission in 2021, and the name of this mission is Perseverance, and there are so many Mars missions which were launched this year. So Perseverance is one of them, and the aim is to bring back samples from Mars and to generate O2 or oxygen on Mars through a rover. So you should know about this Perseverance mission. Recently, two other Mars missions which were launched recently. UAE launched Hope mission, and China launched Tianwen-1, which is also a Mars mission. So you should know about this Mars mission which are in news.
Next important thing which you should know is Santushti portal. Santushti portal is by Ministry of Labor and Employment, and it works towards implementation, ensuring that there is proper implementation of labor laws at the ground level, at the grassroots level. तो उसके लिए है Santushti portal. There can be directly question with respect to Santushti portal which you should know. One more term which is in news is equalization levy. Equalization levy is a type of direct tax. It's a type of direct tax. You should know it is a type of direct tax, and it was started in 2016. And the aim of equalization tax is to tax non-resident companies who are involved in advertisement in India. So for suppose I am a coaching institute and I market on Facebook or YouTube or any other platform which is non-resident in India, and I pay 50,000 to them. So 6% of 50,000 should be the tax which should be levied on Facebook or YouTube, depending on the amount I spend. So it is a tax on non-resident companies which are involved in advertisement, So 6% is the cost, and it is equal to GAFA tax, which is in news at the international level. But equalization levy, now it is now the government has taken a stand that it would be applicable to e-commerce companies also, because most of the e-commerce companies, the holding is in US or other countries. So e-commerce is also a form of advertisement, and they are also involved in advertisement, so they should also pay for equalization levy. But equalization levy के बारे में you should know, it was started in 2016 and it is a form of direct tax. It is a form of direct tax, so you should know about this. Next important initiative you should know is Satyabhama portal. Satyabhama portal, it's under Ministry of Mines ने start किया है. The full form is Science and Technology Yojana for Atmanirbhar Bharat in Mining Advancement. So the full form is Science and Technology Yojana for Atmanirbhar Bharat in Mining Advancement, and it is developed by NIC. So Satyabhama portal is developed by NIC for Ministry of Mines. The aim is for to promote R&D in mining sector. The aim is to promote R&D in mining sector. The aim is to promote mining in R&D sector. So hopefully, if there is any news related to it, any MCQ related to, you are able to solve it. You should know about this. Next is you should know that India has been charged in WTO with respect to violating IT agreement, Information Technology Agreement. It's a pluralistic agreement under WTO. 82 countries are part of this agreement, and it was enforced in 1997. Initially there were a few countries, now totally 82 countries are part of it. Under this IT agreement, it was decided that जो भी core IT products है, over the years what we would do is reduce the trade barriers, reduce the taxes on it, and so that there is free import and export of IT products, and India has signed to it the first agreement that came in 1997. But recently, to ensure Atmanirbhar Bharat and to ensure Make in India, we had issued some taxes, some excise duty on these imported electronic components, and because of this WTO Japan has taken us, US has taken us to WTO for violating IT agreement. तो IT agreement का main aim था कि accelerate and deepen the reduction of trade barriers for importer of ICT products. तो ICT products का import हमें जो भी trade barriers है, taxes है, वो हमें कम करने चाहिए थे. लेकिन recently because of to ensure Atmanirbhar Bharat and Make in India, we had imposed certain tax, and because of this we have been charged in WTO with respect to this. Next is ITR is also in news because we have already covered part of it in our previous lectures. Please go and watch our previous lectures, they are more important. And it is International Thermonuclear Experiment Reactor. It's an experiment reactor. It is based in France. It's based in France, and it is working towards generating energy from fusion reaction. Indirectly, it is what it is trying to set up is fusion reactor. Why we are working on fusion reactor is because the energy generated by fusion of atoms is more than fission of atom, and fusion reaction takes place usually at very high temperature, so it is very difficult to make a reactor. So we are trying to make a experimental reactor, and that experiment is taking at France in the form of International Thermonuclear Experiment Reactor. And whenever you are looking about ITR, you should know that India is also part of it. तो ये उस perspective से भी आपको important पता चाहिए.
Pangolins के बारे में आपको पता चाहिए. Pangolins are also in news because MP government has tried to tag them. उनको radio tags उन पर लगाया because there is huge trafficking. It is the most trafficked animal in the worldwide. Indian pangolins are endangered, whereas Chinese are critically endangered. It comes under Schedule 1, and they are the only scaly animals, scaly mammals, only scaly mammals. They are found all over India except in arid northeast and Himalayan regions, जहाँ वो नहीं मिलते हैं. Rest everywhere they are found. So you should know about this pangolins and the IUCN status of pangolin. To start with, one important fund which is in use is Acceptance Development Fund. It is proposed by RBI, and the aim of this fund is that we should create a debit card and a credit card acceptance infrastructure in rural areas, in tier 2 and tier 3 cities. So to support this infrastructure, the swipe machine, QR code, all these things, RBI has proposed Acceptance Development Fund, and the fund and the money for this fund would come from NABARD, and NABARD would give money from its Financial Inclusion Fund. So NABARD has an important fund, that is Financial Inclusion Fund. From that fund, it would give money to this initiative, and RBI would give fund from Depositor Education and Awareness Fund. Depositor Education and Awareness Fund. Simultaneously, in our previous lectures, we have looked after two important funds, that is Investor Education and Protection Fund and Investor Protection and Education Fund under Ministry of Corporate Affairs and SEBI. So please go through our previous videos. You can find the link in the description box or on targetupsc.in website. Next important thing is you should know about different funds managed by NABARD. So this question can come into prelims because these all funds are in use. First is Rural Infrastructure Development Fund. Those banks who are not able to fulfill their priority sector lending requirements, that money would directly go into Rural Infrastructure Development Fund. So indirectly supporting rural development and agriculture sector. So this fund is also important. Next important fund is Long-Term Irrigation Fund. So through this project, NABARD, what does it do? It finances irrigation projects. Next important fund is Micro Irrigation Fund, again managed by NABARD. So all these three funds you can write whenever you're writing about mains also. So whenever you're writing about irrigation issues in India, what steps government has taken, you can use Long-Term Irrigation Fund and Micro Irrigation Fund in your answers. Next important fund is Climate Change Fund. It's an important fund under NABARD. NABARD has created to support activities which are against climate change and to help the research activity with respect to climate change. So Climate Change Fund is an important fund which was created by NABARD. बहुत important है and question can come directly from it. Green Climate Fund is also one important fund you should know, and this fund was created under UNFCCC, and NABARD is National Implementing Agency for this fund, so you should know about this fund. One more fund which was recently created is Dairy Processing and Infrastructure Fund, again a fund under NABARD. To support dairy industry, we have created this Dairy Processing and Infrastructure Fund. Hopefully you have got idea about all the funds which are managed by NABARD. Secondly, important thing is you should know certain information of NABARD. NABARD is basically a statutory organization set up in 1982 and the headquarters is in Mumbai. Initially, RBI had a few shares with respect to NABARD. Now the 100% ownership of NABARD is with government. So you should know about this information. NABARD basically looks into three important functions. First is financial function. It finances directly and indirectly to RRBs and cooperative banks. NABARD has development function where it supports self-help groups, it supports climate change activities, it supports financial inclusion activities and farm sector development. So it works in all these sectors. And third is supervisory role. So it supervises over RRBs, regional rural banks, state cooperative banks and district cooperative banks. So these are the three functions which is broadly classified, which is carried out by NABARD. So holistically, we have tried to cover everything with respect to NABARD. To look after VIBHA, you should know a few things about Vigyan Bharati, that is VIBHA. The headquarters is in New Delhi and it's a non-profit organization which was started before independence, and the aim was to motivate young school children in science, to take up science and to motivate young students in the science field. The एक aim विज्ञान भारती का था. It was previously known as Swadeshi Science Movement. It was started by Professor K.I. Vasu. तो उस perspective से it's an important
ऑर्गेनाइजेशन जो आपको विज्ञान भारती के बारे में पता चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और एक इनिशिएटिव आपको पता चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, दैट इज नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी. नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स इन हायर एजुकेशन. The aim of this project is to use technology for better learning outcomes in higher education. तो hopefully ये सारी चीज़ें आपको मतलब you would have got about this initiative. Next important thing is you should know about Tropical Forest Alliance 2020. It's an organization, it's an initiative started in Rio 2012, the Earth plus E+20 summit, Rio 2012 summit. Then that was the time this Tropical Forest Alliance 2020 was created, and it's a PPP based partnership where through voluntary actions we aim to reduce tropical deforestation. तो finally aim क्या है इस Tropical Forest Alliance 2020 का, through PPP alliance, what we need to do is promote voluntary actions towards reducing tropical deforestation, and it focuses on better planning and coordination between various agencies, both state government, local agencies and international agencies. So it's an important initiative with respect to environment, Tropical Forest Alliance 2020, but it was formed in 2012 at Rio 2012 summit. Next important cheese which is in news is you should know about commodity transaction tax. It was started in 2003. It's a direct tax. You should know it's a direct tax, and both buyer and seller will be taxed, and the tax rate is 0.01%, and it is only on non-agriculture commodities. It's only a charge on non-agriculture commodity future contracts. तो ये आपको पता चाहिए, non-agriculture commodities such as gold, silver, जो भी future contracts, derivatives based future contracts है, तो उस पर charge होता है. तो ये commodity transaction tax आपको पता चाहिए. There is security transaction tax also, but commodity transaction tax is also there, and it is basically on non-agricultural commodities. ये आपको पता चाहिए. One more important term which is in news is Bureau of Civil Aviation. From India Yearbook also has a topic on Bureau of Civil Aviation. It's a regulatory body which looks after security of airports and airlines. It sets standards for airline security and aviation security. तो Bureau of Civil Aviation का main aim क्या है? Security function है. तो you should know about this security function of Bureau of Civil Aviation. Next important thing is cataract is also in news. Recently we have found that aspirin, which is a drug which is used against myocardial infarction, heart attack. It's also working for reducing the cataract and delaying the cataract. Cataract is basically, it's a disease of the eye. It's one of the major reasons, biggest reason for blindness in India. And cataract में क्या होता है कि जो lens होता है आपकी आंखों का, it crystallizes, it degrades, it degenerates, and there is a cloudiness in front of the eyes, and this disease is very common among old age people. तो cataract के बारे में पता चाहिए. And it was found that aspirin is a good drug which can be used for dealing the cataracts. Next important places in news is Galapagos Island, which is in news recently, and it comes under Ecuador. If you can see, these are Galapagos Islands, and it is a territory of Ecuador. Ecuador का territory है, and you should know about this. That Galapagos Island is important because recently there were few Chinese vessels there, and Ecuador raised its concern regarding it, and it was in news. So you should know about this. It's in the Pacific Ocean and close to Ecuador, and it is also in news because of Darwin theory of evolution. Darwin studied Galapagos Island, and based on his study of Galapagos Island, he proposed theory of evolution. There is giant tortoise also, which is famous from Galapagos Island. So you should know everything about this Galapagos Island, and it is under the control of Ecuador. तो ये आपको simultaneously पता चाहिए. One more important scheme you should know, which is in news from last 2 months, is Atal Bhujal Yojana. It's an initiative of Government of India, a 6,000 crore initiative of Government of India and World Bank. World Bank is also working toward it, and the aim is community participation in management of groundwater resource. So community participation करना in planning, management, extraction of groundwater. That is the aim of Atal Bhujal Yojana. So whenever we involve community in the
functioning of any program, we have better results, because there is acceptance of the project and there is ownership of the project, and it's a long lasting project. Simultaneously, it's a 5-year project which you should know, 2021, 2022, 2025, and Ministry of Jal Shakti is part of it, and majorly it focuses on water stress states. जितने भी water stress states हैं उस पर focus करता है. तो you should know about this Atal Bhujal Yojana. One more important term, two important terms which are in use is Vahan and Sarthi. These are two important portals of Ministry of Road Transportation. Under Vahan, information of all vehicles is present as a central repository, and where we can get information, the ownership of any vehicle at one place, so we can identify the location of the vehicle and who is the owner of that vehicle in a quicker time. So it's a central repository where vehicle numbers and the vehicle owners का एक repository है जहाँ उनकी information stored है, and we can get information from that. Sarthi is similar to Vahan, but it is with respect to license. Here all the license numbers of all the drivers are registered at one place, so that administration can know whether the license is valid, invalid, or it's a fake license. तो उस perspective से Vahan and Sarthi are two important initiatives जो आपको पता चाहिए. The first important thing which I wanted to tell you is there's an initiative between Ministry of Earth Science and BMC, that is Mumbai Municipal Corporation, that is iFlow, that is Integrated Flood Management System for Mumbai. And this system helps in early warning about floods which would happen in Mumbai by 2 to 3 days. So 48 to 72 hours का early warning system मिलता है, so that we can plan effectively and start our preparation at an early stage. तो एक important initiative है. One more, after this, there's a place which is in news is Lebanon. There was a huge blast in Lebanon that was ammonium nitrate. It is said that ammonium nitrate, because of that there was a blast in Lebanon, and to take a deeper into Lebanon and mapping related to it, basically Lebanon is bound in the north and east by Syria. So ये सारा part Syria से bound है, north and east. West में you have Mediterranean Sea, and south में you have Israel. तो ये आपको पता चाहिए. And Beirut is the capital of Lebanon. तो hopefully you get this mapping point whenever there's a question on mapping. तो ये mapping perspective से you should know about Lebanon. Sorry to pause you in between, but make sure you pause this video and subscribe to the channel, because 80% of you are not subscribing. I would request everyone to subscribe to the channel and help us reach 1 lakh subscribers. Thank you. You should also simultaneously know about real estate investment fund. These are regulated by SEBI, and these are similar to mutual funds, where a group of individuals, they come together, they gather money, and this money is invested in a real estate project, and they get a rent, and money is invested in rent generating projects, and this rent is again distributed among all the members who have contributed to this fund. So real estate investment fund is a financial instrument similar to mutual fund, and it is regulated by SEBI. तो ये भी आपको पता चाहिए. One more important group which is in news is Eurasian group. We have already studied in our previous lectures with respect to FATF. Eurasian group is an important group. It works towards combating money laundering and financing of terrorism, similar to FATF. And countries part of it are Belarus, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, India, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Mostly Central Asian countries. China is also there, Belarus is also there, Russia is also there, and along with it, India is also part of it. So Eurasian group is also important. One more organization through which was in news because India became an observer status of this organization is Indian Ocean Commission. It started in 1982. 5 island countries are part of it. The countries are Comoros, Madagascar, Mauritius, Reunion, and Seychelles. So you can see in this map, Seychelles is in the most southern part, Madagascar is in the most, Seychelles is the northern part, Madagascar is in the southern part,
And you can see Reunion Island and Mauritius. We have already studied about Mauritius and Reunion Island in our previous lectures. Reunion Island is basically a French Union territory and base, naval base. So उस perspective से भी it's important for India, and this organization is also important to India for ensuring maritime security and security of our marine borders and security of Indian Ocean. उस perspective से भी ये organization important है, and the headquarter of this organization is in Mauritius, जो आपको पता चाहिए, Mauritius में इसका headquarter. Next important organization which I would like to tell you is National Bureau of Plant Genetic Resource. All these organizations are in news if you read in details. So we are going one step ahead. It was established in 1977 and under Department of Agriculture, Research and Education. The aim of this organization is to improve crop quality and quantity through germplasm introduction through genetic engineering. तो ये इंश्योर करने के लिए नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. वन मोर इंपॉर्टेंट बॉडी यू शुड नो अबाउट दिस विच इज इन न्यूज इज नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड. दिस वाज रिसेंटली सेटअप एंड इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर है, एंड द एम ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू डेवलप मैकेनिज्म फॉर ग्रोथ ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन इंडिया. उसका ग्रोथ कैसे बढ़े, उसका ज़्यादा प्लांटेशन कैसे हो, एंड सो दैट वी कैन यूज़ दिस मेडिसिनल प्लांट फॉर आयुर्वेदिक पर्पस. तो उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. ढोल, it's an Asian wild dog which is in news. You should know about this. It's an endangered, उसका IUCN status endangered है. Highest number of this dhole dogs are found in India. They are present all over India. And in world they are majorly found in Central and South Asia and Southeast Asia. तो majorly इस area में है, and it's an endangered and it looks similar to wolf. तो उस perspective से भी आपको पता चाहिए. We have, as vaccines are in news, we have electronic vaccine intelligence network. It's an app based monitoring of vaccine stock and the temperature of the cold chain. So the process through which vaccines are transferred from the storage facility to actual transportation or to actual place where vaccine is delivered, इस process, ये सारे steps को, जितना भी supply chain है उसको उसको cold chain बोलते हैं. And this cold chain is temperature sensitive. So all the vaccines are temperature sensitive. If the temperature goes 2-3 degrees above, the vaccine is destroyed. So to maintain a specific temperature and to monitor this temperature, we have this electronic vaccine intelligence network, which monitors the temperature also and stock also through an app. तो even is an indigenous technology. तो उस perspective से भी आपको पता चाहिए. आपको cold chain भी पता चाहिए. आपको cold chain भी पता चाहिए. Cold chain is basically जो भी वैक्सीन जहाँ मेजरली जिसका स्टॉक होता है, जहाँ प्रोड्यूस होता है, वहाँ से एक्चुअल जहाँ वो एडमिनिस्टर होता है अमंग चिल्ड्रन. सो ये उसके बीच में 3-4 स्टेप्स होते हैं, 3-4 नेटवर्क्स होते हैं. तो ये सारे चीज़ को कोल्ड चेन बोलते हैं, एंड इट इज़ टेम्परेचर सेंसिटिव. तो आपको कोल्ड चेन के बारे में पता चाहिए, एंड इट्स रिलेटेड टू वैक्सीन डिलीवरी. तो होपफुली ये आपको पता चाहिए. अरावलीज इज ऑल्सो इन न्यूज़ बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ प्लान्ड एरियल सीडिंग ऑफ अरावलीज. अरावलीज बेसिकली दे आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में इंडिया के यू वुड फाइंड अरावलीज. दे कनेक्ट Delhi to Gujarat. Guru Shikhar is the highest peak of Aravallis. Mount Abu is also part of it. And important rivers associated with Aravallis is Banas, Sahiba and Luni River, which are part of Aravalli ranges and which passes through it. उस perspective से भी आपको ये पता चाहिए. First important topic is of LIDAR. It's in news. It's a science and technology related term, and definitely there can be a question. You can expect a question on this. LIDAR is basically light detection and ranging technology. Through light detection and ranging technology, what is happening is we are sending pulses of laser light, and based on the reflection of these laser light back to the device, we are able to measure the distance. We are able to measure the distance of the place, and we can create a 3D map also based on this LIDAR technology. So this LIDAR technology has various applications. Few of the famous applications which are in use is, first is self-driving cars also uses this technology to gauge the distance. Secondly, for surveying to measure distance also we are using this technology. Simultaneously, it was in news that pollution in higher altitude can be measured through this LIDAR technology. Based on the reflection from the atoms, we can decide the pollution level in higher altitude. Object tracking can also be done through LIDAR tracking. Missile system, it is also used in advanced cruise missile system, and forest assessment. These are the few important
application of LIDAR technology, and MCQ can be asked, definitely can be asked from this point, and you should be aware about this LIDAR technology. It is application of laser technology for measuring distance. Next important organization which is in news is Central Water Commission. In the previous lecture, we have already covered Central Groundwater Board and Central Groundwater Authority. Both these organizations have been extensively taken our previous lecture. You can go in the playlist and watch that lectures. These are only 10 to 15 minutes lectures which you can watch during your free time and cover major topics which are from current affairs, and these topics are filtered content. You are getting what could be asked and from the MCQ and help you in elimination options. Next important is Central Water Commission. It is apex technical organization in the field of water resource. So whenever any state government want to start any project, or national government or government of India wants to, central government wants to start any project, it takes the advice, technical expertise of Central Water Commission while designing, while consultation, while construction and while execution of water projects such as irrigation projects, flood control, navigation projects, drinking water projects. So all these projects are taken into planning and execution with the technical help of Central Water Commission. So it's an important organization under Ministry of Jal Shakti. You should know this, and it does not give only technical advice, but it is also involved in the execution of the project. So उस perspective से आपको important है. Next important is Central Water Commission is also responsible for flood forecasting. So flood forecasting, yesterday's lecture we have seen eye flows with respect to flood forecasting, and Central Water Commission also looks into it. River basin planning and management is also done by Central Water Commission. So it's an important organization, and MCQ can come from this aspect. Next important thing is you must have seen that there is a lot of stubble burning which is leading to air pollution in Delhi NCR region, and one important technology which is we are planning to get it from Sweden is torrefication technology. In this torrefication technology, what we are trying to do is convert biomass into biocoal. So this biomass which is left after agriculture activity, straw and everything, is heated at around 250 to 300 degrees Celsius in inert atmosphere, and this biomass is converted into energy in the form of biocoal that can be used, and it is a form of clean fuel. तो आपको torrefication technology के बारे में पता चाहिए. Stubble burning, it's a solution to stubble burning, and stubble burning leads to emission of methane, carbon monoxide, volatile carbons, carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons. All the harmful elements are released by stubble burning. So you should know all these compounds which are released by stubble burning. तो ये आपको additional information पता चाहिए. Whenever we are looking after this air pollution in Delhi NCR region, you should know about Environment Pollution Control Authority. Environment Pollution Control Authority. It's an important organization set up on the guidelines of Supreme Court. Supreme Court has suggested setting up of this organization, and this organization was set up with the help of Section 3 of Environment Protection Act. Taking help of Section 3 of Environment Protection, we have established this organization. The aim of this organization is to control pollution and take steps to control pollution in Delhi NCR region, and it is also responsible for implementation of Graded Response Action Plan. That is Graded Response Action Plan, which is an action plan to control air pollution in Delhi NCR region. तो उसको implementation है, and this Graded Response Action Plan is made by MOEF. MOEF ने ये बनाया है, लेकिन implementation किसके पास है? Environment Pollution Control Authority. You should know about this organization when we are looking about AM. One more authority and agency, Higher Education Funding Agency, which was formed in 2018, and you should know that it's an important organization. It's an initiative of Ministry of Education and Canara Bank. उन दोनों का initiative है, Ministry of Education and Canara Bank. It's an NBFC under and registered also as a non-profit company. 90% share किसका है? Ministry of Education का है, and 9.1% share Canara Bank का है. You should know this. And the aim of this is financing higher education institution फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को ये केटर करने के लिए, उनके नीड्स को टैकल करने के लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन वुड फाइनेंस
the infrastructure of higher education so that they can get loans at very minimal rate and at a concessional rate, and the organization can repay at a concessional time period. So it's an important organization, you should know. Next important thing which is in news is vitamin D. It was seen that vitamin D deficiency of vitamin D is also leading to poor immunity and leading to more impact of coronavirus on patients. So if we want better immunity, we should have proper levels of vitamin D. Vitamin D is, you should know, it's a fat soluble vitamin. There are 4 fat soluble vitamin, that is A, D, E, K, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, and vitamin B and C are water soluble. They are water soluble, so you should know about these are water soluble. A, D, E, K are fat soluble, तो ये आपको additional information पता चाहिए. Vitamin D is responsible for bone formation. It's also responsible for cell growth. It has immune function and neuromuscular function. For contraction of muscle also we need calcium. So, and contraction or transmission of nerve impulse also we need कैल्शियम. तो कैल्शियम का मल्टीपल रोल है, बोन फॉर्मेशन, सेल ग्रोथ एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर भी रोल है. साइमल्टेनियसली डिफिशिएंसी ऑफ vitamin D leads to rickets in children, it leads to rickets in adults, it leads to osteomalacia, and if there is a fall, deficiency of vitamin D makes us prone to fractures. तो ये भी आपको पता चाहिए. What are the sources of vitamin D? Sunlight is the biggest source. Sunlight is the biggest source. Apart from that, fish oil, liver, cheese and egg are also sources of vitamin. Simultaneously, we'll cover few of the important vitamins and diseases caused by it. What are the diseases caused by vitamin A? Vitamin A causes night blindness. तो ये आपको पता चाहिए. Vitamin A is an important vitamin, and deficiency of vitamin A causes night blindness. Vitamin C it causes scurvy, that is bleeding gums, and vitamin C is also important for immunity. All the citrus fruits and vegetables have vitamin C, तो ये आपको पता चाहिए. Vitamin K का deficiency से clotting disorder होता है, blood cannot clot and there is heavy bleeding. So vitamin K इस perspective में पता चाहिए. Vitamin E is antioxidant. It's an antioxidant and it's necessary for reproductive function and better skin function. तो अगर if there is deficiency of vitamin E, it leads to reproductive issues and there is degradation and poor immune response. तो ये आपको पता चाहिए. Vitamin 12 and folic acid deficiency leads to anemia. It leads to anemia. तो ये आपको पता चाहिए. Vitamin B12 and folic acid का deficiency leads to anemia. And vitamin B12 से neurodegenerative disease भी होता है. Neurodegeneration होता है, nerves का degeneration होता है if there is deficiency of B12. तो ये आपको पता चाहिए. Side by side और एक important चीज़ आपको पता चाहिए. 3 vitamins which are known as antioxidants. Vitamin A, vitamin C and vitamin E are antioxidants. तो ये भी आपको additional information about vitamins पता चाहिए. Next, one more place which is in news recently is Sir Creek. Sir Creek is basically a 96-kilometer water strip in Run of Kutch. I'll show you in the map, and it is a dispute. It's a point of dispute between India and Pakistan because of floods and because of changing the boundaries of this Sir Creek. There's always been a conflict. तो Sir Creek के बारे में पता चाहिए. If you see this diagram, this part is known as Sir Creek. It's basically a dispute. If you see in a broader framework, if you consider this as a creek, what India wants the application of Talweg principle, that is the navigation, the midpoint of the navigation of the creek should be the boundary. So India wants ये beach का point should be the boundary. Beach का point should be the boundary. I'll draw it again. If this is the creek, India wants if this is the boundary, India wants this to be the boundary because this is the midpoint of this navigation channel. This is the midpoint of this navigation channel. But Pakistan wants the eastern side. Pakistan wants the boundary should be close to the Run of Kutch or the Gujarat border. But India wants Talweg principle, which says the international between the navigation channel, the midpoint of the navigation channel should be the boundary, and this is the point of contention between India and Pakistan. So you should know about this Talweg principle and Sir Creek, and where is it located? It's close to Run of Kutch. So